Hello, good morning. Is the audio video clear? Good morning. Audio video clear? Just give me 1 minute. I'll be sharing the link. Then we will start. Just 1 minute. Okay. Oh, chalo. नमस्कार नमस्कार विजय. All clear? Audio video सब clear? Right? So, we are starting the UPSC PYQs as you all must. The UPSC PYQs कले कौन होगा तुमको कुछ substantial and you will get a edge on the preparation. मान जहाँ भी तुम्हें पढ़ी जो ताकू revision. Good morning सुनीता. तो ताकू revise करिवा को easy हो. I will be starting with the history section. तापरे science and tech, तापरे economy, environment, polity, geography पूरा series लगी थी. आज भी again 10 to 12 hours रो marathon अच्छी. सबू UPSC PYQs nearly 3 years रो हमें cover करेगा. ताकरी चु. So 3 years रो UPSC PYQs देखी सरला परे you will get an substantial edge over कि कौन question आसे केमिति type रो question and how you have to attempt that. Good morning Pachanan, good morning Ratna. Hello. Good morning everyone. So basically we will be beginning with the session. Hello. How late karibani? Already as usual I am 15 minutes late. So seti bhai how late karibani. Hello. Chalo. Correct? Eta ancient history, art and culture gote segment rachi. Then tomorrow modern history, medieval history topic. I hope the questions are clear, right? चलो विजय नमस्कार नमस्कार देखी ली तुम स्टार्टिंग रे ही देखी दे चलो स्टार्ट करिबा गुड who among the following rulers in ancient India has assumed or had assumed the titles Makta Vilasa, Vichitra Chita and Gunabhara. A question टा मु आगुरु भी सारा डिस्कशन करिछि. Makta Vilasa is basically literary achievement. तो जो ruler literary achievement रे थांती बहुत exceptional achievement पांती सेमानकु मत्त विलास बोली कहा जाय. तापर विचित्र चित्त different types of characters play करंती जो माने विचित्र चित्त माने जो माने varieties of character play करंती ता माने कोन माने architecture रे भी भलो थांती sound रे भी music रे भी भलो थांती literature रे भी भलो थांती then different styles of art and culture को promote करंती ताको particularly ए title दिया. All of these rulers are of Pallava dynasty. ए hint भी मु दे दउछि. ए सब rulers Pallava dynasty को ही belong करंती and Pallava dynasty रो ही जने ruler को a particular title मिल. Correct? हाँ जो माने definitely आगुरु questions answer करिचो तम पई easy रहिबो हला. Clear? हबो करिबा. Simha Vishnu, basically Simha Vishnu 575 AD ru 600 AD rule करुथिले. Mahendra Varman तांका परे आसीबे 600 to 630 AD, right? Then आसीबे Narasimha Varman 630 to around 670 or 75 AD पर्यंत around आसीबे. तामाने 630 to 670 AD पाखा पाखी. Exactly to be very sure the ये 570 630 to 668 AD most probably once you can recheck. तो एई भितरे ए माने रूल करिवे. तो सबटु फर्स्ट रूलर होचंदी सिंह विष्णु, then आसीबे महेंद्र वर्मन, then नरसिंह वर्मन. सिंह वर्मन he was the early Pallava dynasty. ता माने 5th century रे जतले Pallava dynasty belong करथला तते बेलकु एई early Pallava dynasty रो रूलर थिले सिंह वर्मन. एथि बेसिकली 300 हमको मन रखिया पड़िबो. तापर ए टाइटल टा पॉपुलरली महेंद्र वर्मन को दिया हेतला and that is why the answer will be Mahendra Varman. Factual data, factual information तो आउ किसी analytical concept
तो डेफिनेटली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि महेंद्र वर्मन को पर्टिकुलर टाइटल दिया था। तो ये राजा राजा मनकर टाइटल्स ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आसे। ओपीएससी भी पचारिथिला चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य टाइटल काहा को मिलिथिला कि माने बेसिकली कलिंगाधिपति रो टाइटल की क्वेश्चन आसी पारे। तो ये टाइटल्स गुडा का स्पेशल टाइटल्स जेमति कि को राजा को जदी स्पेशल टाइटल मिलची ताले से दिन को मन रखिया को चेष्टा कर। करेक्ट। गुड। नेक्स्ट, Fahen, the Chinese pilgrim, traveled to India during the reign of. এটা ଗୋଟେ easy question. Fahen କାହା reign time ରେ ମାନେ କାହା rule time ରେ इंडिया को visit କରିଥିଲେ? ଏବେ କାହା rule time ରେ इंडिया को visit କରିଥିଲେ Fahen? हुएनसा काहा rule time रे visit करथिले एटा तो समस्त जानुछो because you are reading हुएनसा and Fahen both with regard to Odisha history as well. तो सेति पई Fahen काहा time रे आसीथिले? This is a easy question. फटाफट आंसर दलो देखिबा. Those who know the answer can type in fast. Yes. Fahen kaha time रे आस्थिले? अच्छा, गायत्री you are saying B. Okay, Ratna you are also saying B. समुद्रगुप्त टाइम रे फाहेन आसी नथिले because समुद्रगुप्त टाइम रे यू सबुठु इंपोर्टेंट रूलर बने दबा ताले चंद्रगुप्त फास्ट आसी जिवे। ये चंद्रगुप्त 1 देन समुद्रगुप्त आसीबे। समुद्रगुप्त परे विल सी चंद्रगुप्त 2 तापर तमे चंद्रगुप्त 2 को ए माने होचंती गुप्ता डायनेस्टी रो किछटा इंपोर्टेंट रूल हला। एबे स्कंदगुप्त कुमारगुप्त ए माने भी अछंती बट देन ई इंपोर्टेंट रूलर्स का टाइम भितरे ही फाहेन आसीथिले। फाहेन had arrived during the time of चंद्रगुप्त 2 जेतबेले चंद्रगुप्त 2 ऊपर बही लिखा हेतला देवी चंद्रगुप्तम सेई टाइम रे वी आल्सो सी द मेंशन ऑफ फाहेन आल्सो अबाउट चंद्रगुप्तस एम्पायर। चंद्रगुप्त 2 को एम्पायर विषय फाहेन भी तांकर हिस्ट्री रे मेंशन करती। सेति पे आंसर कोन हबो? चंद्रगुप्त 2। वेरी गुड। समस्त तो सब आंसर जानि छ आ कोन एग्जाम क्लियर हे गेला त। नेक्स्ट राइट, महाजनपदस रो क्वेश्चन हला। महाजनपदस रे मु सब बेले कहिछि महाजनपदस रे तळे भी क्वेश्चन आसे मैच द फॉलोइंग रे मैक्सिमम क्वेश्चन आसे आइदर महाजनपदस देइथिबो एंड देन कैपिटल्स देइथिबो कैपिटल सहित मैच करि परिबो ता सहित नहले ए जेमति ए क्वेश्चन पचारिछि रिवर को रिवर कूल रे अवस्थित सेमिति हिसाब रे मैच द फॉलोइंग रो क्वेश्चन आसी परिबो। एटा यूपीएससी रे ही पचारितला तो सेति पय देखो कोन करिवो अस्मक अस्मक कोउठी थिला जेतबेले आई हैव एक्सप्लेन्ड द कांसेप्ट ऑफ महाजनपद सेतबेले मु सब बेले बुझाए द कांसेप्ट ऑफ महाजनपद जेतबेले मने रखिबो सब बेले मने रखिबो जे कोन सब बेले मन रखिक चेष्टा करिवो बिहार यूपी गंगा एंड यमुना दोआब वैली रीजन रे 13टा महाजनपद रहि जायते। गोटे साउथ रे थिला दीटा नॉर्थ वेस्ट रे थिले। तो ये जो गोटे साउथ रे थिला ता नाटा होची अशोक और अस्मक बोली कहा जाय। एटा साउथ रे थिला। आ ये जो दीटा नॉर्थ वेस्ट रे थिला एमान को कोन कहा जाय? गांधार एंड कंबोज। गांधार एंड कंबोज दीटा महाजनपद एपटे नॉर्थ वेस्ट रे अछन। ठीक, एठी जो 13टा महाजनपद अछंती ता भितरे एमपी रे अछि तमरो अवंती हला। आउ बाकी 12 महाजनपदस भितरे मल्ल अंग मगध कोशल कुरु पांचाल ए सबु महाजनपद। तबे किए को नदी कूल अवस्थित अशोक ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ गोदावरी। अशोक एठी अछि अशोक बोथ रिवर बैंक्स रे अछि कृष्णा एंड गोदावरी। करेक्ट, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर बैंक्स भितरे तमरो अशोक रहिला। तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट कोन हे जिवो? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन से को जे कंबोज कंबोज कहा अंडर अछि? विपाशा बेसिकली ए विपाशाटा कोन रिवर व्यास। कंबोजटा कोठी रहलानी नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान माने नॉर्थ वेस्ट माने कोन बेसिकली इट इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान रे जेहेतु अछि रिवर व्यास इज फ्लोइंग इन इंडिया कंबोजो इज नॉट रिलेटेड टू रिवर व्यास माने रिवर व्यास रे अवस्थित नुहे। अवंती अवंती इज इन मध्य प्रदेश महानदी इज इन ओडिशा। तो जेहेतु पिला तबे एटा को आइडेंटिफाई करि परिबो जे एटा भूल अछि एटा भी भूल अछि। कोशल कोशल इज इन उत्तर प्रदेश बेसिकली कोशलटा सेतोल को जेतला हमें कहउचे ताले हम ए जो वेस्टर्न ओडिशा कथा कहउचे सेरा भी कोशल राज्य डिमांड होची। तो कोशलटा बेसिकली ए पार्ट रे ही स्प्रेड हेतिला। तो समवेयर अराउंड यूपी ए कोशल राज्यटा थिला एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर ट्राइब्स माने जेतले छोटा नागपुर प्लेट्यू रे माइग्रेट कले सेतोल को ए पर्टिकुलर कोशल रो माने कल्चर ट्राइब कल्चर एटा माइग्रेट कला। तो तापरे तमरो वेस्टर्न ओडिशा पार्ट रे भी कोशल राज्य बोली कहा जाय साउथ कोशल बोली कहा जाय। एटा नॉर्थ कोशल एटा साउथ कोशल व्हाटएवर द सिचुएशन इज कोशल वाज इन यूपी। सरायू रिवर इज आल्सो ऑन बेसिस ऑफ
करेक्ट मध्य प्रदेश अवंती जब तुम देखिबो मध्य प्रदेश एरिया नर्मदा रिवर यू कैन आइडेंटिफाई राइट गुड तो ये कौन कौन हो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट फोर्थ इज करेक्ट तो दीटा ही ठीक से मैच करा है तो ये कौन हो ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4 कौन टिक कर दबा 3 2 क्लियर Ashokan inscriptions suggest that the Pradeshika, Rajuka, and Yukta were important officers at Pradeshika, Rajuka, and Yukta were important officers at what? Pradeshika, Rajuka, and Yukta aguru bhi jetavale Ashokan administration padhaichi. Ashokan administration padhela bale we have discussed about the provincial administration. ता माने सेंटर रे रहिले किंग करेक्ट सेंटर रे रहिले किंग तळ को रहिले प्रोविंसेस वर लेड बाय आर्यपुत्रस आ तांकू असिस्ट करूथले किंग द्वारा अपॉइंट करा जाउथबा महामात्रास ए प्रोविंसेस अंडर रे यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ मॉडर्न टाइम रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू गोटे होची तमरा रूरल आ गोटे होची तमरा अर्बन ता माने म्युनिसिपैलिटीज टाउन को भी एडमिनिस्टर करा होतला रूरल एरियाज को भी एडमिनिस्टर करा होतला एबे एठी प्रदेश का राजुका एंड युक्ता वेरी इंपोर्टेंट एठी प्रोविंसेस रे के रहि गले यदि हमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखिबा प्रोविंसेस रे आर्यपुत्र रहो कि नहीं करेक्ट विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एटा रूरल हबो रूरल रो लास्ट स्टेट सेगमेंट रे आसीबो विलेज आ विलेज माने कोन ग्राम राइट तो तार डेफिनेटली प्रदेश का राजुका एंड युक्ता सेठी किछि अवस्था हवार नाही काइना एटा लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली ग्रामीण बोली ताको कहा जाउतला तो सेति भाई विलेज लेवल रो एडमिनिस्ट्रेशन भी हबनी प्रोविंशियल भी हबनी देन लेवल ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किंग रहिछि किंग तरफ रु जो रिप्रेजेंटेटिव्स माने आसंती मान को महामात्रास बोली कहा जाउतला करेक्ट तो किंग मान को तरफ रु जदी महामात्रास कहा होतला एलिमिनेशन ऑप्शन रे भी तमे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रे पहुंची परिबो ओके समस्त बी ही मार देथरा क्या करो गुड good जो मैंने definitely I believe that you have studied and done the previous year questions of UPSC and OPSC and that is good author revision भी ହେଇଯିବ right we will see all some new questions ଆଉ ତାପରେ जो मैंने जानिছো it is good definitely you have a good coverage of ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା district level administration right प्रदेशिका राजुका एंड युक्ता बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन माने कोन रेवेन्यू कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन एटा प्रदेशिका राजुका एंड युक्ता माने देखुथिले थैंक यू नायक बसंत थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट बट देन नेक्स्ट द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय a music training school was set up in 1901 by Vishnu दिगंबर पुष्कर इन कोठी ए सेटअप ता हेतला फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय 1901 गुड मॉर्निंग देविका 1901 रे एटा कोठी हेतला फैक्चुअल क्वेश्चन फटाफट आंसर करो 1901 रे गंधर्व महाविद्यालय प्रथम थर पई दिगंबर पुष्कर जोटी एस्टैब्लिश करथले से जगह रो नाटा कोन गुड आउ गोटे जिनस भी जानि परिबा केमिति यदि हम इंडिया मैप देखिबा यदि हम इंडिया मैप देखिबा एंशिएंट टाइम रु ही हला एंशिएंट टाइम रु एबे महाजनपद विषय डिस्कस करथले एडा को कहा जाला गांधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हेतिला एठी तमरो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हेतिला आ एठी तमरो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हेतिला ठीक ए जो गांधारव म्यूजिक कहा जाय इट वाज ए बेसिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया त माने कोन एग्जैक्टली नॉट माने सेउठु ही सब बाहर जी बोली नाही पर इंटरमिंगलिंग भी हबो देन बट एटा कोठी रहइबो नियरली नॉर्थ वेस्टर्न सेगमेंट रे रहइबो नॉर्थ वेस्टर्न सेगमेंट रे जदी रहइबो नॉर्थ वेस्टर्न सेगमेंट रे आ भीतर की अछि दिल्ली तो नॉर्थ वेस्टर्न सेगमेंट रे नाही ग्वालियर एमपी एटा भी नाही उज्जैन एटा भी नाही factual data सेमती माने just to analyze the question if you are not knowing the answer ताहले भी से guess करि पारिबो सेति पई ए बेसिकली कांसेप्ट दिया हला अदरवाइज एल्स फैक्चुअल क्वेश्चन जानिछो जदी ताहले गो फॉर द आंसर अदरवाइज एल्स लीव दैट क्वेश्चन हला जदी इन लास्ट सेगमेंट रे मने पड़े ताहले जाई क्वेश्चन अटेंड करियो नहले छाड़ दो the famous female figurine known as a dancing girl statue bronze dancing girl statue बोली कहा जाय at found at Mohenjo-daro is made up of bronze dancing girl statue वही दे एटा पॉपुलर ही हला bronze dancing girl statue
ब्रोंज डांसिंग स्टैच्यू आर्ट एंड कल्चर रेस्पेक्टिव रे भी बहुत इंपोर्टेंट हुए कहीं ना सेठी बहुत प्रकार रो पोस्चर डिस्कशन हुए ता माने कोन त्रिभंगा पोस्चर रे ब्रोंज डांसिंग स्टैच्यू रो माने इमेज ता तयारी करा हैची तांकर गोटे हाथ रे बहुत सारा चूड़ी अछि माने राइट हैंड रे the bangles are filling up to shoulders and left hand रे किसी नाही the left hand is on waist एमिति प्रकार रे दुनिया डिस्कशन करा जाय आ एटा मेंस पर्सपेक्टिव रे भी इंपोर्टेंट हुए ओपीएससी रे बेले बेले मोहिंजोदारो ऊपर डायरेक्टली ग्रेट बात ऊपर देखो शॉर्ट नोट्स राइट शॉर्ट नोट ऑन तारो write short note on the mother figure माने जो mother goddess figurine or the bearded priest cultural impact केमति रहउतला ब्रोंज डांसिंग स्टैच्यू ताको मेटलर्जिकल प्रोसेस कोन कहउची ए प्रकार छोट मोट क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स रो भी आसे तो सेति पई एटी जे तुम आंसर कहि देली एटी आंसर टिक करि दउची क्ले कार्लिनियन रो बीड्स तयारी होतला गोल्ड वाज यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स करेक्ट तो क्ले रू जो कोन टेराकोटा रू इटा बनउतले स्लेट बनउतले कार्लिनियन बीड्स बनउतले गोल्ड रो ऑर्नामेंट्स ब्रोंज रे से माने आर्टिफैक्ट्स बनउतले करेक्ट गुड 2024 रो क्वेश्चन स्टार्ट हो 2025 रो क्वेश्चन सरला 2024 which one of the following is a work attributed to playwright भाषा भाषा रू को दिन को डिराइव करा हैची आ आ भितरे कोटा भाषा को एट्रिब्यूट करा हैची करेक्ट काव्य अलंकार गुड काव्य अलंकार नाट्यशास्त्र these books have been discussed regularly तो एटा तो भाषा संग रिलेटेड नाही काहे नाट्यशास्त्र इज अबाउट योर डांस एंड ड्रामा से भितरे काव्य अलंकार स्टोरी एंड प्रोज राइटिंग तो भाषा व्हाट इज भाषा प्लेराइट भाषा को कोटा एट्रिब्यूट करा है फास्ट फास्ट जेतले मु क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर दोची तबे आंसर दे दोछ आई एम स्किपिंग दैट नाउ आई एम लुकिंग फॉर योर आंसर एंड यू आर नॉट गिविंग आंसर देविका हैज आंसर्ड सी 7 number at a first question of 2024 and 2025 रो बुकटा 2025 रो क्वेश्चन समस्त करथिलो नै कि सी समस्त सी गुड भाषा बेसिकली कव्य अलंकार नाट्यशास्त्र तो सेमिति ही एलिमिनेट करिवो हला कव्य अलंकार एंड नाट्यशास्त्र को तमे डांस सेंटरवा महाभाष्य इज ए पर्टिकुलर डिफरेंट बुक रिटर देन भाषा भाषा गुटे अलगा बही महाभाष्य गुटे अलगा बही मध्यम वायोग सहित भाषा को लिंक करा जाए आ एटा प्रीडेट्स दी हिस्ट्री टाइम ऑफ कालिदास को पूर्वरु ए पर्टिकुलर बुक्स गुडाक मेंशन हेची आ ए पर्टिकुलर बुक्स गुडाक लिखा हेची महाभाष्य इज आल्सो ए ग्रेट बुक महाभाष्य काहे की भलो बही ये कहि परिबो who had written Mahabhashya was written by Patanjali correct Mahabhashya was written by Patanjali जे की योग विद्या रो भी सबुठु अधिका डिनोट माने इंपार्टेशन देथिले सी ही एठी माने महाभाष्य लिखतले महाभाष्य वाज बेसिकली ए ग्रामर बुक एंशिएंट ग्रामर बुक महाभाष्य बोली करेक्ट आउ भी इंपोर्टेंट बुक्स अछि जेमति पाणिनि कर अष्टाध्यायी दैट इज आल्सो एन इंपोर्टेंट बुक ता ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन सेति में एंशिएंट टाइम रो किछटा बुक्स ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन Sanghabhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of 4th century AD, was the author of a commentary. 4th century AD, 4th century AD माने 4th Buddhist Council भी सरी गलानी कनिष्कंकर टाइम भी सरी गलानी राइट तो 4th century AD रे जतबेले ए पर्टिकुलर बही लिखा हेतिबो एंड से को बही लिखिथिले बोली कहआ जाय सब आर्ट एंड कल्चर रो क्वेश्चन हला तो बेसिकली तमरो माने एंशिएंट ट्रू जति की भी क्वेश्चन आसे प्रायतः आर्ट एंड कल्चर को फोकस करी क्वेश्चन आसे यू डोंट हैव टू माने माने बेसी परिश्रम करिया दरकार नै इफ यू नो द आंसर इट इज फाइन नॉल नै यू कैन स्किप द क्वेश्चन राइट संघभूति कहू बही लिखिसंती या भितरु संघभूति जदि मु कहबी ताले संघभूति वाज ए मॉन्क हु हैड रिटन ए बुक ऑन डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन रो जदि बही लिखितले कोन देखिबो गोटे होची तमरो विनय पिटक जदि जानिबा ताले विनय पिटक कोन लिखुची डिसिप्लिन विनय माने डिसिप्लिन तो विनय पिटक रे कोन डिसिप्लिन्स टू बी फॉलोड बाय द मॉन्क्स लिखा जाय संघभूति भी डिसिप्लिन ऊपर गोटे पर्टिकुलर माने स्टेटमेंट देथिले आ तापरे से डिसिप्लिनरी बुक्स ऊपर लिखितले करेक्ट
तो कौन हो या भितर श्रवस्तिवाद विनय श्रवस्तिवाद विनय साई वाज रिटन बाय बेसिकली योर संगभूति करेक्ट ठीक अच्छी समस्ते सी आंसर ही देथिला ऋषिकटिकम किए लिखिथिले पचारुच यू आर asking me or you are asking the, just 1 minute ठीक है कंटिन्यू करो you want to know the answer ना माने just empty ही you are asking or you have general doubt Ganesh if you are asking to know Mrishika Katikam was written by the Shudraka लिखिथिले Mrishika Katikam correct चलो next with reference to ancient India Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets if you know the meaning of epithets ताहले तमे definitely Gautam Buddha को identify करि पारे epithets माने basically ताको आउ कोन कोन ना दिया हेतिला that is what the question is asking एबे एई epithets भितरे न्यायपूत अछि साक्यमुनि अछि तथगत अछि ए तथगतता समस्त डेफिनेटली जानि थिबो बाकी दीटा को आइडेंटिफाई करके आंसर करबा को चेष्टा करो राइट यस फटाफट आंसर करो 2 and 3 न्यायपूत कोच न्यायपूत नुहंती you are saying न्यायपूत is not a particular epithet given to Gautam Buddha न्यायपूत वाज हुज टाइटल देन जदि न्यायपूत गौतम बुद्धंकर टाइटल नथला ताल कार टाइटल थला सेरा तो ठीक साक्य मुनि ही बिलोंग टू द साक्य क्लैन सेति भाई साक्य मुनि बोली कहा जाउथला देन तथगत अचीवमेंट ऑफ द इटर्नल नॉलेज और जतबेले प्राइम नॉलेज अचीव करि सारले ताहले सेतबेल को से तथगत बोली कहा जाउथले दिस इज आल्सो गुड तो प्राइम नॉलेज अटेन करि सारला परे तांको तथगत र एपिसोड माने द एपिथेट वाज गिवन दैट इज आल्सो गुड तम आंसर भी ठीक अछि न्यायपूत वाज रिलेटेड टू वर्धमान महावीर Nyayaputra and also Nataputra. That particular epithet was also related to Vardhaman Mahavira. Vardhaman Mahavira pai eta rahijibo eta first ta bhul hejibo second and third is correct तो option कौन हबो 2 and 3 only clear good एबे देखो किसी रे आर्कियोलॉजिकल साइट पचारि छी इन 2024 it was a very interesting question काहे कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स पचारथिला ए आर्कियोलॉजिकल साइट्स भितरे चंद्रकेतुगढ़ वाज एन इंपोर्टेंट साइट से तोळकु नुआ नुआ डिस्कशन रहथिला तो चंद्रकेतुगढ़ वाज एन आर्कियोलॉजिकल साइट व्हिच वाज इन डिस्कशन से कोन कहूची कहूची आर्कियोलॉजिकल साइट चंद्रकेतुगढ़ स्टेट ओडिसा रे अछि डिस्क्रिप्शन एटा गुडे ट्रेडिंग पोर्ट थिला बोली कहूची देन इनाम गांव इज इन महाराष्ट्र एंड इट वाज ए चाल्कोलिथिक साइट नियोलिथिक साइट पैलियोलिथिक साइट मेसोलिथिक साइट जतला हम डिस्कस करथिले ताले एई जिनस सतरको डिस्कस करथिले देन मंगाडू केरला मेगालिथिक साइट मंगाडूटा केरला रे अछि और मेगालिथिक साइट Salihundam is in Andhra Pradesh and it is a rock cut shrine basically that is what the question is saying what will be the answer yes fast habo are you all answering it समस्त न्याय पुत्र ही अछ पर्यंत नो आंसर आसीनी ओके yes correct 2 and 3 only devika okay अब बाकी गणेश गणेश रत्ना your answers for B
2 and 3 ओनली ठीक अछि समस्त 2 and 3 आंसर तो दे दोछ तापर के कर दबा कोन चंद्रकेतुगढ़ वाज एन इंपोर्टेंट साइट इन वेस्ट बंगाल चंद्रकेतुगढ़ वाज ए डिस्कवरी ऑफ द साइट ऑफ वेस्ट बंगाल रे चंद्रकेतुगढ़ लोकेटेड अछि चंद्रकेतुगढ़ ओडिसा रे नाही तो सेति पई सेटा फर्स्ट ऑफ ऑल भूल हे जिवो बाकी सेटा ट्रेडिंग पोर्ट टाउन थाउ कि न थाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट इट इज एन इंपोर्टेंट सिटी फॉर इट्स ट्रेड अर्ली हिस्टोरिक पीरियड रे तार ट्रेड पई ही जणा जाउतला व्हाट एवर द सिचुएशन इज जे तेडा लिंकिंग भूल अछि तार एटा रॉन्ग हे जिवो करेक्ट वन भूल हे गेला तो वन रे थिबा जति के ऑप्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट कर दबा देन जदि हमें आइडेंटिफाई कर देले 2 2 जदि ठीक हबो ताले एटा कटि जिवो एटा ऑप्शन हे जिवो ताले 2 टा कोन हे जिवो इनाम गांव वाज इन महाराष्ट्र यस चाल्कोलिथिक साइट कॉपर एंड साइट ता माने महाराष्ट्र रे सेतोल को किछिटा मेगालिथिक साइट्स डेवलप होतला ए मेगालिथिक कल्चर रे वी विल सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर मु जेमति बहुत थर कहै छै जे कोन जॉर्वे कल्चर भी अछि तमरो मेगालिथिक साइट रे जतोले डेवलप होतला महाराष्ट्र साइट रे तो वेस्टर्न घाट्स जेहेतु तांका पाखरे थिला तो वेस्टर्न घाट्स थिबा जुगु तांका पाखरे सबुटु बड़ बड़ पत्थर अवेलेबल था एंड दैट इज कॉल्ड एज द मेगालिथिक साइट्स ए मेगालिथिक साइट रो जतो समय चाल्कोलिथिक साइट को आसिले इनाम गांव वाज एन इंपोर्टेंट सेटलमेंट करेक्ट तो सेति भाई इनाम गांव एंड महाराष्ट्र साइट ठीक अछि जदि सेकंड टा ठीक अछि फर्स्ट टा भूल अछि ताले कोन 80 सेकंड ऑप्शन नाही ताले डेफिनेटली एटा को भी एलिमिनेट कर दे परिबा आंसर टिक कर दे परिबा इफ यू नो दैट इनाम गांव सबले डिस्कशन रे रुहे एटा तो समस्त Salihun Dam is located in Andhra Pradesh, but it is not known for the rock cut shrines. Rock cut shrines माने rock cut caves ପାଇଁ ଜଣା ଯାଉ ନଥିଲା. Salihun Dam is known for Buddhist viharas, Buddhist stupas and viharas. Correct? rock cut shrines ପାଇଁ basically Ajanta and Ellora. Correct? Good. मन रहइबो. Next, consider the following statements. First, there are no parables in Upanishads. Upanishads रे कोनोसी प्रकार रो parables नाही बोली से correct. Then Upanishads were composed earlier than Puranas. Puranas पूर्वरु Upanishads compile हे जाइतले बोली correct. Basically with Vedic age question पचारुची education Sonali very good good parables माने कोन if you can identify what are parables ताहले तुमको आंसर इजीली मिल जिवो parables रो मीनिंग जदि तमे जानथिबो parables माने कोन paragraph short note parables a short story parables माने गोटे छोटो स्टोरी जो थरे कि गोटे पर्टिकुलर मोरल लेसन जेमति तमे कहबो आगु पिला दिन पढथबो चंदा मामा के ऑल तो सेथिरे जो छोटो छोटो स्टोरीज लिखा हेता है जो थरे कि गोटे मोरल लेसन बेसिकली दिया जाय लोकन को सेईटा को parables बोली कहआ जाय तो दैट आर कॉल्ड एज parables तो से कोन कहूची there are no parables in Upanishads basically केतबेले कंपाइल होतले if you get into the history Vedic age रे जदि हमें देखिबा ताले Vedic age रे हमें लिटरेचर विषय रे कोन डिस्कस करू फर्स्ट ऑफ ऑल तमरो वेदस कंपाइल हेले वेदस परे तमरो ब्राह्मणस कंपाइल हेले हला देखो डिस्कशन फास्ट चलची तो सेते हैंडराइटिंग सहित टिके बेयर आउट करबो ब्राह्मणस परे अरण्यकस राइट एबे अरण्यकस परे आसले उपनिषद्स करेक्ट उपनिषद रही जीवो एटा होची तमरो श्रुति लिटरेचर रे आसी जीवो और स्मृति लिटरेचर कोन आसे स्मृति लिटरेचर रे आसे तमरो उपवेदस हला वेदांगस उपवेदस करेक्ट वेदांगस आ एठी ही आसे तमरो पुराणस तो ठीक महाभारत रामायण एपिक्स विषय हमें भी कथा कहूचे तो एठी तमरो पुराणस आसे विभिन्न प्रकार पुराण मत्स्य पुराण स्कंद पुराण माने ए जो चांडोग्य पुराण व्हाटएवर माने सॉरी चांडोग्य उपनिषद मत्स्य पुराण पुराण नारद स्मृति पुराण से प्रकार विभिन्न प्रकार पुराण आम ये देखा पाइबा नाउ व्हाट आर द स्टेटमेंट से कहूँ देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स पैराबल्स माने कोन छोटो छोटो स्टोरी नाही बोली कहूँ केमिति पॉसिबल वेदस रे केवल श्लोक अछि मंत्र लिखा जाए देन ब्राह्मणस रे तार एक्सप्लेनेशन अछि करेक्ट
ऑल ऑफ दी श्लोकस तांको ऊपर कमेंट्रीटा ब्राह्मणस रे थाए आरण्यकस रे फिलोसॉफिकल नॉलेज अछि फिलोसॉफिकल नॉलेज माने जेतबेले वेदस पढी सारिलो ब्राह्मणस रे तार एक्सप्लेनेशन बुझिलो निजर फिलोसॉफी जनरेट करबो फिलोसॉफी जनरेट करि पारला परे उपनिषद्स बेसिकली उपनिषद्स कोन होतला उपनिषद्स वेर बेसिकली दी टीचिंग्स ऑफ गुरु ता माने गुरु जेतबेले पढौतले सेतबेले को कहा जातला उपनिषद्स वेर बेसिकली दी टीचिंग्स ऑफ गुरु तो गुरु को पाद चरण पाखरे रही कि जे ज्ञान आहरण कला सेटा को कहा जाय उपनिषद्स तो उपनिषद रे डेफिनेटली गुरु विभिन्न प्रकार रो स्टोरी रे छोट छोट स्टोरी छोट छोट एग्जांपल्स देकी ज्ञान दउथबे आ उपनिषद रे पैराबल्स अछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट ता भूल है सेकंड उपनिषद्स वेर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू काहे कि ना फर्स्ट श्रुति लिटरेचर देन तमरा स्मृति लिटरेचर आउ स्मृति लिटरेचर रे फर्स्ट आसी जीवो तमरो वेदांगस देन आसी जीवो तमरो उपवेदस ता माने वेदस को बुझीबा पई वेदांगस रे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेदस बेसिकली वेदांगस रे रहिला उपवेदस रे कोन उपवेद रे वेद को बुझीबा पई तंकर ग्रामर व्याकरण ज्योतिष काउंटिंग ए बही सब तमरो उपवेदस रे रहिला क्लियर तो एति के डिस्कशन हे साला परे कोन जानिबा सेकंड स्टेटमेंट ता ठीक अछि फर्स्ट स्टेटमेंट ता भूल अछि आंसर टू क्लियर right chalo good Sunita has given the answer of 2 only good next question kon kohchi next we are moving into 2023 ancient part in which one of the following region was dhanya kataka this was a very easy question जतलको मु एई देनसडा मते जतले पिला माने एग्जाम देके आसले दे asked me and I said ki kataka माने होची फोर्ट सेही टाइम रे फर्स्ट ऑफ ऑल द कांसेप्ट ऑफ kataka came into it basically NCERT रो गोटे क्वेश्चन थला डायरेक्टली was given in the NCERT the माने आंसर was also given in the NCERT the NCERT रो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थला धन्य काटक was basically a fort आ ता परे ए जो काटक हमें कहूचे धन्य काटक which flourished prominent Buddhist center under the Mahasanghikas under रे सेटा फ्लरिश करतला and this was definitely a fort located on the coastal belt हला fort located on the coastal belt ए जो fort located on coastal belt रहइबो मगध एठू एलिमिनेट हे जिवो fort located on coastal belt मगध एलिमिनेट हे जिवो गांधार भी एलिमिनेट हे जिवो करेक्ट आइदर कलिंग थिला नहले आंध्र थिला मैक्सिमम ऑफ देम हैड अटेम्प्टेड कलिंग बट आंसर कोन हबो आंध्र गुड करेक्ट good with reference to ancient India consider the following statements concept of stupa is Buddhist in origin माने स्तूपटा फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धिस्ट ओरिजिन रु बाहर थिला देन स्तूप वाज जनरली ए रिपोजिटरी ऑफ relics रखा जाउतला सेति में सेटा को रिपोजिटरी ऑफ relics बोली कहा जाय स्तूप भितरे बेसिकली relics था स्तूप वाज ए votive and commemorative structure in Buddhist tradition स्तूपटा गोटे कमेमोरेशन पई यूज करा होतला that is what the statement is asking right तबे फटाफट आंसर करो yes Devika's speed of answering is good if you have done the discussion tahale bhi to mane it is good everyone must do the discussions hala jete bhi PYQs achi sabu kariba katha closely associated with satavahana p 2 and 3 correct first statement ta bhul hoche कहउछ hello last चलो चलो फटाफट फटाफट all are correct Sunita goji all are correct okay ठीक अछि देखि दबा all of you had answered concept of stupa बेसिकली कोन बुद्ध कहले जे मते जते बेले भी बिवारी करबो सेते बेलको मोर बरियल ऊपर आर्म्स को ओपन कर दबो हला आ ए दिनसरा मु सब बेले बुझाए तो आर्म्स को ओपन कर दबो देन देयर बाउंड्री वाज गिवन आ एउटु ही तमरो स्तूपर कांसेप्ट आसीतला बोली कहआ जाय बट दैट इज नॉट करेक्ट ता माने कोन इन द एंशिएंट टाइम्स तुमुली बोली गोटे कांसेप्ट थिला तुमुली कांसेप्ट कोन थिला
मॉन्क्स मानकु जेतिकी भी मॉन्क्स एक तो बुद्ध मॉन्क्स भी फर्स्ट मॉन्क्स थे कि नहीं तो जैन रे भी तीर्थंकर थे जैन रे भी मॉन्क्स माने थे माने आजीविका सेक्ट रे भी मॉन्क्स माने थे तो जो मॉन्क्स माने जतले डाई करि जानती तांकु जो बरियल प्रैक्टिस करा जाए सेटा ए सिमिलर टाइप ऑफ कांसेप्ट थाए ता माने ए जो डोम स्ट्रक्चर टा दिया गला ए डोम स्ट्रक्चर रे ही तांकु बरी करा जाए आउ एठी जो बरियल रे तांकर डेड बॉडी टा रुए सेटा तांकर रेलिक्स भलिया भी एक्ट करे एंड दिस डेड बॉडी एक्ट्स एज रेलिक्स तो एई दिनसर कांसेप्ट टा बुद्धिज्म पूर्वरु भी एग्जिस्ट करूथला राइट तो अर्ली बुद्धिज्म पूर्वरु भी ए कांसेप्ट टा एग्जिस्ट करथला त माने एग्जैक्टली स्तूपर डेवलपमेंट हां बुद्धिस्ट टाइम रे हेतिला बट से कहूची जे द कांसेप्ट ऑफ स्तूप इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज़ तांको पूर्वरु भी जो मॉन्क्स मानकु बरी करा होतला सेई मॉन्क्स मानकु अलगा स्ट्रक्चर दिया ही नथिला से सेम डोम शेप ऑफ स्ट्रक्चर दिया हितला बाकी सब स्टेटमेंट डेफिनेटली ठीक अछि रेलिक्स रखा जाए स्तूप वाज वोटिव एंड कमेमोरेटिव कमेमोरेशन पई यूज करा जाए second statement and third statement are correct statements are correct clear sunita good next with reference to ancient south india korkai pumpuhar and muchiri were well known as a question ta ethi pai asithila because muchiri was in news at that point of time relevance dekhai dochi जो साइट्स गुड़ाक प्रायतः न्यूज रे रुहे कि डिस्कशन रे रुहे सेही साइट्स उपरे इन जनरल क्वेश्चंस पकाए यूपीएससी राइट तो सेति पय जो आर्ट एंड कल्चर विषय रे तमे डिस्कस करूछ सेही आर्ट एंड कल्चर टा प्राइमरली न्यूज रे थिबो ताकू लिंक करके गोटे क्वेश्चन यूपीएससी आनी के दे so whenever you go for the UPSC or you go for the OPSC art and culture segment रे जो क्वेश्चन टा आसे सेटा रिसेंट डिस्कशन रे थाए एंड सेही पय सेटा क्वेश्चन रे आसे अदरवाइज एल्स इंडियन आर्ट एंड कल्चर इज ए वेरी लार्ज सेगमेंट आउ सेति पय तार क्वेश्चन आसीबाटा बहुत ही डिफिकल्ट हला तो से लार्ज सेगमेंट रु पिक अप करा जाय क्वेश्चंस कोठू जो क्वेश्चन सुडा को प्रायतः डिस्कशन रे अछंती राइट गुड कोन हो आंसर तो मुचिरी वाज बेसिकली न्यूज रे मुचिरी ही थिला बाकी किसी नथिले मुचिरी वाज बेसिकली लोकेटेड इन दी कोस्टल बेल्ट्स ऑफ केरला एथरे कोन गोटे लैंड शिफ्ट हेतला और मुचिरीटा पानी भितरे दबी जायतिला सेटा ही न्यूज थिला तो सेटा को रिट्रेस करबा पय री एक्सकावेशन करा दउतला ए मुचिरीज रो गोटे नुवा कल्चर को डेवलप करबा पय करा होतला तो मुचिरीटा कोन थिला कोस्टल बेल्ट रे थिला सेटा ट्रेडिंग टाउन भी थिला आ तार ट्रेड उडा को बहुत पॉपुलर थिला ता ऊपर बहुत सारा संगम लिटरेचर रे मेंशन करा आइछि ए मुचिरी एटा कोन थिला सेतळकू पोर्ट सिटी थिला एतिकी न्यूज रे थिला बट नाउ इट इज आस्किंग अदर टू स्टेट्स आल्सो देन आवे डिसाइड करबा कोन देखिबा सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग हबो नाही काहे ना जदी तमे जानि जे मुचिरी केरला कोस्टल बेल्ट रे अछि सेति पे आयरन रो हबो नहीं काहे ना सेति आयरन रो माइन ही नाही आयरन माइन हितले कोडी हेतांता बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा ए भितर रहितांता देन श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकरस Shrines of Jaina Tirthankaras is also not located in Kerala. There are maximum to maximum Karnataka पर्यंत थिला in the ancient times काहेकि ना कर्नाटका पर्यंत ही मौर्यन एम्पायर रो एक्सटेंड जायतिला एंड सेठी मौर्यन एम्पायर रो पैट्रोनेज अंडर रे माने चंद्रगुप्त मौर्य रो पैट्रोनेज अंडर रे कर्नाटका श्रावण बेलागोला रे ही माने जैन श्राइन्स सबुडो अधिका देखिया को मिले ए दिटा तो सेमिति भी एलिमिनेट हला कैपिटल सिटीज मुचिरी नुहे आ जदी कैपिटल सिटीज हेतांदा डेफिनेटली तमे कोरकाई की पुंपार आगुरु भी सुनतांतो दे आर इंपोर्टेंट now important ports but Korkai and Pumpuhar bhitre Korkai was an important port of the Pandyan kingdom eta Pandyan kingdom ro important port thila ta mane Tamil Nadu side right Pandyan kingdom pearl fisheries eti adhika mane mile pearls and fisheries Pumpuhar was an important port of the Chola kingdom ro gote important port thila to sei hisab re Kerala re kiye thila se tolku केरला सत्यपुत्रस केरलीपुत्रस सेवन का टाइम रे एटा डेवलप क्लियर सिंपल लिविंग all are correct कोन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नथिला सेटा दैट वाज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माने was very objective you had to select one single which one of the following explains the practice of vatta kirutal as mentioned in sangam poems
संगम लिटरेचर रु मैक्सिमम क्वेश्चन आसुची यूपीएससी रे यूपीएससी रो दीटा फेवरेट सेगमेंट अछि गोटे होची संगम लिटरेचर आ गोटे होची ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ता माने अर्ली मिडिएवल हिस्ट्री सेई पार्ट रु ही अधिका क्वेश्चंस यूपीएससी पकाए बोथ इन प्रीलिम्स एंड इन मेंस आल्सो मेंस रे भी सेई सेक्शन रु ही क्वेश्चन पचारे बिकॉज़ सेई सेक्शन ता सबटु कंफ्यूजिंग सेक्शन आ सेई सेक्शन टा पिला माने इन जनरल छाडंती हला तो सेइत पे सेठु क्वेश्चन पचारा जाय even OPSC also if you have any one of you have history optional ताले OPSC भी सही segment रो question पचारे को बहुत भल पाया from the segments of tripartite struggle राष्ट्रकूट and all this segment रो guarantee गोटे question early medieval history दे फटाफट आंसर को B good thank you B learned persons assembling in royal courts to discuss religious and philosophical matters learned persons जोठी भी assembly हुअंती सेटा को संगम बोली कहा जाए सेति संगम काउंसिल्स बिल्ड करा हेतला जोतरे कि सबु पोएट्स एंड अदर लिटरेचरिस्ट मिसु थिले एटा हबो नाही यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स एटा पर्टिकुलरली संगम लिटरेचर रे मेंशन करा हेतला जे जेतबळे फैमिली मेंबर्स nothing is difficult if you read if you have passion and I have passion for history so history पढुची is my love माने most preferred subject तो सेतळगु इजी लागिवो जदी हिस्ट्री ता तमरो पैशन पढिबा को बोर लागुची किबा if you are not able to connect the dots of history ताले सेतळगु तुमको हिस्ट्री ता कष्ट लागे अदरवाइज एल्स लागिवो ने बहुत इंटरेस्टिंग लागिवो जदी सब पर्टिकुलर सीक्वेंस को मन रखिवो देन एठी कोन हेजिवो यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर द एग्रीकल्चरल फील्ड्स एटा भी बहुत सारा पोएम्स रे मेंशन करा हेची हला एटा अक्कनानारू रे पर्टिकुलरली तमरो मेंशन करा हेची जे ए पर्टिकुलर सेगमेंट ता हुए बट इट हैज नथिंग टू डू विथ व्हाट वट्टी किरुतल रे एतरे किछि दरकार नाही ए किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ दिस इज व्हाट वट्टी किरुकल इज ऑल अबाउट वट्टा किरुतल माने होची जत किंग हारि जिवो सेतळकु से निजको स्टाफ करिवो किंग्स एम्प्लॉयिंग वुमेन बॉडीगार्ड्स yes kings employing women bodyguards were basically called as yavanars women bodyguards thile in some parts of kings women bodyguards were there in some kingdoms women bodyguards mane thile seman ko yavanar or anangu boli कहा जाय हला anangu boli कहा जाय so this particular statement is true but eta vatta kirukutal the answer is correct understood बुझी परछो ना नाही नले डिस्कशन रो किछि मीनिंग नाही नले क्वेश्चन आंसर दे देथिले भी जायता राइट जो आगो next consider the following dynasties hoysala dynasty hoysalas of dwara samudra correct I discussed these dynasties repeatedly gadwal dynasty of kanauj kakatiyas of warangal yadavas of devgiri मुझे सब कहे जो डायनेस्टी पढ़ो से सब एरिया को मार्क करके पढ़ो सो दैट तुम एरिया जदि मार्क करदेल कि टाइम लाइन जदि मन रखीगला माने को ईयर रे आसीथिले को सीक्वेंस रे आसीथिले ताले क्वेश्चन इजी हे जिवो हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी एडी अर्ली 8th सेंचुरी एडी माने 700 रो बिगिनिंग ता माने अर्ली मिडिवल हिस्ट्री रो क्वेश्चन पुणी आउथरे आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू अर्ली मिडिवल हिस्ट्री रो क्वेश्चन एटा अछि तो अर्ली मिडिवल हिस्ट्री रे एमान को भितरु के अर्ली मिडिवल हिस्ट्री माने अर्ली 8th सेंचुरी माने कोन 700 रु प्रायतः 725 फर्स्ट क्वार्टर एटा अर्ली 8th सेंचुरी एडी रे जाय राइट वाह बहुत समय पर मु रत्नर आंसर ता देखिली अर्ली 8th सेंचुरी एडी रे एमान को केही भी नथिले व्हाई बिकॉज़ अर्ली 8th सेंचुरी एडी रे जेतबेले सिस्टम स्टार्ट हबो सेतबेलकु वेस्टर्न चालुक्यस वेर बिगिनिंग from the southern segment western chalukyas आसुतले western chalukyas को डिफीट करके राष्ट्रकूटस आसिले राष्ट्रकूटस को डिफीट करके पुणी western chalukyas आसीबे एटा साउथ रे देन सेपटे चलतेबो पाला किंगडम हला
तापर नॉर्थ रे प्रतिहारस एंड दी राजपूत से माने डेवलप होते एमानकर जेतबेले फ्यूड आरंभ हबो सेतबेलकु समवेयर अराउंड 7th 8th सेंचुरी एडी सेतबेले तांकर फ्यूड ता धीरे धीरे डिक्लाइन करबा स्टार्ट करबो सेतबेलकु तमे बहुत सारा डायनेस्टीज देखिबो अब सेतबेलकु जो स्प्लिट अप हबो से स्प्लिट अप भितरे तमरो होयसळ ऑफ दासमुद्र यादवस ऑफ देवगिरी आ काकटियास ऑफ वारंगल एमाने समस्त डेवलप हवा स्टार्ट करथिबे ओडिसा डायनेस्टी रे मु काकटियास ऑफ वारंगल एंड अलाउद्दीन खिलजी जेतळे आसीबे यादवस ऑफ देवगिरी एमानको विषय डिस्कस करछि एटी कोन हे जिवो आंसर क्लियर के को बही लिखि चंती विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स मिलिंदा पानो एटा तो सबुठ इजी सेगमेंट होची मिलिंदा पानो हला गोटे मिलिंदा पानो सबुठ इजी आ गोटे देवी चंद्रगुप्त इज इजी राइट इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस ताले ठीक हे जिवो सब हमीर महाकाव्य आ इति वाक्य मृत ए क्वेश्चन सेमती भी मिल जिवो डोंट वरी यस कोन आंसर आगे सब आंसर दे छ तो ठीक अछि गुड इट इज वेरी गुड आई एम आल्सो focusing on solving the questions so it is अच्छा 2 and 4 ठीक देविका and सुनीता have given the answer 2 and 4 तो दी 2 and 4 ही ठीक अछि बोली कहउचंती आउ कार कोन आंसर अछि देवी चंद्रगुप्तम किए लिखिथिले बिलाना डेफिनेटली बिलाना लिखिनथिले किए लिखिथिले विशाख दत्त लिखिथिले देवी चंद्रगुप्तम वाज रिटन बाय विशाख दत्त हैड रिटन देवी चंद्रगुप्तम ता माने कोन ए पेरटा करेक्ट हमीरा महाकाव्य नायचंद्र सूरी हैड रिटन दी हमीरा महाकाव्य यस ये बेसिकली गोटे जैन स्कॉलर थिले आ सेति पई ये ए संस्कृत रो एपिक पोएम टाकू लिखिथिले बेसिकली तमरा हमीरटा चाहमाना किंग्स चाहमाना मींस चौहान्स ऑफ राजस्थान चौहान्स ऑफ अजमेर जोडा को कहा जाय सेमन को चाहमानस बोली कहा जाउतला ताका ऊपर बेस्ड देन मिलिंदा पानो को कहा संगे लिखिसंती मिलिंदा पानो इज रिटन विथ नागार्जुना सागर आंध्रा रे अछि तेलंगाना रे अछि आंध्रा नागार्जुना सागर एंड नागार्जुना वाज ए प्री माने आइंस्टाइन ऑफ माने इंडिया बोली कहा जाय आइंस्टाइन ऑफ इंडिया एथि पई कहा जाय बिकॉज़ हिज कांसेप्ट ऑफ शून्यवाद रो कांसेप्ट तांकर अछि एंड दैट इज व्हाई नागार्जुना को आइंस्टाइन ऑफ इंडिया कहा जाय बट मिलिंदा पानो किए लिखिथिले मिलिंदा पानो वाज रिटन बाय नागसेना ए बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना से जाइथिले मिलिंदा पाखको मिलिंदा बहुत सारा क्वेश्चंस पचारले पानो माने क्वेश्चंस द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा दैट इज कॉल्ड एज मिलिंदा पानो एटा भी जदी भूल एटा जेतु दिया है तो यू हैव टू लुक आफ्टर दिस आल्सो नीति वाक्यमृत वाज रिटन बाय सोमदेव सूरी एटा ठीक 2 and 4 is correct only 2 options are correct clear good Devika, your preparation is basically it is good for the you have known the UPSC questions and answers with detailed analysis, then it is. Souls are not only the property of animal and plant life, but also of rocks, running water, and many other natural objects. Not looked on as living by other religions. ता माने soul रो concept भी कहा जाउची आ soul टा non living things रे अच्छी बोली भी कहा जाउची क्वेश्चन टा बहुत ही तमने कोन या भितरु को सेक्ट ए थ्योरी ऊपर बिलीव करूतले भाबीबा को भी पड़िबनी क्वेश्चन रे आंसर टिक मार दबो you don't even have to think कोन आंसर हबो सोल रो कांसेप्ट ऊपर कथा होतले आ सोल
ता सबु नॉन लिविंग थिंग्स रे भी अछि नॉन लिविंग थिंग्स रे भी अछि एटा कहार थ्योरी थिला गुड one of the answer is 7b okay next b आउ कहार कोन Buddhism did not talk about soul correct Buddhism did not talk about soul ro existence upre Buddhism kichi kotha koi hi athile Jainism definitely the answer is Jainism because seithi pai Jainas practiced strict penance बहुत hard penance करूथले जो मास्क पिंधिबा मुहरे काले बैक्टीरिया पसि जिबे के मरि जिबे तो खाली पादरे बुलिबा काले पाद तळे कि आसी कि मरि जिवो तो सेति पई से माने ए जिंस प्रैक्टिस करूथले आ दैट बी डेफिनेटली आको कांसेप्ट से यही थिला देन शाइविज्म रे सोल रो कांसेप्ट अछि आफ्टर लाइफ रो कांसेप्ट नाही किंतु आमे लिविंग बीइंग्स को कंसीडर करूचे नॉन लिविंग बीइंग्स को कंसीडर करूचे शाइविज्म एंड वैष्णविज्म रे लिविंग बीइंग्स हैव सोल एटा समस्तंगर बिलीफ अछि नॉन लिविंग बीइंग्स रे सोल अछि बोली हमर डिस्कशन हुए नाही इजी क्वेश्चन थिला would have answer UPSC रे भाबो जदी क्वेश्चन अछि एंड एबे आफ्टर डिस्कशन डेफिनेटली yes we are discussing Satyajit we are discussing the UPSC PYQs हला तो जदी UPSC PYQs रे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करि पारुचे तो डेफिनेटली दी क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट इफ यू आर prepared or if you can find out the answer definitely तुमको easy लागिबो correct the history difficult नुहे just you have to read it in a particular sequence which among the following rulers of Vijayanagar empire constructed a large dam across Tungabhadra river and canal cum aqueduct canal and aqueduct canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city capital city पर्यंत किए बिल्ड करिथिले विजयनगर एम्पायर रे भी बहुत प्रकार तीनटा डायनेस्टी अछंती विजयनगर एम्पायर रे बेसिकली इफ यू माने संगम डायनेस्टी Kaluba dynasty and then Tuluva dynasty. So Vijayanagar empire रे भी dynasties change होबो rulers माने change हेबे but some of the important rulers भी एमठी अछंती right मल्लिकार्जुन राय is an important ruler जहा संगरे गजपति एम्पायर रो war हेतिबो त माने गजपति एम्पायर जतबेले मार्च करबा स्टार्ट करबो आ विजयनगर एम्पायर आडू गति करबो सेतबेलकू मल्लिकार्जुन राय कर इनकैपेबिलिटी त माने मल्लिकार्जुन राय सेतबेलकू व्यस्त थिबे इनकैपेबिलिटी को फोकस करके सेठी डिस्कशन आरंभ now what is the question asking question कहूची जे विजयनगर एम्पायर रे किए गोटे लार्ज डैम बिल्ड करथिले तुंगभद्रा रिवर इट वाज देवराय 1 was the early founders of the Vijayanagar empire early rulers empire तांगर सबुटु इंपोर्टेंट रूलर भी लास्ट आडको कृष्ण देवराय भी हेबे राइट गुड नेक्स्ट consider the following pairs Vesnagar Bhaja and Sitana Wasal. Sitana Wasal and Bhaja were in news. Vesnagar was not in news. But still question ताको ऊपर आसीथिला आ भितरु कोटा कोटा ठीक परफेक्टली मैच करा हिची फाइंड आउट द आंसर यस तमे आंसर फाइंड आउट करो ता भितरे आई विल लाइक टू ड्रिंक सम only two okay which one are you eliminating 2 and 3 समस्त आंसर दो ठीक अछि you are eliminating basically Besnagar is not a Shivite cave shrine कहउछ Besnagar is in MP हला Besnagar is in MP एटा बेसिकली कोन पय जणा जाय एटा समस्त पय जणा जाय श्राइन्स भी अछि जैन श्राइन्स भी अछि वैष्णविज्म श्राइन्स भी अछि तमाने वैष्णविज्म रो कांसेप्ट भी अछि एटा स्पेसिफिकली Shivite cave shrine नुहे हला yes this statement is particularly wrongly matched then जदि हम देखिबा भाजा एंड सीतानवसल भाजा गोटे बुद्धिस्ट केव श्राइन थिला करेक्ट basically भाजा is located in Pune हला
एटा पुणे रे अछि आ एठी पाखा पाखी 22 टा ना 23 टा सम बाय 22 to 24 हला एग्जैक्टली माने एग्जैक्टली तो आई कैन नॉट से दैट 22 to 24 बुद्धिस्ट केव श्राइन्स अछि तो सेटा you will find out there. Then जब तुम कहबो सीताना वसल was a Jain cave shrine. एटा तमिलनाडु रे located. This is located in Tamil Nadu. Correct? तो कौन है जो आंसर 2 clear? Okay. We are moving into modern India of 2025. तमे लास्ट ईयर modern India रो कौन क्वेश्चन आस्था ता भीतर को मूव करबा. Modern India माने समस्तଙ୍କର इंटरेस्टिंग सेक्शन एंशिएंट टा सबठु बोरिंग सेक्शन. ठीक. So, देखो, consider the following statements about Raja Ram Mohan Roy. He possessed great love and respect for the traditional philosophical system. Traditional philosophical systems of the East ro traditional and philosophical systems upre bahut bhal paya thila takra. He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality for all men and women. Which of the following statements are correct? Yes. को स्टेटमेंट ठीक अछि बोथ करेक्ट तामाने कोन राजा राममोहन राय वेस्ट को भल पाउ नथले राजा राममोहन राय वाज a propounder of the philosophical systems of the east एटा खाली राजा राममोहन राय सब एंटायर वर्ल्ड रे ईस्टर्न नॉलेज ईस्टर्न सेगमेंट ऑफ फिलोसॉफिकल सिस्टम को बहुत अधिक आख्या में सेति भाई फर्स्ट स्टेटमेंट ता ठीक है सेकंड हिज डिजायर he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach this statement is also correct and सेति भाई सी ill practices माने जोडा के तमरा अंधविश्वास ब्लाइंड बिलीव्स से दिन सब इराडिकेट करिया पई मूवमेंट स्टार्ट कले बोथ 1 and 2 आर करेक्ट this question was pretty easy. Consider the following subjects with regard to non-cooperation program. Non-cooperation program को नेगी किछिटा subject करो. Someone of you were asking कि sir आमे basically history रे टेस्ट सीरीज दोचे बहुत सारा क्वेश्चन हो हिस्ट्री रे टेस्ट सीरीज रे सबटू डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थाए एंड सेति पई सेडा को हुए ना एठी जब तमे क्वेश्चन देखिबो जति की क्वेश्चन एबेठु देखिलणी देयर आर सम इंस्टेंसेस जोठी न्यूज को फोकस करके जतल बाय चांस गोटे पर्टिकुलर स्टेटमेंट पचारे कि गोटे प्लेस पचारे सेटा जणा न थाए कि सुनि न था जदि तमे न्यूज सुनि जदि तमे न्यूज फॉलो करछो ताहले तमे से जगह भी सुनि तो ता विषय आइडेंटिफिकेशन हे पारे बहुत रेयर चांसेस अछि हिस्ट्री रो जे क्वेश्चन तम द्वारा हबो नाही मैक्सिमम क्वेश्चंस तम द्वारा हे जिवो तो अजथा सेथरे डर ही किछ लाभ नाही राइट इन टेस्ट सीरीज बेसिकली तुमको प्रैक्टिस करया पे कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिया जाए बट जति भी क्वेश्चन हमें यूपीएससी रो पीवाईक्यू कले ओपीएससी पीवाईक्यू कला वाले भी मु शो कर देबी जति भी क्वेश्चन आसी तार आंसर ओडा को इजी ठीक कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विथ रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम बॉयकॉट नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम केबे 1920 नॉन कोऑपरेशन 1920 बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ तामाने लॉ कोर्ट्स स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जोटा कि observance of strict non-violence method, retention of titles and honors without using them in public, retention of titles माने titles रखिले किंतु ताकू public रे use कले नाही establishment of panchayats for settling disputes पंचायत रो establishment हला in non cooperation movement रे dispute settle करिबा पई which of the following statements are correct right go yes 1 2 and 4 okay okay
the benefits रे कोन लिखा अछि benefits एटा retention हबो नाही Devika is basically pointing out the correct segment जे retention हबोनी काहे कि ना titles and honors को रखिबा किंतु publicly यूज करबानी ए स्टेटमेंट ता ही भूल अछि जदि जने titles and honors को रखिछि निज पाखरे सेटा को यूज करबानी काहे कि आ जते बेले डिस्कार्ड करा जाय ता माने गवर्नमेंट अगेंस्ट एक्शन होबा पे डिस्कार्ड करा जाय तो टाइटल्स एंड ऑनर्स को से माने डिस्कार्ड ही कर दियन जे हां नाही ठीक अछि हमको टाइटल्स एंड ऑनर्स दरकार ही नाही तो टाइटल्स एंड ऑनर्स को डिस्कार्ड करा जाय सेते बेले ही ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଟାକୁ ୟୁଜ କରିବାର ନଥାଏ ତ ଥର୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ତ ସେମିତି ହିଁ ଏଲିମିନେଟ୍ ବଟ୍ ଏଇଠି ଯେହେତୁ 1 2 3 and 4 ଦେଇନି ତ ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट को भी मोटिव मिलला यस करेक्ट जेन्युइन स्टेटमेंट ऑब्जर्वेंस ऑफ नॉन वायलेंस महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च हेतला सेति पई एटा भी जेन्युइन स्टेटमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट हला बोली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर देले फोर्थ टा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स एटा इंटरेस्टिंग क्वालिटी बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माने कोन पंचायत रो एस्टैब्लिशमेंट सेतोले हेई नथिबो बोली समस्त एक्सपेक्ट करंती बट दैट इज नॉट ट्रू व्हाई बिकॉज़ सम ऑफ दी फॉरेन ऑफिशियल्स गॉट रिपन को टाइम रे ही सेतोले मु तुमको एलआर रिफॉर्म्स कहले लिटन एंड रिपन तो रिपन टाइम रे ही से टिके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करबाक चेष्टा करथले महात्मा गांधी भी से भलिया कोन चेष्टा करथले लोकलाइज्ड गवर्नमेंट तो लोकलाइज्ड गवर्नमेंट पाई भी महात्मा गांधी चेष्टा करथले आ महात्मा गांधी चाहथले ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट हो तो सेति पे ए स्टेटमेंट अभी ठीक अछि ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अरे क्लियर ई हबो ई काहे के हबो हबोनी 1 and 4 चोरी चोरा हेइता चौरी चौरा हेइथिला ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस ता माने कोन चौरी चौरा जतबेले हेइथिला सेतेबेले एई एनसीएम टा बंद कर दिया गला ता माने एनसीएम वाज क्लोज्ड आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट तो जदि आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट एनसीएम वाज क्लोज्ड एनसीएम टा को लाइन रे इंट्रोड्यूस करा हेतिला नॉन वायलेंस रो लाइन रे ना नाही अहिंसा रे इंट्रोड्यूस करा हेतिला सेटा ही तो से पचारुची नॉन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भितरे किछि अहिंग माने वायलेंट हला आ महात्मा गांधी कॉल आउट कलेनी सेमति किछि तला जेमति क्विट इंडिया मूवमेंट रे कोन जेतोले वायलेंट हला तापर भी महात्मा गांधी कॉल आउट कले नाही माने महात्मा गांधी कहले नाही नाही मूवमेंट जेम चल सेम चलिबो मासेस पर्यंत मूवमेंट पहुंची जायतिला एनसीएम रे किन सेम थलानी जो मूवमेंट रे एठी वायलेंस हला सेही मूवमेंट रे ए मूवमेंट टाकू बंद कर दिया गला क्लियर बुझि पारलो सोमेत Consider the following statements in respect of the non-cooperation movement. Again, the Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. Okay, it was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes. Maniba nahi British. Okay, then for the next stage only, if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. This is a particular in-depth question. A question daku, yes, this question is a difficult question. This question is a difficult question, right? तो सही हिसाब रे ए क्वेश्चन को जतबे एनालिसिस करबो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन कोन पचारुची आ क्वेश्चन कोन कोन स्टेटमेंट्स कहूची करेक्ट तो को क्वेश्चन कोन कहूची क्वेश्चन कहूची जे कांग्रेस स्वराज रो डिमांड करथुले ना नहीं स्वराज रो ही तो डिमांड करथुले पूर्ण स्वराज डिमांड तो आसीनी पर्यंत 1920 रे पूर्ण स्वराज रो डिक्लेरेशन तो आसीनी गुड तो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1929 स्वराज तो पूर्ण स्वराज माने एबे स्वराज रो डिमांड करछन माने कोन बेसिकली तमरो होम रूल लीग और डोमिनियन स्टेटस ए डोमिनियन स्टेटस इते डिक्लेयर करछंती यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट second it wants to be implemented in all stages it was to be implemented in stages with civil disobedience and non payment of taxes a statement ठीक अछि then for the next stage only if Swaraj did not come within 1 year ता माने जदि डोमिनियन स्टेटस गोटे वर्ष रे न मिलिबो ताले हमें एई दिनसटाकू इंट्रोड्यूस करबा आरंभ करबा करेक्ट statement is also correct बुझियला Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhiji at the time of sedition has become my religion. Good. Okay. चलो आगू बढ़ो
को मूवमेंट टाइम रे सेडिशन टा मोर रिलीजन बोली कहले तमने कोन डेफिनेटली जतले कहउछन जे सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन तमने ऑलरेडी से बहुत प्रकार रो सेडिशन चार्जेस नहीं सारथिबे ऑलरेडी बहुत प्रकार रो मूवमेंट सरीथिबो तमने नियरली टिके मूवमेंट रो मिड स्टेज रे किबा लास्ट आडू स्टेज रे ए पर्टिकुलर डिक्लेरेशन लास्ट आडू स्टेज रे क्विट इंडिया मूवमेंट अछि क्विट इंडिया मूवमेंट एठी अछि बट 1942 रे तांकर अलगा स्लोगन थिला कोन डू और डाई रो स्लोगन थिला 1942 रे डू और डाई रो स्लोगन थिला आ एई स्लोगन टा केतेबेले थिला 1942 पूर्वरु एई स्लोगन टा थिला 1942 पूर्वरु कोन हेतला सॉल्ट लॉ एट दांडी करेक्ट एटा चंपारण सत्याग्रह सेता तांकर इनिशियल एक्सपेरिमेंट थिला त सेतेबेले को से एई प्रकार रो स्टेटमेंट चंपारण सत्याग्रह सॉरी इनिशियल experiments तो चंकारण सत्याग्रह से केमति किसी स्टेटमेंट देते थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी इरविन पैक्ट जोगु हैला आ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे भी एमिति स्टेटमेंट दबार किछि माने नाही ए स्टेटमेंट दबार मानेटा केतेबेले अछि जेतेबेले से गवर्नमेंट लॉ ब्रेक करछ तो दीटा जगह आइदर क्विट इंडिया मूवमेंट नहले सॉल्ट लॉ एट डांडी जेतेबेले सिविल डिसोबीडियंस चलबो राइट डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आगु भी करिथिबो कि नहीं जस्ट एक्सप्लेनिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गोटे सीरीज रे हमें देखि देखि चलबा आ टिके रिवीजन करबा जे यूपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे को पैटर्न रो क्वेश्चन आस्तला सो दैट आई कैन टेल यू कि यूपीएससी हो कि ओपीएससी हो क्वेश्चन जोडा को प्रायतः इजी एंड मॉडरेट लेवल रे थाए डिफिकल्ट क्वेश्चन आसे नाही एते शीघ्र गोटे कि दीटा हार्डली डिफिकल्ट क्वेश्चन पाइबो विल नॉट गेट मेनी ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन देन हिस्ट्री रो वेटेज ता भी अधिकार होची करेक्ट who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of Chauri Chaura incident. Chauri Chaura incident रो aftermath रे तांकु legal protection जोड़ा दिया गला तेरा किए देइथिले क्लियर ओके चोरी चोरा इंसिडेंट बेसिकली केबे हेतला 1922 चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 ए जो सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निजामी लिखा है एमाने बेसिकली एई मानक पई तमरो राउलेट एक्ट पास हेतिला हला राउलेट एक्ट रे एई मानक धरिबा पई पास हेतिला जलियानवाला बाग मासाक्रे जोडा हबो ए सैफुद्दीन किचलू आ ख्वाजा हसन निजामी को खोजिया पई पुलिस जाइथिबे राउलेट एक्ट पास हेतिबो पुलिस जाइथिबे एमान धरि पार नथिबे ता अगेंस्ट केस चलथिबो तो एटा नुहे कोनसी जिंस रे मोहम्मद अली जिन्ना 1913 रे आईएनसी जॉइन करंती एंड मोहम्मद अली जिन्ना को रिलेट करिकि ए पर्टिकुलर चोरी चोरा इंसिडेंट हेइतो सेटा भी नो देन चित्तरंजन दास वाज एन इंपोर्टेंट पर्सनालिटी बट लॉयर हिसाब रे जो मैंने डिफेंड कले दे वर मदन मोहन मालविया एंड कृष्णकांत क्लियर बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन थिला यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द आंसर Next, subsequently to which one of the following events Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program. To which one of the following events? या भितरे को इवेंट को नहीं की गांधी जी सबुठु अधिका माने डेवलप कले दी हरिजन मूवमेंट डायरेक्टली कहि दोचे हरिजन मूवमेंट ता डेवलप कला को इवेंट रे व्हिच इवेंट पूरा पैक्ट 1932 Gandhi Area Pact 1931 arrest of Congress leaderships at the time of Quit India movement 1942 आज लास्ट को टाइम गासी गला ना तो एथरे तो हरिजन मूवमेंट हवार किछि चांस नाही सेतळकु तो समस्त ऑलरेडी इंक्लूड हे गेलेनी प्रोमलगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टाइम रे यस वाह ऑल नो द आंसर समस्त तो धड़ाधड़ पुना पैक्ट मार देल नो द आंसर इज इजी व्हाई बिकॉज़ पुना पैक्ट पूर्वरु कम्युनल अवार्ड पुना पैक्ट पूर्वरु कम्युनल अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड आ ए कम्युनल अवार्ड जतबे डिक्लेयर करा जिवो जो सेपरेट इलेक्टोरेट रो एक्सटेंशंस मिल जिवो सेतबेल को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस परे भी बी आर अंबेडकर को सेही पर्टिकुलर दिनसटा हेल्पफुल रहबो बी आर अंबेडकर जहा डिमांड करतबे से दिनसर डिमांड ता रहबो जेतबेले एही दिनसर डिमांड रहबो गांधी जी फास्टिंग को पळेबे फास्टिंग ता डिक्लेयर कराबो और फास्टिंग ता ब्रेक कराबो विद द पुना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अंबेडकर करेक्ट गांधी जी एंड बी आर अंबेडकर भितरे एही दिनसटा जेतबेले डिक्लेयर हबो सेही परे माने तमरो बेसिकली गांधी जी कहबे जे नाही एबे मु अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स पई भी बस हला तो अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स पई भी मु
किछिटा काम करबी आ हॉरिजन मूवमेंट स्टार्ट करबी स्टार्टिंग रे से जिनसटा हमें डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर अरे इजी लागुछ ना नाही क्वेश्चंस who among the following was the founder of self respect movement you must feel that the questions are easy जति की प्रिपरेशन तो हमें करिचे जति की तो हम पाठ पढिचे I have given all of the सब पढ़ा है ना नहीं सब पढ़ा है सब डिस्कशन करा है नाउ यू मस्ट फील कि नहीं नहीं ठीक अछि वी कैन गो फॉर द क्वेश्चंस तो सेतरे कोन हबो बेसिकली इफ यू आर डूइंग 10 to 15 क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी सेगमेंट त माने हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटी की ज्योग्राफी जहा भितरु 12टा 15टा क्वेश्चन भी जदी करूछ चारिटा सेगमेंट रु ही 60टा क्वेश्चन तमे करि सालणे आ जदी 60टा क्वेश्चन करि सालणे प्रीलिम्स रे यू आर पास माने यू आर बेसिकली पासिंग द प्रीलिम्स करेक्ट तो सेतरे 60टा क्वेश्चन 100 मार्क जदी करंट अफेयर्स कलो आहुरी बेटर एनवायरनमेंट इकोलॉजी साइंस एंड टेक ता भितर कलो आहुरी बेटर तामने हाराहारी 100 टू 140 स्कोर टा इजी जदी तमे सब सब्जेक्ट रु किछि किछिटा दिन सब भी जानिथिबो एंड यू हैव आइडेंटिफाइड द आंसर राइट वाह पिला माने तो आंसर भी टाइप कर ठीक who among the following was founder of the self respect movement टा बेसिकली किए स्टार्ट करथिले दिनकर राव दिनकर राव जवलकर he was also an important personality but self respect movement सहित आंकर लेन देन नथला B.R. Ambedkar was also movement start करथिले upliftment for the depressed classes self respect movement जोटा स्पेसिफिक ना रे आरंभ होबो तेरा होजी पेरियार ईवी रामास्वामी पेरियार ईवी रामास्वामी अय्यर was the beginner of self respect movement 2024 raw modern India questions let's do correct everybody fast track kariba right we have already discussed 1 hour and plus how do you fast track color we will also get into the science and tech questions you see with reference to revenue collection by Cornwallis consider the following statements revenue collection by Cornwallis separate permanent settlement act 1793 then revenue collection under the Riotwari settlement of revenue collection the peasants were exempted from revenue payments in case of bad harvest or natural calamities जदि natural calamities हला ताहले एठी पेमेंट माने टैक्स देबे नाही under the permanent settlement in Bengal if zamindar failed to pay his revenues the state on or before the fixed date he would be removed from his zamindari को दिन से implement करा हेतला yes only good you only definitely Riotwari settlement केबे आसिला when did Riotwari settlement come in yes 1800 Thomas Munro was the designer of Riotwari settlement कोठी Madras and Bombay presidencies रे लागिला payment in case of bad harvest or natural calamities एटा basically famine code थला after the famines of 1866 76 97 famine परे एटी famine commission Lyell commission Strachey commission establish हेसाला परे तांकर गोटे famine code थला जदी कोनसी टाइम रे 25% रु तळुकु हार्वेस्ट हुए in case of any kind of natural calamities ताहले एई पर्टिकुलर पीजेंट्स मानको को टैक्स देबा को पड़िबो नाही आ एटा ही गांधी जिंकर पिचिंग थला कोठी when he was going into the खेड़ा सत्याग्रह रे एई दिन the first statement ता Cornwallis सहित लिंक ही नाही second statement definitely permanent settlement in Bengal zamindar failed to pay his revenues एटा को कहा जातला सनसेट लॉ आ सेति पे ही लैंड एलिएनेशन रो प्रोग्राम स्टार्ट हुए ए दिन हम बारंबार डिस्कस करिचे टू ओनली इज करेक्ट ठीक तमारे देखो if you are discussing this question just a second देखे दोस्तों 2024 रे modern India you will find only one question तमाने बाकी सब ancient and medieval रो आस्था 2023 रे questions let's discuss by which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India Governor General of Bengal Governor General of India केते deadly easy question deadly easy ना UPSC is asking these kinds of easy questions तमे डरुछ काहाको
आराम से you can go for the UPSC also. तो पिला मत कहबे सर यूपीएससी तो इजी डेफिनेटली कहीं ना दरकार पड़े ओडिशा हिस्ट्री को स्किप करी इंडियन हिस्ट्री हम पिला दिन पढ़ी आसु सेटा को लगे देके आंसर कर दे परिबो है कि रेगुलेटिंग एक्ट एट रेगुलेटिंग एक्ट रो किछि ईयर देइनी जदि कौन सी रेगुलेटिंग एक्ट रो ईयर देइ नाही सेरा 1773 विषय पचार फिट्स इंडिया एक्ट 1784 एथरे बीओसी एंड सीओडी कोड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रो स्प्लिटिंग हेतला माने ताकर पावर्स रो फंक्शंस रो स्प्लिटिंग हेतला चार्टर एक्ट ऑफ 1793 परमानेंट सेटलमेंट आसीथिला करेक्ट आई परमानेंट 1773 रे कोन हेतला गवर्नर जनरल was made as governor general of Bengal 1773 रे गवर्नर जनरल was made as governor general of Bengal then चार्टर एक्ट ऑफ 1793 परमानेंट सेटलमेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जेतेबेले कंपनी रो कमर्शियल फंक्शंस को बंद कर दिया जीवो सेतेबेल को कोन करा हबो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी ही तांको अंडर को नै आसी जीवो तांकर लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी were snatched away and then they were added into the powers of governor general of India तो से हिसाब रे कोन हे जीवो blind question blind statement 1833 रे complete monopoly or complete trade monopoly of the company was restricted तो एथिरे किछि आ भाबिबार नथिला then governor general of India viceroy of India हबो 1858 act correct with reference to Indian history Alexander Ree A.H. Longhurst Robert Sewell James Burgess and Walter Elliot were associated with Indian history विषय रे पचारुची लिंक करकी एमाने समस्ते को दिनस पई रिलेटेड थिले ऑथर्स मानको भितरे भी मु बहुत सारा क्वेश्चन करिछि ऑथर्स मानको भितरे जदल मु बहुत सारा क्वेश्चन कहिछि सेतल मु कहिछि बारंबार विंसेंट आर्थर स्मिथ एन इंपोर्टेंट हिस्टोरियन ऑथर राइट एमाने समस्ते को दिनस को लिंक करकी थिले को दिनस को लिंक करकी थिले एमाने बेसिकली कोन करूथिले एएसआई रो मेंबर्स थिले तामाने इनिशियली जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस होतला they were associated with this archaeological excavation बाकी सब दिनस पई एटा भूल हेजिबो फैक्चुअल स्टेटमेंट ना पचारि थिला यू हैव टू रिमेंबर एग्जाम हॉल रे डेफिनेटली कहतांती ए क्वेश्चन को स्किप इफ यू डू नॉट नो द आर्कियोलॉजिकल पर्सन्स एना ए दिनसडा केवल रेयरली माने रेयरस्ट चांसेस रे तमे ए दिनसडा पढिथिबो तुमको पढा हेथिबो राइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 7th August is declared as a National Handloom Day. Correct? Art and culture question. 7th August is declared as National Handloom Day. Statement 2. It was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. 7th August 1905 रे 8 दिन सेरा लॉन्च हेतिला बोली कुहा जाउ. What is your answer? पंचानन मझरे कोड गायब हेइतलो तमे 1833 आउ ए आंसर टा ही करेक्ट हाँ सो तुम्हें आई हैव सीन योर आंसर तुम थरे लिखले भी मु देखि दो किछिटा बेले बेले स्किप के एमती डायरेक्टली स्किप excitement and the enthusiasm that you all have is good but keep it up till the examination fine se enthusiasm ta rahile better correct oh देखिए क्वेश्चन कौन कहूची 7th August is declared as the National Handloom Day true ना false true statement 1 ठीक अछि ता माने नेशनल हैंडलूम डे काहे की डिक्लेयर करा हेतु डेफिनेटली स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो थरे की हैंडलूम को प्रमोशन दिया गला आ सेति पई एई हैंडलूम प्रमोशन पई तमरो इठी कोन बिल्ड कर दिया गला एठी मधुसूदन दास कटक रे भी बिल्ड कले ना नहीं मधुसूदन दास कटक उत्कल टैनरी बिल्ड कले तो ए 7th August 1905 रे ही ए दिन सरा डिक्लेयर हेतिला ऑप्शन ए इज करेक्ट right now we are getting into the medieval India section sir sala pore we will get into the science and tech and then economy and other the irrigation device called as araghato irrigation device eta kon karuthila what was that particularly
What was Araghatta doing? Araghatta basic functionality कौन थिला? If you may ताले जदि if you can give कि Araghatta description जदि के कहि परिबो ताले it is also good, otherwise else it is also fine. तमे जदि basic functionality भी जानछो आ सेति कहलो भी it is okay, किछ असुविधा नै. It is not compulsory or not mandatory जे तमे सब आंसर जानिथिबो कि सब आंसर description भी जानिथिबो. Correct? Araghatta कौन? Large wheel with earthen pots. Very good. Large wheel with Araghatta एमिति थिला हला ता भितरे एठी earthen pots लागथियो. एटा बेसिकली वाटर ट्रांसफर करिया पे हितला. व्हील चक्र बुलुथबो, ए चक्र बुलला परे सेला गोटे ये को लागिथिबो, एमान आनी पानी एथरे पकोथबे, ए पानीटा याड को जाउथबो, तापरे तांगर फील्ड्स को पानीटा सप्लाई होथबो. ए जो फील्ड्स को पानी सप्लाई हुए सेटा को कहा जाय आराघाट. ता बहुत सारा गेम्स रे तमे जिंस देखतलो, दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग ए जो Assassin's Creed हो कि तमे जे कोनोसी बड़ बड़ गेम्स जदि के खेलिछो ताले डेफिनेटली in Chinese movies also you have seen this particular concept, correct? Next, who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijaya? Kingdom of Srivijaya kouti thila? The powerful maritime state which ruled the Malaya Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands. किए आंक भितरु अटैक करथिले? गोटिए ना तमरो नेवल आर्मी रो कांसेप्ट जतबेला आसे किंबा नेवल वॉर रो कांसेप्ट जतबेला आसे एंशिएंट टाइम रो गोटिए ही ना सेतबेले इंपोर्टेंट रहिबो आ से गोटिए लोक ही अटैक करथिले. राइट, फटाफट को सी. एनीवन एल्स? राजेंद्र सर गोटिए ही ना इंपोर्टेंट रहइबो सबु बेले नेवल एक्टिविटीज एंड मैरीटाइम वॉरफेयर रे सबु बेले गोटिए ही ना इंपोर्टेंट रहइबो आउ किछि ना इंपोर्टेंट रहइबो नाही. मॉडर्न टाइम रे पुनी शिवाजी को देखिबा, एंशिएंट रे Rajendra I was an important time. Prataparudra Deva Kakatiyas of Warangal were defeated. Amoga Varsha Rashtrakuta naval army nothila. Vishnuvardhan of the Hoysalas of Dwara Samudra emanakar trade thila, but naval warfare emane kari nahati. Emanakar kintu trade thila. Dwara Samudra ro Hoysalas manakar trade bhalo thila au sei trade jogu tankara temple architecture style bi bhalo thila. So Hoysalas sethi pai important rahibe. Clear? Next, consider the following fruits: papaya, pineapple, guava. How many of the above were introduced by the Portuguese in the 16th and 17th? এটা বেসিক্যালি আমি মডার্ন হিস্ট্রি রে ক্লাসিফাই করছে, বাট এইটি এটা কো মিডিয়েভাল হিস্ট্রি রে ক্লাসিফাই করা হয়েছে কারণ না এটা বেসিক্যালি 1498 পরপরর কথা, তো সেতমে এটা কো মিডিয়েভাল হিস্ট্রি রে ক্লাসিফাই করা হয়েছে হলা. নলে আমি এটা কো মডার্ন হিস্ট্রি রে ক্লাসিফাই করতে হতে, অ্যাডভেন্ট অফ দি ইউরোপিয়ানস চ্যাপ্টার अंडर রে ক্লাসিফাই করতে হতে. ঠিক, पपिया पाइनएप्पल गुआवा पोर्तुगीज कौन कौन नहीं के आस्ते? पोर्तुगीज बहुत सारा जिनस नहीं के आस्ते. अब पोर्तुगीज ही जतबेले यूरोपियन ट्रेड टाको इनिशिएट करिवे ततबेले यूरोप रो बहुत सारा आइटम्स पोर्तुगीज माने नहीं के आसीबे इंडिया भीतर को. इंडिया भीतर जति आइटम्स नथिला से सब आइटम्स पोर्तुगीज माने नहीं के. करेक्ट. ऑल ओके. Just a second. You keep answering, keep answering. Okay, sorry for the interference. Then next, all अच्छा okay, समस्त all कहूछ. ठीक, पपिया पाइनएप्पल गुआवा. पपिया बेसिकली तमरो ए जो ट्रॉपिकल अमेरिका सेक्शन माने तमरो मेक्सिको पाखापाखी सेक्शन रु इनिशिएट हेतला.
ସେମିତି ପପାୟା and guava ଏଟା ମେକ୍ସିକୋ ସେକ୍ସନ ରୁ ବେସିକଲି ଆସୁଥିଲା, ଏଟା ନେଟିଭ ଟୁ ଦି ମେକ୍ସିକୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପାଇନାପଲ ସାଉଥ ଆମେରିକା ରୁ ମାନେ ନେଟିଭ ଥିଲା, ପାଇନାପଲ वाज ନେଟିଭ ଟୁ ଦି ସାଉଥ ଆମେରିକାନ ନେସନ୍स ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପାଇନାପଲ ଟା ବେସିକଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। and all of the three ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମେରିକାନ ଟ୍ରେଡ ରୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଥିଲେ। all of the three are correct, right? 2024. Next, which of the following rulers of medieval India gave permission to Portuguese to build a fort at Bhatkal? Bhatkal जगह जी जान जीवो छे definitely आंसर टा करि दो। Bhatkal कहा अंडर रे थिला से ही परमिशन देथिबो, ओके नहीं? Bhatkal रे किए पोर्ट बिल्ड करेगो परमिशन देथिला? That is what the question is asking. Easy question. If you identify where Bhatkal is, ए देवराय वाह पीवाईक्यू तो घोसी पकैछ पूरा सॉल्व कर देछो। Narasimha Salwa was the founder of Salwa dynasty हला। तापरे भटकल बेसिकली कोन? भटकल बेसिकली गोटे फोर्ट। भटकल फोर्ट रे बेसिकली कोन थिला? इनिशियली सेटा गोटे पोर्ट थिला। कोठी अछि एटा? कर्नाटका रे अछि। तो कर्नाटका सेतबेल को कहा अंडर रे थिला? कर्नाटका सेतबेल को डेफिनेटली हमें को विषय कथा हो जे पोर्तुगीज आसिले 1498 परे। 1498 परे जदि हमें कहूचे मोहम्मद शाह 3 और हुमायूं और यूसुफ आदिल शाह बेसिकली तमरो माने बिगिनिंग ऑफ द बाहमानी किंगडम्स। तो बाहमानी किंगडम्स से तो लेन देन नहीं, कहीं बाहमानी किंगडम टा महाराष्ट्र रू बिलोंग करतला, माने महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ योर विद्यासतपुरा रेंज पाखा पाखी पार्ट्स अपर पार्ट्स रे लिंक करतला। कर्नाटका रो लोअर पार्ट्स रे बाहमानी किंगडम रो कोनसी लेन देन। देन नरसिम्हा सलुवा एंड कृष्णदेवराय रो रूल ही स्टार्ट हो जाए आफ्टर 1509 और सेति में पोर्तुगीज को जो परमिशन दिया हतला भटकाल रे इट वाज कृष्णदेवराय। क्लियर? देन 2023 medieval India, I am reading this as well. Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? Permanent due ru due टाकू किए सरेंडर करथिले पोर्तुगीज को? तामाने डेफिनेटली वॉर हेतिबो। कहा संगे रे पोर्तुगीज माने वॉर करथिले? प्रताप कुमार बेहरा, भटकाल इज एट कर्नाटका। गुड। रोहित पटनायक कहले अल्फोंसो को देथिले। गुड। यस medieval गुजरात दीव किए सबमिट कर देथिले? कहा संगे रे वॉर हेतिला जदी आइडेंटिफाई कला आंसर मिल जू। फिफ्टीन 35 ओके। ट्रीटी ऑफ बसेन हुमायूं। ओके ओके, एनीवन एल्स? देखिबा हला मोहम्मद बेगरा संगे बैटल हेतिला बट 1509 रे जेतले पोर्तुगीज माने ड्यूरे एक्सपेंशन करथिले मोहम्मद बेगरा से तो बैटल हेतिला बट ही वाज एबल टू सक्सेसफुली रेजिस्ट द पर्टिकुलर इन्वेजन, राइट? देन अहमद शाह जदि हमें कहबा अहमद शाह को टाइम रे बहुत सारा दिनसो माने गुजरात रे हेतिला। मोहम्मद शाह को तो तमे डायरेक्टली एलिमिनेट कर, काना मोहम्मद शाह तुमको बंगाल रे भी देखिया को मिलेबो, मोहम्मद शाह तुमको माने एठी भी देखिया को मिलेबो आउ मोहम्मद शाह बेसिकली तुमको चारियाडे देखा मिलिबो एंड एठी 1 2 3 किछि स्पेसिफाई करनी तो एटा गोटे आर्बिट्रेरी हला। बहादुर शाह वी विल आइडेंटिफाई अहमद शाह वाज बेसिकली रूलिंग इन द अर्ली और माने लेटर 15th सेंचुरी बोली कहा जाए तो अर्ली टाइम्स रे से रूल को माने बाहमानी किंग
स्टार्ट हवा पूर्व बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्तुगीज बामानिक सिस्टम और बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ ସେତେବେଳକୁ अहमद शाह तंगर ସରିଯିବ ଏଟାକୁ भी काटिदबा मोहम्मद बेगरा सक्सेसफुली रेजिस्टेड एटाको भी काटिदबा बहादुर शाह ट्रीटी ऑफ बेसेन यस दैट इज करेक्ट ट्रीटी ऑफ बेसेन रे दीउटाको सेटल करके पोर्तुगीज दे देले बहादुर राइट yes end of slide right so with this we are ending the history discussion ebe mu science and tech ro discussion start karibi I know science and tech ko समस्त एबे धीरे धीरे खसिबा आरंभ होइछे but stay intact भलो भलो science and question we will discuss about science and questions हला science and question discuss सरला परे तमर economic discussion ता start right just give me 1 minute I will be opening UPSC रो science and tech question भलो question रहिबो भाई science and tech रो question ता खाली देखो science and tech को खसी ही पळेबे whenever I have done the science and tech questions समस्त दी खसी पळाती consider the following types of vehicles fuel battery electric vehicles full battery electric vehicles hydrogen fuel cell vehicles fuel cell electric hybrid vehicles how many of the above are considered as alternative powertrain vehicles आंको भितरु किए रहले राइट फटाफट को तुमको कौन लागुची को आ भितरु किए अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स हे परिबे माने बेसिकली पावर ड्राइव व्हीकल्स राइट गुड माने आईसी इंजन रो रिप्लेसमेंट आईसी इंजन माने इंटरनल कंबशन इंजन चलतला फ्यूल बेस्ड से मन को रिप्लेसमेंट के हे परिबे full battery electric vehicles yes hydrogen fuel cell vehicles yes एटा भी माने जीरो कार्बन एमिशंस fuel cell electric hybrid vehicles yes electric hybrid vehicles definitely fuel cell जो द्वारा जोड़ा चलिबे से माने भी हे परिबे all of the three are correct then with reference to unmanned aerial vehicles UAVs consider the following statement right all types of UAVs can do vertical landing एटी बहुत दिन से all type देची but जेहेतु पिला चालाक होतले एलिमिनेट करतले ये सबुथिरे all दे देला correct then question पचार जी all types of UAVs can do vertical landing सब UAVs करि परिबे all type of UAVs can do automated hovering माने गोटे जगह ऊपर बुलिबा हला सेटा को होवरिंग कुआ जाय तो ऑटोमेटेड होवरिंग भी करि परबे ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी only as a source of power supply एठी भी only गोटे स्टेटमेंट दे now find out the answer मु तो सर्कल करि देली हला you just have to find out the answer I have indicated some of the important segment correct I have basically indicated all of the important hints. फटाफट आंसर को none okay देविका is saying none बाकी कार कोन आंसर अछि अब कार किछ नहीं साइंस एंड टेक देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो you have to identify elimination round correct elimination round identify करिया को हेले vertical landing माने कोन जदि तांकर फिक्स्ड विंग्स अछि ऑटोमेटेड वर्टिकल लैंडिंग ताकला विंग्स अछि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स माने किछि भी हिताई पारे माने जोडा ऑटोमेटेड ड्रोन ऑटोमेटेड फ्लाइंग ऑटोमेटेड फ्लाइट्स अछि सेगुडा भी हिताई पारे तो जेति कि भी यूएवीस अछि से कोते सब यूएवी वर्टिकल लैंडिंग कर दबो सब यूएवी वर्टिकल लैंडिंग केमिति कर दबो विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस एटा करि परिबो नाही
all types of UAVs can do automated hovering. Automated hovering माने कोन बेसिकली ग्राउंड ऊपर एटी स्टैग्नेट रही परिबो आमे रिमोट कंट्रोल रे एटा को एठी करि परिबा ऑटोमेटेड होवरिंग करूची त माने कोन रिमोट कंट्रोल रे आमे एठी होवरिंग करै परिबा इफ द मूवमेंट इज टू बी कंसीडर्ड ताले गोटे पर्टिकुलर अनमैन्ड एरियल व्हीकल को रिमोट कंट्रोल दरकार देयर मस्ट बी समवन हु कैन डू दी होवरिंग या भितरे एते सेंसर्स लागिनी जे से ऊपरू ग्राउंड को सेंस करिकि ता हिसाब रे होवरिंग करिवो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो false. All types of UAVs can use battery only as a source. Use battery only as a source. सेमिति हेले all माने एटा UAV काई खाली बैटरी हेतले इलेक्ट्रिक UAV करा हेता ना ए स्टेटमेंट ता भी none of these statements are correct. Clear? Next, in the context of electric vehicle batteries, consider the following elements: cobalt, graphite, lithium, nickel. तामाने definitely हमें किसीटा जिनसो identify करि परिबा केमिति hint भी दे that you will feel good. Lithium ion batteries. Lithium ion batteries देखिचो lithium ion batteries रे जदि हमें कथा कहबा ताले lithium तो थिबो ही थिबो. Now you have to identify three materials, other 2 to 3 materials. Yes. ଏବେ lithium ion battery तो everyone knows lithium तो अछि हला cell रे. Then graphite definitely graphite is also used. Graphite powder, black color powder जदि battery के पिला दिन की ताले गोटे black color powder देखिथिबो graphite is there. Nickel and cobalt टा होचे nickel टा यूज करा जाय से जो stainless steel रो पॉलिश आसे then nickel टा को प्रोटेक्शन पई भी यूज करा जाय एंटी रस्ट पई भी यूज करा जाय then cobalt टा होची बैटरी लाइफ एक्सटेंड करबा पई यूज करा कोबाल्ट टा को इनपुट दिया जाय कोबाल्ट ही सब एक्सपेंसिव मटेरियल जोटा बैटरीज और सेटा बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करे पई यूज पे ऑल ऑफ द फोर आइटम्स आर डेफिनेटली यूज्ड इन दी batteries correct. Okay. Next, consider the following: cigarette butts, okay, eyeglass lenses, car tires. How many of them contain plastic? Anka vitru kaha vitre plastic अछि. Okay, you are saying graphite anode ray. Oh, definitely anode ray. Question कौन पचारथला कि the context of electric vehicles पचारथिबा in the context of sorry the context of electric vehicles consider the following elements. Okay, how many of the above usually of the battery? Oh, sorry. Okay, it is asking only about the cathode only about cathode पचारुची तो definitely graphite एटा anode building रे cathode रे हो तो एटा भूल हे जबो नै कि ठीक ठीक perfect. Cobalt, lithium and nickel only 3 ठीक हो. Good. Only 3 ठीक हो. एटा cathodes पचारची I have skipped the cathodes. केते जन सब बैटरी बनवा को यूज सब बट एटा कैथोड पई हेले गोटे ग्राफाइट ही तमरा आंसर कटि परफेक्ट गुड. आ भितरे का भितरे प्लास्टिक अछि को सब भितरे प्लास्टिक अछि cigarette butts भितरे भी माइक्रो प्लास्टिक्स अछि यस डेफिनेटली why because it is prevented the cigarette butt जो ऊपर जो कोटिंग दिया जाए सेटा को वाटर रो प्रिवेंट करिया पई सेटा को रखा जाए तो कॉटन ऊपर गोटे पर्टिकुलर कोटिंग पेपर कोटिंग दिया जाए दैट इज आल्सो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक अछि
आई ग्लास लेंसेस डेफिनेटली एथरे माइक्रोप्लास्टिक अछि ए दिरा तो रहला कार टायर्स रबर रु तयारी हुए बट देन प्लास्टिक्स कंटेन करंती माइक्रोप्लास्टिक्स कंटेन करंती ऑल ऑफ द थ्री कंटेन दी प्लास्टिक्स करेक्ट consider the following substances ethanol nitroglycerin and urea ethanol nitroglycerin and urea but coal gasification technology can be used in production of how many of them what is coal gasification technology jodi jancho tahale coal gasification technology re anko bhitru kahaku use kari habo yes jai jagannath jai jagannath sangram coal gasification technology re kahaku use kari habo fast जते फास्ट हमें मूव करबा सेते फास्ट हमरा अदर क्लासेस भी स्टार्ट हबो ओके ठीक अछि किछ असुविधा नै इथेनॉल बेसिकली कोल ग्लासिफिकेशन रु कोन तयारी करा जाय कोल गैसिफिकेशन रु कोल को यूटिलाइज करके सिन गैस तयारी करा जाय करेक्ट ये जो सिन गैस तयारी करा जाय एटा बेसिकली इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन राइट तापरे ए गैसेस को डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स भीतर पास करके दे आर डिसाइड तो ये हाइड्रोजन टा को एमोनिया माने नाइट्रोजन बेसिकली पास थ्रू दैट पर्टिकुलर माने एमोनिया थ्रू रे जदी पास कर दबो तारे तमरो यूरिया फॉर्मेशन एंड दैट इज व्हाई 8 दिन सदा ठीक है सेकंड इथेनॉल रो प्रोडक्शन पाई भी कोल गैसिफिकेशन it basically is passed and ethanol is also produced but then nitroglycerin nitric acid and sulfuric acid raw combination रे nitric acid माने नाइट्रेशन करा जाए तो जो नाइट्रेशन करा जाए से नाइट्रेशन रे नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइन करा जाए एथिरे कोल गैसिफिकेशन रो किछि काम नथाय सेति इथेनॉल एंड यूरिया यस ओनली टू करेक्ट कोल गैसिफिकेशन रो टेक्नोलॉजी होची गैस को कन्वर्ट करबा माने कोल इज कन्वर्टेड इनटू सिंथेसिस गैस तो सेही सिंथेसिस गैस रे तमरो जहां भी जिंस तयारी करा गला दैट इज इंपोर्टेंट फ्रॉम हियर राइट माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड करके इथेनॉल एंड यूरिया रो फॉर्मेशन what is the common characteristics of the chemical substances generally known as Cl20 HMX and LLM105 which are sometimes talked about in media re talked about and it is basically related to the current affairs also science based mane question thila to sethi bhai pakai dechi what will be the answer if you can identify it basically defense programs they use हुए ହେଲା डिफेंस प्रोग्राम्स यूज हुए माने आइदर रॉकेट प्रोपल्शन हेतिबो नहले वारफेयर पई यूज करा होतबो न्यूज रे चलीथिला तो से पे क्वेश्चन आस्तला यस CL20 HMX and LLM105 military weapons explosives good explosives समस्त जान सकता है these are alternatives to hydrofluorocarbon refrigerants impossible military segment रे यूज हुए एटा कोन बेसिकली these are explosives माने कोन किछिटा हाई रेजिस्टेंट एक्सप्लोसिव्स एंड ताको भितरु LLM105 जोटा अछि सेटा गोटे माने डेटोनेशन एंटी डेटोनेशन टाइप रो यूज CL20 आ HMX जदी तमे कहबो HMX ता तमरो नाइट्रोएमाइन रु कंपाउंड रु सेटा को डेवलप करा जाए आ तापरे सेटा को गुटे बडो एक्सप्लोसिव रे कन्वर्ट करा जाए so that is why these are all explosives used in military weapons normal लोगों को पाए सेटा अवेलेबल की नहीं these are high energy fuels false these are fuels for rocket propulsion also false
दीटा ही स्टेटमेंट मैं आगु कहिथिले आइदर ऑक्टेट प्रोपोर्शन हबो नॉन एक्सप्लोसिव व्हिच आर बेसिकली एक्सप्लोसिव राइट consider the following statements it is expected that Majorana one chip will enable compute quantum computing India quantum computing mission upare bahut जोरदार एबे फोकस करिछि सेति पई quantum computing will be definitely important Majorana one chip has been introduced by Amazon Web Services AWS Amazon Web Services भी बहुत popular demand रे अछि deep learning is a subset of machine learning deep learning ता माने कोन machine learning रो बहुत intricate जतेबेले हुए ततेबेले को deep learning आडकू गति करती which of the following statement is correct right Majorana one chip किए develop करिछि who has developed that quantum computing रे Majorana one chip use होबो that is correct right quantum computer introducing habo yes this is correct Majorana one chip has been introduced and quantum computing को help करिवो Majorana chip has been introduced by Amazon Web Services this is wrong it has been introduced by Microsoft द्वारा इंट्रोड्यूस करा हैतला सेकंड स्टेटमेंट भूल अछि सेकंड स्टेटमेंट भूल अछि माने एठी एलिमिनेशन राउंड हमर चलिबो हम बेसी परिश्रम करैको चाहुने 1 and 3 करेक्ट राइट with reference to monoclonal antibodies single clonal antibodies often mentioned in news consider the following statements they are man-made proteins monoclonal single clone man-made proteins boli कहूची they stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigens blood भितरे माने human blood भितरे antigens को bind करबे they are used in treating viral infections like that of Nipah virus viral infection को treat करबा पई antibodies यूज करा जाउचंती बली कहा जाय now which of them are correct or how many of them are correct ना which of them are correct statement देछि good आउर कोडा ठीक अछि yes सब ठीक अछि कोच they are man made proteins definitely सेति पई monoclonal antibodies ता ना दिया हैतला because these are man made proteins जहां भी antibodies अछि से माने प्रायतः प्रोटीन ही होती and these proteins are derived from the amine group the amine group ru सेति पई सेटा को कोन कहै जाय amino acids को the amino acids ru derive हुए आ एटा को man made protein right they stimulate immunological function amino acids रू जो प्रोटीन बाइंडिंग हुए से प्रोटीन ही तमरो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन को स्टिमुलेट करंती एंड दिस एंटीबॉडीज बिल्ड करे को हेल्प करंती तो किछिटा एंटीबॉडीज भी थांती एंटीजेन्स भी थांती से ब्लड भीतर एंटीजन संगे बाइंड अप करंती यस दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस बेसिकली वायरल इन्फेक्शन रो डायरेक्ट ट्रीटमेंट न थाए तो सेति पई एंटीबॉडीज रे बॉडी रो इम्यूनिटी टा को बूस्ट करा जाय सो दैट बॉडी पर्सनली से इन्फेक्शन को फाइट करिवो वायरस अगेंस्ट रे एंटीबॉडीज आर नॉट माने कार्यकारी नुहे किंतु बॉडी रो इम्यूनिटी को बूस्ट करे में कार्यकारी तमन कोन एंटीबॉडीज आर बेसिकली इंसर्टेड टू इंक्रीज द immunity but then all of these statements are सेति में कुआ जाय जे तो तुमको ठंडा हबो दर वायरल ठंडा है तो तमे बस जनरली जति मेडिसिन खाया कथा दर जर में पैरासिटामोल खाओ तो सेति ही खाइबो बॉडी ही पर्सनली हील करबो तो बेसिक जदि छोटो वायरल इन्फेक्शन अछि किबा वायरल फीवर अछि तो तमे नॉर्मल मेडिसिन खाइ के भी ठीक हे परिबो सेतल को कोनस प्रकार एंटीबायोटिक्स के एंटीबॉडीज तुमको माने एंटीबायोटिक्स तुमको प्रिस्क्राइब करा जाय ना एंटीबायोटिक्स टा बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे हम पाखरे माने डोसेज अछि ट्रीटमेंट अछि वायरल पे नाही वायरल पे आइदर वैक्सीनेशन करा जाए अदरवाइज एल्स तुम बॉडी रो इम्यूनिटी करा जाए दीटा ही मेथड करेक्ट गुड consider the following statements no virus can survive in ocean water माने saline water basically saline water रे virus survive करि परबेनी no virus can infect a bacteria okay no virus can change the cellular transcriptional activity in host cells ता माने जो virus जो सेल को जानती सेति रे कोनोसी प्रकार रो चेंजेस आनी परिबे नाही बोली कहा जाउची which of these statements are correct
पुणी आउ थे कौन देछि एक्सट्रीम स्टेटमेंट सब थे नो नो लगी आइडेंटिफाई कर परिबो यस डी डी माने नन कहछ ओके ठीक अछि देखि दबा ओशन वाटर रे जो बैक्टीरिया जो वायरसेस सेमान को सायनोफेजेस कहा जाए सायनोफेजेस बेसिकली इन्फेक्ट द phytoplankton inside the oceans levels so that is why cyanophages are some kinds of virus which are there in the ocean semane ocean re pahanti so no virus can survive in ocean water this statement is wrong no virus can infect bacteria bacteria को जो माने इन्फेक्ट करंती सेमान को बैक्टीरियोफेजेस बोली कहा जाए आ से माने वायरस से सेति पे तनाटा होची वायरस इट कैन अफेक्ट एनीवन the bacteriophages are certain kinds of virus which affect the bacteria and सेति पे स्टेटमेंट no virus can change the cellular transcription एटा हमें जानिचे वायरस को निज को एक्सपैंड करिया पई किबा वायरस निज को रेप्लिकेट करिवा पई सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल थ्योरी को चेंज करे ता माने बेसिकली आरएनए रे निज को कोड करिया को चेष्टा करे सो दैट से सेल रे से निजे रिप्रोड्यूस हे चले ता माने ह्यूमन बॉडी जतरे नुवा सेल बनेबो से भितरे वायरस रो सेल वायरस रो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ता रिप्लिकेट हे चलेबो एंड दैट इज व्हाई ए जिंसटा भी भूल अछि जेहेतु सबुथरे नो थिला प्राय तो जानिबार थिला जे कोनोसी स्टेटमेंट एठी भूल माने कोन स्टेटमेंट एठी ठीक हे परबो नाही इन जनरल करेक्ट नेक्स्ट consider the following statements statement 1 studies indicate that carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions okay हमारे cement industry ru 5% cement industry ru 5% ru अधिक silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ता तमे छाडी देई परथा तो किछ असुविधा नाही एक क्वेश्चन करी कि किताब भी नाही यू विल नॉट फाइंड एनी बेनिफिट तमरा कोन इंट्रिकेट क्वेश्चन भी अछि डिटेल क्वेश्चन भी अछि आ तापरे बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी पचारुछि तो ए भलिया क्वेश्चन जदी आसीबो इफ यू नो द आंसर ठीक अछि तो तमे माने करंट अफेयर्स थिलो आ सब दिन सर स्टेटमेंट जानिछ ताले ठीक अछि हला otherwise else it is fine किछ एनीवन कैंसिल करे चाहिए हम डायरेक्टली डिस्कस कर देबी नो आइडिया गुड किछ असुविधा नहीं you do not also it is fine right चलो देखिए studies indicate that carbon dioxide emissions from cement industry account for more than eta basically global index report माने global report global emission reports रे आसीतला जे cement industry ना basically 6% to 8% of total global carbon emission by responsible तो सेति भाई first statement ता ठीक अछि right question कोन पचारिछि then silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement silica bearing clay माने silica माने होछि बाली हला sand grains the sand grains au clay is mixed with limestone संगे मिक्स करा जाए लाइमस्टोन संगे मिक्स कले ही तार पर माने जो कलर ता जो डार्केस्ट कलर ऑफ द सीमेंट अछि सेटा एथि पय अछि बिकॉज़ सेतरे क्ले एंड सिलिका सैंड्स भी ठीक अछि एंड तेना बाइंडिंग प्रॉपर्टीज पे हेल्प करे माने परे जतले सीमेंट टाको पुनी ने की बाली रे बाली रे आ पानी रे मिसा जाए सेतोल को से कोन करे माने बेसिकली तांकर ए जो बाइंडिंग टा स्टार्ट हुए हला तो ए जो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग बळको सिलिका बेरिंग क्ले टा दरकार पड़े माने माटी एंड बाली रो मिक्सचर भी दरकार पड़े ए स्टेटमेंट भी ठीक limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing clinker production time रे limestone टाको कोन करा जाय extreme temperatures को heat करा जाय त limestone रो फार्मूला कोन CaCO3 limestone रो फार्मूला कोन CaCO3 calcium carbonate
कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर्यंत हीट करा जाए आ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर्यंत हीट कर सारा पर सेटा कैल्सिनेशन प्रोसेस को जाए जेमते स्कूल रे पढ़थिले सेटा कैल्सिनेशन प्रोसेस को जाओ ए जो कैल्सिनेशन प्रोसेस रे हुए एटा कैल्शियम ऑक्साइड आउ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करे एई प्रोसेस टाको बेसिकली तमरो एठी करा जाए क्लिंकर प्रोडक्शन टाइम रे करा जाए एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो 3 नाउ वी विल लुक एट द ऑप्शन both statement 2 and statement 3 are correct and both of them explain statement 1 एई दीटा स्टेटमेंट रेस्पोंसिबल फॉर द ग्लोबल कार्बन एमिशन सेथरे तो कोठी लिखा जायनी काना ए दीटा जाका स्टेटमेंट कोनोसी प्रकार रो कार्बन एमिशंस कथा कहू नांती एठी कैल्शियम कार्बाइड रो माने कैल्शियम कार्बोनेट रो ब्रेकिंग हो एठी तार बेसिकली मैन्युफैक्चर पय रॉ मटेरियल्स कोन दरकार से कथा होची both statement 2 and statement 3 are correct but only one of them explains statement 1 okay only one of the statements 2 and statement 3 is correct eta to habani both statement 2 and 3 are correct neither statement 2 or 3 are correct eta bhi habani both statement 1 and 2 does not explain eta bhi habani definitely eta any one of them may be explaining what is that so eta hochi ei jo kiln re basically heating kara hochi extreme temperatures ku ye responsible hothbo for the carbon emission any one of the statement explain right ठीक बुझिलो एग्जाम हॉल रे करबा दरकार नाही मु कहि दउची डायरेक्टली काहे कि इट विल टेक टाइम एट तीनटा स्टेटमेंट पढिबो बुझिबो तापरे एटा ट्रेडिशनल ऑप्शन भी नुहे नुआ टाइप रो ऑप्शन दिया हेतला पढिबो बुझिबो तापरे ताको अटेम्प्ट नबो पाखा पाखी 3 to 4 मिनिट्स की 5 मिनिट्स पळे जिवो करबा दरकार नाही हला जदी टाइम बळे लास्ट बेल को माने सब क्वेश्चन कर सला परे लास्ट बेल को टाइम बळे एंड यू वांट टू टेक एन अटेम्प्ट देन गो फॉर दिस क्वेश्चन हला किछ असुविधा नाही एमिति भी डायरेक्टली कोन नाही छाडी दियो देखि if you want if you have studied if you know that particular information then go for it hela GPS aided geo augmented navigation gagan uses gagan was also in use at that point of time uses a system of ground stations to provide necessary augmentation which of the following statement is correct in respect of gagan it is designed to provide additional accuracy and integrity tamane GPS sahito gagan काम करिवो accuracy and integrity देखे it will allow more uniform and high quality air traffic management okay it will provide benefits only in aviation but not in other modes of transportation खाली aviation पई ही यूज हबो आउ कोनोसी mode of transportation पई एटा यूज हबो नाही which of the following statements are correct को दिन से या भितरे ठीक 1 and 2 definitely it lekha hai it will provide benefits only in aviation but not in other modes of transportation gagan jodi develop kara hochi gps aided माने gps सहित mix करके develop करा है तो सेटा सेति पे खाली एविएशन पे तो रहिबो नाही अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रे भी रहिबो थर्ड स्टेटमेंट टाको भूल कर दबा थर्ड स्टेटमेंट टाको भूल कर देले दीटा को समिति काटी दबा राइट सेकंड स्टेटमेंट भी देखिया पड़े इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट दिस इज अ जेन्युइन स्टेटमेंट यदि जीपीएस एडेड डेवलपमेंट किछि होउची ताले डेफिनेटली सेटा हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट पई इंट्रोड्यूस होबो डेफिनेटली स्टेटमेंट 2 ठीक अछि वन ओनली भूल अछि 1 and 2 ए क्वेश्चन टा इजी थिला जेन्युइन स्टेटमेंट्स थिला जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई correct consider the following statements regarding AI action summit held in Grand Palais Paris in February 2025 Paris रे इस क्वेश्चन मागर भी करछि बट स्टिल आउथरे कर दोछि राइट co-chaired with India the event builds on the advances made at the Bletchley Park summit held in 2023 तबरे गोटे समिट रे आ गोटे समिट रो क्वेश्चन भी दो and the Seoul summit held in 2024 ता माने केतेटा समिट तुमको इन रिलेशन मने रखिया को पड़िबो दिस इज व्हाट यूपीएससी रो स्टैंडर्ड माने यूपीएससी 2023 रु 2024 2025 ता पाई के लिंक करके क्वेश्चन पचार तो यू हैव टू बी इन कंटेक्स्ट with these right along with other countries the US and UK also signed the declaration on inclusive and sustainable AI inclusive and sustainable AI by US and UK भी साइन करछंती which of the following are correct yes Panchanan good
कौन हबो आंसर? ओनली वन फर्स्ट स्टेटमेंट टा इन जनरल तमे ठीक कर दे पारो काहे कि को चेयर्ड विथ इंडिया द इवेंट बिल्ड्स ऑन द एडवांसेस मेड एट ब्लेचली पार्क यस समिट हेल्ड कहना एआई एक्शन समिट जेहेतु ताहले ब्लेचली पार्क रे जो डिस्कशन हेइथिला फ्यूल समिट 2024 रे जो डिस्कशन हेइथिला माने कोन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई पय डेवलप करूचे एआई रो गवर्नेंस को केमिति भलो रे मेंटेन करि परबा केमिति ताकू आहुरी इंटरेस्टिंग माने कोन आहुरी सिक्योर एंड सेफ करि परबा तार डिस्कशन चलतला एटा ठीक रहइबो along with other countries the US and UK were the only countries who did not sign the inclusive and sustainable AI did not sign काहे कि UK कहला एआई गवर्नेंस टा कहा पाखरे रहिबो सेटा इंपोर्टेंट त माने ग्लोबली जब एआई कंट्रोल करूचे तारे एआई गवर्नेंस टा जदी मो पाखरे रहिबो ताहले कोन हबो आ एआई गवर्नेंस हम पाखरे रहिबोनी जदी कोन हबो सेटा को साइड करकी ये साइड साइन करानी यूएस साइन करानी इंडस्ट्रियल प्रोपागे माने पॉलिसीज रे यूएस कहला जे मोर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रे बहुत सारा दिनस डिटर करबो कि बहुत सारा हैम्पर हबो तो सेति पे मु साइन करबी नाही यूएस एंड यूके डिड नॉट साइन दिस पर्टिकुलर करेक्ट next consider the following statement statement 1 some rare earth metals are used in the manufacture of flat television screens and computer monitors okay semiconductors basically tamar कहया कथाटा होची some rare earth elements have phosphorescent properties what is phosphorescent properties कौन phosphorescent properties अच्छी बोली कहा जाउची रेयर अर्थ मेटल्स पाखरे phosphorescent properties अच्छी आराम से तुम क्वेश्चन पढ़ो जदि स्टेटमेंट 1 ठीक थिबो आ जदि स्टेटमेंट 2 ठीक थिबो ताले 1 ऑटोमेटिकली ठीक थिबो तो जदि तुम फर्स्ट स्टेटमेंट 2 को आइडेंटिफाई करि देलो ताले ठीक हे जिवो यू कैन आइडेंटिफाई स्टेटमेंट 2 ताले डेफिनेटली हे जिवो यस ए ओके वेरी गुड फॉस्फोरेसेंट होची लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी माने कोन फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट ता ऊपर जेतो इंसिडेंट हबो से लाइट टा को एब्जॉर्ब करबो तापरे सेटा को री एमिट करि दबो हला ता री एमिट करबो एंड स्लो ग्लो टाइप रो गोटे जनरेट हबो जब तमे तमर एलईडी बल्ब्स पे देखथिबो जदि तमर एलईडी बल्ब चार्जेबल भी नुहे ताहले भी जतो एलईडी बल्ब सडनली ऑफ करबो तथा भी से किछ समय पे लाइट डिस्प्ले करे किछ समय पे डायरेक्टली डार्क हे जाय माने डायरेक्टली ब्लैक हे जाय सेटा को ही फास्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज कहै आ सेत पे सेगुडा को डिस्प्लेस रे यूज करा जाय आ दैट बाय जदि सम अर्थ रेयर मेटल्स हैव फास्फोरेसेंट प्रॉपर्टी ताल डेफिनेटली एई प्रॉपर्टी जगु माने मॉनिटर्स रे यूज होचंती किबा टेलीविजन से यूज होचंती बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट both are correct and two second statement explain one yes correct consider the following space missions axiom 4 spadex gaganyaan विषय मु बदे रिसेंटली गोटे साइंस एंड टेक डिस्कशन रे करथिली तो सेति पे spadex gaganyaan आउ good sumit patnaik good devika is also good pranati light emitting property Pranati, you recently joined. If बहुत समय हेलानी तो देखी ही नथिली but your answers I have seen just now. बहुत समय हेलानी I have not seen your answers. एबे देखली all of you those who have answered the correct answers definitely go for this also. Axiom 4 FedEx Gaganyaan कौन पचारची question how many of the space missions given above encourage and support microgravity research microgravity research को केते जण आंक भितरु सपोर्ट करूछन Now, what is microgravity research is also interesting. Microgravity research को ठीक अच्छी मैंने if you don't want to get into the details of microgravity research, it is fine. तो गगनयान तो तमे जानी ही थिबो
स्पेडेक्स कहाँ से चलची? हु इज डेवलपिंग स्पेडेक्स? यस ए चलो चलो सॉरी सॉरी कह दरकार फाइन यू आर देयर you have joined, you are seeing the discussion, that is more than enough. आप पर भी तुम्हारे important sections है ना? Shubham, you are too much late. My discussion is nearly to be over. Okay. Axiom 4 is developed by Axiom Space. ହେଲା କୋଉଠି କୁ ଏଟା ଗୋଟେ private space company. Axiom Space was the company. ହେଲା ଏଟା କୋଉଠି କୁ ଯାଉଛି? ISS International Space Station କୁ. FedEx ISRO develop କରୁଛି. गगनयान ISRO develop କରୁଛି. ଏଇଠି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟିର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ କି? ଯଦି ନ କହିପାରିବ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା वी डोंट ମାନେ ଏତେ ହାର୍ଡशिप ରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। FedEx ଟା ଡକିଂ टेक्नोलॉजी यस ଆଉ ଗଗନयान ଟା बेसिकली तमरो लो अर्थ ऑर्बिट रे रहिबे ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ଚାଲିଥିବ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ରହିବେ। वेटलेसनेस माइक्रोग्राविटी माने हाँ बट ठीक अच्छी यू आर आल्सो सेइंग परफेक्ट करेक्ट तो परफेक्ट तो नुहे बट माइक्रोग्राविटी माने बेसिकली ग्रेविटी जोटी कम अच्छी है तो जोटी कम हबो ग्रेविटी तो ग्रेविटी पुल टा जेहेतु कम हबो ताहले से तमरो वेट टा डेफिनेटली सेही रेशियो रे कम चलो जेम हम कहउछे जे अर्थ रे जति की वेट अछि ह्यूमन करो मून रे गले 160 काहे के जाउची बिकॉज़ मून रो ग्रेविटेशनल कम अछि सेमिति स्पेस रे जो आईएसएस अछि ए आईएसएस स्पेस रे अछि डेफिनेटली यार ग्रेविटेशनल पुल टा कम थिबो एटा को ही कुआ जाय माइक्रोग्राविटी रो प्रॉपर्टी आ ए माइक्रोग्राविटी रे इसरो टेस्ट करिया को चाहूची जे हमें डॉकिंग केते स्पीड रे करि परिबा डॉकिंग करि परिबा ना नाही सेठी सेटल हे परिबा ना नाही तो सेही प्रकार रो दिनस गुडा को रिसर्च करा होची एंड दैट इज व्हाई एठू केते जण माइक्रोग्राविटी ऊपर काम करूचंती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्किंग ऑन माइक्रोग्राविटी दैट इज व्हाट द प्राइमरी क्वेश्चन इज हला एबे माइक्रोग्राविटी कथा बुझिले किए कौन कौन करूचंती बुझिले एंड देन माइक्रोग्राविटी गुड गुड काउंटर स्ट्राइक जदी के खेलिथिबो इन योर टाइम्स इफ यू हैव प्लेन काउंटर स्ट्राइक रे गोटे पर्टिकुलरली कोड आसुतला चीट कोड आसुतला सेतरे ग्रेविटी टा को रिड्यूस कर दिया जाए एंड देन माने फायरिंग टा माने फ्री फायर गोटे गोटे करा जाए दैट वाज एन इंटरेस्टिंग टाइम व्हेन वी वर प्लेइंग काउंटर स्ट्राइक 1.6 सेतळको से टाइम टा हमें देखिया को पातले राइट गुड चलो एडी सब तीनटा जगह हला आंसर होबो ऑल ऑफ देम थ्री आर वर्किंग ऑन द माइक्रोग्राविटी प्रॉपर्टीज चेक करिया को जाओ with reference to India's defense consider the following pairs Dornier 228 Dornier 228 कौन करिवा को आसीतला हला कोची जे मैरीटाइम पेट्रोल क्राफ्ट थिला IL-76 एटा सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ग्लोब मास्टर इज डेफिनेटली माने नोन टू एवरीवन ग्लोब मास्टर तो समस्त जानि ही थि ता इधर कोटा ठीक से पेयर करा हैची बोली क्वेश्चन पचारुची फटाफट आंसर दे दियो यस कौन बी बी कहचो के ओनली टू ओ कोटा भूल कलो टॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बोली कहा जाउची यस दिस इज yes this is correct IL-76 the Ilyushin 76 Ilyushin 276 बोली कहा जाए एटा कौन एटा गजराज बोली टाइटल पाइची एटा हेवी मशीनरी को लिफ्ट करिया पई करा जाए
heavy machinery, heavy items को lift करिया पे use, correct? It is supersonic combat aircraft नुहे, wrong. T-17 Globe Master टा होची military transport माने basically तमर army personnel को अलग-अलग जगह रे range रे कि अलग-अलग जगह transport करिया पे use करा जाए, and Globe Master is also correctly, so दीटा correctly match, गोटे भूल है, right? Okay. Consider the following. 2024 तामने if you can analyze ताले कौन analysis कर दबा 2025 रे there were 15 questions of science and tech माने current affairs को link करके science and tech को relate करके 15टा question we have done 2025 रे 15 questions करिचे हला 15टा question भला तला माने शुभम तुम कौन जोड़ा question तुमको जोड़ा ना थे सेरा भलो था ना कोन 2025 रे 15टा क्वेश्चन साइंस एंड टेक को रिलेट करके क्वेश्चन आसुची सबु थर हैला तमे जदी करंट अफेयर्स देखिबो साइंस एंड टेक देखिबो मिक्स हे कि जदी आसीबो क्वेश्चन पाखा बाकी 12टा 15टा आसुची ही आसुची कंसीडर द फॉलोइंग बैटरी स्टोरेज बायोमास जनरेटर्स फ्यूल सेल्स रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स काहा को डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज कहि परिबा हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज करेक्ट हां बस ठीक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज कहा को कहि परिबा डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज माने कोन बुझिछो त नो दैट डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज वन डी अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज कहा को जाय बेसिकली एटा गोटे पावर सोर्स भी हेतिबो आ तार स्टोरेज यूनिट ता ताकू क्लोजली रखा हेतिबो ताकू पाखरे रखा हला पावर माने बेसिकली कोन एटा डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज पावर सोर्स हेतिबो आ तार स्टोरेज यूनिट ता भी ता पाखा पाखी ही स्टोर करा हेतिबो त माने बैटरी स्टोरेज भी कोन हेतिबो पावर जनरेट करूची माने बेसिकली तमरो चार्ज स्टोर करूची देकी पावर जनरेट करूची डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्सेज यस बायोमास जनरेटर्स सेमिति बायोमास जनरेटर्स कोन करूची स्टोरेज भी करूची आ तापरे एनर्जी जनरेट करूची यस फ्यूल सेल्स एटा तो डेफिनेटली रूफटॉप सोलर वोल्टाइक यूनिट्स एटा भी सेति पई यूज हुए सन सोलर एनर्जी को रिसीव करके से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करूची ऑल ऑफ द फोर आर करेक्ट राइट perfect next consider the following plants groundnut horse gram soybean groundnut horse gram soybean का भितरु ये माने का भितरु ए मान को भितरु किए पी फैमिली को बिलोंग करूची which of the following plants belong to the pea family pea family माने मंजी टाइप रो फैमिली के बिलोंग करू yes अरे पी फैमिली ग्राउंडनट पी ना नहीं yes horse gram सेरा भी गुडे पी सोयाबीन सेरा भी गुडे पी all of the three एथरे एते कंफ्यूजन कोन you have given difficult question answer easily देलो एथरे एते ब्लॉकेज काहे which one of the following words phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items ऊपर property rights एवं recently बहुत सारा माने property rights declare करा होची आउ virtual items ऊपर बहुत सारा property and intellectual rights भी इन माने declare करा होची ता भितरु किए रहिबो ब्लर होची
for a certain second, for a certain moment focus out होतुबो हला ठीक है जो which one of the following words आ भितरु को word टा describe करूची property rights exert करि परिबो virtual items उपरे metaverse correct good metaverse is denoting that you can exert property rights over virtual items big data analytics cryptography कोन के कहि परिबो what is cryptography yes fast cryptography कोन एबे जो तुमरो नुआ बाहर छी व्हाट्सएप रो मेसेज केही पढी परिबेनी ए जो पर्टिकुलर द एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहउचंती सेटा कोन कोआ जे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन केही पढी परिबेनी ता माने कोन बेसिकली गोटे मेसेज को अनरिटन अनरेड लेटर्स मान जोटा जेमति पढी पारंतनी सेमति कन्वर्ट करा जाय सेटा को कोआ जाय क्रिप्टोग्राफी ठीक बिग डेटा एनालिटिक्स हम समस्त जानि थिबो वर्चुअल मैट्रिक्स माने बेसिकली गोटे ग्रिड वर्चुअल ग्रिड जो सेटअप करा जाय सेटा को मैट्रिक्स बोले कोआ जाय आंसर कोन हे जिवो मेटावर्स करेक्ट with reference to radioisotope thermoelectric generators RTGs consider the following statements RTGs are miniature fission reactors माने atom will split into two है then RTGs are used for powering the onboard system of spacecrafts पे use करा जाए RTGs can use plutonium 238 which is a byproduct of weapons development weapons माने nuclear weapons development कला बळको plutonium 238 गोटे byproduct भला generate हुए ताकू RTGs use करि परिबे which of the following statements are correct good yes communication through codes कोन आंसर B Pranati goes B everyone is going with B okay basically RTGs को कौन कहा जाउची रेडियो आइसोटॉप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स ए जनरेटर्स ता जेहेतु एटा को जनरेटर्स बोली कहा जाउची हला थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स एमाने बेसिकली रिएक्टर्स नुहंती नो डाउट एमाने भी स्मॉल साइज मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स भी स्मॉल साइज आउ दिजन जाक से न्यूक्लियर फ्यूएल उपरे काम करंती बट एमाने जनरेटर्स जेहेतु से माने बेसिकली कोन न्यूक्लियर बैटरीज बळे माने फंक्शन करती न्यूक्लियर बैटरीज रु पावर ड्राइव करिकि जनरेट करंती थर्मोइलेक्ट्रिक एनर्जी सेति पे एटा मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स हबो नाही RTGs are used for powering the onboard systems yes definitely RTGs can use plutonium yes definitely न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल को यूज करि परिबे किंतु RTGs आर नॉट रिएक्टर्स RTGs आर बेसिकली जनरेटर्स जोथरे कि न्यूक्लियर बैटरीज कांसेप्ट तमने नासा साइंस कांसेप्ट को यूज करा हेछि एंड देन द RTGs आर डेवलप्ड क्लियर giant stars live much longer than dwarf stars giant stars dwarf stars रो अधिका वर्ष वंचन compared to dwarf stars giant stars have greater rate of nuclear reactions greater rate of nuclear reaction giant star भितरे हुए सेति में से माने अधिका समय पंचंती बोली कहा जाउची which of the following statements are correct तांकर अधिका न्यूक्लियर रिएक्शन हबो जदि गोटे स्टार भितरे अधिका न्यूक्लियर रिएक्शन होची कोन हबो
What will be the impact or what will be the effect? A star's lifespan is directly proportional. A star's lifespan is inversely proportional to its mass. Inversely proportional माने कौन? Those who know are good. Inversely proportional माने कौन? Inversely proportional माने basically कौन? एमिति लिखा जाए mass को inversely proportional. तामाने mass जते अधिका life span सते कम. Mass जते कम life span सते अधिका. तो ये statement टा कौन है जीवो? Compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reactions. Definitely तांकर size अधिका, mass अधिका, तो rate of nuclear reaction टा अधिका हबो. सेति भाई decay टा बहुत जल्दी है जाए, and that is why. कौन है गला? Statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. Clear? अरे बुझिलो ना नहीं? कौन शुभम कौन message गुडे retract कर दलो करो. If you have any doubts, please ask. किसी समझी issue नहीं. पचारि परिबो, कोई परिबो. चला. Which of the following is synthesized in human body that dilate blood vessels and increases blood flow? Blood vessels को dilate करे और blood flow increase करे. So the following is synthesized in human body. Human body भितरे synthesize होतुबा दरकार. Yes. कौन गोटे नाइट्रोजन को रिलेटेड हेतुबा definitely. Urea is secreted in urine. तामाने blood कौन टा तो गोटे बनाउथुबो. ଆଉ जो amino acids ଆମେ କହୁଛେ amino acids ଆଉ जोटा amine group କହୁଛେ सेटा NH2 group ना. तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जोटा तमरो बहुत ही अधिक. तो नाइट्रोजन ର ମାତ୍ରା body ପାଇଁ ବହୁତ ହି important, right? समझते? प्रणीता, देविका, पंचानन, okay, good. चलो. Nitric oxide. Everyone is going with nitric oxide. Nitric oxide is developed, synthesized in human body, and it helps to dilate the blood vessels. Blood vessels जो माने the vessels जो थे तमरो blood cells flow करंती सेथिरे डायलेट करिया को हेल्प करे. सेटा को vasodilator बोली कहा जाए. vasodilator बोली नाइट्रिक ऑक्साइड को कहा जाए. तो सेति भाई vasodilator माने कोन? बेसिकली तमरो वेसल्स को डायलेट करे, स्मूथ कराए और ब्लड फ्लो को बढ़ाए. ठीक. नाइट्रस ऑक्साइड टा कोन? व्हाट इज नाइट्रस ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड इज बेसिकली लाफिंग गैस कहा जाए एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज एनेस्थेटिक. और एनेस्थेटिक बढ़िया भी यूज करा जाए. करेक्ट, करेक्ट. Nitrogen dioxide, what is nitrogen dioxide? This is a toxic gas and it is not generated in the human body. Toxic gas ଆଉ ଏଟା pollutant ଭଳିଆ treat ହୁଏ. Nitrogen pentoxide, nitrogen pentoxide ର industrial applications ଅଛି. ତାମାନେ basically rocket fuel ରେ ସେଟା use କରାଯାଏ. rocket fuel propulsion ରେ ଏଟା use କରାଯାଏ. ଏଟା basically oxidizer. Nitrogen pentoxide is oxidizer. Clear? Next, consider the following activity. Identification of narcotics on passengers at airports or in aircraft. Monitoring of precipitation. Tracking the migration of animals. How many of the above activities can the radars be used? Aircraft रे जो radars use करा जाए से गुडा को कौन चेक करि परिबे कहूची. Narcotics रो identification करि परिबे, precipitation monitor करि परिबे, migration of animals को monitor करि परिबे. कौन करि परिबे? Yes.
नार्कोटिक्स तो तमे ब्लाइंडली मार दबो यस नार्कोटिक्स को रेडार्स स्कैन कर दे पारिबे एंड आइडेंटिफाई कर दे पारिबे बाकी माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स टा करि पारिबे ना नहीं दैट इज इंपोर्टेंट यस ओके प्रणति इज गोइंग फॉर बी बाकी समझते और कोन ओनली टू वन एलिमिनेट कलो वन एलिमिनेट कलो monitoring of precipitation yes radars can be used for the monitoring of precipitation correct precipitation by generally used migration of animals माने basically bird migration तो bird migration ପାଇଁ भी radars ଲାଗିଥାନ୍ତି wind direction bird migration ପାଇଁ भी radars ଲାଗିଥାନ୍ତି second ଆଉ third तो ठीक है first କହୁଛି identification of narcotics on passengers at airports or in aircraft inside the aircraft radars काम करिवो नाही आ सेति पई ए स्टेटमेंट ता भूल ता सहित नार्कोटिक्स रो आइडेंटिफिकेशन पई केबे भी राडार यूज के नाही हला जोडा मु स्टार्टिंग रे कहली सेति भाई ते नार्कोटिक्स केबे भी यूज हुए नाही काहे कि एक्सरे मशीन्स जो एक्सरे मशीन्स रे पासेज करा जाए सेइथिरे ही आइडेंटिफाई करा जाए जदि राडार सब आइडेंटिफाई कर दियंता ताले एक्सरे मशीन्स आउ यूज होता नाही राडार्स थ्रू रे नार्कोटिक्स और दी माने टॉक्सिक आइटम्स कि हार्मफुल मेटल्स हार्मफुल आइटम्स जोडा को आइडेंटिफाई करा जाए पारे नाही करेक्ट वेरी गुड फर्स्ट एलिमिनेट डेटा ठीक एक्सीलेंट which of the following are hydrogels used hydrogels कोटी कोटी यूज होती कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स मान को जो इंजेक्शन दिया जाए सही टाइम रे मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स माने मूवेबल मोबिलिटी जहार अधिक थी प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेट्स ग्रीस ऑयल एगुडा सब प्रिपरेशन हला भाई एडी हाइड्रोजेल्स यूज करा जाए करेक्ट व्हिच कहा कहा भीतर हाइड्रोजेल्स यूज करा जाए कहा कहा पाई बेसिकली व्हाट आर हाइड्रोजेल्स बेसिकली हाइड्रोजेल्स कौन यस की कोई परिबो scanners can identify narcotics yes good देविका कहूची ऑल ओके बाकी समस्त प्रणति पहचाना न हाइड्रोजेल्स कौन जेल टाइम रे आइटम किसी गुडा हेथिबो ना डेफिनेटली वाटर soluble polymers एटा हाइड्रोफिलिक हला हाइड्रोजेल्स गुडा को बेसिकली हाइड्रोफिलिक माने कौन से माने लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करि पारिबे आ सेति पई जदि लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करि पारिबे बॉडी को टिके ड्राई करि दियंती बॉडी को भी ड्राई करंती तापर जो मेडिसिन ता दिया जाय सेतरे सॉल्यूशन हिसाब रे सेमन ताको एब्जॉर्ब करि रखंती ग्रेजुअली इन आउटपुट दियंती हला तो हेतु में कंट्रोल ड्रग डिलीवरी रे हाइड्रोजेल्स यूज होतबो यस मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स रे भी हाइड्रोजेल्स यूज होतबो सेटा हाइड्रोजन माने वाटर को बेसिकली एब्जॉर्ब करके रखिबो बहुत समय पे दैट इज व्हाई हाइड्रोजेल्स वर यूज्ड यस प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स दैट इज व्हाई भी एटा यूज जेहेतु सेटा वाटर एब्जॉर्ब करिवो इन लार्ज अमाउंट्स टिके थिक सॉल्युबल माने थिक मेटल भितरे थिक सब्सटेंस को कन्वर्ट हे जबो तो सेति पे सेटा तीन जगह रे यूज हला देन which one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen which one of the following is the exhaust pipe emission
अच्छा एग्जॉस्ट पाइप रे आ भितर कोन बाहर fuel cell electric vehicles powered by hydrogen fuel cell electric vehicles जोड़ा हाइड्रोजन रे चले ता भितर कोन एग्जॉस्ट हुए which of the following is being exhausted fuel cell electric vehicles fuel टा होची हाइड्रोजन डेफिनेटली एठी कोन बाहर हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ी बाहर वाटर वेपर बाहर एनर्जी जनरेट हला त माने टेंपरेचर हाई रहइबो वाटर वेपर बाहर एटा इजी क्वेश्चन ही थिला क्वेश्चन पढिला को डिफिकल्ट लागि थाई पारे recently the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which of the following irrigation of terraced crop fields lift irrigation of cereal crops long duration energy storage rainwater harvesting both hi pai use kara jauchi pumped storage hydropower pumped storage hydropower kon pai use kara hochi pumped storage तार कोन एनर्जी स्टोरेज होतबो हाइड्रो पावर यूज करा होतबो इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड फील्ड्स इरिगेशन माने छातो ऊपर टेरेस्ड फील्ड बेसिकली तमरो टेरेस्ड जो सेगमेंट टेरेस्ड क्रॉप फील्ड्स को इरिगेशन एटा करे कि हबो कि नै लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सील क्रॉप्स नै लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज यस लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज इज बेसिकली कॉल्ड एज पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर सेठी अधिका समय पई एनर्जी स्टोर करा जाउछि clear good next membrane bioreactors membrane माने तो thin film हला एटा तो तमे सेमति मन रखियो सेल मेम्ब्रेन हो कि जे कोनोसी मेम्ब्रेन हो वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिन फिल्म आ तापरे गुडे रिएक्टर्स अछि ओके देन thin film reactors are often discussed in the context of membrane bioreactors को context रे डिस्कस करा जाय what are basically membrane bioreactors membrane bioreactors reproductive technology सहित तो किछि मतलब नथिबो होगी नहीं reproductive technology सहित किछि मतलब नहीं तो you can eliminate the first option as soon as possible then interesting होची second and third option बलको आसीबो कोन drug delivery nanotechnologies vaccine production technologies or wastewater treatment technology now here wastewater treatment कोछ देविका okay good membrane bioreactors basically कोन थिले मु कहली thin film माने कोन माइक्रो फिल्टर्स हेतिबे माइक्रो फिल्टर्स हेतिबे आइदर माइक्रो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होतबो नले माइक्रो सिलेबस और माइक्रो सेपरेशन हेतिबो एनी ऑफ द पर्टिकुलर फैक्ट तो माइक्रो फिल्टर्स जदी लागि छि तो माइक्रो फिल्टर्स रे कोन करा जाउथबो डेफिनेटली एमिति किछि दिनस को प्यूरिफाई करा जाउथबो जोडा माइक्रो फिल्टर्स देई की पास करि परिबो एंड दैट इज व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर करेक्ट कंटामिनेट्स को रिमूव करि देबा पई एटा यूज वे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पई यूज माइक्रो फिल्टर्स एमती सीरियल नि लागि थाए आ से रे पास करी कंटामिनेट्स को रिलीज करा दे करेक्ट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज a membrane bioreactor consider the following statements some microorganisms can grow in environments with a temperature above the boiling point of water ऊपर भी microorganisms माने grow करी परिबे true or false definitely statement is true correct then some microorganisms can grow in environments with temperature below the freezing point of water. This statement is also true. Some microorganisms can grow in a highly acidic environment with a pH below 3. This statement is also pH below 3 under re the organisms kari paribe. Right? A question ta easy thila boli mu kari deli. Hala. If you want to answer or if you want to get an explanation, then let me know. Correct. बेसिकली कोन एडा सब एबे एडवर्टाइजमेंट रे चली छी ना सब आडे एडवर्टाइजमेंट देखो छी ना खाली फुटे देले हबनी यू हैव टू माने सेटा को यूवी रेस रे ट्रीटमेंट करा होतला जो कोविड 19 चलतला सेतोले बॉइलिंग पॉइंट रू भी अधिका ओटे 10 to 15 मिनिट्स पर्यंत सेटा को रखो सो दैट सेटा कंटीन्यूअसली बॉईल हेई चलथिबो ए प्रकार सिस्टम बडा का डेफिनेटली डेवलप हेइतला दैट इज व्हाई I did not discuss माने बेसिकली I did not discuss एटा बेसिक फैक्ट्स नो जाना थाए हला if you want an explanation then let me know with reference to green hydrogen consider the following statements green hydrogen ko it can be used directly as a fuel
for internal combustion engines IC engines by green hydrogen use paribo boli ko. Okay, it can be blended with a natural gas and used as fuel for heat or power generation. Natural gas mane CNG sangare blend hei paribo. It can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicles. Hydrogen fuel cell re green hydrogen ku use kara hei paribo boli kuha jauchi. Which of the following statements are correct? Right? Yes. First, D. Okay. Green hydrogen ସେଥିପାଇଁ ହିଁ popular ଥିଲା and it was continuously in use. Heat and power generation ପାଇଁ utilize ହେଇ ପାରୁଥିଲା. ହଉଛି green hydrogen କୋଉଠୁ electrolysis of water, electrolysis process ରେ ଆସେ green hydrogen, correct? electrolysis process ରେ green hydrogen ଆସେ. ଏଇ green hydrogen ଟା କଣ କରା ହେଇ ପାରିବ? Fuel for internal combustion engine? Yes, it can be used. It can be blended with natural gas? Yes, it can be blended. It can be used in the hydrogen fuel cell. Hydrogen fuel cell रे hydrogen use କରିବନି କଣ use ହବ? All of the three statements are correct. Clear? Wolbachia method. Good. Wolbachia method is sometimes talked about with reference to which one of the following? Wolbachia method टा basically कौन आउ कहा सहित reference करिकी कथा हुआ होची मैं कहा सहित reference करिकी कुहा जाउची. First कहूची converting crop residues into packing material. Second कहूची Wolbachia method. First कहूची controlling the viral diseases spread by mosquito. Second, converting crop residues into packing material, producing biodegradable plastics, or producing biochar from thermochemical conversions of biomass. Wolbachia method कौन करे? Right? What is the Wolbachia method? All? Na A. Only A. Devika is saying yes. A. ठीक अच्छे. बाकी कार किसी आंसर नहीं कोई दो. Wolbachia method basically कौन? जदि कहा को डेंगू हे थाए ताले कौन करा जाए? Aedes aegypti सेटाकू ब्लड भितरे माने सेटाकू बाइट करिया को दिया जाए. तो सेतरे कौन हुए? ए जो Wolbachia method यूज होची ए जो Aedes aegypti से जेतलकू ब्लड माने बाइट करे सेतलकू से तार माने बेसिक जो वायरस रो रेप्लिकेशन टा बॉडी भितरे अटके दिए. तो वायरस रो रेप्लिकेशन जेहेतु बॉडी भितरे अटकी जाए डेंगू वायरस रो रेप्लिकेशन टा कमी जाए एंड तापरे धीरे धीरे देहटा ठीक है जाए. ସେଥିପାଇଁ it is a best method of controlling the viral disease spread by mosquito. Aedes aegypti को spread करिवा पई माने spread Aedes aegypti द्वारा जो spread होची डेंगू सेटा को कंट्रोल करिया पई Wolbachia method यूज होतला. राइट? ए Wolbachia टा होची बेसिकली गोटे substance which is found in nearly all माने insects. सब प्राय 50% of the insects भितरे ए Wolbachia टा मिले आउ सब Aedes aegypti एटा मिले. So this Wolbachia is in body and एटा replication of the dengue अटके. replication अटकेले definitely कौन हबो? ठीक है. Right? Aerial metagenomics best refers to which one of the following situations? Aerial metagenomics कहा को refer करो? Collecting DNA samples from air in a habitat at one go, understanding the genetic makeup of avian species of a habitat,
using using airborne devices to collect blood samples from moving animals, sending drones to inaccessible areas to collect plant and animal samples from land, surface and water bodies. Aerial metagenomics. Metagenomics माने जीन कलेक्शन थिबो ही थिबो सेतु तो नाटा metagenomics दिया है ता परे क्वेश्चन कोन पचारछु एरियल मेटाजेनोमिक्स माने कोन जीन सैंपल्स तो जीन जीन ता माने कोन जेनेटिक सैंपल्स कोडी थाय डीएनए रे थाय तो एरियल मेटाजेनोमिक्स माने कोन डेफिनेटली एयर रे मेटाजेनोमिक्स माने एयर रे डीएनए सैंपल कलेक्शन हे जाउतबो एयर रे डीएनए सैंपल कलेक्शन हे जाउतो कनेक्टेड डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट एट वन गो एका थरे डीएनए सैंपल्स कलेक्ट हे गेला एटा डायरेक्टली जहा ना लिखा है तार लिटरल मीनिंग जदि तमे कहबो ताले भी तुमको आंसर मिल करेक्ट microsatellite DNA कौन is used in case of which one of the following microsatellite DNA केते बड़े यूज करा जाए बोली कहूची the microsatellite DNA is used for studying the evolutionary relationships among various species of a fauna yes definitely हेताई पारे काना microsatellite DNA अछि से तांगर सब relationship को study करथबो stimulating stem cells definitely not a function of microsatellite DNA transform dimers functions no है promoting clonal propagation of horticulture plants देखिबा assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials in a population hey thai pare which one will be the answer yes abhi to koda have answer a okay. Devika is saying microsatellite DNA is also called as simple sequence repeat को स्टडी करे तो सेटा बहुत ही माने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे बहुत ही अधिका सेगमेंट रे तो जेहेतु मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे बहुत ही अधिका सेगमेंट रे यूज एटा कोन करा जाय स्टडी द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ ए सिंगल फाना भितरे जति स्पीशीज तांकर इवोल्यूशन केमिति हेतला आ केमिति दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर से दिन सब स्टडी करा जाय एंड दैट इज व्हाई माइक्रोसैटेलाइट डीएनए person consider the following actions detection of car crash collision which results in the deployment of airbags almost instantaneously detection of accidental free fall of a laptop towards the ground which results in the immediate turning off the hard drive detection of the tit detection of the lit of smartphone which results in the rotation tilt of smartphones results in the rotation of display that tilt which results in the rotation of display between portrait and landscape mode how many of the above action is the function of accelerometer कौन पई आ भितरु केतरा फंक्शन को accelerometer करे accelerometer आ भितरु केते दिनस को फंक्शन करे now what is accelerometer if you know ताहले भी ठीक है confusion हे पारे but you will definitely get into the answer yes fast physical acceleration accelerometer रो नाटा माने कोन physical acceleration measure करे yes good समस्त ऑल कहउछ देविका प्रणति यू आर सिंगल एक्सेलरोमीटर बेसिकली कोन फिजिकल एक्सेलरेशन ता माने जदी तमे हाथ रे मोबाइल ता धरिछ आ सडनली ताको एम्ति शिफ्ट कलो ताले ए जो फिजिकल एक्सेलरेशन हबो सेटा को से मेजर करे सेट पे ता नाडा होजे एक्सेलरोमीटर देन जदी फिजिकल एक्सेलरेशन को माने नोटिफाई करे ताले एटा डेफिनेटली गुटे सेंसर हेतिबो जदी कार क्रैश किबा कोलिजन हला ता माने कोन कार जदी बाडे हला गुटे जगह रे सडनली एट रेस्ट पळे आसीबो ए जो सडनली एट रेस्ट पळे आसीबो एई एक्सेलरोमीटर ता एक्टिवेट हे जिवो जो मोमेंट रेस्ट पळे आसीबो एयर बैग खोल जिवो गुड एटा भी हेता एटा डेफिनेटली ट्रू
डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ ए लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड जदि लैपटॉप ग्राउंड रे पड़िबो ताले कोन फ्री फॉल होची ए जो फ्री फॉल होची एटा mg अंडर रे एक्ट करूची ग्रेविटी अंडर रे फॉल करूची मास ऑफ द लैपटॉप एंड ग्रेविटी एथरे फॉल करूची एटा जतले जनरेट होबो सेतले भी सी एक्टिवेट होतबो डेफिनेटली ट्रू डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन तमे फोन ता धरले एमते बुलेलो एक्सेलरेशन जनरेट कलो देन आल्सो दिस इज करेक्ट so all the three statements are correct right next with reference to the role of biofilters in recirculating aquaculture system consider the following statements biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed जड़ा माछ खाइ दल ताको काट देबो ठीक अछि biofilters convert ammonia present in fish waste to nitrate biofilters basically सारो भी दोछ biofilter in biofilters increase phosphorus as a nutrient for fish and water which of the following are correct yes yes आ भीतर कोन ठीक अछि second statement ठीक अछि कोच ओके biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed सेति पई ताका नाटा होची biofilter आउ first statement ता blindly correct biofilters convert ammonia present in fish waste into nitrate ammonia को nitrate रे convert करंती this is a process of the biofilters जोटा कि सेटा को नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करा जाय ता माने बायोफिल्टर रे किछिटा नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया थांती जो माने ए जो टॉक्सिक अमोनिया वेस्ट को नाइट्रेट रे कन्वर्ट करंती एंड दिस इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो biofilters increase phosphorus as a nutrient for fish false phosphorus जदि अधिक हबो ताहाले algal bloom को लीड करिवो algal bloom को जदि लीड करिवो ताहाले कोन हे जिवो the oxygen demand biological oxygen demand ता पानी रे बढ़िवो fish मानकर रहिबा पई एटा डेंजरस हे जिवो तो biofilters ए दिनसटा करे नाही 1 and 2 statement is correct only 2 are correct right next consider the following pairs Cepheids nebulae pulsars Cepheids kono nebulae kono how pulsars kono how many of them are correctly matched yes second yes fast devika there ना लंच ब्रेक हे गला समस्तंकर आउ अल्प ही क्वेश्चन बळची फटाफट वी विल बी कंसीडरिंग दिस एगु सारीबा देन यू विल बी कंटिन्यूइंग विथ आई बिलीव ज्योग्राफी एंड ऑल फ्री ओनली गुड Cepheids basically कौन what are cepheids basically जब तुम एवेंजर्स देखिथिबो ताल सेठी भी बहुत सारा दिन से देखिथिबो सेठी भी तुम ब्राइट ग्लोइंग स्टार्स देखि Cepheids are basically the bright glowing stars bright glowing stars ता माने Cepheid रो जो description ता अछि सेटा होची stars which brighten and dim periodically एटा होची तमरो Cepheids रो डेफिनेशन आ एटा एठी लिखा हैची nebulae कोन nebulae are giant clouds of dust of and gas in space एटा इंटरचेंज करा हैची that is why both them are wrong then pulsars are highly heavily magnetized rotating neutrons जोना को possible हुए केते बेले
ଯେତେବେଳେ star runs out of fuel and collapse, yes, definitely this statement is correct. Magnetized rotating neutron, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ଠିକ से मैच करा and that is pulses. बाकी दीटा ऊपर इंटरचेंज करा है डेफिनेशन just to create confusion. Consider the following statements. Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds. माने ballistic missiles कौन supersonic ना एंती की throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial rocket powered. Okay. Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missile. ये statement टा समझते देखी की जानते हैं. BrahMos, Brahmaputra and Moscow River, India and Russia, the BrahMos टा supersonic missile वाली समझते जानी चंती. फसी है जाइची तेणुकरी statement 2 टा भूल है जाइची. Statement 2 टा तो भूल है जाइची. Statement 1 कौन कहूची? What is the statement 1 saying? Is statement 1 correct or not? Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flight, while cruise missiles are rocket powered only in the first phase of flight. Ballistic missiles, very good. Ballistic missile कौन? Ballistic missile basically projectile motion रे launch करा जाए. तामने जो दी ground level सेमती अच्छी ballistic missile के एमती छड़ा जाए से space रू माने gravitational out के ऊपर को जाए की then angular distance measurement है कि एटा को launch करा जाए. ऐसे तो भाई ये free fall gravity रे fall. तामने आपको initially power दिया हो तो वो full flight टाको control करा जिबा दरकार नहीं. तामने एठी भी definition को कौन करा है ची उल्टा करा है. Agni 5 is an intercontinental ballistic missile. BrahMos was a supersonic cruise missile. Then एठी कौन करा है ballistic missile are jet propelled. No, ballistic missile initial phase रे flight दिया जाए. जोटा को cruise missile है सेगुडा को तमरो complete throughout their journey सेमान को power दिया जाए. Both these statements are false. Neither one nor correct. Okay. Thank you so much. I hope you enjoyed the session. I hope you will be online for the other teachers also, and I hope बहुत सारा benefit भी मिले थी वो ए session रू बहुत सारा revision भी है जाए. I wish you all the best for tomorrow's exam and also for the U7. But then जहाँ भी examination दबो be very calm and quiet. सब बड़े शांति रे बसी की you will look into the questions. You will decide whether माने question टाइप करिवार अछि कि नहीं. तो first of all question जोड़ा को easy लगे सेटा को first attempt रे करि चलिबो. Easy माने difficult questions or complex questions भितरे mind खेलेबो नहीं initially. जदि time बळे then get into the difficult and माने जहाँ भी complex questions को enter करिबो. The examination is not asking any kind of difficult question. जहाँ भी करो there is a 30-30-40 rule. ता माने 30 टा easy question थिबो, 30 टा moderate थिबो, 40 टा difficult question. You will have to target those 60 questions जोटा easy moderate level रे अछि. ता माने 40 टा question छाड़ीबार liberty भी तम पाखरे अछि. कट ऑफ टा 100-110 भितरे 120 भितर रहिले भी you will definitely clear the cut off if you are doing to 65 questions correct. ता माने take an attempt of 75 to 80 questions. ता भितरु हार्डली जदि 10 टा खंडे भूल हैला 70 खंडे ठीक हैला तथा भी प्रोबेबिलिटी रे तमे पळे आसीबो. डू नॉट गो फॉर 90 or 95. सेतरे नेगेटिव टा अधिका हे जिवो. कट ऑफ रु जस्ट टिके पछुर रहि जिवो. राइट. ओके. तो सेति just try to be as positive as you are. Try to be as calm and quiet as you are. Aji to Sandhya to you are going for tomorrow's examination. Sandhya to stop the preparation, relax karo, chill karo, timely, have your dinner, take sufficient rest. Will be doing good in the exam. Keep faith in yourself. For say 2 years whatever your preparation time is, you have gave sufficient effort into the preparation and you will do good. I'll call Devashish sir. Devashish sir is also here. Thank you. I will definitely tell thank you because this is an effort for you. Online and you were continuously answering. That was interesting, right? So then we will be also bringing PYQs certain days and how team I'll call Devashish sir. You just be online. He will be starting this.
ठीक, thank you so much. Devashish sir is here and he will be continuing the marathon session. Sir. Okay, so good afternoon everyone. So ତମାନଙ୍କର ଏବେ ସତ୍ୟ ସାର୍ ନଉଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ର ରାଇଟ୍ UPSC ର ଲାଷ୍ଟ 3 years ର PYQ is being discussed, so which going to be very helpful for such questions जो गुराक तमरो UPSC prelims रे आसी पारे, right? So as we all know, UPSC is trying to copy UPSC more and more, so से जिनसा करियो हम भाई better रहबो. Good afternoon Devika. Good afternoon Pranati. So we're gonna start just in a few seconds. Okay. So let's start the questions. Okay, first question from 2025. Question is saying, consider the following statements, statement based questions. Statement 1, scientific studies suggest that a shift is taking place in Earth's rotation and its axis. Statement 2 is saying solar flares and associated coronal mass ejections bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. The third statement, as the Earth's polar ice melts, the water tends to move towards the equator. So we have been given 3 statements. What are the options? Both 2 and 3 are correct. Both of them explain statement 1. Both 2 and 3 correct. Only one of them explains statement 1. Only one of the statements 2 and 3 is correct. That explains statement 1. Neither 2 nor 3 is correct. So आमको कौन देची ना statement 1 टा आमको गोटे टाइप रो statement देची 2 and 3 तारो explanation हिसाब रे पचारछि तो कोडा ठीक अछि कोडा भूल अछि try to answer. जय जगन्नाथ संग्राम. Okay, people are starting to answer. So let's see. समस्त B कहउचंदी. So scientific studies suggest that there is a shift taking place in Earth's rotation and axis. एटा जदि तमे मोर क्लास करिछ, you will know geography रो भी even basic जदि पढिछ how to know that कि we discuss कि हमरो Earth रो जो tilt टा it changes. Okay, तो तार मैपिंग कराई छी with respect to different location. तो से हिसाब रे पोल रो लोकेशन गुराक over the years it has changed. तो सेटा होची गोटे truth, गोटे fact एटा. So this statement obviously हमारो discuss करिया देखियार अछि 2 and 3 भितर. Now statement 2 कोन कहूची solar flares
and associated coronal mass ejections bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. Now, ଆମର आइदर तुम मैंने साइंस रे पढ़थो नले जियोग्राफी रे हुए कोन ना हमरो जेतळे सोलर सिस्टम विषय रे हमें पढुचे फर्स्ट जिंस हमें कोन पढुचे सोलर सिस्टम माने आउ कोन सन विषय रे पढिबा तो सन विषय रे जेतळे पढुचे हमें सन रो गोटे ऐसे सोलर साइकिल राइट एवरी 11 इयर्स सन रो मैग्नेटिक एक्टिविटीज रे बहुत सारा चेंजेस आसे से जो सोलर साइकिल बेले से जो पीरियड रे हमरो सन रो मैग्नेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज हबो से पॉइंट रे हमें देखु कोन ना क्रिएशन ऑफ सन स्पॉट्स पुनी कोन सन स्पॉट होची बेसिकली गोटे गोटे एरिया ओवर द सन सन जैसे चांद में दाग है वैसे सूरज में दाग आ जाता है ओके दैट काइंड ऑफ थिंग इज द सन स्पॉट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बट सूर्य ऊपर गोटे दाग लगी जाय ओके ब्लैक हेड्स हे गला सूर्य रो ठीक अछि ना से जो सन स्पॉट हुए सेटारे कोन हुए ना दीज आर कूलर रीजन ए पॉइंट रे ड्यू टू सम रीजन द टेम्परेचर फॉल्स ओके एंड एडा लिंक हे जाय तारा मैग्नेटिक एक्टिविटी से व्हिच गिव्स राइज टू सोलर फ्लेयर्स मैग्नेटिक लाइंस जो जनरेट हेगी सन स्पॉट पाखरे इंटरमिंगल करचंती एज अ रिजल्ट सोलर फ्लेयर जनरेट हो सोलर फ्लेयर माने कोन सन पाखरु गोटे गोटे फ्लेयर गन विषय रे सुनथियो फ्लेयर हैला गोटे बेसिकली गोटे जोर रे माने गोटे एक्सप्लोजन टाइप रो जिंस ओके तो से जो सोलर फ्लेयर क्रिएट होची दैट टेक्स सम ऑफ द प्लाज्मा फ्रॉम द सन एंड सेडा कोटु बाहर सन रा सरफेस रु बाहरियो आउटर मोस्ट लेयर रु बाहरियो जोडार ना होची कोरोना सेति पई सेटा कोरोनल मास इजेक्शन एंड ए जो कोरोनल मास इजेक्शन बाहर तार बहुत एनर्जी रे बाहर एंड सेही एनर्जेटिक पार्टिकल से माने ऑब्वियसली सन रु बाहर छु माने सन रो चारिएडी की जीवो एंटायर सोलर सिस्टम रो प्लैनेट्स मानन देहरे सेटा बम्बार्ड होबो इंक्लूडिंग अर्थ सेटा जो आउटर एटमॉस्फेयर रे माड हुए अर्थ रो मैग्नेटिक फील्ड सेटा को प्रोटेक्ट करे एंड ए सब रो लिंक अछि हमरो ऑरोरा सहित तापर कोरोनल मास इजेक्शन हेले इलेक्ट्रॉनिक्स भल से काम करिवनी सैटेलाइट आउ एस्ट्रोनॉट मानन को टिके डेंजर रहइबो तो से सब जिंस रो स्टेटमेंट 2 हियर इज करेक्ट स्टेटमेंट 3 कहू छी as per earth's polar ice as the earth's polar ice melts एटा भी हमें जानि छे बेसिक ज्योग्राफी रो कांसेप्ट जे होची क्लाइमेट चेंज इज naturally climate change हुए but because of human activities it has been sped up सेति पई एटा गोटा माने कोन it has become a worrying scenario okay तो naturally सेटा हुए तो polar ice also it keeps melting and ता सहित snowfall वगैरह है कि पूर्ण तरह रिचार्ज भी हुए राइट इट द प्रोसेस इज कंटीन्यूअस तमे जदी वाटर साइकिल विषय पढछो सेतरे भी एटा इंक्लूड तो जो पोलर आइस मेल्ट होची मेल्ट हेले कोन हबो अर्थ रो रोटेशन माने देखो मेल्ट हेले कोन हबो सेटा जहा हेले भी कंपैरेटिवली इज अ कोल्डर वाटर हमें ओशनोग्राफी विषय पढ़ला बेले ओशन करेंट्स विषय पढुचे ओशन करेंट्स ता कोन रे हेल्प करची वन ऑफ द फैक्टर्स कोन माने तारा इंपैक्ट कोन हुए ना इट हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द टेम्परेचर राइट तो इक्वेटोरियल एरिया रु हॉट वाटर पोलर एरिया को जाए पोलर एरिया रु कोल्ड वाटर इक्वेटोरियल एरिया को आसे ता सहित अर्थ रोटेशन रो भी लिंक अछि मोर वाटर गेट्स अक्युमुलेटेड नियर द इक्वेटर राइट तो सेति पई as earth's polar ice melts the water tends to move towards the equator this also is correct so both of the statements are correct so either option 1 hobo nahale b hobo a hobo nahale b hobo now solar flare ro earth ro rotation सहित किछि लिंक अछि किछि भी लिंक only link is with electronics communication system satellite और जदी एस्ट्रोनॉट माने बाहर अछन सेही एस्पेक्ट मैग्नेटिक फील्ड एस्पेक्ट रे तार रिलेशन अछि आउ किछि नै तो दिस डज नॉट एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट 3 कोन पोलर आइस मेल्ट हेले इट मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर तो इक्वेटर आडी की जदी अधिक पानी जाउची पोल रे अधिक वेट अछि एठु कोन हबो आइस मेल्ट हेले वेट ता कमी जिवो पोल आडी इक्वेटर आडी गले इक्वेटर रे वेट ता बढ़िबो तो वेट रो जो डिफरेंस ता क्रिएट होची दैट इज अफेक्टिंग द movement of inertia of earth
तो ये कौन करुच्ची इट इंपैक्ट्स बोथ द स्पीड ऑफ रोटेशन एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक अछि तो स्टेटमेंट 3 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 तो एठी कोन हमर देछि वन ऑफ ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स सो ऑप्शन बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज बोलिविया ब्राजील कोलंबिया इक्वेडर पैराग्वे वेनेजुएला Andes mountain passes through how many of the above countries? 1, only 2, only 3, only 4, only 5. एटा कह कौन हम आंसर ए 4 3 पहुंची ना हमको पचारची कोन ना एंडेस माउंटेन विषय एंडेस माउंटेन टा को कॉन्टिनेंट रे अछि हमरो साउथ अमेरिका राइट एटा हला साउथ अमेरिका हमरो को एंडेस माउंटेन कोठी ई पार्ट रे अछि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका this entire big region एटा होचे हमरो ब्राजील राइट ब्राजील गला ता ऊपर हम एठी कोन देखिया फ्रेंच गुयाना सुरिनामे गुयाना देन वी सी वेनेजुएला कोलंबिया इक्वेडर पेरू हमरो बोलिविया देन चिली अर्जेंटीना पैराग्वे एंड उरुग्वे राइट these are the countries right ना को कंट्री रे हमर नहीं ब्राजील रे नहीं ए ऊपर तीनटा कंट्री रे नहीं फ्रेंच गुयाना हैला कि सुरिनामे हैला सेठी नहीं बोलिविया की उरुग्वे रे नहीं बाकी सब कंट्री रे अछि तो ब्राजील हबनी राइट सॉरी पैराग्वे की उरुग्वे रे नहीं तो पैराग्वे हबनी बोलिविया कोलंबिया इक्वेडर वेनेजुएला these are the correct answers okay so option C is the correct answer chalo next question consider the following water bodies lake Tanganyika lake Tonle Patos lagoon through how many of them does the equator pass only one only two all the three none try to answer very good Pranati yeah Colombia Ecuador Venezuela very good चलो को आंसर को ए देवी गुड चलो देखिबा कोन छी हां फर्स्ट होची लेक तंगनाइका राइट एटा इक्वेटर रो बहुत दूर रे अछि ठीक अछि हां कहली इक्वेटर रो बहुत पाखे रे अछि दिस इज अफ्रीका लेक तंगनाइका कोठी अछि अफ्रीका रे अछि दे हैव द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एठी हमें गोटे देखुचे कोन ना पर क्रिएट होची गोटे रिफ्ट वैली क्रिएट होची ई पार्ट रे राइट ई पार्ट रे गोटे रिफ्ट वैली क्रिएट होची हां से जो रिफ्ट वैली क्रिएट होची सेही थरे मैं देखिया पाउचे कोन ना से रिफ्ट वैली रे बहुत सारा लेक भी फॉर्मेशन होची रिफ्ट वैली माने कोन रो इन दी लैंड हला ड्यू टू
कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस कौन होची ना गोटे रिफ्ट वैली एठी क्रिएट होची राइट गोटे कौन कहबा क्रैक इन द सरफेस सेही जगह ओवर द टाइम वर्षा हे रिवर रु पानी आसिकी डिफरेंट रीजन्स रु कौन हम वाटर अक्यूमुलेट हम and this creates what we call as the rift valley lakes. এই जो rift valley lakes रहिला ता भितरे गोटे अछि कोटा ना लेक तंगनैका ए पाखेरे हमें कौन कौन देखिया पाउचे अदर लेक्स हमें कौन कौन देखिया पाउचे अल्बर्ट देखिया पाउचे एडवर्ड देखिया पाउचे तुर्काना देखिया पाउचे राइट all these rivers that we get to see now mate kuha whether Victoria Lake Victoria whether it is a Rift Valley lake or not is it a Rift Valley lake Lake Victoria go no okay does the equator pass through this तो तंगनैका हमरो चारटा कंट्री सहित लगी अछि बुरुंडी DRC then amara Tanzania and Zambia okay these are the four countries with which the lake Tanganyika shares the border and the equator is very close to it but equator doesn't pass through this okay equator passes through the Lake Victoria ta 80 pakhre kothi okay there's somewhere okay चलो तापरे कोन रहला नेक्स्ट होची टोनलेसा एटा होची हमरो कैम्बोडिया रे कैम्बोडिया इज वेरी फार फ्रॉम इक्वेटर तो एटार भी इक्वेटर जाउनी पाटोस लगुन एटा कोठी अछि ब्राजील टा जदी एमती किछ रहला ओके ब्राजील रो ए रीजन में हम देखिया पाउचे पाटोस लगुन एटा कोन कोआबे लगोस डी पाटोस ओके तो इक्वेटर टा हमरो जाई छि कोठी एठी ब्राजील रो नॉर्दर्न पार्ट तो लेक टा अछि कोठी ब्राजील रो सदर्न पार्ट रे so this also is incorrect all three are incorrect so answer is option D next question gujiba which of the following are the evidences of the phenomenon of continental drift the belt of ancient rocks from Brazil coast matches with those from Western Africa the gold deposits of Ghana are derived from Brazil plateau when the two continents lay side by side the Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere which select the correct answer kon dechi amaro 1 and 3 1 and 2 1 2 3 2 and 3 right answer okay very good अरे एते जण अछ खाली दी जण को आंसर दोछन जाव का आसुनी एते सहज सहज क्वेश्चन तो पड़ितला 2025 ओके सो
तब कौन हमको कहिछि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विषय रे पचारछि राइट तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किए देथिले अल्फ्रेड वेगनर राइट तो ये कौन करथिले फर्स्ट किछटा कौन कहबा ऑब्जर्वेशंस करथिले तापरे सेही हिसाब रे निजर किछटा एविडेंस देथिले ऑब्जर्वेशन कौन करले ये एक्चुअली जाइथिले क्लाइमेटिक स्टडीज में ठीक अछि तांकर काम नथिला हुजी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विषय रे किछि काम नथला ये बस अदर रीजन पे जाइथिले एंड सेही जो स्टडी पे गला बेलू सी डिफरेंट लोकेशन रे डिफरेंट जिनस ऑब्जर्व कले कौन ना फर्स्ट गोटे थिला जिग्स ऑफ इट जिग्स ऑफ इट माने कौन ना हमें जब देखिबा ब्राजील वाला पार्ट टा जो रहउची साउथ अमेरिका रे हम देखले साउथ अमेरिका इज समथिंग लाइक दिस राइट तो ये जो ब्राजील वाला पार्ट टा रहउची अफ्रीका रो ए रीजन रे सेटा फिट हे जाउची राइट सिमिलरली नॉर्थ अमेरिका टाको आमे जदी आनिबा सेटा होची कोन हमर जो गल्फ ऑफ मेक्सिको रहइबो सेई पाख एरिया टा दैट फिट्स देयर ऊपरे होची यूरोप सहित फिट हे जाउची इंडिया आसी की लागि जाउची मैडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया सहित मिसी के ए रीजन रे इंडिया आसी की फिट हे जाउची राइट तो एमती से देखले जिग्स ऑफ इट टा होची बोली तो से कहले जे गोटे टाइम थला जोठी की गोटे सुपर कॉन्टिनेंट ला पैंजिया तार सबु एबेर सबु कॉन्टिनेंट वेर पार्ट ऑफ दैट सुपर कॉन्टिनेंट तापरे ओवर द टाइम इट ब्रोक इनटू टू गोंडवाना एंड लॉरेंशिया तापरे पुनी सेटा ब्रेक डाउन हे कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट जो क्रिएट हे छि एबे सेटा आसला राइट तो फर्स्ट गला जिग्स ऑफ इट तापरे कोन हला तापरे कहले जे जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी ऑफ रॉक्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जेमिति कि दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग ब्राजील जदी एट लागिथिबो घाना कोस्ट पाखरे तो सेही रीजन रे जदी किछि रॉक्स थिबे सेमानकर प्रॉपर्टीज सिमिलर थिला तो सेति पई से कहले एटा गोटे रीजन ता सहित आ कोन देखथिले फॉसिल एविडेंसेस देखले ग्लोसिप्टेरिस राइट मेसोसॉरस एमति सब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट्स मानकर फॉसिल्स को नेकी कहले जे सबु कॉन्टिनेंट रे अछंती तो एटा पॉसिबल नुहे जे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन रे एमति सेम टाइप रो एनिमल मिलिबे कि फ्लोरा मिलिबो तो सेति पई से कहले जे एगोरा लागि कि थिले ता सहित कोन ना गोटे प्लेसर डिपॉजिट बोली गोटे सी एटा तमे प्लेसर डिपॉजिट वाला हेडिंग अंडर रे पढुथुवा तो से जिंसटा होछ कोन ना ब्राजील रे हमरो प्लेसर डिपॉजिट मिले घाना रे ठीक अछि गोल्ड रो एटा होछ गोटे डिपॉजिट गोल्ड रो माइन तारो सोर्स जो आसी दैट इज फ्रॉम द ब्राजीलियन प्लेटो एमदी लाइन हे की जाईची ए जगह रे एमदी कनेक्ट हेची तो से जिंसटा से कहले जे दीज वर कनेक्टेड देन थर्ड गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स इन इंडिया इंडिया रे रॉक सिस्टम जब तमे पढ़थिबो गोंडवाना रॉक्स विषय मु क्लास रे पढ़ैची तो से जो गोंडवाना रॉक्स रहला सेगोरा को नॉट जस्ट इन इंडिया अलगा अलगा जगह रे भी देखिया को मिले टिलाइट डिपॉजिट भी गोटे एविडेंस जोटा कि हमरो कोन कोन ग्लेशियर रु बनी थाए ग्लेशियर इरोजन करके आनिबो तापरे जो डिपॉजिट गोरा छाडथियो सेटा को हमें टिलाइट्स होचे टिलाइट डिपॉजिट जोटा तो से सब जिंस भी बहुत सारा एविडेंस तो ऑल थ्री आर करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट कोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन स्टेटमेंट बेस्ड द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar regions. Statement 2 कौन कहूची subpolar, subtropical and temperate areas have less dry winds. Which one of the following is correct? Both statement are correct. 2 explains one.
both are correct but 2 does not explain 2. 1 is correct, 2 is incorrect, 2 is incorrect, 1 is incorrect, 2 is correct. Go. Okay. So C very good. चलो देखिए कौन सी. So amount of dust particles. तो हम कौन कौन सी एटमोस्फियर रे हमर डस्ट पार्टिकल जो सस्पेंड हेगी रहउची तार अमाउंट कोठी अधिक अछि कोठी कम अछि. तो सी एक्चुअली ये जो 2025 रे बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी हमर जो फिजिकल ज्योग्राफी रहला सेई बुक रु डायरेक्टली उठिछि. एटा गोटे क्वेश्चन हमर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला क्वेश्चन रहला एटा भी सही भलिया. ओके. तो दिस दिस एंटायर क्वेश्चन तमे जदी एनसीईआरटी बॉल से पढिचो 11th एनसीईआरटी कर दो आराम से. सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज रे इक्वेटोरियल एंड पोलर एरिया रु डस्ट पार्टिकल अधिक थाए. दैट इज ट्रू. बट काहे इक्वेटोरियल रीजन रे हमें कोन देखुचे ना एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी डे वी आर विटनेसिंग रेनफॉल. तो से जो रेनफॉल टा होची से कोन करिवो तमे सब बेले घरे सुनथियो जे सीजन रो फर्स्ट वर्षा रे घरु बाहर को जिबा को मना. काहे कि ना जहां भी पॉल्यूटेंट सबु हमर एटमॉस्फेयर रे उडुथबे they will mix with the rain water and से rain water it will get polluted ता जरे टॉक्सिक केमिकल्स भी क्रिएट हे पारे एसिड भी क्रिएट हे पारे. एसिड रेन जोटा हमें कहूचे एसिड रेन कोन होची एयर रे जो SO2 NO2 रहउचनी से मानन से तो मिसी कि तो एसिड रेन करूची नॉर्मल रेनफॉल टा. तो सेइति पई कुआ हुए राइट. तो से जो वर्षा हैला तो जदी भी डस्ट पार्टिकल किछि उडी की जाइथिबो से एरिया रे किछि भी कोनोसी भी रीजन जोगु उडिला से कौन सांगे सांगे सेम डे रे वर्षा जोगु इट विल अगेन फॉल डाउन सस्पेंडेड हे की रहबो. तो अमाउंट विल ऑब्वियसली बी लेस. पोलर रीजन रे काहे कि पोलर रीजन रे तो एमती वर्षा वर्षा हुए नहीं सर. पोलर रीजन रे होबा न होबार रीजन होची द एंटायर पोलर रीजन इज आइस कवर्ड. पोलर रीजन रे एमती बहुत ही कम लोकेशंस थिबो जोठी कि आइस कवर तमे देखिया को पाइबोनी. एंड से जगह रे भी जो थिबो सेठी सॉइल ता एते ये ही नथियो जे माने इरोजनल एक्टिविटीज सेते अधिक न थाए. हमें इरोजन विषय जतले पढुले जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस विषय रे क्लास रे तम मनंगर मने थिबो जे कोन ना टेम्परेचर अधिक रहिले रेनफॉल अधिक रहिले इरोजनल एक्टिविटीज ता अधिक होवे. पोलर रीजन रे टेम्परेचर कम रेनफॉल तो बेसी नो प्रेसिपिटेशन होची बट snowfall doesn't really result in too much of कौन कहबा इरोजन राइट. तो सेही जो इशू जो कोन सेठी इवन डस्ट पार्टिकल भी कम भी थाए. एक रे तो आइस कवर्ड पूरा एंटायर रीजन तासे तो डस्ट पार्टिकल रा अवेलेबिलिटी भी कम थाए. तो सेठी पई सेठी रुइन. इन केस ऑफ सब ट्रॉपिकल एटा पूरा ड्राई एरिया प्लस हाई टेम्परेचर रहउची राइट. ये सब ट्रॉपिकल एरिया रे हमें डेजर्ट्स देखुचे बेसी खाइबा वाला नु थार वाला ठीक अछि. तो एमती सिचुएशन में कहूँ ड्राई रहिले सॉइल पार्टिकल्स दे आर लूज टिके भी विंड हे गले इट विल ब्लो इट राइट. तो अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल अधिक रहबो. टेम्परेट एरिया रे सर कोन पई होउची अधिक कंपेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर टेम्परेचर अधिक अछि. कंपेयर टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर कम अछि ठीक अछि. काहे कि ना टेम्परेट एरिया रे हमें ईयर राउंड वर्षा देखुने तार डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन मिलियो डिस्टिंक्ट वेट सीजन मिलियो डिस्टिंक्ट हॉट सीजन मिलियो डिस्टिंक्ट कोल्ड सीजन राइट. टेम्परेट एरिया रो कैरेक्टरिस्टिक होची एटा. तो जो पॉइंट रे तासी तो आउट रीजन कोन देखो
वर्षा तो होउची फिर भी कोस्टल एरिया रे भी किछिटा जगह रे रेगुलर बेसिस रे वर्षा हुए बट जिनस कोन एठी लैक ऑफ वेजिटेशन होची मेन रीजन ठीक अछि लैक ऑफ वेजिटेशन आमे टेम्परेट एरिया रे बहुत ही बड़ डेंस फॉरेस्ट आमे देखिया को पाउने आमे सेठी देखिया को पाउचे ग्रासलैंड्स विथ वेरी लेस अमाउंट ऑफ ट्रीज राइट एज अ रिजल्ट कोन ना सेही जगह रे जो ड्राई सीजन जतळे आसीयो समर सीजन जतळे आसीयो सेही पॉइंट रे कोन होबो ना द ग्रासेस विल डाई टेम्परेचर टिके बढ़ी जीवो ग्रास गुरा को मर जिवे एज अ रिजल्ट कोन होबो इजीली डस्ट उड़िबो ओके तो सेति पई एठी less than subtropical but more than equatorial and polar so statement 1 टा हमरो करेक्ट हला subtropical and temperate areas have less dry winds अच्छा subtropical and temperate area टा हमरो कोठ रहला काला अर्थ इक्वेटर subtropical and temperate ए पार्ट टा एठी कोन रहउची हमरो वेस्टर्लीज ता से तो कोन रहउची एठी वेस्टर्लीज ता से तो कोन रहउची हमरो subtropical high pressure belt तो ए जो रीजन रहला एठी कोन होची एयर इज सबसाइडिंग एयर जदी सबसाइड करूची एठी कोन होबो obviously the wind will not be wet or wind will not be moist तळु को आसले it will be dry high pressure situation create होची तो सेति पई this is not dry less dry no it is dry okay so statement 2 होची incorrect answer C चलो next question consider the following statements statement 1 in January the northern hemisphere the isotherms bend equatorward while crossing the land masses and poleward while crossing the oceans. Second statement कौन कोजी? In January, the air over oceans is warmer than that over the land masses in northern hemisphere. Again, say both 1 and 2 correct. 2 explains 1. 1, 2 correct. 2 does not explain 1. 1 correct, 2 incorrect. 1 incorrect, 2 correct. So choose the answer. Okay. चलो कौन दीजिए January रे northern hemisphere रे isotherms bend towards the equator over land mass. ठीक है जाउची the lines are visible देखो एटा होची हमर इक्वेटर जाईची राइट this is obviously northern hemisphere it देखो these lines are the isotherm एटा हला फर्स्ट कितने डिग्री दे 20 डिग्री धर दियो देखो going like this तापरे this is the continental part okay क्या होची continental part entire region is continental अछि एठी कोन होची
ओशन ओशन आसला ओशन रे ऊपर को गला देन कॉन्टिनेंट रे तळको आसला देन तापरे कॉन्टिनेंट रे तळको आसला ओशन रे गोइंग टुवर्ड्स पोल देन कॉन्टिनेंट रे गोइंग टुवर्ड्स इक्वेटर तापरे सेम गोस फॉर दिस राइट so all the line isotherms they are exhibiting that characteristic ठीक अछि सेटा हम बुझी गले हां काहे कि ये characteristics ता से माने exhibit करछन this second statement is the correct explanation of this कोन ना जनवरी रे देखो जिंस होची कोन एडा क्लाइमेटोलॉजी पढिला मात्रे हमें जतल टेम्परेचर वगैरह पढुचे माने बेसिक जिनसा हमर मन रखे कोन अछि टेम्परेचर रिलेटेड लैंड heats faster and cools faster whereas water bodies they heat up slow and cool down also slow तो जितबले विंटर आसीबो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रे लैंड कोन हो जल्दी जल्दी ठंडा हो जिवो तो एंटायर लैंड ता जितबले जल्दी ठंडा हो जिवो ओशन रे कोन थिबो टेम्परेचर टिके अधिक थिबो आमे जदी गोटे कोन कहबा आ गोटे जिंस जो पार्टटा लैंड रो इक्वेटर पाखु को रहिबो दैट विल बी मोर हॉट कंपेयर टू द लैंड दैट इज फार्दर अवे ओशन रे कोन रहइबो ओशन भी ए पॉइंट रो टेम्परेचर ता अधिक रहइबो एटा भी तापरे धीरे धीरे पोल वर्ड कमी कमी जिवो बट जिंस होची लैंड रे जति टेम्परेचर रहइबो सेटा कंपेयर टू द ओशन विल बी लेस ठीक अछि तो सेहिति पई ही हमें आइसोथर्म गुरा का बेंड हवा देखुचे so here our answer is option A okay चलो next question को जीवा consider the following statements statement 1 kon dechi in the context of the effect of water on rocks chalk is known as a very permeable rock whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock then second statement chalk is porous and hence can absorb water statement 3 clay is not at all porous so both 2 and 3 are correct and both explain one both 2 and 3 are correct only one explains one only one of 2 and 3 are correct and that explains statement 1 neither 2 nor 3 is correct cool 7C okay C okay very good so C kon goju only one of the statement 2 and 3 is correct and that explains statement 1 now देखो जदि तमे इवन जानि न पाठ जानि न जाइचो एग्जाम दो कौन लिखी स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट अछि हमो कोन पचारि 2 एंड 3 भितर हमो देखियार अछि बोथ करेक्ट की बोथ इनकरेक्ट की गोटे करेक्ट सेटा हमो देखियार अछि तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हमें कंसीडर कर दवा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स chalk is known as a very permeable rock permeable रो माने कोन ता थ्रू दे की पानी जाई पड़तो राइट तो इट जदी हमें ड्रा करिवा लेट्स अज्यूम एटा होची rock 1 rock 2 ओके तो एठी कोन होची पार्टिकल को राका हमरी क्लोज क्लोज राइट बट एठी rock 2 पार्टिकल को राका हमरी डिस्टेंस रे तो भितर गैप्स अछि बहुत या भितर बहुत कम गैप अछि देखो नाउ इन दिस केस कहबो दिस इज लेस परमिएबल या भितर पानी जाई परिवनी इजीली बहुत कम अमाउंट रो वाटर जीव एठी टिके रहबो ए जो छोटे छोटे गैप अछि ए जागा गुरा करे पानी रहबो जदी रहबो राइट बट हियर हमें कोन देखिया बहुत सारा रही परियो बहुत बड़ गैप अछि तो दिस इज इजीली परमिएबल बाय वाटर हां कि नहीं तो एठी भी लिखी छी कोन chalk is known as very permeable rock
clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. ଆମର ଦେଖ chalk is porous and hence can absorb water, ଏଇଥିପାଇଁ ସେଟା permeable ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି clay is not at all porous, not at all porous ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲୁ ବି ଅଛି ନା ସେଠି ବି ରହି ନଥାନ୍ତା, ରାଇଟ୍, କିଛି ବି ତା ଦେହରେ ଗ୍ୟାପ ନଥାନ୍ତା, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ଏନେ ପାଣି ପୁରେଇବି ୟା ଭିତରେ ପାଣି କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବନି, ସେଇଟାକୁ କହୁଛେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଣ କହିବା opaque or rather not at all porous, बट एठी कौन लिखिछि least permeable, टिके तो permeable रहउछु बोली लिखिछि, तो हमें एटा को इनकरेक्ट बोली मारी परिया, राइट। सो जदि भी तमे पढ़ी नथिबो कॉमन सेंस लगे कि एटार भी आंसर करि परथांतो, ठीक अछि। तो हमरा आंसर कोन हो ऑप्शन सी। चलो आगु को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन, consider the following statements, without the atmosphere temperature would be well below freezing point everywhere on the surface of earth, heat absorbed and trapped by atmosphere maintains our planet's average temperature, atmosphere's gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping radiation. Which of the given are correct? 1 and 2, 1 and 3, 1 and 2, 1, 2, 3, 2 and 3. So try to answer. So all correct, all correct. क्या डिस्कस करिवा, फर्स्ट स्टेटमेंट कौन दीजिए, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। So this is our sun, right? It hoଉଛି अर्थ, ओके। तो अर्थ रो लोकेशन टा त एमती रहइबो, माने अर्थ विल बी लाइक दिस, गोटे हाफ विल बी फेसिंग द सन, गोटे हाफ रे हमर सनलाइट आसी पडुथो एमती, राइट, आउट हाफ रे नो सनलाइट। एटा को जदि माने हमें जो हीट बजेट विषय रे पढुचे बेसिक्स रे, सेथरे हमें कोन पढुचे, is it only the atmosphere that is absorbing? No, right? एटमोस्फियर ही एब्जॉर्ब करेनी, कौन हुए ना सन रेज गुराक अर्थ र टेरेस्ट्रियल पार्ट ही एब्जॉर्ब करे, राइट। द लिथोस्फियर अब्जॉर्ब द शॉर्ट वेव रेडिएशंस, तापर ताकू से लॉन्ग वेव रे कन्वर्ट करके रेडिएट करिवो, जोटा कि एब्जॉर्ब हुए हमरो ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड भलिया, राइट। सेहिति पई हमरो रात्रि रे भी अर्थ रे गोटे टेम्परेचर लेवल मेंटेन ही, से जो एटमॉस्फेयर अच्छी बोली हमरो एवरेज टेम्परेचर
is somewhere around 18 degree Celsius. जदि न थांता से केस रे कोन थांता एवरेज टेंपरेचर ही थांता -15 degree Celsius. But situation एटा जे the side facing the sun will have very high temperature. The side face away from the sun will have very low temperature. Average रे हमें एतिकी पाइबा. But this region will have very high temperature. This region will have low temperature. ठीक अछि. So this first statement जोड़ा तुम माने कहलो जे करेक्ट अछि बोली, that is actually incorrect. ठीक अछि. Statement 1 is so statement 1 is incorrect. ठीक अछि. तापरे statement 2, heat absorbed and trapped by the atmosphere maintains the average temperature. कहली एबे सेति पई ही average temperature ता 18 degree Celsius रे अछि. Okay, so statement 2 correct. Who gases like carbon dioxide also is correct. So 2 and 3, that is option D is the correct answer. ठीक अछि. चलो देखो जदि तुमको डाउट होची आ कोठी तमे पढुचो जे statement 1 को से माने करेक्ट होचन जिंस होची एटा जे statement 1 सेतबळे करेक्ट हे थांदा जेतबळे एवरेज टेंपरेचर लिखा हे थांदा एंड एवरीवेयर जदि एवरेज टेंपरेचर होची लोकेशन रा हमर सेतरे फैक्टर असला लोकेशन रा फैक्टर आसुनी ना तो दिस विल बी इनकरेक्ट. ठीक अछि. जदि हमकु देखो तुम क्वेश्चन टा जे क्वेश्चन फ्रेम करछि ता मुंडा भीतर टिके पसिया ट्राई कर. ये जदि पचार थांता जे without the atmosphere average temperature would have been well below freezing point on the surface earth surface, right? सेतिक लिख थांता बट सी कोन लिखिछि without atmosphere temperature not average temperature would be below freezing point everywhere on the surface of earth. एटा तो हबन, राइट? सो से हिसाब रे तमे एटा को सॉल्व करिवो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. The World Bank warned that India could become one of the first places where wet bulb temperature routinely exceeds 35 degrees Celsius. Which of the following statements best reflects the implication of above said report? Peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclones and droughts. The survival of animals, including humans, will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult. Choose the correct option. 1 only, 2 only, both, neither. Answer को जल्दी जल्दी and share the class तम सांगवानଙ୍କ ସହିତ. Okay, one is saying both, one is saying option B. Let's see. Now, Peninsular India will most likely suffer from amau kon diji World Bank ର ଗୋଟେ report କହିଛି कोन ना first places where wet bulb temperature routinely exceed would be in India. Okay. Now, first हमें देखिए wet bulb temperature कोन. देखो
नॉर्मली आमे जदी गोटे थर्मोमीटर यूज करछे थर्मोमीटर टाइम दे रहला राइट द थर्मोमीटर ता भितरे ई जगह रे एमती गोटे बल्ब थिबो ता भितरे रहला कोन कोंदी पारद रहइबो एंड राइज करिवो तार मार्किंग्स थिबो से हिसाब रे हमें देखिबा जे वेदर इट इज 45 डिग्री सेल्सियस कि 35 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर देखिबा सेम नॉर्मल हां इन केस ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर कोन होची ता चारि पटे ए जो बल्ब रहइला ता चारि पटे गोटे उदा कन्ना उड़ाई जाउची ओके नाउ दिस वेट क्लॉथ कोन होची ना सेई जो वेट क्लॉथ गोडे की हमें जो टेम्परेचर ता बाहर करछे दैट इज व्हाट वी कॉल एज द वेट बल्ब टेम्परेचर नाउ ता पछरे जो मेकानिज्म रहउची तार काम कोन देखो हमर बॉडी रे स्वेटिंग हुए राइट कौन पाई जितेबाला आमको गरम लगे आम स्वेटिंग हुए शीत दिन तो आम स्वेटिंग हेनी आमको जो ठंडा लगुव एसी रे बसवा किसी कम कर ठंडा माने आमर स्वेटिंग हेनी राइट बॉडी जदि कोल्ड अच्छी हाँ एसी रूम रे बसिक तुम जदि वर्कआउट वगैरह कर बाहरी पारे स्वेटिंग हो पारे राइट अलग कथा नॉर्मल सिचुएशन झाड़ बाहर कौन पाई बिकॉज तुम बॉडी गरम है बॉडी गरम है स्वेटिंग हेले व्हाट विल बी द रिजल्ट द स्वेट विल इवापोरेट using the heat from your body as a result तम बॉडी रु हीट कमिवो एंड तम बॉडी टेम्परेचर कमिवो राइट नाउ ए जो इवापोरेशन रो रिलेशन आमे गोटे क्लास जियोग्राफी रो जेतल तमे ह्यूमिडिटी विषय रे पढतो हम देखुचे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऊपर रिलेशन रहूची रिलेटिव ह्यूमिडिटी जदी अधिक रहिबो हमर इवापोरेशन विल रिड्यूस जदी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक रहला बट जदी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रहउची इवापोरेशन रेट ता बढ़ी जीवो क्लास रे मने पकाओ प्रणति क्लास रो तो मने थिवो राइट ते जो ह्यूमिडिटी एंड इवापोरेशन रो रिलेशन रहउची सेटा को ही नै कि हमें ए जो वेट बल्ब आउ ड्राई बल्ब टेम्परेचर रो डिफरेंस ता मापुछे हां ड्राई बल्ब रे हमें खाली टेम्परेचर केते अछि जानले हमकु ह्यूमिडिटी रो इंपैक्ट ता जणा पडु ह्यूमिडिटी केते अछि कोन अछि ता जोगु टेम्परेचर रे चेंजेस कोन होउची से जिंसटा हमें जानि पाउ ना एठी जो वेट क्लॉथ रहिला सेटा कोन हबो से जो बल्ब गरम हैला एयर रु राइट से जो एयर रे हीट थिला ता हीट को नै कि बल्ब ता गरम होउची जो सेटा पई द लेड इज राइजिंग द मर्क्यूरी इज राइजिंग एंड मर्क्यूरी राइज कला परे कोन होउची हमें टेम्परेचर इंडिकेशन पाउचे केते अछि जदी ए जो टेम्परेचर ता एठी राइज करूची सेटा कोन हबो इवापोरेशन एठी हैला इवापोरेशन हेले कोन होची से कोन करिवो ए जो पॉइंट रे टेम्परेचर थिबो से टेम्परेचर से जो हीट थिबो से हीट को एब्जॉर्ब करके ही से कूल डाउन इवापोरेट हबो एज अ रिजल्ट कोन हबो जदी 45 डिग्री देखिया कथा देखैबो कोन 35 डिग्री राइट नाउ ए जो 35 डिग्री जो लिखा है ना यार इंपोर्टेंस एया जे जदी हमें 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर देखुचे ई पॉइंट रे कौन ह्यूमिडिटी विल बी वेरी हाई नियरली 75 डिग्री 75% relative humidity and dry bulb temperature will be somewhere between 40 to 45 degree celsius तो बहुत अधिक टेम्परेचर अच्छी एंड बहुत अधिक ह्यूमिडिटी अच्छी तो आम बॉडी गरम होची किंतु जो स्वेट क्रिएट होची ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी सेटा सुखुनी तमे फील करथिबो जे जेबे ह्यूमिडिटी अधिक होता है बॉडी खाली चिप चिप लागियो राइट तो से जो चिप हे कि कोन होची ना तमरो तमको बहुत अनइजी फील हुए राइट तो से जो जिंसटा दैट विल गो टू द एक्सट्रीम एंड किछि आवर रो जदी कंटीन्यूअस एक्सपोजर पाइबो ना तमे पानी पिउथाओ जहा करथाओ इट वोंट डू एनी गुड यू माइट हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम्स इवन तमर लाइफ को भी रिस्क आसी पारे ठीक अछि नाउ कोन होची फर्स्ट स्टेटमेंट को पेनिनसुलर इंडिया will most likely suffer from flooding, tropical cyclones and droughts. Yes, this is a possibility. But is it the result of this 35 degree Celsius wet bulb temperature directly? Directly हमको पचारछि कोन ना ए जो स्टेटमेंट देछि ए स्टेटमेंट एस्पेक्ट रे हमको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 रो करेक्टनेस देखियार अछि ना सी जदि आमे देखिबा हाँ कोन होची वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होची ता माने कोन ह्यूमिडिटी बहुत अधिक रहइला मॉइस्चर अछि एयर रे टेम्परेचर भी बहुत अछि
से हिसाब रे हमें देखिया जदी हां इट मे रिजल्ट टू वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल जोटा की रिजल्ट करियो फ्लड रे साइक्लोन रो येटा बढ़े दबो कारण सी सरफेस टेंपरेचर बढ़ी गला मॉइस्चर अमाउंट भी अधिक अछि सेटा भी हे परियो बट ता सहित कोन होची ड्रॉट्स से जगह रे कोन ना हाई टेंपरेचर रहला हीट वेव आसला हीट वेव जोगु ड्रॉट भी हे परियो राइट so such kind of things might happen but এই সিনারিও রে this is less likely ঠিক আছে statement 1 টা ठीक है less likely রହୁଛି statement 2 survival of animals including humans will be affected this is entirely correct ठीक ଅଛି b c दीटा को भितरु कोटा भी आंसर हे परिवो c is more appropriate मु कहबी c होची 80% करेक्ट तमे धर परिवो सॉरी उल्टा कहली C को तमे कहि परियो 20% करेक्ट होवार चांस अछि रो 80% ओके so only 2 टा is more correct in this case चलो next question consider the following countries UK Denmark New Zealand Australia Brazil how many of the above countries have more than 4 time zones सेटा कहबो आंसर करो देखो एमती टाइप रो क्वेश्चन जो गुराक तमे आगुरु मन देखो ए क्वेश्चन टा बहुत कम पिला एमती कि जाइथबे जो माने घोसी जाइथबे जे को कंट्री रो केतडा टाइम जोन अछि बहुत कम पिला तो से केस रे तमे कोन करबो ना निजर टिके बुद्धि खटेया चेष्टा करबो राइट माने मुंड खटेया चेष्टा करबो खट मुंडेया चेष्टा करबो राइट तो से केस रे तमे जदी टिके भाबिबो बुद्धि लगेबो निजर यू विल बी एबल टू अराइव एट द आंसर ठीक अछि आंसर करो एटा all except Brazil with 4 okay so United Kingdom बहुत ही स्मॉल कंट्री स्मॉल साइज तो याद रे चैप्टर रो अधिक टाइम जोन हवा डिफिकल्ट राइट but the caveat is has overseas right सेहिथि पई यूके रो सबुठो अधिक एमान भितरे यूके हैज 10 टाइम जोन ठीक अछि देन डेनमार्क रो भी इन स्मॉल साइज बट इट आल्सो हैज ओवरसीज टेरिटरीज सेथि पई यार भी मोर देन 4 अछि ठीक अछि I think it has some 8 time zones okay तापरे ना ऑस्ट्रेलिया हैज 8 डेनमार्क हैज 5 okay ऑस्ट्रेलिया केस रे ऑस्ट्रेलिया yes it is continent level तो तारा जो mainland रे it has I think 4 time zones 4 or 5 but ता सहित एई साइड गुरा करे जो ओशिनिया रीजन रे एठी बहुत सारा अछि कोन कोंती आइलैंड्स अछंती एंड ए साइड रे भी अछंती जो माने की पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया सेति पई एटा रे भी अधिक अछि मोर देन 4 in case of Brazil we have total 4 time zones but it is asking more than 4 so Brazil हबन New Zealand ता केस रे we have 3 लंडा एट और छोटी आइलैंड ना तो ई पाखरे टास्मेनिया पाखरे so that is not having a very big ये कोन टाइम जोन so this is incorrect 1 2 and 4 so only 3 option C okay चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एमती टाइप रो क्वेश्चन तमे जदी जानि पारुछो देन द राइट वे रे तमे भाबी पारुछो देन अटेम्प्ट इन द एग्जाम अदरवाइज स्किप कर दो सिमिलरली हमें जो स्टार्टिंग रो गोटे करनथले लेक विषय रे
सब लेक विषय तो तमे जानि नथिबो मैपिंग क्वेश्चन गुरा करे प्रॉब्लम होची सेटा जे तमे जदी जानि छ देन आंसर जे हां एई लेकटा एई कंट्री रे अछि एई कंट्रीटा तो इक्वेटर पाखरे नाही सेई केस रे तमे आंसर कर परिबो तंगनाइका केस रे तमे जानि छ जे तंगनाइका रु जाउ नथला बट विक्टोरिया रु जाय तो सेटा तमे एलिमिनेट कर दबो जानलो तमे जो पाटोस डी लागोस्टा सेटा जानथिबो तापरे टनले सापटा तमे जान न थाई पारो राइट तो सेई भलिया माने सेई भलिया क्वेश्चन करा जो तमे जानि न फैक्चुअल क्वेश्चन तमे निजर लॉजिक लगे की करि परनो स्किप कर दो ठीक अछि सेम गोस फॉर ओपीएससी प्रीलिम्स ठीक अछि नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स a nadir in Siberia and Nome in Alaska are a few kilometers from each other. But when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. Okay. When it is Monday in Anadir, it is Tuesday in Nome. Koda correct achi. One only, two only, both, neither. Ko answer ko. चलो चलो आंसर करो. Okay. चलो. Now, see, Anadir in Siberia, Alaska is in Nome. So this question is related to the international date line. ठीक अछि. Ideal. एटा हमर रहला साइबेरिया. Here we have Alaska. Right. Now, कौन कहूची? Obviously, statement 1 is correct because date line जेतु रहला एपटे गोटे डेट रहबो एपटे आउटे डेट रहबो. If we have so basically date difference. ठीक अछि. Next statement कौन दूची? When it is Monday in Anadir, Tuesday in Nome. Anadir in Siberia, एठी कहूची Monday अछि. तो Alaska रे कौन कहूची? It will be Tuesday. Now, when we cross the international date line, हमरो date change. केमिति हुए? हमें जदी going west, if we are going west, we gain a day. Gain a day माने कौन होबो? Date टा गोटे माइनस हे जिवो तमरो जेतोल तमे west को जिवो, west को cross करियो. But when you cross towards the east, you lose one day. तमरो date गोटे add हे जिवो. तमे थिलो को दिन ना लेट्स से तमे अछ 3rd January. तमे जदी लाइन क्रॉस करदला यू विल गो इनटू 4th Jan. तमरो 3rd Jan टा उडी गला 24 घंटा उडी गला तमरो. बट जदी तमे एपटे कोठी अछ सेम 4th Jan रे एठी अछ एपटे हे जिवो 3rd Jan. नाउ मंडे जदी 4th January रहला 3rd January को ट्यूसडे होबो? नो, इट विल बी संडे. राइट. So here statement 2 is incorrect. Answer is A. Okay. Very good. Pranati, Devika. Chalo. Next question. Consider the following pairs. कौन देची? Country देची and resource को resource रे सेटा rich. Botswana, diamond. Chile, lithium. Indonesia, nickel. Go.
राजधानी कॉलेज तो आंसर को all are correct. Okay, so yes, the answer here is option C, all are correct. Now diamond case रे कौन होची diamond रे हमें दीटा कंट्री रो नाम मन रखे अछि होची रशिया और बोट्सवाना, right? Now Russia it has more diamonds, right? Quantity रे Russia is the better one, but in quality Botswana is the better one. Okay, Botswana रे हमें better quality रो diamond पाउचे, whereas in case of Russia we find more diamonds but they are not as good as the Botswana ones. ठीक अछि, तो बोत्सवाना रे फिर भी से जो भलो क्वालिटी रो मिलची क्वांटिटी भी भलो अछि. रशिया होची नंबर 1 इन रिजर्व्स, बोत्सवाना होची नंबर 2. ओके, चलो तापरे कोन, तापरे रहला हमरो लिथियम. लिथियम रे कोन होची, लिथियम रे हमरो कोन रहिची गोटे तमे सुनथियो लिथियम ट्रायंगल कथा, राइट? लिथियम ट्रायंगल पिला बेले हम कोन करथले एम गोटे ट्रायंगल बनै दुथले ए एमटी ना दे दुथले, राइट? ए रे कोन अर्जेंटीना या ए, right? So these are the part of the lithium triangle. जोठी हमरो कोन पाउचे हमें सालार दे उयुनी, सालार दे अटाकामा एमती बहुत सारा सॉल्ट डिपॉजिट्स पाउचे जो थ्रू कि हमको लिथियम बहुत अमाउंट रे मिलुची, राइट? नाउ एई जो कोन रहला चिली ता सहित कोन रहउची जिंस होची कोन, चिली होची हाईएस्ट रिजर्व, अर्जेंटीना होची थर्ड हाईएस्ट रिजर्व, सेकंड हाईएस्ट रिजर्व होची ऑस्ट्रेलिया रिजर्व रे, ठीक अछि. दिस इज एज पर द रिजर्व्स, बट प्रोडक्शन रे हमें जदी देखिबा जे कोठी अधिक अमाउंट रो लिथियम प्रोडक्शन होची सेडा हिजबो ऑस्ट्रेलिया, देन चिले, देन चाइना. ओके, so these three are the highest in case of production. काहे कि चिले रे काहे कि एते अधिक रिजर्व थाई कि भी हमें काहे कि देखिया पाउचे जे कम प्रोडक्शन बिकॉज़ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक अछि. इट इज अ पुअरर कंट्री compared to these countries ऑस्ट्रेलिया हो कि चाइना हो, ता कंपैरिजन रे चिली रे ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बहुत ही कम अछि, तो से माने प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट करि पारंतिनी द लिथियम दे नीड. ओके, नाउ इन केस ऑफ निकेल को होची, निकेल रे इंडोनेशिया it has nearly 1/4 of the reserves. Okay, when 1/4 through 1/5 ଭିତରେ ରହୁଛି 22 ki 23% of the total reserves that we find are in Indonesia. तापरे followed by Australia. ठीक अछि, so these are the reserve माने ये जो रिसोर्स पूरा का विषय है हमें डिस्कस कर, राइट? तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following pairs region को कंट्री रे पाउ Mallorca in Italy, Normandy, Spain, Sardinia in France. तो कौन हबो आंसर को, okay, very good, correct answer is none.
मलोरका इज इन स्पेन। देखो ये जो मलोरका टा से जगह माइनोरका भी लिखा था हमें आउट अछि मजोरका बोली ए दिटा कहउछि दिटा आइलैंड स्पेन रो नॉर्मंडी फ्रांस रो गोटे पेनिनसुलर रीजन फ्रांस रो वेस्टर्न साइड को अछि जदि तमे वर्ल्ड वॉर विषय रे जानथिबो नॉर्मंडी बे वाला ये रे बहुत सारा मूवीज बनछि स्टॉर्मिंग नॉर्मंडी राइट देन वी हैव सार्डिनिया सिसिली एगुरा सब इटली रो गोटे गोटे आइलैंड्स ठीक अछि एटा बेसिक वर्ल्ड मैपिंग क्वेश्चन जदि पढ़िथिबो कर परिबो जदि पढ़नथिबो कर परिबो then next question consider the following statements about turmeric during the year 2022-23 India is the largest producer and exporter of turmeric in the world more than 30 varieties are grown in India Maharashtra Telangana Karnataka Tamil Nadu are major turmeric producing states in India so को आंसर कौन होबो one answer we have gotten anyone else okay so a question da actually current affair ru thila and also comes under agriculture okay not exactly current affair but contemporary affair कहि परियो कारण 2025 रे 2022-23 रो पचारतला कोन ना एटा पीआईबी रो उटा आर्टिकल नु डायरेक्ट छपा है ओके नाउ एतरे कोन लिखा हैतला ना इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड ठीक अछि सेतरे एटा भी लिखा हैतला मोर देन 30 varieties of turmerics are grown in India पर गोटे पुनी पीआईबी रे आर्टिकल बातला 2025 अराउंड सेतरे लिखा हैतला 30 varieties ठीक अछि these 30 varieties they are grown in 20 plus states okay से भितरे leading producers are Maharashtra Telangana Karnataka and Tamil Nadu all the three are correct now मते को ओडिसा रो गोटे हल्दी जीआई टैग पाइतला 2019 व्हाट इज दैट को हल्दी को डिस्ट्रिक्ट रो जीआई टैग कोडा को मिलतला very good on the mark okay so chalo so with this we are done with 2025 questions now we'll go into 2024 okay first question longest border between any two countries in the world is in between A Canada and USA B Chile and Argentina C China and India D Kazakhstan and Russian Federation yes Devika 2019 very good बाकी समस्त कौन एते फोकस पढ़िबारे जे आंसर दे परनो आंसर दवा को भी डिस्ट्रैक्शन होची दीटा पिला खाली आंसर दउचंदी चलो आंसर दियो जल्दी समझते
Canada, USA, A. So this is the correct answer. चलो now ए टाइप ऑफ क्वेश्चन एटा गोटे कोन माने जो फैक्चुअल जीके टाइप क्वेश्चन हमर एसएससी जीके टाइप क्वेश्चन तो सेही भलिया क्वेश्चन मे भी जदी हमर ओपीएससी रे आसीबो कोन आसीबो इंडिया रो बॉर्डर विषय तारा बॉर्डर विषय रे भी आसीबो अच्छा मते कहलो स्मॉलेस्ट लैंड बॉर्डर का भीतर अछि स्मॉलेस्ट लैंड बॉर्डर का भीतर अछि ओके नाउ इंडिया केस रे कोन हम पजरिबो ऑर्डर को कंट्री सहित हमरो केते अधिक बाउंड्री अछि बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान तापर नेपाल म्यांमार से सबू को ऑर्डर रे हमरो अछि सेटा हम पचारि पारे राइट तापर नेक्स्ट होची कोस्ट लाइन विषय रे पचारि पारे इंडिया रो कोस्ट लाइन केते को स्टेट रो सबटो अधिक अछि ओडिसा केस रे कोन पचारिबो ओडिसा रो को स्टेट सहित बाउंड्री अछि कहा सहित सबटो अधिक अछि छत्तीसगढ़ देन आंध्र प्रदेश देन झारखंड स्मॉलेस्ट होची वेस्ट बंगाल कोस्ट लाइन विषय रे पचारिबो कोस्ट लाइन रो लेंथ केते को डिस्ट्रिक्ट रो केते अधिक अछि त एमती टाइप रो क्वेश्चंस पचारि परिबो स्पेन एंड मोरक्को ओके स्पेन एंड मोरक्को केस रे कोन रहउची ना इट इज बिटवीन द ओवरसीज टेरिटरी ऑफ स्पेन राइट जदि स्मॉलेस्ट लैंड बॉर्डर बिटवीन द मेन लैंड ऑफ द कंट्रीज रहइबो सेटा कोन हबो ना सेटा हबो हमरो बोत्सवाना एंड जाम्बिया ठीक अछि तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची consider the following countries Italy Japan Nigeria South Korea South Africa which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates or aging population or declining population तो कोन हबो को एटा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आसुथबो आई होप चलो चलो जल्दी आंसर दियो मे बी ए ओके तो यस ए इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि कोन ए दीटा तो तमे जानिथिबा कथा गोटे होची जापान गोटे होची साउथ कोरिया एंड इटली दिस आल्सो हैज एन एजिंग पॉपुलेशन तक यूरोपियन डेवलप्ड नेशंस रहले तांकर एजिंग पॉपुलेशन होची जापान साउथ कोरिया ए भलिया नेशन मानकर भी हमें देखुचे पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली कोन कहूची birth rate बहुत low रोची and population is declining right then next question को जीवा on the country reason for being in the news Argentina worst economic crisis Sudan war between the country's regular army and paramilitary forces Turkey rescinded its membership of NATO तो कोरा करेक्टली मैच अछि एटा सेतबेले करंट अफेयर क्वेश्चन हिसाब रे पड़ला 2024 रे बट लोकेशन हिसाब रे हमकु देख देले भी गोटे सुविधा हबो तुमको एटे गोटे एग्जांपल हिसाब रे कहि दिए केमिति तमे लोकेशन टाकू माने कोटा कंट्री रे लोकेशन टाकू केमिति पढिबो ठीक अछि so only one pair two all three none which one is the correct answer good afternoon Payal one okay Devika the previous question yes was the answer no एटा को
ए जणे ऑप्शन बी कहले बाकी सब चलो so yes option B is the correct answer. Now Argentina, it has been repeatedly in news for very bad situation of their economy. Sudan re we are seeing a civil war. Turkey, it did not rescind its membership. Now एटा होची करंट अफेयर जिनस तो तुमको करंट अफेयर हिसाब रे जदि क्वेश्चन आसला एमती किछि आंसर करिया पड़िबो तमे ए जो कंट्री गुरा के विषय रे जदि प्लेसेस इन न्यूज केमिति पड़िबो फॉर एग्जांपल लेट्स से टर्की टर्की रे तमे कोन देखिबो लोकेशन कोठी अछि तापरे ए लोकेशन रे नेबर्स देखि देला नेबरिंग कंट्रीज कोन कोन लोकेशन टर्की रे कोन इज बोथ इन एशिया एंड यूरोप यूरोप रे 5% अछि एशिया रे 95% अछि बट इट इज बोथ इन यूरोप एंड एशिया राइट एशिया वाला पार्ट टाको कोन कहूचे हमें अनाटोलिया कहूचे एंड यूरोप वाला पार्ट टाको ईस्ट थ्रास बोली कहउची राइट इस्तानबुल टा ईस्ट थ्रास रे अछि एंड दैट इज द ओनली मेजर सिटी जोटा की टर्की रो जोटा की यूरोप रे अछि नाउ टर्की इज नाउ बीइंग रिटन एज तुर्की तो सेटा भी गोटे जिंस मन रखियो देन नेबर्स किए रहिले ग्रीस ईरान इराक बुल्गारिया ए सब जिंस रहिले राइट नेबरिंग कंट्रीज कोन कोन रहिले पाखरे जदी सी की ओशन किछि अछि ब्लैक सी रहिला सेठी राइट तापरे हमरो ब्लैक सी सहित एजियन सी मेडिटेरेनियन सी एगुरा सब रहिला तापरे ता पाखा पाखी जदी किछि स्ट्रेट अछि स्ट्रेट गुरा के विषय रे पढ़ दो सी सहित स्ट्रेट भी मिसै की पढ़ दो देन रिवर्स कोन कोन रहउची ता देरे याद रे हम देखुचे यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस रिवर रहउची राइट और टिग्रिस जा भी तमे प्रोनाउंस करछो तापरे कोन जदी किछि माउंटेन रहिला कि डेजर्ट रहिला से सब जिंस भी तमे पढ़िबो दैट इज हाउ यू प्रिपेयर द लोकेशन इन न्यूज ओके आ जदी किछि इंपोर्टेंट सिटीज विषय आसु से सिटीज गुरा विषय भी पढ़ दबो then consider the following statements. Statement 1, Sumedh pipeline is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipments to Europe. Statement 2, Sumedh pipeline connects Red Sea with the Mediterranean Sea. Which one of the following is correct? Both correct, both 1 and 2 correct, 2 explains 1, both correct, 2 does not explain 1, 1 correct, 2 incorrect, 1 incorrect, 2 correct. Wow. समस्त कौन लंच करके घुमौच ना कौन ओय मुएबा बंद कर ए आंसर सर ए ओके समझते ए तो बोथ आर करेक्ट तो यस द आंसर इज ए सुमेध पाइपलाइन गोटे बेसिक पाइपलाइन कौन माने हमर जो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम ऑयल को ट्रांसपोर्ट करिया को फ्रॉम द पर्शियन गल्फ रीजन टू यूरोप पर्शियन गल्फ टा को पाखरे अछि रेड सी पाखरे अछि एंड यूरोप रो मेडिटेरेनियन रीजन को हमर इटली विटली से सब ट्रांसपोर्ट करिया तो बोथ आर करेक्ट एंड टू एक्सप्लेन्स वन ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements the Red Sea receives very little precipitation in any form no water enters the Red Sea from rivers which of the given is or are correct one only two only both oh.
both C. Okay. So yes, the answer here is option C. Red Sea receives very little precipitation in any form. Now, Red Sea ta amaro କୋଉ region ରେ ଅଛି? It is under the subtropical high pressure belt region. ଏ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ତା ପାଖରେ ଉପରେ କଣ ଅଛି? The Arabian Peninsula, ଯୋଉଠି କି ଆମେ desert ହିଁ desert ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତଳେ କଣ ଅଛି? ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଜିପ୍ଟ, ଏରିଟ୍ରିଆ এই ସବୁ ଲୋକେସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ସାହାରା ଡେଜର୍ଟ ପାର୍ଟଟା। So this entire region it receives very less rainfall. ठीक ଅଛି। तो as a result ये जो रेड सी एरिया रे भी बहुत कम रेनफॉल भी हुए। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम एनी रिवर। नो इटी एक्सट्रीम स्टेटमेंट भाबी कि एटा को तमे रॉन्ग भी मारी परिबो। ठीक अछि। बट द थिंग इज कि इट इज करेक्ट। देखो किछि टाइम ती किछि एमिति नुहे जे नो प्रेसिपिटेशन सेमिति तो नहीं, प्रेसिपिटेशन हुए ना। सेई जो प्रेसिपिटेशन जो किछटा सीजनल स्ट्रीम एमिति बाहरी की रेड सी भितर को पसि जानती। बट दीज आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। किछि दिन पई किछि वीक पई ही सेरा क्रिएट हेबे देन सेमाने गायब हिज। तो सेटा को हमें कंसीडर करबानी गोटे रिवर भली सीजनल स्ट्रीम सेमाने बस। So statement 2 is correct here also. Answer is option C. चलो next question को जीवा। According to the Environmental Protection Agency, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emissions? Locomotives using fossil fuels, ships using fossil fuel, extraction of metals from ores, power plants using fossil fuels. अच्छा या भितर कोउटा सोर्स नुह कहि परिबो कि से? आंसर फर्स्ट दियो। कोउटा होची लार्जेस्ट सोर्स आ कोउटा सोर्स नुह सल्फर डाइऑक्साइड रो? गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट किए कहबो? वो सेकंड क्वेश्चन रो आंसर को ए ऑप्शन भितर कोउटा सोर्स नुह जमा कोथरु हमें सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन पाउने? हां को थिंग इज की all four are sources of sulfur dioxide emission. fossil fuel burn कले, fossil fuel burn कले, fossil fuel burn कले, तीनटा करू हमें SO2 पाइबा ही पाइबा। ठीक अछि। ता सहित किछटा मेटल रो एक्सट्रैक्शन जतळे होची, फॉर एग्जांपल हमें स्मेल्टिंग वगैरह करछ। ओके से सिचुएशन रे से जो ओर टा को हमें मेल्ट करूचे ता देरु भी किछटा केमिकल रिएक्शन वगैरह प्रोसेसिंग थ्रू रे केमिकल रिएक्शन रे SO2 भी रिलीज हो। So all the four are sources of sulfur dioxide emission. Okay. Chalo next question go. Consider the following statements. Statement 1, there is instability and worsening security situation in the Sahel region. There have been military takeovers, coup d'etats in several countries of the Sahel region in the past. So statement 1 out 2 deji. Both correct. 2 explains 1. Both correct. 2 does not explain 1. 1 correct. 2 incorrect. 1 incorrect. 2 correct. So try to answer this.
तो देखिए कौन there is instability and worsening security situation in Sahel region. Statement 1 is correct. There have been military takeovers and coup d'etats. आमे देखिले सिचुएशन कोन कोन रोची जेमति कि हमर रहला सुडान साउथ सुडान र ये प्रॉब्लम रोची तापरे एबे टिके आगुरु आमे देखथिले आ गोटे कोडार सिक्योरिटी सिचुएशन आमे छाड़ सोमालिया रीजन सेठी सोमालियन पायरेट्स वगैरह से सब रोचंती एरिट्रिया से सब एरिया रे एमती सिक्योरिटी रीजंस रोची हां व्हाट इज दिस साहेल रीजन हमारा मेन फोकस सेटा रे साहेल कोडा वाला साहेल रीजन this is a transition zone between the Sahara desert and the savanna grasslands. Okay, Sahara desert और savanna grassland भितरे क्या जोड़े transitionary zone. This extends entirely from the west coast to the east coast. East coast रे Red Sea पर्यंत, west coast रे we have Atlantic Ocean. Okay. तो अटलांटिक ओशन रु पूरा रेड सी पर्यंत जाइछि कंट्रीज कोन कोन रहले टोटल रे 10टा कंट्रीज रोचंती ओके 10 कंट्रीज ओवर व्हिच दिस एंटायर रीजन इज स्प्रेड कोन कोन रहले बुर्किना फासो कैमरून तापर हमरो कोन कोन दी मोरितानिया माली देन वी हैव सुडान एंड साउथ सुडान तापर हमरो सोमालिया रोची चैड रोची Eritrea rochi. Okay, all these regions, not exactly Somalia, Eritrea, Somalia and Ethiopia केबे केबे कंसीडर हुए केबे केबे कंसीडर हुए नहीं तो किस जगह तो हमें 10 दिखिया उपाय हो किस जगह 12 दिखिया उपाय हो ठीक है तो 10 मेन ये रोची ओके so that is more acceptable now these are the different regions ठीक है चलो ए रीजन रे हमरो कोन होची ना प्लान करा होची गोटे this region has different lakes like Lake Chad roila एठी गोटे right से Lake Chad जोडा roila सेटा 90% shrink कर साइलान okay it used to be a very big lake तार 90% पळेलान नाइजेरिया चैड एंड कैमरून रे स्प्रेड हेगी अछि बट सेटा बहुत ही कमी गला okay now साहेल रीजन गला then next question को जिबा consider the following statements statement 1 the atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. So, statement both 1, 2 correct, 2 explains 1, both correct, 2 does not explain, 1 correct, 2 incorrect, 1 incorrect, 2 correct. Go, answer कौन होगा? Okay, yeah. The atmosphere is heated. The atmosphere is heated more by incoming solar radiations. No, incoming गोरा कौन? मु एबे टिके आगुरु कहली short wave radiations. Now, greenhouse gases they absorb the long wave radiation. So long wave radiation टा किए छाड़े? Terrestrial radiation छाड़े. So statement 1 incorrect, statement 2 is correct. So option D. Right. चलो. Question को जिवा. Consider the following statements. The thickness of the troposphere at equator is much greater as compared to the poles. At the equator, heat is transported to great heights by strong convectional currents. Statement 1 out 2 rahila. Both 1, 2 correct. 2 explains 1. 2 does not explain 1. 1 correct. 2 incorrect. 1 incorrect. 2 correct. Go. Durga Prasad. Yes. Option D. For the last question, right? That was correct. देखो
जल्दी जल्दी आंसर करो बढ़िया आगु ऑप्शन ए ओके तो यस बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट कोन ना ट्रोपोस्फियर रे हमरो इक्वेटर पाखरे it goes up to 18 kilometer height whereas near the poles it is only 8 kilometer height कौन ପାଇଁ because ट्रोपोस्फियर रे अधिक सनलाइट आसे तो अधिक टेम्परेचर रे तो एयर अधिक ऊपर राइज करे सेति ପାଇଁ ट्रोपोस्फियर रा हाइट टा एठी अधिक अछि तो आंसर इज ऑप्शन ए ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following pyroclastic debris ash and dust nitrogen compounds sulfur compounds how many of the above products are of volcanic eruptions only one only two only three all four चलो क्वेश्चन 10 रो आंसर को हमर जो वोल्केनिक इरप्शन रो प्रोडक्ट्स बारे कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स सॉलिड लिक्विड गैसियस गैसियस रे हमें कोन देखियो पहुंचे टॉक्स नॉक्स तापरे CO2 ता सहित सबुठो अधिक देखिया को पाउचे हमें हां वाटल वेपर ओके तो water vapor the most abundant gaseous product that we see from the eruption of volcanoes liquid रे कोन भाई लावा आसला आ कोन ता सहित सॉलिड रे कोन रहला सॉलिड रे जो रक आसी से रक हमें कोन कोचे पायरोक्लास्टिक मटेरियल ठीक अछि ता देरे ऐश हे गला तापरे कोन कोनती लावा बॉम्ब्स हे गला टेफ्रा बोली गोटे जिंस अछि सेटा भी हे गला तो all those things are coming under the products 1 2 4 all the four okay well done जो मैंने आंसर करछो next which of the following is or are correct inference or inferences from isothermal maps of the month of January तो एडा होची ए क्वेश्चन रो रिपीटेशन हमें प्रीवियस रे देखथिले राइट 2024 रो एडा 2025 रे भी सेम क्वेश्चन the isotherms deviate to the north over the ocean and south over the continent north माने कोन pole word south माने कोन equator word right then the presence of cold ocean currents gulf stream and north atlantic drift make the north atlantic ocean colder and the isotherm bends towards the north is it isotherm टा north को कोन पे बेंड होचे over the oceans ओशन टेम्परेचर कोन अधिक थाए ना कम थाए स्टेटमेंट 2 टा पढो बोल से आंसर आसी जिवो so yes answer is option A this is incorrect this is correct चलो नेक्स्ट को जीवा which of the following countries are well known as two largest cocoa product producers in the world Algeria Morocco Botswana Namibia Cote d'Ivoire Ghana Madagascar and Mozambique को तो कोकोआ कोन इट इज सेई जो गछ जो थ्रू के हमें चॉकलेट पाउचे राइट is native to the South America रो tropical region asla so it can be cultivated in tropical regions specifically between 20 degree north through 20 degree south okay तापरे climatic conditions कोन कोन दरकार rainfall 150 ରୁ 200 सेंटीमीटर भितरे हे गले annually चलिबो
टेम्परेचर रेंज यार बहुत अधिक थाए 15 रु 30 डिग्री सेल्सियस अराउंड बहुत ही बड़ा टेम्परेचर रेंज बट 25 डिग्री सेल्सियस होची द आइडियल टेम्परेचर ठीक अछि we need well drained soil for this and two of the biggest producers are Cote d'Ivoire and Ghana. Okay, so answer here is option C. चलो आगू जीवा next question. With reference to Himalayan rivers joining Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequences is correct? Ghagra, Gomti, Gandak, Koshi, Gomti, Ghagra, Gandak, Koshi, Ghagra, Gomti, Koshi, Gandak, Gomti, Ghagra, Koshi, Gandak. तो यार आंसर कौन होगा? को जल्दी को गुड वेरी वार्म था तो वेरी गुड ऑप्शन बी याद डिस्कस करियार कौन अछि तुमको बस रिवर गुराक को सीक्वेंस रे कोठी जाई छी सेटा तुमको देखिया पड़ियो फॉर ओपीएससी मु सजेस्ट करबी महानदी रा टिके भलसे देखि देथियो सब ओके एंड बाकी सब रिवर रो लेफ्ट राइट देखि दो महानदी रा को ऑर्डर रे के जॉइन अछि ठीक अछि तो यार गोमती घाघरा गंडक कोशी दिस इज द करेक्ट ऑर्डर राइट और बाकी इंडियन रिवर से भी देखि देथियो गंगा जमुना माने गंगा इंडस आ ब्रह्मपुत्र रा सब देखि then next question consider the following statements rainfall is one of the reasons for weathering of rocks rainwater contains carbon dioxide in solution rainwater contains atmospheric oxygen which one of the following is correct both 2 and 3 are correct both explain one both 2 and 3 are correct but only one explains statement 1 only the one of the statements is correct that explains statement 1 neither statement is correct the answer को इंडिया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत आसलानी लास्ट 2 वर्ष हबो वेरी गुड वेरी गुड तो द आंसर हियर इज ऑप्शन ए कोन ना रेन वाटर जेतबेले आसुची कार्बन डाइऑक्साइड मिसुची टू क्रिएट कार्बोनिक एसिड हमें देखिथिले जो कार्बोनेशन बोली क्लास रे पढी छे राइट कार्बोनेशन वेदरिंग देन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन आसी के मिसले कोन होची ऑक्सीडेशन वाला weathering होची oxidation reduction weathering so both of statement 2 and 3 correct and they explain statement 1 so chalo next question consider the following countries Finland Germany Norway Russia how many of the above have border with the North Sea oh, oh. तो ब्लैक नॉर्थ सी कौन है हमरो देखु एठी बेल्जियम have okay so these are the countries that are connected with the North Sea so रशिया तो नहीं और नॉर्वे अच्छी जर्मनी अच्छी फिनलैंड तो 2 3 आंसर ऑप्शन बी ओनली 2 ओके
तो तुम मानू यही भाया मन रखा पड़ो इंपोर्टेंट सी जमती कि रहा कैस्पियन ब्लैक सी राइट ये सब जो इंपोर्टेंट सी रहा मेडिटेरेनियन रेड सी सब गुराक मन रखा पड़ो कौ कंट्री ता सहित कोस्ट लाइन रखुंट ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जा कौन वाटरफॉल रीजन रिवर यहाँ भी गोटे नुआ टाइप पशि यूपीएससी रे सो यूपीएससी रे भी आसपे कौन वाटरफॉल धुआंधार वाटरफॉल मालवा रीजन ऑन नर्मदा कुंड्रू छोटा नागपुर सुवर्णरेखा गेरसोपा वेस्टर्न घाट्स नेत्रावती तो आंसर मोर धुआंधार वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर कौटी अच्छी ना एमपी रो मालवा रीजन टा ए रीजन मालवा धुआंधार समवेयर हियर जबलपुर पाखापाखि ठीक अच्छे and it is on Narmada river so this part is incorrect so one होची incorrect है तापरे next कुंड्रू छोटा नागपुर प्लेटो रे सुवर्णरेखा ऊपर अछि this is entirely correct गरसोपा वेस्टर्न घाट्स रे अछि but not on नेत्रावती it is on तारावती so एउ कोन कोन जोग फॉल्स तो हमर आंसर अब कोन ओनली वन वन वेरी गुड पायल जबलपुर नेम ऑफ माउंटेन रेंज टाइप ऑफ माउंटेन सेंट्रल एशिया रे हमें वॉर्जेस माउंटेन देखुचे जोटा कि गोटे फोल्ड माउंटेन यूरोप रे आल्प्स देखुचे जोटा कि गोटे ब्लॉक माउंटेन नॉर्थ अमेरिका रे एप्लिशियंस देखुचे जोटा कि गोटे फोल्ड माउंटेन साउथ अमेरिका रे एंडीज देखुचे जोटा कि गोटे फोल्ड माउंटेन सो हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड को एटर आंसर को यस धुआंधार मालवाटा भूल हबो कारण देखो मालवा रीजन इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी ठीक अछि तो हाँ किछिटा जगह रे समान जदी एमती एक्सटेंड करे कि कहि देबे जे मालवार एक्सटेंशन एटा तो सेमिति माने सेटा हो गोटे कोन कहलो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ठीक अछि तो सेटा एमती ओके तो एटा देखो वॉर्जेस माउंटेन विषय देछि वॉर्जेस माउंटेन हमर कोठी अछि इज इट इन सेंट्रल एशिया इट इज इन यूरोप राइट यूरोप रा को कंट्री रे अछि मते को एंड इज इट अ फोल्ड माउंटेन नो इट इज अ ब्लॉक माउंटेन then Alps Europe is a block mountain no it is a fold mountain Alps अछि यूरोप रे नॉर्थ अमेरिका रे Appalachians अछि these are fold mountains yes South America रे Andes अछि these are fold mountains yes so 3 and 4 are correct only 2 answer is option B चलो next question को consider the following description annual and daily range of temperature is low precipitation occurs throughout the year precipitation varies between 50 to 250 centimeter what is the this type of climate now eta hochi amara Köppens classification right Köppens classification so Köppens climatic region तदरे कौन अछि हमर दी मल्टीपल लेटर्स यूज करके ही इज डिनोटिंग राइट कैपिटल लेटर्स यूज करछंदी एंड स्मॉल यूज करछंदी तो कैपिटल रे हमें देखुचे ए बी सी डी ई एंड एच ए रु ई पर्यंत जो रहला दिस इज डिनोटिंग द मूवमेंट फ्रॉम इक्वेटर टू पोल रीजन ठीक अछि while h is related to height okay a b c d e they are related to latitude this is related to altitude small letter रे कोन कोन रहउची f g s
W, FG और FH, FG FM से F रे कोण नो ड्राई सीजन, M होची मॉनसून टाइप, S होची समर ड्राई, W होची विंटर ड्राई। ओके, तो एमती करिकी से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को क्लासिफाई करछंती। सेइथरे आमे गोटे देखिया पाउचे कोण ना मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जोटारे की एनुअल एंड डेली टेम्परेचर रेंज कम कहीं ना बिकॉज दिस इज द कोस्टल क्लाइमेट, तो मॉडरेटिंग इफेक्ट रोची, तो रेंज टा कम रोची टेम्परेचर रो, ठीक अछि। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, यस कोस्टल रीजन तो थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल हुए, सी ब्रीज लैंड ब्रीज से सब ये कन्वेक्शनल रेनफॉल भी हुए। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर थ्रू आउट द ईयर हुए, बट नॉट एट अ कांस्टेंट लेवल, so that also is correct। माने ए तीनटा कहूची का पई मैरीटाइम कोस्ट वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट पे, ठीक अछि। so this will be the correct answer, option D। इक्वेटोरियल केमती हो रे, इक्वेटोरियल रे 50 सेंटीमीटर रो हुए, प्रेसिपिटेशन भी तार वेरिएशन टा बहुत कम थाए, प्रेसिपिटेशन मोर देन 200 टू 250 सेंटीमीटर थाए, 50 टू 250 इज अ वेरी बिग रेंज, इक्वेटोरियल रे प्रेसिपिटेशन बहुत अधिक थाए, ठीक अछि। तो क्वेश्चन को जिबा, with reference to Coriolis force, which of the following statements is correct? It increases with the increase in wind velocity, it is maximum at pole and absent at the equator। तो मु क्लास रे सब बळे Coriolis force को काउ करी की पढाए, Ef equals to 2 omega v sin phi और sin theta तमे जान होचनी, एटी v टा कोन, ओमेगा टा कोन, phi टा कोन, phi होची लैटिट्यूड, v होची वेलोसिटी, ओमेगा होची कोन कोनती रोटेशनल ऑफ अर्थ, ओके, तो एंगुलर स्पीड नॉट रोटेशनल, ओके। so this is the formula। तो हमरा कोन देछि वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड वेलोसिटी बढ़िबो जदी एटा बढ़िबो, जदी एटा भी बढ़िबो, तो पोल रे कोन, पोल रे होची 90, तो थीटा इज 90 डिग्री, sin 90 होची 1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, sin 0 कोठी हबो, इक्वेटर रे हबो, इक्वेटर रे ले मिनिमम जोटा की 0, तो both the statements are correct, right? Easy peasy, lemon squeezy। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, on June 21 every year, which of the following latitudes experiences a sunlight more than 12 hours? Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle। Kodavo ko, this is also a very easy question। Option E, okay, Tropic of Cancer and Arctic Circle, good, more than 12 माने Tropic of Cancer और Arctic Circle यहाँ June 21 कौन हमरो summer solstice, right? Summer solstice हेले sun is overhead on Tropic of Cancer and Arctic Circle रे हम देखिया हो पाएगा sunlight भी more than 12 hours रहबो, Equator and Tropic of Capricorn they will not experience more than 12 hours, okay, so our answer here is option D। so next question, one of the following regions has the world's largest tropical peatland, which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate, which one of the following denotes that region? Amazon basin, Congo basin, Kikori basin, Rio de la Plata basin। को आंसर को एटार
एटारे तमे फर्स्ट स्टेटमेंट रो जदी जानिचो माने फर्स्ट सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन जदी तमे बुझी परचो देन तमे आंसर कर देबो विदाउट एनी प्रॉब्लम. Okay, so answer here is very good. B Congo. Congo कौन हमरो वर्ल्ड रो largest wetland. Okay, and also a tropical forest, tropical evergreen. Okay, ता सहित कौन रोचे हमरो एटी हमें कौन देखुचे it takes up about 8% of the carbon emissions of the world, right? ताऊ कौन कहती second lung of earth, first किए से हमरो Amazon. Okay, Amazon rain. So there was Congo basin. So we are done with 2024. First 2023 ra kista question rahila, and then we will be starting with polity. Okay, consider the following statements. Jhelum river passes through Ular Lake. Krishna river directly feeds to Kolleru Lake. Meandering of Gandak river formed the Kanwar Lake. So your answer ko कौन हो? A option. Okay, देखिया कौन दीजिए शब्द above are correct. So here Jhelum river passes through the Ular Lake. This is correct. Jammu and Kashmir. Then Krishna river directly feeds Kolleru Lake. This is wrong. Krishna river ra Kolleru Lake से तो किसी भी relation नहीं. Okay. Meandering of Gandak river formed the Kanwar Lake. This is also correct. Kanwar Lake टा कौन और Kanwar ताल जोड़ा कौन दी सेटा होचे गोटे Oxbow Lake, which was formed as the result of the Gandak river meandering. Okay, so answer here is option B. Okay, next question को चलो. Consider the following pairs. Port Dechi, well known as Kamarajar Port, Mundra Port, Visakhapatnam. First major port in India, registered at a company, largest privately owned port, largest container port in Port India. Okay. So correctly matched कोड आज. Okay, 1, 2, 1, 2, very good. So 1 and 2 are correct. Kamarajar is the first port registered as company. Mundra, largest privately owned. Visakhapatnam, largest container port. No, this is not. This is JNPT. Okay, so that's that. So next question. Consider the following trees: jackfruit, mahua, teak. Which are deciduous trees? एटर भी किसी से डिस्कस करियार नै deciduous trees कोथरे कोगुरा को अछि कहि दियो deciduous forest रो पार्ट एगुरा को moist हो कि dry हो doesn't matter.
just need to know deciduous tree कोड़ा. So what should be the answer here? कोड़ा correct, कोड़ा incorrect. चलो 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 जल्दी को. Answer B. Yes, answer is correct. Jackfruit होची, this is a evergreen forest, an evergreen tree. Okay. So our पणस गछ evergreen tree गोटे. महुआ and teak, these two are deciduous trees. Okay. चलो आगु जीवा. Next question. कौन? Consider the following statements. India has more arable area than China. The proportion of irrigated area is more in India compared to China. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that of China. Go, answer go. Read the answer kala pore you will realize the paradox that are prevalent in Indian geography or rather Indian agriculture. Lots of paradoxes. चलो चलो आंसर करो. Option A. तापरे Devika is saying correct. तो चलो देखिए कौन. India has more arable area than China. Yes, this is correct. India रा northern plains वगैरह तापरे coastal plains एवरा सब मिसकी. India has more arable land. China रे बहुत सारा कौन कहया rugged terrain रोची तो तारा interior part टा ही entirely scanty region. तादरे लोक भोग के नथांदी बेसी. Most are located in the coastal region. Okay. तापर proportion of irrigated area is more in India as compared to China. Yes, India रे हमें 48% land तक से जोरा का irrigated. China रे we see nearly 41%. Okay. So statement 1 correct अच्छी, 2 correct अच्छी, but 3 होची incorrect. India रे more arable land अच्छी, India रे more irrigation अच्छी, but productivity of China is higher than India. India रे China रे अधिक होना. That is the irony that we see here. Okay. So here the answer will be option B. हाँ तुम्हें आंसर चेंज कर दिलो देविका. तमरा माने तमे जो 2 ओनली लिखतिलो that was correct. Like माने तमे जदी A option B कहउतलो पर जदी खाली एटा कहउछ then सेटा नो 1 2 both are correct. Okay. चलो next question को जीवा. Question कोन, which of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshlands? Vitarkanika, Marakkanam, then Nuapada, then Run of Kutch. Whoa. Run of Kutch. A. Devika is 1 ILD. Okay. So the answer is option D. A नुह. Question देखो कौन पचारची. Repeated falls in the sea level. Sea level देखो this was the land. Initially sea level एटी थिला. तापरे कौन हला ना एटा कटि जाई की sea level कौन हला तळकु खसी गला एठी. तापरे पुणी कौन हला सेकंड टाइम एटा कटि गला. तापरे पुणी तळकु खसला. तो repeated fall in sea level.
ओके तो ता सेटा पई कहबो ए एरिया रे टिके ना को द नेचर ऑफ द लैंड विल बी समवट मार्शी कौन हुए ना वर्षा हेले ए लैंड रे हम देखुचे वेटलैंड क्रिएट हे जाए वर्षा पळैला परे ए जगह रे पंको कादुओ हे कि the land visible is but it stays wet. Okay, so answer here is run of Kutch. Chalo next question. Ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? Basically ए दिटा को होची कोन को मिनरल रो ओर एल्युमिनियम कॉपर आयरन टाइटेनियम को आंसर को काश डी फाइल डी okay so yes the answer here is correct titanium रो कोन होची सिंबल ti okay एटा मन रखो या छडा याद रे डिस्कस करियार कांसेप्ट चला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा consider the following statements Amarkantak hills are at the confluence of Vindhya and Sahyadri ranges Siliguri Rangan hills constitute the easternmost part of Satpura range Tesachalam hills constitute the southernmost part of Western Ghats so answer को तो सह्याद्री टा हमरो को ये को कहा जाए वेस्टर्न घाट्स को कहा जाए और अमरकंटक हिल्स को वेस्टर्न घाट और विंध्या जोठी पाखापाखि अछन सेठी अछि नो राइट इट इज द विंध्या एंड सतपुरा ए दिटा को जोठी कन्फ्लुएंट माने मर्ज करंती सेठी हमरो अमरकंटक हिल्स को then so this statement is incorrect then Bilirangan hills constitute the easternmost part of Satpura range Satpura तो ऊपर रहिला राइट ये आसिकी हमर कोठ रहिलानी बिलीरंगन we find this in Karnataka Kerala region right so this also is incorrect Sesachalam hills constitute the southernmost part of Western Ghats no एटा तो हमें आंध्र रे देखिया पाउचे तो एटा केमति southern most होची कोन अगस्त्य मलाई okay so all the three are incorrect answer here is option D okay चलो next question को जिबा consider the following statements the soil in tropical rainforests is rich in nutrients the high temperature and moisture of tropical rainforests cause dead organic matter in the soil to decompose quickly so statement 1 2 both correct 2 explains one one both correct or 2 does not explain one correct 2 incorrect one incorrect 2 correct so give the answer option A option okay so देखो soil in tropical rainforest is rich in nutrients tropical rainforest कोन ना को एरिया रे हम पाउचे ट्रॉपिकल और रादर इक्वेटोरियल रीजन रे इक्वेटर पाखापाखि रीजन रे देखिया पाउचे सेठी कोन होची ना हाई
टेम्परेचर हाई रेनफॉल जोटा कि हम देखा पाचे रेगुलर बेसिस रे डेली डेली रेनफॉल मिले हमको एठी जो जदी डेली डेली रेनफॉल हम कौन हम लीचिंग हम लीचिंग सॉइल रो न्यूट्रिएंट्स सब धोई के पळेबो so it is not rich in nutrients. Yes, that high temperature and moisture in tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. Okay, that is correct. So the answer here will be option D. One incorrect, two correct. Okay. So Devika, I hope you understood. Your answer was wrong here. सेमती गोटे गोटे भूल हुए, डोंट गेट डिस्करेज्ड, एग्जाम रे भी सेमती हबो, बट हां एठी तमे जते आंसर दोच दियो जोटा तमे गेस मारचो मारो किछि असुविधा नै, मन इच्छा रैंडम गेस मारले भी मु कहबिन जे तमे भूल कलो कि कोन कलो, मु कहबि तमे ठीक कलो आंसर देलो बोली, आंसर टा भूल बट तमे ठीक करचो, बट एग्जाम हॉल ले से भूल करबोनी, एग्जाम हॉल ले रैंडम गेस लगेबोनी, ठीक अछि। नाउ consider the following statements. Statement 1, the temperature contrast between continents and oceans is greater during summer than in winter. ठीक है। Statement 2, the specific heat of water is more than that of land surface. वाह, हमन 9 नंबर क्वेश्चन आंसर कोचो तो भूल कर, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट अछि, स्टेटमेंट 2 करेक्ट अछि, 2 एक्सप्लेन्स 1. ओके, वाटर रा स्पेसिफिक हीट अधिक थाए, टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन continents and oceans greater during summer than winter. This is correct. माने second, सॉरी पहले उल्टा पढ़ दी थी, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। विंटर रे कंट्रास्ट अधिक थाए, समर रे कंट्रास्ट कम थाए, उल्टा पढ़ देथली, सॉरी फॉर दैट। तो आंसर हियर इज ऑप्शन डी। ओके, तो डी समस्त करेक्ट कहचो, मु भूल पड़ली, सॉरी फॉर दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ सीस्मोग्राफ, P waves are recorded earlier than S waves. Okay, in P waves the individual particles vibrate 2 and 4 in the direction of wave propagation, whereas S waves the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. Which of the given statements is or are correct? को एटा मु क्लास रे भी करैथिली हमरो, तो प्रणति I expect the correct answer. This 10 9D तो मैं कोठी अटकी जाई, तो आंसर हियर इज ऑप्शन सी, बोथ बोथ। ओके, चलो समस्त तो कहूच बोथ बोली, आ कौन ही कहबी, आंसर इज सी, P waves primary. Why are they called so? Because they arrive earlier than the S waves, जोरा की secondary. Statement 1 correct अछि। P waves होची कोन हमरो longitudinal waves, तो से माने केमति जिवे, एमती एमती हेकी जिवे। ओके, तो बेसिकली हमरा जेठा भाई जेमती कोन कोनती चिकन डांस करतले सेमती करिवे, नले केंचुआ हमर जेमती मूव करे सेमती, ठीक अछि। whereas in case of S waves हमर केमती जिवो, एमती हेकी मूव करिवो, तो एमती एमती हेकी आगु को जिवो। ओके, तो बल्ले बल्ले शावा शावा करके जिवो, राइट, तो तमे सेमती मन रखि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा।
with reference to the coal-based thermal power plants in India, consider the following statements. None of them use seawater. None of them is set up in watershed district. None of them is privately owned. So, कोएडा एटा factual question टे उठे बस facts गुरा का मन रख देले गला. Very good. None. The right answer. एटी कोण ना सी वाटर वाला गोटे पावर प्लांट अछि जोटा हमरो मुंड्रा. ओके दैट यूजेस सी वाटर. जितक फ्रेश वाटर बेस्ड अछंती सबु एई माने तादरो 1/3 एई एमिटी लोकेशन अछन जोटी की वाटर स्ट्रेस अछि. So this is incorrect. This is incorrect. None of them are privately owned. This is also incorrect. Both private and public ownership अछि. So answer is option D. Hello, next question go. With reference to Earth's atmosphere, which of the following statements is correct? The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the poles. Okay. Infrared constitute roughly 2/3 of insolation. Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. Infrared waves are a part of visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation. या भितरु कोटा करेक्ट अछि कहबो. Very good. The answer here is option C. Very good. So कौन होजी ना देखो मेन जिनस ए क्वेश्चन रो थिला जे तमे जानिचो कि नहीं जे वाटर वेपर होची गोटे ग्रीन हाउस गैस बोली. Greenhouse gas are the ones that absorb the infrared waves, the long wave radiation released by the माने lithosphere. तो सेही जिनसटा हमहु देखिया थला सेडा होची ठीक अछि. तापरे infrared rays constitute roughly 2/3 of the insolation. No, insolation रो 49% होची infrared. ठीक अछि. Then total amount of insolation received at equator is roughly about 10 times that of poles. This is also wrong कारण 10 times no एटा 2-3 times हुए. Obviously pole रे अधिक pole रे कम and equator रे अधिक but 10 times रे difference में. Infrared waves are a part of visible spectrum. No, they are not part of visible spectrum. Okay. IR goggle लगे पड़े हमको. Then next question. Consider the following statements. Statement 1 कौन कोची? India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity productions. Statement 2. Uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. Both 1 and 2 correct. 2 explains 1. Both 1 and 2 correct. 2 is not the correct explanation. 1 correct, 2 incorrect. 1 incorrect, 2 correct. Go answer the order. Option
1 correct, 2 incorrect. Very good, very good. This is the answer. Now, uranium deposits आमर कोटी कोटी अछि, झारखंड रे अछि, आंध्र प्रदेश रे अछि, तेलंगाना रे अछि, right? Different location रे हमें uranium deposits पाउचे. But statement 2 कौन ना, statement 2 is incorrect, statement 1 here is correct. कौन होची ना, uranium को हमको केते जाए enrich करिया पड़ियो for electricity. Electricity पे हमको 60% नुआ, only 3 to 5% भीतर दरकार. ओके, एतिकी हे गले मोर देन एनफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 60% हे गले से तो वेपन्स ग्रेड हे गला. ठीक अछि, एति पई तो हमर जो ईरान विरान से तो एते इशू चलची यूएसए रो. तो इलेक्ट्रिसिटी पई एते एनरिच करिया दरकार नै, ओनली 3 to 5% रे हिजो. ठीक अछि, तो आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी. तो ओके, विथ दिस वी आर डन. हमर ज्योग्राफी रो सरी गला. या परे तमनकर पॉलिटी क्लास पई पवित्र सर आसीबे. ओके, तो तो कार किसी डाउट अछि कि कल के दौच यूपीएससी प्रीलिम्स के दौच जो मैंने लाइव अच्छो. थैंक यू, थैंक यू, वेलकम. तो कल दौच यूपीएससी प्रीलिम्स की जाइनी सार आसना तो टिके गपी बसिकी. देखो एथर ओपीएससी तो दौथो मोस्ट ऑफ यू. तो तुम मानक पई मु कहि दउची गोटे जिंस जे मोर हिस्ट्री and Odisha geography, they have a very high probability of asking 10-15 questions from these sections. ठीक अछि, geography and history ओडिसा रो इसी तदरु लाइक 10-15 क्वेश्चंस आसी पारे, जोटा कि हमर 20 to 30 मार्क्स रहइबो. तो हमर ओडिसा हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी सब मिसई की यूट्यूब रे हमर दीटा प्लेलिस्ट अछि, इवन मैराथन भी अछि, एमसीक्यू सेशंस, थ्योरी सेशन सब अछि. से गोरा को देखि दियो जो मानकर ओडिसा हिस्ट्री ज्योग्राफी प्रिपरेशन सरी नि पर्यंत. ठीक अछि, सेटा होची मोर इंपोर्टेंट. हाउ सार आसी गलेनी क्लास नेबे. तो ओके, गुड आफ्टरनून. ऑडिबल समस्त को ठीक ठाक सब सुना जाउची. ऑलरेडी तमरो साइंस टेक एंड हिस्ट्री ओवर, ज्योग्राफी ओवर, एनवायरनमेंट सरिन ना, एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स. राइट नाउ वी आर डीलिंग विथ द पॉलिटी एंड गवर्नेंस. पॉलिटी गवर्नेंस रो जहां यूपीएससी 2025, 25, 24 एंड 23, 26 रो काली अछि, देई होबनी अछि. ओके, गुड आफ्टरनून. ओके, स्टार्ट करिया. ओके, स्टार्ट करिया, चलो.
2025 रो फर्स्ट क्वेश्चन देखि टेंशन हो जिवो फर्स्ट क्वेश्चन ओके एनफोर्समेंट डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू आकु छाड़ो सेकंड क्वेश्चन करे एटा फास्ट रे करो फास्ट टू टेंशन है जिवे ना हां 2 नंबर क्वेश्चन आगे करो ओके केमिति एलिमिनेशन पके मु कहबी फर्स्ट 1 नंबर नुए 2 नंबर करो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कह आंसर को फास्ट क्वेश्चन टिके टेंशन वाला दवाटा खराब चलो एबे करो 2 नंबर क्वेश्चन एची के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अरे कोडा वाला सही है एची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अच्छा नोटा अरे भाई नोटा ऑप्शन ही नहीं नोटा गोटे किए लिखि सारे अखिल बाबू कि consider the following statement not correct पचार not correct okay पंचायत at intermediate level exist in all state रे देखो अशोक मेहता कमिटी हो और टिके छोटो कर दिए अच्छा बलवंत राय मेहता बैग ऑफ लेफ्टिनेंट गार्डगिल बलवंत राय अशोक मेहता जेवीके राव एलएम सिग्मी थुंगन एंड गार्डगिल अनुमंथ कमिटी से गुडा तो मन रखिया दरकार नहीं बहुत सारा कमिटी 3 टायर सिस्टम पाई कहितरा 3 टायर सिस्टम ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद किंतु 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे 73rd थर्ड टायर कथा कहितला किंतु ऑल स्टेट्स रे नहीं ओके पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स रे नहीं बुझियला नेक्स्ट कहला कि second to be eligible to a member of panchayat at intermediate level kono a should at 30 years no it is 21 years 21 वर्ष कथा कहिछि 21 वर्ष तो एटा भी रॉन्ग हबो इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट constitute a commission to review the financial position of panchayat 243i कोन ना गवर्नर constitute करिवे गवर्नर एटा भी इनकरेक्ट तो से पचार नॉट करेक्ट कोता तो डेफिनेटली आंसर हम कौन डी आंसर डी हम आंसर विल बी डी आई थिंक समस्त ओके 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 आंसर हम डी कार किसी डाउट नथिवो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर लोकपाल ऊपर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल ऊपर क्वेश्चन अछि करेक्ट कोटा पचारि करेक्ट कोटा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल द पावर ऑफ लोकपाल लाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड इन आउटसाइड माने आईएफएस मान को ऊपर लागू होई परिबो कि ना नहीं से माने इनडायरेक्टली कहिछि कि द लोकपाल रो जुरिस्डिक्शन कोन लोकपाल रो जुरिस्डिक्शन ऑल पब्लिक सर्वेंट माने जिबे यदि आपण लोकपाल रो तमर जेता पढिबो लोकपाल एक्ट 2013 ने जेता आपण पढुचनी तो सेतरे से देछि कि ऑल पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर से सबु त माने कोन कहउछि बट नॉट इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया त माने आईएफएस मान को ऊपर हबोनी कि भाई हबो ए रॉन्ग स्टेटमेंट सेकंड दला द चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट or member of legislature of any state or union territory any state union territory only the chief justice of India whether incumbent and retired is to be chairperson second statement correct the chairperson or member shall not be a member of parliament or a member of legislature of any state or union territory only the chief justice of India whether incumbent or retired has to be its member third the chairperson or member shall not be a person of less than 45 years 45 years of the age on the date of assuming the office चलो ए स्टेटमेंट को भी छाड़ो ए स्टेटमेंट आई थिंक स्टेटमेंट करेक्ट अछि बट मोस्ट प्रोबेबली त मन न रखि नथिबो नेक्स्ट कहला
Lokpal cannot inquire into allegation of corruption against the sitting prime minister. Why sitting prime minister is also included? Sitting prime minister is also included. Eta भी incorrect है जो. तो correct पचारी ची कोटा. तो correct answer कौन हबो? A हबो 3 only. 3 only. A will be the correct answer. 3 only will be the correct. बुझेला? चलो next question 4 number. Pardoning power of president. Article 72 ऊपर question अछि. Article 72. Consider the following statement with regard to pardoning power of the president. The exercise of this power by the president can be subjected to limited judicial review. मन रखिबो limited judicial review. माने को एटी जदि limited word हटे दी थाना तले limited word हटे दी तले तले statement wrong हेई थांदा भी. तो से कोन कहिछि जे limited judicial review. मारू केस रे तमरो कोन कहितला कि जे राम मारू केस रे कोन कहितला कि जे इट इज लिमिटेड कोन जदि तमर प्रेसिडेंट र पार्डनिंग डिसीजन रे पार्डनिंग पावर रे कोनोसी डिसीजन नउजी सेतल तम मैल एडमिनिस्ट्रेशन देखा होजी कि कोनोसी इरेलेवेंट फैक्ट देखा होजी देन इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू that is in a limited manner. The first statement correct अछि. Second is the president can exercise this power without the advice of the central government. Without nuha, the has to be take from the cabinet रे कोन करिवो cabinet concurrence रे तम cabinet को पचारे कि कोन करिवो डिसीजन नबो. तो आंसर एटी कोन हबो 4 नंबर से करेक्ट पचारुजी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि एटा इनकरेक्ट अछि. तो डेफिनेटली आंसर कोन हबो 4 नंबर ए. ओके नंबर दे के टिके दियो सो दैट आई कैन ओके तो नंबर लिखंतो आंसर कोटा एतर कार किसी डाउट अछि. पार्डनिंग पावर राम मेरू केस रे तम देखिबो कि इट इज ओपन टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन 5 नंबर को हबो को 5 नंबर. Consider the following statement. कौन देछि कहा ऊपर on the dissolution of the house of people the speaker shall not vacate his or her office immediately before the first meeting of the house of the people after dissolution. करो तब करो 5 नंबर क्वेश्चन नंबर लिखि कि दियो. ओके नंबर लिखि कि तापर मत आंसर दियो. पचारि जे करेक्ट केतला करेक्ट कोन अच्छा is on dissolution of the house of people the speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the house of the people after dissolution. correct अच्छे पूरा simple statement. ओके सांगे सांगे कोन हुए कि सांगे सांगे कोन करंती जे कोन जे तमरा डिसोल्यूशन रे परे सांगे सांगे कोन करंती जे रिजाइन करि दन लेकिन वैकेंट करंती नाही. सेकंड according to the provision of the Constitution of India, a member of the House of People on being elected as the speaker shall resign from his political party immediately. A statement no. Once a speaker, always speaker concept India रे नाही. Okay, it is a British concept. Okay, जदि तमरा किए कोनोसी ए जदि स्पीकर इलेक्टेड होउजी ताले कोनोसी दरकार नाही. सपोज मु कभी बीजेपी रो कि बीजेडी रो सपोज के स्पीकर इलेक्टेड हला इट इज नीड नॉट नेसेसरी टू रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी. रिजाइन करिया भी दरकार नै. जदि भी रिजाइन भी करूची किछ फर्क ये नाही. कहूची कि पीपल इलेक्टेड स्पीकर शाल रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी एटा भी हबो नाही. तो दीटा स्टेटमेंट 2 नंबर स्टेटमेंट पर इनकरेक्ट अछि. 3 नंबर एठी भी अछि एठी भी अछि. तो आंसर मोर किछि दरकार नै. मु किछि भी चेक करिबिनी सी मारिबी चलिबो. 5 नंबर देखो मोर 2 नंबर स्टेटमेंट कर इनकरेक्ट अछि हम जानिले. 2 नंबर रो हमर सब थरे एथरे भी इनकरेक्ट माने 2 अछि एथरे भी 2 अछि एथरे भी 2 अछि. तो 5 नंबर सी मते 3 नंबर पढिबार इंटरेस्ट नै. बुझियला एलिमिनेशन पकाइबो बट यूपीएससी टिके चेंज हो गलानी. नेक्स्ट चलो 6 नंबर दे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 6 नंबर जल्दी करो. बट इन ब्रिटिश context they resign once हम कहली British context that is a once a speaker always a speaker.
once a speaker always a speaker. बट इंडिया रे भी तुम रिजाइन कले कि फरक पड़िबन जदि भी तुम रिजाइन कर दबो एंटी डिफेक्शन लॉ रे भी तुम बुक हबनी ओके इट इज एक्सेप्शन टू एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल ले तुमर कोन 52nd अमेंडमेंट 1985 रे दिया जाई छि जदि तुम रिजाइन भी करू छ आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द कोन स्पीकर ऑफ लोकसभा देन यू आर नॉट बी बुक्ड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देइ छि गेम पचारि छि करेक्ट पचारि छि if any question arises to whether a member of house of people माने lok sabha has become subject to disqualification under 10th schedule the president decision in accordance with the opinion of council of union the union minister shall be final wrong second statement wrong एटी जदि 10 शेड्यूल हटाई दे थांदा एटी जदि 10 शेड्यूल हटाई दे थांदा ताले स्टेटमेंट करेक्ट ही थांदा वो तुम कहितली जते बेले डिस्क्वालिफिकेशन हबो कोनोसी मेंबर को तुम डिस्क्वालिफाई करछो एटा तीनटा प्रोसेस रे अछि तीनटा दिनस रे लिखा अछि गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अछि गोटे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 रे मेंशन अछि ओके आ गोटे कोथरे मेंशन अछि ना 10 शेड्यूल मेंशन 10 शेड्यूल ले जो जहां पे कहां पाखर पावर अछि जे डिस्क्वालिफाई करिया को इट इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस एंड इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू इवन इफ क्विट होलोन केस तमे जानि छ 1992 जानछिलु केस रे तमे जानि छ तो फर्स्ट एटा कोन लागी रॉन्ग होई गला के प्रेसिडेंट करिबेनी एटी किए करिवो कि इट इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस presiding officer of the house second there is no mention of the word political party in the constitution of india se pachari no mention no anti defection law जेतले पढुचनी anti defection law रे आपण political party कथा पढुचनी independent member then nominated member कथा कहउचनी ए political party कहिछि ना जे पार्टी गोटे पार्टी इलेक्शन में जीती थिबो तो तापर जदि से छाडी दउची कि डिफेक्शन करूची ताहाले बुक दबो तो एटा पॉलिटिकल पार्टी मेंशन अछि 6 नंबर मेंशन अछि त माने कोन कहला 6 नंबर जदि मेंशन अछि से पचाछि नो तो दीटांक रॉन्ग 6 नंबर आंसर को हबो 6 नंबर आंसर को हबो 6 नंबर डी समस्त देछन डी नाइदर वन नॉट टू बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा 7 नंबर consider the following statement there is statement 1 statement 2 there is in india state government have no power making rules for grant of concession in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories actually eta current affair question ta हमर सेता current affair रे तिला कोन current affair लो mineral development रो 1957 act ओके करंट अफेयर रे थिला तो सेति पय क्वेश्चन ता तमर सेता पडिछ मन रखिबो क्लासिफाई करिवो मिनरल्स को किए सेंट्रल गवर्नमेंट क्लासिफाई करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट बट रॉयल्टी स्टेट सब बळे स्टेट गवर्नमेंट तो देजी को इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर मेकिंग रूल्स फॉर द ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ minor minerals even though such minerals are located in their territory देछि नो पावर मु तो एठी कहली रॉयल्टी लगै परिबो तो नो पावर माने फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग सेकंड in india the central government has the power to notify the minor minerals under relevant laws एठी कहली क्लासिफाई करिवो तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट तो एठी दीटा करेक्ट अछि ये गोटे करेक्ट अच्छा डी विल बी द करेक्ट आंसर फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट सेकंड वन इज करेक्ट दीटा कांसेप्ट खाली मन रखिबो एटी क्लासिफाई किए करिवो को मिनरल्स माइनर की मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट बट रॉयल्टी लगै परिवो किए केते पैसा टैक्स रॉयल्टी किए लगै परिवो स्टेट गवर्नमेंट भाई मन रहिबो माइनर मिनरल्स मींस हाँ क्रिटिकल मिनरल्स अलग देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स तमे कहि परिबो मेजर मिनरल्स माइनर मिनरल्स okay critical minerals is different thing बुझियला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा ऑर्डिनेंस ऊपर क्वेश्चन
ऑर्डिनेंस आर्टिकल 1 2 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करो ओके 9 नंबर क्वेश्चन करो 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आई थिंक ए क्लास गुडा ए पर्यंत आमे ए क्वेश्चन गुडा सब करिचे ए कांसेप्ट गुडा भी आपण पढाइचे मु क्लास रे भी ऑर्डिनेंस now an ordinance can amend any central act second an ordinance can abridge fundamental right an ordinance can come into effect from the back date प्रणति ए क्वेश्चन आमे करितले ए कांसेप्ट गुडा ही पढितले ए कांसेप्ट भी पढितले ना नहीं कोंतु मन रखिबो कांसेप्ट पढितले ना नहीं कोंतु an ordinance can amend central act माने कोन central act माने पार्लियामेंट लॉ कथा कहिछि पार्लियामेंट लॉ कथा कहिछि मन रखिबो an ordinance can amend an ordinance can alter or कोन amend the central act आउ पार्लियामेंट लॉ मन रखिबो पार्लियामेंट लॉ को करि परिबो किनु कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करि परिबो नाही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करि परिबो नाही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करि परिबो नाही सेंट्रल एक्ट चेंज करि परिबो पार्लियामेंट एक्ट को चेंज करि परिबो किनु कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करि परिबो नाही त माने कोन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हला सेकंड an ordinance can abridge फंडामेंटल राइट को तुमको एवरेज करिया को ले तुमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करिया पड़िबो किनु ऑर्डिनेंस गोटे एग्जीक्यूटिव द्वारा करा होजी एग्जीक्यूटिव किए ना प्रेसिडेंट तमाने को प्रेसिडेंट चाहिए तमरो फंडामेंटल राइट को नहीं परिबे कि नो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट द सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट कोउतरे अछि एथरे भी अछि थर्ड an ordinance came into effect from the back date retrospective कहितले retrospect हेई परिबो retrospective हेई परिबो तो 1 and 3 तो आंसर को होबा B will be the correct answer 1 and 3 केउडा कोइ 1 and 3 हां 1 and 3 C will be the correct answer sorry 1 and 3 C will be the correct answer बुझियला कार किसी डाउट नहीं रेट्रोस्पेक्टिव दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ओके टैक्स लॉ सिविल लॉज बट क्रिमिनल लॉज रेट्रोस्पेक्टिव हेई परिबो नाही आई थिंक तमरो मन थिबो आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट हां ए क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन रे टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन करा 10 नंबर देजी अरुणाचल प्रदेश स्टेट देजी एंड डिस्क्रिप्शन देजी अरुणाचल प्रदेश द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर ए फोर्ट ईटानगर मे बी फोर्ट है पर एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क अनदर वन इज देयर मोर एक्जेक्टली मन पड़नी ओके the capital is named after it a correct statement is there is in Nagaland the state came into existence on the basis of constitutional amendment 13th constitution amendment 371A second is correct third Tripura initially a part of the C state okay part A B C रे त्रिपुरा थिला आ जोटा कि लैटर फेज रे चेंज हेछि तो एटा भी करेक्ट तो आंसर एटी कोन हबो सी हबो आंसर कोन हबो एटी सी 10 नंबर सी ओके टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम हॉल ले हैंडल करिबा डिफिकल्ट एग्जाम हॉल ले डिफिकल्ट डेफिनेटली ए क्वेश्चन को करिबा डिफिकल्ट हबो ओके मोर तो एग्जैक्टली एना नाम दबा मन पड़छि सेकंड रे मन पड़ुनी तो एग्जाम हॉल ले Bowling National Park exactly हाँ Bowling National Park okay but एटा all the three किनु ए स्टेटमेंट को जदी तमे देखिबो आकु एनालिसिस कले तमर 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी मने न पड़ी पारे 1962 मने भी न पड़ी पारे एट द सेम टाइम जदी देखिबो एटा को तमे देखुजो सिंपल जिंसर जदी बुझिबा तो 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे
13th Constitution 1962 रे ये 371A कथा कहिछि ता माने को नागालैंड कोउट रु बाहर की जाइछे ना आसाम रु बाहर की जाइछे आसाम रु बाहर की जाइछे आसाम रु बाहर की जाइकी नागालैंड तैयारी ता माने कोन आर्टिकल 3 रे दिनस सब कराइछे आर्टिकल भल से बुझो आर्टिकल 3 रे दिनस सब कराइछे कोन द 13th अमेंडमेंट रे आर्टिकल 3 रु ता माने कोन कराइछे आसाम रु नागालैंड को क्रिएट कराइछे तो जते बेले गोटे टेरिटरी की गोटे स्टेट को भांगी की दीटा स्टेट करूचो ना चेंज करूचो अल्टर करूचो तो एटा आर्टिकल 3 रे करूचो आ आर्टिकल 3 रे कोन ना सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 3 को चेंजेस करिया लगी हेले सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट आ सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 अंडर जीवनी बिकॉज इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो एटा भी इनकरेक्ट हेई पारे अरे भाई बुझी पारुछ मु कोन कहिया चाहूची सेकंड स्टेटमेंट नागालैंड रे द स्टेट केम इनटू एक्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बुझी होची माने कोन आर्टिकल 37 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 13 कहला कि जे आसाम को चेंज करिकी अर्थात सेटु बिए करिकी तमे नागालैंड क्रिएट करबो नागालैंड जते बेले तमे गोटे स्टेट रु आ गोटे स्टेट को क्रिएट करूजो से दिनस गोटे आर्टिकल 3 रे परिबो आ आर्टिकल 3 तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट रे परिबो आ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 तले एटा केमिति हेई परिबो कोन कहिया चाहूची बुझिला बुझी पाइल प्रणति सुनीता दशरथ बुझीला भाई तो एटा टिके कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बट तमे सी को धरि की चलो हाँ नॉट इनवॉल्व सेति पय कहूछ तो सी की धरि की चलो तो आंसर एटी कोन आंसर एटी हबो सी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसी भाबिले बेसी देह खराब हो चलो जति की भाबिबा सेति की रे कर दे पळेबा नेक्स्ट Next, with reference to India, consider the following bodies. How many of the above are established as per the Constitution of India? ता माने पचारि जे constitutional body. Constitutional body कथा कहिछ. Okay, Interstate Council, Article 263. President will constitute. Okay, Interstate Council. किए के रहिबे PM, CM of all states, CM of UTs having legislature, then administrator, then governor in the president rule state, then six union council of minister including union home minister. Okay, the first one is correct. National Security Council, no. Zonal Council, it is created 1971 Zonal Council State Reorganization Act 1956 द्वारा आइची. It is a statutory body. से पचार जे केतेडा constitutional body गोटाई ता माने only one. Okay, only one. कार किसी डाउट statutory body, constitutional body, extra constitutional body दया करी के लिस्ट को मने रखी जीवो. It will definitely maybe question तमरो एग्जाम रे आसी पारे. Okay, OPSC रे फेवरेट क्वेश्चन OPSC में भी क्वेश्चन तमरो पचारी पारे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर करो. Consider the following statement regarding the constitutional provision in India. देजी the Constitution of India explicitly term ऊपर हाथ मारी चलो explicitly mentioned that the situation where the governor of a state can act in his or discretion. Article 163 वो तुमको पढ़ेला बेले भी कही आर्टिकल 163 तामाने whether any matter falls under the discretion of the governor or not सेटा गवर्नर ही डिसाइड करिवे and the governor decision is final. Just a second.
Okay, the Constitution of India explicitly mention the situation where the governor of a state can act in his discretion. हम कहितली कोन जे आर्टिकल 163 रे कोन दैछि आर्टिकल 163 रे कहिछि कि whether any matter falls under the कोन discretion power of the governor or not, तार governor decision is final. आ governor दी प्रकार discretion अछि, गोटे situational discretion, another one is constitutional discretion. ओके किंतु तमे प्रेसिडेंट कर देखिबो प्रेसिडेंट कर ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिशन अछि, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नाही. आ गोटे स्टेटमेंट भी फ्रेम हे परिबो द डिस्क्रिशन पावर ऑफ द गवर्नर इज वाइडर देन प्रेसिडेंट. करेक्ट, because these type of discretion अछि. The first statement explicitly mention article 163 रे mention अछि. Second, the president of India can on his or reserve a bill passed by the legislature for the consideration even without being forwarded by the governor. नाई भाई आर्टिकल 200 रे कहिछि 200 रे चारिटा कोन स्टेप देछि. आर्टिकल 200 रे गवर्नर पाखु गले गवर्नर रिजर्व कले ही जाई परिबो, ता माने सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट. मन इच्छा प्रेसिडेंट रिजर्व करि परिबे नाही. तो करेक्ट पचारिछि, ता आंसर अब कोन ए जांके कार किछि डाउट आई थिंक कहार किसी पर्यंत डाउट नथिबो. नेक्स्ट चलो इजी क्वेश्चन 13 नंबर पॉकेट भिटो कोन भाई बिल टा गले तो सीना जीवा पई तो गवर्नर फास्ट रिजर्व करिवो. अरे 200 आर्टिकल ले कोन कहिछि 200 आर्टिकल ले कोन कहिछि एतले दीटा हाउस रे जोटी बाय कैमरा अछि हाउस रे पास हला पर गवर्नर पाखु जीवो. गवर्नर असेंट देई परिबे, विथहोल्ड करि परिबे, रिटर्न करि परिबे जदि मनी बिल नुह, और कहिछि कि रिजर्व करि परिबे प्रेसिडेंट कंसिडरेशन पई. तो प्रेसिडेंट पाखु को गले सिना से कहिछि कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया can on his or own reserve a bill passed by the legislature for consideration. माने निजे निजे रखि परिबे कि गवर्नर जे पर्यंत बिल टा न दैछनि 200 रे 201 को जीवो केमिति. आगे तो फास्ट रिजर्व करिवो कि गवर्नर रिजर्व करि पठेबो ना. जेतल गवर्नर रिजर्व कर नांती ताल केमिति इंटरफेयर करि. हां रिजर्व कला परे रिकंसिडरेशन पई पठाई कि अनलिमिटेड पई कोन करि परिबे बिल को पेंडिंग रखि परिबे. पॉकेट बिटो जे सेटा वाला कांसेप्ट. फास्ट 200 आर्टिकल तो भाई हबो ना बुझियला. दशरथ भाई कोन दशरथ से जा हो अरे भाई बुझियला पॉकेट बिटो पर कथा आगे ये तो कांसेप्ट क्लियर होबा दरकार ना. अरे बुझियला ए सोनो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर इजी क्वेश्चन. कंसीडर द प्रोविजन दैछि आउ स्टेटेड अंडर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 डीपीएसपी रे अछि. वैल्यूइंग प्रिजर्व द रिच हेरिटेज आर्टिकल 51 एफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फंडामेंटल राइट. ऑल आर 3 करेक्ट. तो करेक्टली मैच. तो आंसर ऑफ इट कोन सी 13 सी. ऑल आर करेक्टली मैच्ड. चलो बहुत इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट 14 नंबर consider the following statement regarding scheduled area under the 5th schedule of Indian Constitution. मन रखिबा scheduled area कथा कहले तमरा 5th schedule भल से बुझो 5th schedule. बट schedule तमरा जतबेला schedule एंड ट्राइबल एरिया कथा कहूची that is 6th schedule 80 मेमी और तुम कहि परिबो आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम. तो ए जो शेड्यूल ले अछि आर सब पावर किए डिसाइड करिवो ना प्रेसिडेंट ही डिसाइड करिवो. प्रेसिडेंट कहिबे कि को एरिया जीवो. then in an area in a state is declared as schedule area under the 5th schedule, the state government loses its executive power and local body assumes total administration. भाई नहीं गवर्नर पाखरे पावर अछि. बुझेला 14 नंबर. तो गवर्नर पूरा कंप्लीट पावर जीवन. सेकंड, the union government can take over the total administration of such area under certain circumstances on the recommendation of the governor. भाई प्रेसिडेंट पाखरे पावर थाए सेंट्रल गवर्नमेंट केमिति कंप्लीट पावर नहीं जीवो. तो सेकंड आल्सो इनकरेक्ट. से पचारि करेक्ट कोटा
तो डेफिनेटली आंसर विल बी टी, नन ऑफ द एबव। बुझियला? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 16 नंबर आंसर कौन हम? नंबर आंसर, consider the following subject under the constitution of India. देजी लिस्ट देजी for the above constitutional amendment with respect to which of the above ratification of legislature not less than 1/2 of the state is required before the bill presented to president. तम कही मन रखियो तीनटा concept, simple majority, special majority of parliament, simple majority of parliament आउ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रैटिफिकेशन हाफ ऑफ स्टेट, रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट विथ सिंपल मेजॉरिटी ए कथा कहितली। तो लिस्ट को मन रखियो कहितली, मन रखिबो रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट सेठी हबो जोटी फेडरल इशू कांसेप्ट आसीबो और तमर फेडरल कांसेप्ट कथा आसीबो। दे जे लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल, तो डेफिनेटली फेडरल कांसेप्ट हेई परिबो। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एटा भी हेई परिबो। कंडीशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर तो डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एथरे कोन अछि कोनोसी कांसेप्ट कथा कोइ नै। तो आंसर एटी कोन हबो? ए 1 and 2 16 ए 16 ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। चलो जल्दी। With reference to the Indian polity, consider the following statement. देजी, the governor is not answerable to any court for exercise and performance of the powers and duties of officers. Article 361. Article 361 direct copy paste. Article 361. Okay, Article 361 ने कौन कहूची कि the president and governor is not answerable to anything done by them in their office. Office रे थिला बेले से कोनोसी not exercise तब कोन they are not responsible. Responsible goes not answerable to court. Correct अछि. No criminal proceeding shall be instituted or continued against the governor during his term of office. No criminal, मन रखिबो criminal proceedings सही परिबो नै. No criminal proceedings, but civil proceedings can be. Civil proceedings can be initiated. सिविल प्रोसीडिंग सही परिबो बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग सही परिबो नाही। एटा भी एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14, एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14 तम पडिबो ए दिन सेउडा पाइ जिवो। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट अछि, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट वेला members of the state legislature are not liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by the legislature. Members of the state legislature, article 194 MP कथा कहितले आर्टिकल 105, तो ए दिन सब भी तमरे डायरेक्टली मेंशन अछि। तो पचारि जे करेक्ट कोउटा, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द 17D. I think we are done with the 2025. मते कुआ लास्ट गोटे क्वेश्चन अछि, आपण कोंतु कोउटा हमर क्लास रे पढाई नथला, ऑनेस्टली कोंतु 2025 रे क्वेश्चन हमर कोउटा को कांसेप्ट हम स्किप करिछ। प्रणति सुनीता को गोटे कांसेप्ट कोउटी स्किप हेछि, को गोटे गोटे जो कांसेप्ट स्किप हेछि मु एक्सप्लेन कर देबी। गोटे कांसेप्ट जोटी स्किप हेतिबो को ऑल डिस्कस्ड। चले करो एक नंबर क्वेश्चन करो, एक नंबर क्वेश्चन कौन हम देजी। With reference to the government of India, consider the following data. How many of the above row match correctly? Okay, अच्छा, director of enforcement, okay,
डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट तमे तो गोटे दिन से जानथिबो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एटलिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जानथिबो एटा तो इनकरेक्ट हेगला एटा इनकरेक्ट हेगला ओके तापरे ए दिन से छाड़ो ए दिन से तमे मन रखिनो ए क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन करबा सब मन रखिया इजी नो तो एटा धर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एटा तो करेक्ट दिबो तापर जे डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस तो रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस करेक्ट हेतिबो डायरेक्टर ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ डाटा मैनेजमेंट कथा कहिचे कैरिंग आउट बिग डाटा एनालिस्ट असिस्ट टैक्स ऑफिसर फॉर बेटर पॉलिसी एंड हैविंग टैक्स इवेडर तो ये भी रेवेन्यू अंडर थिबो तो दीटा स्टेटमेंट करेक्ट तो आठी आंसर को हबो बी हबो ओके ए क्वेश्चन को हैंडल करबा टिके डिफिकल्ट ओके तमे जदी सब गुडा मन रखछो अदरवाइज एलिमिनेशन में पकेबो एलिमिनेशन में तमर 50-50 आसीबो अच्छा ब्लर आसुची ठीक अछि तो ए क्वेश्चन टी करबा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट कैटेगरी तो करबा डिफिकल्ट एग्जाम हॉल ओके तो सब गुडा को टिके दिमाग लगे कि सेता लगेटा इजी हुआ इट इज डिफिकल्ट डेफिनेटली एबे क्लियर आछी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करबा 2025-26 अच्छा ठीक है सब कॉन्सेप्ट अड़ा चलो 2024 2024 एबे क्लियर देखाउ जे ब्लर नाही एबे ब्लर नाही तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टिल इंडिया 2023 पर्यंत 2023 कथा कहिछ 2023 ओके 2023 भितर आर्टिकल 81 82 330 and 332 170 ओके ये डिलिमिटेशन सहित कनेक्टेड तो जनरली आर्टिकल 82 ही रिलेटेड आर्टिकल 82 1952 1962 1972 and 2003 एथर रिपोर्ट 63 then 73 and 2003 so till now there are 4 delimitation commission have been constituted okay there are 4 delimitation commission has been constituted okay 2026 रे एबे delimitation commission गोटे आसिला परे हेई परिबो okay till now 4 delimitation commission has been constituted चलो next question language ऊपर question the constitution okay 21st 71st and 92nd 21st 71st and 92nd सिंधी कोंकणी मणिपुरी नेपाली बोडो डोगरी मैथाली एंड सांताली मैथाली गोटे जगह अच्छी हटई दियो चारि हटई दियो आंसर हम ए ओके 71st रे कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली ऐड हेतला ओके कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड 1992 रे 8th शेड्यूल ले कोन कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाल मन रखिबो भोजपुरी नाही इंग्लिश नाही राजस्थानी भी नाही डी की गोटे लिखल 1 नंबर डी अच्छे ठीक हाँ 2 नंबर ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एतर किसी बुझेवा दरकार नहीं हाँ 3 नंबर पार्टी कथा दैछि पार्टी एटा तुम हिस्ट्री रे भी पढ़िथिबो भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी करेक्ट अच्छी सोशलिस्ट पार्टी बाय आचार्य नरेंद्र देव तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम स्वतंत्र पार्टी राजा सॉरी कोथि राजा सी राजगोपालचारी ताले दीटा करेक्ट अच्छी दीटा करेक्ट तो पचार करेक्टली मैच तो बी विल बी द करेक्ट आंसर 3 नंबर बी मन रखिबो भारतीय जनसंघ श्याम प्रसाद मुखर्जी करथिले सोशलिस्ट पार्टी किए करथिले आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी किए करथिले कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम स्वतंत्र पार्टी किए करथिले त सी राजगोपालचारी तो दीटा करेक्टली अछि तो आंसर एटी कोन हबो बी हबो ओके ओनली टू ओके दिस इज पेयर कथा पचार ये सब पेयर कथा पचार ओनली 2 माने खाली 2 नुह ओनली 2 माने एटा केते पेयर कथा क्वेश्चन पचारुछ
ओनली टू माने तुम भावनी कि ओनली टू माने गोटे खाली स्टेटमेंट करेक्ट ओनली टू माने कोन दीटा पेयर कथा एतरे ओके एटा माने पेयर क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर जी which of the following statement are correct about the constitution of India statement correct पचार the power of municipalities are given in part 9A of Indian constitution part 9 ने PRI कथा part 9A रे तमरो part 9A रे कौन देइछि सॉरी उल्टा लिख देले रे 9 रे कौन देइछि PRI कथा 9A रे तमरो म्युनिसिपैलिटी 9B रे तमरो कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके 243 टू 243 ओ ये 243 O2 243 ZS2 243 ZT here 73rd 74th and 97th constitution amendment 2011 data correct अच्छी the emergency provision in part 18 emergency 352 to 360 okay it is part 18 अच्छी the second statement correct provision related to amendment the constitution 368 केतना नंबर पार्ट रे अछि पार्ट 20 रे अछि कोन दैछि पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पचार करेक्ट तो आंसर एठी हबो डी ओके आंसर एठी को हबो 4 नंबर डी हबो पूरा पार्ट रु ही क्वेश्चन टा अछि ओके एते कष्ट कला काई कि मु भी जानि पड़ने तो चाहितले ओके एमिति तीनटा देकी एमिति पार्ट तीनटा लिखि दितले भी हेइथांदा एमिति करथले भी हेइथांदा काई एते लिखि देला कष्ट हो पढ़ी की टिके एनर्जी खर्च करिया पई देछि अरे भाई बुझियला 4 नंबर कार किस डाउट नहीं 4 नंबर डी 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 समझता हूँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर चलो 5 नंबर which of the following statement is correct as per the constitution of India correct पचारिछि देखिबा interstate trade and commerce is a state subject under the state list interstate trade commerce अच्छा ठीक अछि interstate trade commerce जदि होउछि ताहाले commerce is a state subject under the state list छाड़ ठीक अछि interstate migration is a state subject under the state list interstate quarantine is a union subject under the union list corporation tax is a state subject आगे इटा हटाओ corporation tax टा गोटे कोन जे state subject नुह नेक्स्ट कहला interstate trade and commerce घोषी के सब मन रख परिबनी केमिति कहउछि interstate trade and commerce कॉमर्स दी प्रकार दीटा दियर स्टेट ले गोटे स्टेट सब्जेक्ट केमिति हबो दीटा इंटरस्टेट रहउछि ना इंटरस्टेट माने सपोज ओडिसा झारखंड भीतर रहउछि ताले एटा भी हेई परिबो नाही इंटरस्टेट माइग्रेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट माइग्रेशन कथा भी केमिति हबो तो थर्ड भी हबो नाही इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट हां इंटरस्टेट क्वारंटाइन इन ए यूनियन सब्जेक्ट तो 5 नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर बुझियला अरे भाई एलिमिनेशन केमिति करिवो बुझियला यदि क्वेश्चन न आसुछि ठीक से मने भी पडुनी केमिति हटाइबो 5 नंबर क्वेश्चन हां 300 के लिख सेलेन कोई MK31 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा राइट टू प्राइवेसी जेतले न्यूज तला केस पुट्टो स्वामी केस 2017 right to privacy article 21 under okay right to privacy article 21 under right to privacy right to clean environment भी पचारि परिबो right to marry of its own choice right to marry of its own partner okay environment etc पचारि परिबो all are in the article 21 okay article 21 को expand अलग लेवल करिछन किनु केसेस सब मन रखिबो जदि पचार दबो जे right to internet
राइट टू इंटरनेट केतना नंबर आर्टिकल राइट टू इंटरनेट इंटरनेट केतना नंबर आर्टिकल ले दैछे हाँ राइट टू लिव विथ डिग्निटी हरीश राणा केस भी पचारि परिबो कॉमन कॉमन कॉज केस भी ये करि परिबो राइट टू इंटरनेट आर्टिकल 19 अनुराधा भासिन केस ओके डिजिटल एक्सेस कहले आर्टिकल 21 इनसाइड कंट्री बुलिया लगी फ्री मूवमेंट आर्टिकल 19 ओके आउटसाइड बाहर को जाई रिटर्न आसीबो आर्टिकल 21 पचारि पारे मे भी केते ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू लिव विथ डिग्निटी हाँ बच्चा किए मना करछ 7 नंबर व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ओके सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन बट पॉलिटी भी अच्छी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेयर्स ओके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 2023 सेकंड छत्तीसगढ़ कार ना डेथ हेतला तो सेति मे भी क्वेश्चन थिला ए परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीज exercise military command over the 3 service chiefs principal military advisor to defense minister in all tri servicemen the chief of defense staff ro first दिन से देखिबा कि जे कोन एटा तो करेक्ट अछि principal military advisor to defense minister in all tri service तो फर्स्ट ए स्टेटमेंट करेक्ट अछि ओके तो बी टा मोर हटाई देली देजी कि exercise military command over the 3 service chiefs नहीं भाई 3 सर्विस चीफ ऊपर मिलिटरी कमांड परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ एकटा करेक्ट अछि तो 1 3 एबो को हबो डी हबो आंसर 7 नंबर डी हबो 1 3 2 3 हबोनी 2 3 हबोनी 1 3 1 3 7 डी will be the correct answer permanent chairman and principal military advisor okay पढ़िबो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पढ़ी दबो तब बुझ पारे नेक्स्ट क्वेश्चन करो 8 नंबर क्वेश्चन को हबो आठ नंबर क्वेश्चन कौन हम को नंबर दे कौन करो जल्दी 8 नंबर which of the following statement about the ethics committee question ethics committee okay committee ऊपर क्वेश्चन तमरा थिला okay financial committee public accounts committee estimate committee on public undertakings okay departmental related standing committee 24 committee थिला तो भल से पढियो ad hoc committee standing committee which of the following statement about the ethics committee in the Lok Sabha are correct initially it was an ad hoc committee correct अछि ad hoc committee थिला एबे भी only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of member of Lok Sabha. This committee cannot take up the matters in which sub judice माने तमे sub judice माने कोन तमे न्यूज़पेपर रु देखि कि टीवी रु देखि कि न तो एटा भी cannot take correct अछि only a member of the Lok Sabha can make a complaint भाई राज्य सभा करि परिबो राज्य सभा member can initiate
but only through Lok Sabha member. तो सेथि पई रॉन्ग हे जिवो तो करेक्ट पचारि छि करेक्ट कोडा करेक्ट पचारि छि तो आंसर एटी हबो कोन सी 1 and 3 यार भाई बुझियला सी काहे कि बी काहे कि हबोनी बी द ओनली मेंबर्स ऑफ द लोक सभा कैन मेक ए कंप्लेन रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोक सभा राज्य सभा मेंबर करि परिबे बट काहा थ्रू रु करिवे लोक सभा थ्रू भाई बुझियला काहे कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हला सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हबार कारण टा कोन ना राज्यसभा थ्रू रही परिबो दैट इज सॉरी राज्यसभा मेंबर करि परिबे बट लोकसभा थ्रू बुझियला अरे बुझियला ना नाही को ना नंबर ए क्वेश्चन करा जीवो हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसेंबर 9 1969 1946 किए थिले सच्चिदानंद सिन्हा डिसेंबर 11 1946 राजेंद्र प्रसाद तो पचारि कौन बिफोर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बुझियला प्रणति सुनीता कोई सब बुझियला चलो नेक्स्ट चलो जल्दी जिते स्पीड करिया हेते भलो विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ओके एक्ट ऑफ क्वेश्चन पचारि एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एक्ट ऑफ क्वेश्चन जल्दी करो कौन देछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रे कोन कहितला ऑल इंडिया फेडरेशन हबा दरकार ओके तीनटा लिस्ट रहउतबा दरकार से तीनटा लिस्ट रे तापर कोन कहितला जे डायर केट प्रोविंस को ये करो डायर केट सेंटर लाओ तापर को बाइकैमरलिज्म प्रोविंस रे करो डिफरेंट बॉडीज क्रिएटेड फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन आरबीआई डिफरेंट जिंस आस्तिला तो दैछि कोन इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश एंड प्रोविंशियल कथा कहिछि यूनियन ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट भितर कोन कहितला कि ना ऑल इंडिया फेडरेशन बनेया पई जोटा कि लेटर फेज रे इंप्लीमेंट हेइ नतला हडा अलग कथा किनु कहितला करेक्ट अछि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर ता माने यूनियन पाखर पावर रखिया को ओके तीनटा लिस्ट रखितला गोटा होची कोन फेडरल लिस्ट देन प्रोविंशियल लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट ए तीनटा लिस्ट आ गोटे रेसिडुअरी पावर दिया इतला काहा को ना गवर्नर जनरल को जोटा लेटर फ्रेज रे काहा को दिया छि ना सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी दीटा करेक्ट तो आंसर एटी कोन पचर करेक्ट पचर छि तो सी विल बी द करेक्ट आंसर 10 नंबर की गोटे ये लिखले हां राज्यसभा मेंबर्स कैन गो टू लोकसभा थ्रू हां राज्यसभा मेंबर लोकसभा थ्रू रु कंप्लेन कर परिबे हां प्रणति केमिति हेला भाई डिफेंस को प्रोविंशियल ये को दे दबो डिफेंस फॉरेन अफेयर्स हां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रे या कहिछ जे प्रोविंशियल लिस्ट रे तुम डिफेंस को रखि दियो कम्युनिकेशन को रखि दियो फाइनेंस को रखि दियो या कहितला तो आंसर एटी कोन हबो बोथ आर करेक्ट पचारि जे करेक्ट ना तो बोथ आर करेक्ट हबो नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ कौन देखिए आर्टिकल 368 देखिए आर्टिकल 368 रे प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आपण आर्टिकल 368 इटसेल्फ पढ़िबे डिफेंस फॉरेन अफेयर्स गवर्नर जनरल थिला मे बी सर नो इट इज फेडरल लिस्ट जेतले आर्टिकल 368 पढ़िबो लिखाइ थियो द पार्लियामेंट मे यूज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन through addition variation and repeal any provision of the constitution माने constitution को केमिति ऐड करि परिबो addition किछि करि कि चेंज करि परिबो variation किछि चेक करि परिबो और repeal करि परिबो एटा आर्टिकल 368 रे कंप्लीटली डायरेक्टली लिखा अछि ओके तो एटी पचारि छि कोउटा करेक्ट पचारि छि तो आंसर अब एटी कोन 11 नंबर डी ओके एटा इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट 12 नंबर
which of the following statement are correct in respect of money bills? money bills money bill ଦେଇଛି article 109 mention the special procedure in respect of money bill 110 ରେ definition କଥା କହିଛି 110 ରେ definition କଥା କହିଛି ଆଉ 109 ରେ special procedure କଥା କହିଛି completely class ରେ କହିଥିଲି a money bill shall not be introduced in the council of state तामाने राज्य सभा रे money bill introduce हेई परिबो नाही सेटा भी तमे जानि only लोकसभा रे हेई परिबो लोकसभा only money bill लोकसभा रे हेई परिबो correct अछि next कहला राज्य सभा a money bill shall not be introduced in the council of states माने कोन राज्य सभा रे introduce हेई परिबो नाही राज्य सभा रे introduce हेई परिबो नाही एटा भी correct अछि नहीं राज्य सभा can either approve the bill or suggest changes but cannot reject एटा भी correct अछि either से only recommendation देई परिबो okay change कर an amendment to the money bill suggested by राज्य सभा to be accepted by the lok sabha 14 days पर काहागु राज्य सभा रे किछि पावर ही नहीं okay amendment कोन okay एटा incorrect तो पचारि जे कोन आंसर पचारि जे करेक्ट पचारि जे तो 1 2 3 1 2 3 कोट अछि by C will be the correct answer योडा 1 2 3 4 5 लिख सेले 1 3 4 3 4 an amendment to money bill suggested by Rajya Sabha have to be accepted by Lok Sabha amendment कोइ बा recommendation खाली देई परिबो ओके amendment किछि करि परिबो लोक सभा ऑलवेज मनी बिल ऊपर लोक सभा पावर अधिक तीनटा कंडीशन भी पढाइथिल लोक सभा इक्वल टू राज्य सभा ग्रेटर पावर स्पेशल पावर कथा कहिथिल देन लोक सभा ग्रेटर पावर राज्य सभा मन पडुची तो आंसर एटी कोन हबो आंसर सी हबो कार किछि डाउट 12 नंबर सी कार किछि डाउट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हां ए गोटे क्वेश्चन टिके मत हार्ड क्वेश्चन थिला ओके कंपैरिजन वाला मन अछि कंपैरिजन वाला कंपैरिजन वाला आर्मी नेक्स्ट एयर फोर्स एंड नावल ओके आर्मी रो हेड किए सबुट आर्मी रो हेड किए आर्मी रो सबुट हाईएस्ट रैंक जनरल हियर एयर चीफ मार्शल हियर इज एडमिरल बुझियला करो ट्राई करो क्वेश्चन टा ए क्वेश्चन ट्राई करो कहाँ बा ए क्वेश्चन ट्राई करो 13 नंबर क्वेश्चन कहाँ बा 2 3 4 व्हिच ऑफ द करेक्टली इन टर्म्स ऑफ रैंक इक्विवेलेंट भाई तो मन रखियो तमर घुसिबो ओके एटा को तुमको छाडू छी तुम चेक करियो मोर एग्जैक्टली मन नाही सब डाटा ओके तो चेक करिवो को मोर डाटा ही मन नाही एते मोर दि तीनटा खंड मन अछि ब्रिगेडियर एयर कमडोर आउ कमांडर करेक्ट अछि नेक्स्ट मेजर जनरल एयर वाइस मार्शल वाइस एडमिरल करेक्ट अछि मेजर सहित स्क्वाड्रन लीडर की ग्रुप कैप्टन ये विंग कमांडर इट इज विंग कमांडर आई थिंक विंग कमांडर मो डाटा टिके मन नाही चेक करिवो तमे हला चेक करिवो क्वेश्चन ओके चेक करिवो तुमको टेबल टा टिके मन रखि दो बुक रे अछि कि इयर अछि ते बुक में मन रखिवो टेबल टा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर
The Northeastern Council, it is a statutory body established by Northeastern Council Act 1971. Subsequent amendment 2002 मसीह रहितला. There is comprise कोण governor of the state correct अछि तार member थांदी, chief minister of the state, 3 member nominated by president but home minister न थांदी. So 1 2 3 correct पचारिछि तो 1 2 3 A will be the correct answer. 14 number A कार किसी डाउट हो जाए डायरेक्ट कंपोजिशन वाला क्वेश्चन. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके जोनल काउंसिल जब क्रिएट होइतला 19 जोनल काउंसिल है तमर पांचटा जोनल काउंसिल तो सेइतरे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ओके डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तारी अंडर जाउछ. तो 1 2 3 होम मिनिस्टर न थांदी आउ तीन जणा थांदी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर. ओके नारी शक्ति बंधन अधिनियम ऊपर क्वेश्चन अछि. नारी शक्ति चलो 105 अमेंडमेंट जो होइतला 15 the provision will come into effect from after 18th lok sabha. First wrong है गला. This will be in force for 15 years. 15 year कथा भी कहि. There are provision for the reservation of seat for the scheduled caste women within quota reserved for the scheduled caste. केमि देई परिबो न कहले फंका आइ परिबो ना. 2 3 कोठी अछि 2 3 C will be the correct answer. 15 C 2 3. Next read petition read of prohibition habeas corpus mandamus prohibition certiorari and quo warranto. Okay habeas corpus जानछे to body of mandamus we command. Okay command करिवा public authority. Then prohibition ने कोन कहयो भाई prohibition ने discontinue of hearing discontinue hearing माने हायर कोर्ट विल से टू द लोअर कोर्ट भाई रे तो बहुत कह गला तू डिस्कंटिन्यू कर. ए गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हो टेकिंग पार्टिसिपेशन होई परिबनी. पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली पास ऑन द प्रोहिबिशन हबनी. ए लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन प्रोसीडिंग ऑफ द केस. तो आंसर हबो कोन 16C देछि द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग continuation of proceedings in a case. 16C 16C. Next 17 number UPSC favorite question है एटा. जी consider the following statement. अब पचारी जी correct. It is the governor of a state who recognize and declare any community of that state as scheduled tribe. भाई scheduled tribe को president ही declare करे. President खत्म कहानी. Wrong statement. A community declared as scheduled tribe in a state need not be so in another state. गोटिया स्टेट रे सपोज गोटिया स्टेट रे हम गोटे कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करछे सेटा अदर स्टेट रे कोन सेही ट्राइब शेड्यूल ट्राइब हेबे बला समिति किछि नाही. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट. तो आंसर 17 नंबर क्वेश्चन पचारछि करेक्ट पचारिछि. तो करेक्ट पचारिछि तो करेक्ट पचारले कोन हबो. तो आंसर B will be the correct answer. 17B only 2 statement will be the correct answer. Next UPSC भूल वाला क्वेश्चन आसी गला. ओके गुजरात हाई कोर्ट पढ़े दे गला. ओके UPSC क्वेश्चन आंसर रॉन्ग देथिला and one person is filed a case petition in the Gujarat High Court. लेटर फेज रे गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट भी देले एई वर्ष जजमेंट भी देले and attempt भी तांगो. चलो with reference to the union budget consider 112 article ऊपर क्वेश्चन देछि. a union finance minister on behalf of the prime minister lays down the annual financial statement before the both the houses of parliament. Okay on the behalf of the president. Okay president will cause the laid annual financial statement to be laid before the both houses of parliament. Okay तो एटी कोन बा इनकरेक्ट इजबो. इनकरेक्ट
पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर नो कोन जे दैट इज तमे कहि परिबो प्रेसिडेंट एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द प्रेसिडेंट तो कोनोसी ग्रांट डिमांड मिली परिबोनी ओके तमे फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट पड़िबो डायरेक्ट स्टेटमेंट द सेकंड करेक्ट से पचारि जे करेक्ट तो आंसर अब कोन 18 बी 18 नंबर बी नेक्स्ट 19 नंबर with reference to the speaker of Lok Sabha, consider the following statement while any resolution for the removal of speaker of the Lok Sabha. ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକର ର ରିମୁଭାଲ ହଉଛି ଓକେ ସ୍ପିକର ର ରିମୁଭାଲ ଟାଇମ ବେଳେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ପିକର ପ୍ରିଜାଇଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବଟ୍ ପ୍ରିଜାଇଡ ନ କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ ଏ मेंबर ऑफ द हाउस ତ ତା ପାଖରେ पावर अच्छी कौन से प्रोसीडिंग्स रे भाग नहीं परिबो सिटिंग रे बसी परिबो सब किछि करि परिबो बट एक्सेप्ट कौन ना प्रिजाइडिंग करि परिबो इवन इफ फर्स्ट इंस्टेंस रे वोट भी दबो बिकॉज़ इट इज अ मेंबर से मेंबर हे जइतु एतळु जेते बेले कौन स्पीकर अछि कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अछि तो सेते बेले ही एक्ट एज द कौन ही विल गिव द कास्टिंग वोट बट जेते बेले ता रिजोल्यूशन चल जी ही और सी बिकम द ऑर्डिनरी मेंबर जर नॉर्मल मेंबर भलिया तो डेफिनेटली से कौन फर्स्ट इंस्टेंस रे वोट दे परिबो he shall not preside correct अछि he shall not preside he shall not have the right to speak हे परिबोनी speak तो करि परिबो दे ये करि परिबो he or she shall not entitled to vote on the resolution in the first instance मु कहली कोन स्पीकर सब बेले गोटे इंस्टेंस रे वोट दिए फर्स्ट इंस्टेंस रे सेटा होची ता रिमूवल कंसीडरेशन थिला बेले अदरवाइज ऑलवेज कोन कोन ने कास्टिंग वोट से पचारि जे करेक्ट कोटा तो गोटाई करेक्ट अछि तो कहबो आंसर हां डिलीट मार दियो डिलीट किछि असुविधा नै ओके ए कांसेप्ट मु कोइ नै क्वेश्चन 100 थर कहिथिबे तो 19 नंबर आंसर कहबो ए डिलीट मार देले एठी चलिबो परीक्षा होले डिलीट नै मार्क छाडी के आसीबो माने देई के आसीबो एक्स्ट्रा 19 नंबर गला 20 नंबर ए बिल पेंडिंग वाला क्वेश्चन मु तुम केते थर कराई छी ए पेंडिंग बिल वाला क्वेश्चन जेते बेले डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हे जाउची ताले बिल ऊपर इफेक्ट कोन पड़िबो केते थर कराई छी को बिल पेंडिंग वाला क्वेश्चन केते थर 20 नंबर कोन हो देई छी with reference to Indian Parliament, consider the following statement. There is a bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. Correct अछि. Bill मु तुमको 6टा कंडीशन पढाइतिली 6टा कंडीशन पढाइतिली मन अछि लोकसभा रे सपोज बिल पेंडिंग है कि अछि से आइदर लोकसभा रे इंट्रोड्यूस है थाउ कि राज्यसभा रे ट्रांसमिटेड है जाउ ऑलवेज लैप्स हो ए बिल लोकसभा रे इंट्रोड्यूस है छि राज्यसभा रे पेंडिंग है कि अछि लैप्स हो पुनी आउ चारिटा कंडीशन रे लैप्स हुए नै जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट असेंट ओके ए कंडीशन रे लैप्स हुए नहीं ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट डिसोल्यूशन करेक्ट स्टेटमेंट ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लोकसभा रु पास है कि जाइछि राज्यसभा रे पेंडिंग अछि मे भी राज्यसभा अमेंड करी पुनी लोकसभा देई पारे तो डेफिनेटली लैप्स है जिवो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एटा भी करेक्ट अछि a bill in the regard which president of India notify for intention to joint sitting रे तमरो कोन ना बिल लैप्स हुए नहीं लैप्सेस कथा देछि तो लैप्स हो नहीं तो करेक्ट पचारि छी तो आंसर एटी को हबो बी 20 नंबर बी केते थरो एक क्वेश्चन ए डायग्राम करी कि बुझाइ छी डायग्राम करी कि तम बुझाइतिली जे लोकसभा राज्यसभा एठू सेठी गला सेठू एठी गेसला अमेंडमेंट को हबो जॉइंट सिटिंग ओके आई थिंक डायग्राम करी भी तुम बुझाइतिली मन पडुची प्रणति क्या ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पार्लियामेंट ऊपर क्वेश्चन कोन देछि गोटे चलो 21 करो with reference to the Parliament of India, consider the following statement. करो आंसर कौन 21
prorogation of house by the president of India does not require the advice of the council of minister. हाँ केमिति मन इच्छा president always advised by the council of minister. Wrong statement. Prorogation of house is generally done after the house is adjourned signed, but there is no bar to the president of India. Prorogation of house is in session. देखो भल से पढ़ो. Prorogation of house is generally done after the house is adjourned. Correct अच्छे पर्यंत. But there is no bar to president of India. Prorogation house. हाँ कौन सी? Even if during the sessions of the house, the president can also prorogue the house. So definitely second statement correct. Dissolution of the Lok Sabha is done by the president of India, who receive exceptional circumstances does so in the advice of council of minister. Correct अछि. Okay, exceptional cases रे भी कौन करि परिबो ना तमरो advice of. तो answer कौन बेटी C हबो. Okay, so we are done with the 2024 2023. एबे कुआ गोटे क्वेश्चन कुआ बाहर अछि. कुआ क्वेश्चन किछि बाहर. क्वेश्चन किछि बाहर उथिला. yes or no? अरे क्वेश्चन किछि बाहर उथिला. नो वेट गोटे मिनट वेट कर. कौन आई एम नो सर कौन चल चलो चलो चल 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 जल्दी. हाँ करो. First, take number question. In essence, what does the due process of law means? Due process of law को तो मैं sequence रे पढ़ाई procedure established by law. Article 21 to Menka Gandhi case. Menka Gandhi case 1978. Menka Gandhi case रे तीनिटा point fi कोइतिली. ओके कहा को अरेस्ट कथा ये कथा तो एटी कौन हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कथा कहितला. तो आंसर एटी कौन हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय पार्टी फेयर एटा करेक्ट हेई थांदा बट इक्वालिटी बिफोर लॉ नाही एटा करेक्ट हेई थांदा बट जेहेतु प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अछि मेनका गांधी केस रे कोन कहितला जे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ओके द इन एसेंस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माने होची प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. यूएसए कांसेप्ट हेले भी मेनका गांधी केस रे कोन कहितला इट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल. चलो एटा पूरा सीक्वेंस मु कहि छी जे आर्टिकल 21 नु फ्लो करे कि तमर को मेनका गांधी केस पर्यंत भी बुझाई छी. मेनका गांधी एबे बुझेले सब सरीबो नै. ओके तो कहबोनी जे खाली कहि देई पळौ जे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑलरेडी मु ताको एक्सप्लेन करि छी. तो क्लास रे एक्सप्लेन करैथिली. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हां क्वेश्चन रे टिके हार्ड आस्तिला 2023 मसिया रे पॉलिटी क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट थिला. पॉलिटी क्वेश्चन डिफिकल्ट थिला. Consider the following statement. Statement 1 is in India, prisoners are managed by state government with their own rules and regulation for the day-to-day administration of prisons. Correct achi because prisons in the state subject. So they have to state subject achi so definitely managed by the state government. Correct achi. In India, prisoners are governed by Prisoners Act 1894. Which is expressly kept that subject of prisoners in the control of the provincial government. Okay एटा मते confusion suppose सेते example लागि थाना suppose confusion लागि थाना तो मु देखिबी और फर्स्ट तो करेक्ट अछि तो एटा हबो नाही. फर्स्ट करेक्ट अछि एटा हबो नाही. सेकंड statement 1 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation. एटा तो चांस हबर नाही. तो definitely statement 1 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of A. Okay answer habo kono 2 number A habo 2 number A habo 2 number A habo
बी हम ना 2 नंबर ए हम सपोज मत प्रिजन्स एक्ट 1894 मने भी नहीं फिर भी मु करि परिबी एलिमिनेशन पकई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जदि एटा तमर मने नाही ओके एक्ट को एते डिटेल्स रे पढिबा दरकार नाही यू कैन सिंपली स्किप ए बला क्वेश्चन को स्किप कर दबाटा ही बेटर हम बेटर कर दो ता पई तम एक्ट पढियो ना पढिबो अच्छा नेक्स्ट which of the following statement best reflect the chief purpose of the constitution हमको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रे कहते कि लिमिटेड गवर्नमेंट ओके गवर्नमेंट रे टायरानी की कंट्रोल करबा लागि ओके किछि गोटे डॉक्यूमेंट दरकार से डॉक्यूमेंट ता कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म माने कोन ओके कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ठीक अछि it enables the creation of political office it defines the limits and powers of the government the answer एटी कोन बा सी 3 नंबर सी हम तामाने कोन कहला कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कांसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एई आर ऊपर माने बुलेई बंकाई कि 2-3 थर क्वेश्चन यूपीएससी पछलानी जे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म माने कोन कॉन्स्टिट्यूशन माने कोन ए ऊपर चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोन ए टाइप रो करी कि क्वेश्चन पचार जी तो सेति पे लक्ष्मीकांत सर भी तमरो गोटा ऐड कर देले ना काई मन दुख करियो तुम माने ओके फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर देले अच्छा नेक्स्ट in India which of the following constitutional amendment was widely believed that to be enacted to overcome judicial interpretation तुम कहले जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को ये करबा लागि कोन जे 9th शेड्यूल ले नै लॉ पकोतले 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 रस्तला आउ गिवन आईआर किलो केस 2007 रे कोन कहले देयर इज नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू द लॉज प्रेजेंट इन द 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कोन हबो फर्स्ट अमेंडमेंट ओके लैंड रिफॉर्म से कथा 4 नंबर लैंड कौन फर्स्ट अमेंडमेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जीवा हमें हाँ कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी हाउ मेनी ऑफ constitutional body नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी 338B 104/2019 रे आस्तिला ओके अमेंडमेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 एक्ट the Protection of Human Rights Act 1993 okay law commission भी नुह नेशनल डिजा कोन कंज्यूमर्स डिस्प्यूट ये भी गोटे एग्जीक्यूटिव बॉडी तो पचारि छि कोन आंसर हो 5 नंबर ए 5 नंबर ए 5 नंबर ए कार किसी डाउट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर करो 6 नंबर ट्राई करो जल्दी 6 नंबर देछि को consider the following statement if the election of the president of India is declared void by the Supreme Court of India all acts done by him or her in the performance of duties of his office of president before the date of decision is become invalid wrong article 71 रे तमरो कोन देइ छै ना dispute of election कहार प्रेसिडेंट रो तो मन रखिबो जति प्रेसिडेंट कर डिस्प्यूट रे कोनोसी वैलिड किया होची ताहाले से इलेक्शन पर ठारू ऑफिस अज्यूम करला पर ठारू सेही दिन भितरे जे कोनोसी कार्य करिथिबे सेगुडा को इनवैलिड होएनी तम बही रे देखिबो लिखाइथिबो नॉट इनवैलिडेटेड तो नेगेटिव वे रे लिखिछि नॉट को इनवैलिड इन रे काटी दियो दैट मींस वैलिडेटेड रहइबो तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग फर्स्ट 6 नंबर सी देखिबा फर्स्ट तो तमरो रॉन्ग हे गलानी 6 नंबर सी केमितिबो हां घर कथा ना वही बाहर करी केना देखिलो एबे बाहर करी देखो यही स्टेटमेंट लिखाइथिबो तो प्रेसिडेंट रो इलेक्शन जदी डिक्लेयर हे जाए कोन भॉइड डिक्लेयर हे जाए ताहाले जहा से करिथिबो सेही पर्यंत सेही दिन पर्यंत इट विल बिकम नॉट इनवैलिडेटेड ए वर्ड लिखाइथिबो रे देखो नॉट इनवैलिडेटेड लिखाइथिबो नॉट इनवैलिडेटेड त माने कोन वैलिडेटेड हां
The answer first wrong. In the election for the post of President of India can be postponed on the ground of legislative. अरे कहबो कि नाइ नाइ वेस्ट बेंगल इलेक्शन है नहीं, हाँ जम्मू कश्मीर इलेक्शन है नहीं कि सॉरी जम्मू कश्मीर कह देले सपोज तमिलनाडु है नहीं हमर वैकेंसी अछि पोस्टपोन कर दे समिति हेई परिबो नाही. When a bill is presented to President of India, the Constitution prescribe time limits. कौन से time limits prescribe नहीं. Okay, तो correct पचारि तो आंसर अब एटी कोन D. चलो next question जल्दी कर दवा. Next, finance bill and money bills of Indian Constitution. चलो चलो जल्दी जल्दी. हाँ, all three are incorrect. Typo error. अच्छा ठीक. हाँ चलो चलो next. 7 number. With reference to the देखो एगुडा ओनली 1 2 माने एगुडा पेयर कथा कहै छला ये पेयर कथा कहूछ भाबियोनी कि ओनली वन स्टेटमेंट माने पेयर कथा कहूछ. With reference to the finance bill and money bill, finance bill 117 1 and 117 3, money bill 110. Indian Constitution or Indian Parliament consider when the Lok Sabha transmits the finance bill to Rajya Sabha, it can amend or reject. Lok Sabha transmit finance bill to कोन राज्य सभा हेई परिबो करेक्ट अछि. ट्रांसमिट करले कोन अमेंड करि परिबो रिजेक्ट करि परिबो. when the Lok Sabha transmits money bill to Rajya Sabha, cannot amend reject the bill, it can only recommend. ठीक अछि. when the Lok Sabha transmits money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make a recommendation. Only recommendation kari paribo. Eta correct अछि. If in the case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill. Correct अछि. No joint sitting for money bill. But a joint sitting become necessary for the finance bill. Joint sitting हेई परिबो. Joint sitting हेई परिबो. मन रखिबो joint sitting हेई परिबो. But not a necessary नुह एटा ताले भी इनकरेक्ट है जिवो. थर्ड स्टेटमेंट भल से पढ़ो. जॉइंट सिटिंग द मनी बिल नहीं ए पर्यंत ठीक अछि किनु बट इन जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल एमिति कथा नहीं. जॉइंट सिटिंग अलाउड इन द फाइनेंस बिल बट नॉट नेसेसरी. दरकार माने दरकार सेमिति नहीं. तो आंसर कोन हो व्हेन द फर्स्ट स्टेटमेंट आउतरे पड़ला व्हेन द लोक सभा ट्रांसमिट द फाइनेंस बिल टू राज्य सभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. ओके चलो B हबो करेक्ट. ओके करेक्ट आंसर विल बी B. चलो नेक्स्ट. हाँ शेड्यूल एरिया देखो प्रति वर्ष शेड्यूल एरिया रो क्वेश्चन. प्रति वर्ष शेड्यूल एरिया रो क्वेश्चन 8 नंबर. चलो जल्दी जल्दी. With reference to the schedule area in India, consider the following statement. Within a state, the notification of an area as schedule area takes place through an order of the president. Correct अच्छे schedule area president order द्वारा ही हुए. President order द्वारा ही हुए. The largest administrative unit forming the schedule area in the district and lowest in the cluster of village. The chief minister of concerned state are required to submit annual report to the home ministry. तो एटा तो हबो नहीं. चीफ मिनिस्टर नुआ गवर्नर तो एटा रॉन्ग हो गला. The largest administrative unit forming the schedule area is the district and lowest cluster of village in the block. ये स्टेटमेंट एक्टर एक्चुअली दिया है. तो दीटा करेक्ट स्टेटमेंट. तो दीटा हबो कोन हबो बी हबो करेक्ट. बी 8 नंबर बी. 8 नंबर बी. ओके शेड्यूल एरिया गुटे भल से देखि जिवो क्वेश्चन तमर बार बार ता पर रिपीट होछ. ओके थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हबो कारण चीफ मिनिस्टर नो गवर्नर दियंती. नेक्स्ट 9 नंबर. The Supreme Court of India has held in some judgment that the reserve policies made under Article 16 subclause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of administration.
ओके एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मन रखिबो 335 आर्टिकल ले एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन हैनी मन रखियो बहुत सारा जिनस आर्टिकल ले डिफाइन हैनी बट खाली कहिछि जेमिति कि आर्टिकल 12 रे स्टेट रो डेफिनेशन डिफाइन अछि आर्टिकल 36 रे तमरो कोन करैछि जे स्टेट रो डेफिनेशन डिफाइन हैछि किंतु बहुत सारा आर्टिकल तो डिफाइन हैनी ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट से कहितला कि जे रिजर्वेशन टाइम रे 335 आर्टिकल को रेफरेंस दिया जाइतला करेक्ट अछि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द एफिशिएंसी डिफाइन करी नाही डिफाइन करी नहीं से पचार जे करेक्ट कोटा तो वन करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट सी विल बी द करेक्ट आंसर 9 नंबर सी मन रखिबो डिफाइन हेई नाही डिफाइन हेई नाही ए क्वेश्चन भी डिफिकल्ट 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 क्वेश्चन करा गोटी एक्ट काल जानती ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तुम आरटीआई एक्ट ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट ऑलरेडी बीएनएसएस नेक्स्ट आर्म्स एक्ट अनऑथराइज्ड wearing of police or military uniforms knowingly misleading otherwise interfering the police officer military officer engaged in duties celebrity गन फायर एटा भी करेक्ट हबो कारण आर्म्स एक्ट रे सेलिब्रेटरी गन फायर कथा कहिछि करेक्ट अछि अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस एंड मिलिटरी यूनिफॉर्म्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट रे कथा कहिछि अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ मिलिटरी बट नोइंगली मिसलीडिंग कथा इंडियन एविडेंस एक्ट कथा कहि नाही तुम एक्ट पढिबा दरकार नाही तो पचारि छि केटा करेक्टली पेयर करेक्टली ओनली टू 11 नंबर बी हबो आंसर ओनली टू ओके एक्ट गुडा पढ़िया दरकार नहीं एक्ट गुडा पढ़ी मन रखि परिबो ना काई पढ़िबो बोलते पढ़िबा दरकार नहीं एक्ट नेक्स्ट 12 नंबर करो फ्लैग कोड ऊपर क्वेश्चन अछि फ्लैग कोड ऊपर वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग 600 mm 400 mm मने नाही सपोज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड हाइट 3.3:2 एटा तो जानथिबो लेंथ एंड हाइट 3:2 ओके सेकंड करेक्ट अछि लेंथ तो जानिथिबो ना लेंथ 3:2 तो जानिछो देखिबा कोन देछि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट ओके एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कोन भाई एक्सप्लेन करूची समिति किछ होपर हे परिबोनी both statement 1 2 are correct and statement 2 not correct explanation समिति मते जणा पडुनी statement 1 is correct but statement 2 तो भाई correct अछि एटा होबार नाही तो डी आंसर होबा statement 1 is incorrect statement 2 is correct ओके 12 नंबर डी होबा नेक्स्ट 13 नंबर ट्राई करो The Constitution Day is compulsory. The Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote the constitutional value among the citizens. ओके 2015 परठारु चेंज होइछ 2015 परठारु करूचनी आगुरु लॉ डे हिसाब पालन करथले करेक्ट अछि ताले एटा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि तापर तला on 26 November 1949 the Constitution Assembly was set up ड्राफ्टिंग कमिटी भाई अगस्त 29 नैतला अगस्त 29 1947 सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट फर्स्ट करेक्ट है एठी इनकरेक्ट है तो सी अब आंसर फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट 13C कार किसी डाउट अछि ए पर्यंत कार किसी डाउट आई थिंक ए पर्यंत कार किसी डाउट नथियो चलो नेक्स्ट मदरहुड इंटरवेंशन स्टेट हेल्थ है भाई ए क्वेश्चन छाड़ो स्टेट हेल्थ कथा इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पड़े 15 नंबर
consider the following statement in context of undertaken anamia mukta. Chalo chalo chalo, eguda nai polity no. In public sector, healthcare largely focus on a curative, limited, promotive approach, decentralization delivery darkar nahi, karibar nahi. 17 number. 17 number karo, 17 number. कर जल्दी जल्दी 17 number. Consider the following statement. According to the Constitution of India, the central government has the duty to protect the state from internal disturbance. First statement article को. First statement article को. 17 number रा first statement article. First statement article. First statement article कहते को जल्दी जल्दी. अरे first statement प्रणोदी article को. First, according to the Constitution of India, central government has duty to protect. It is 355 exactly. 355. 355 रे दीटा provision अछि. A, B. B रे जानिछो. The Constitution of India exempt the state from providing legal counsel to person being held preventive detention. Preventive detention. According to preventive detention, sorry, to Prevention of Terrorism Act, Convention of accused accused person before the police cannot be act as evidence. हाँ भाई act evidence ही परिबो. The second incorrect. Third रे देइछि कोन exempt of the state from providing. Preventive detention रे रखिछ न punitive detention ने तम provide करिवो. Article 20 पढिथिबो. Sorry, Article 22. Article 22 रे preventive detention पाई exception देइछि, punitive detention पाई exception देइछि. 3 month रखी परिबो, advisory board गठन करिवो एक एक्सेट्रा तुम पढि जय दिन सेगुडा. ओके, तो एगुडा को एक्सप्लेन एथरे करिवा दरकार नै. तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड कैन नॉट देइछि त हम एक्सेप्ट करि परिबो. तो थर्ड इनकरेक्ट. से पचारे करेक्ट कोडा. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक. लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर करो. ये क्वेश्चन काई पचारथिला मु भी जानि. ये क्वेश्चन काई पचारथिला भगवान. Consider the following statement in respect of election of the President of India. Election of President of India. The members of nominated to either House of Parliament, Assembly are also eligible. First or wrong age. First wrong age. First the statement wrong. First statement wrong. Easy question no. Ticket difficult. The first wrong है गले. गोटी option कोटी गला D. Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of MLA. MLA रो value कौन? MLA रो value होची population divided by number of seats. Number of seats in the states. तो ये जदि बढ़िबो तो definitely आ value कमिबो. आ value कमिबो. But concept बुझो. तो आ value कौन हबो? जदि MLA रो seat, sorry, number of seat कौन देइछि? Higher the number of elective assembly seats. तमाने R जदि value बढ़िबो कारण denominator अछि. Higher is the value of the seat of each ML of that state. भाई हायर केमिति हबो ये तो बढ़ी जाउछि तो डेफिनेटली ये कमिबो. तो एटा हबो नै. त माने ओनली 3 को भी हटाओ. The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. Is greater than that of Kerala. तो Madhya Pradesh रो value, the value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. तो मध्य प्रदेश रा जदि पॉपुलेशन एट तुमको पॉपुलेशन मन रखिया पड़िबो. पॉपुलेशन मन रखिया पड़िबो. देखिबा नेक्स्ट. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of the Arunachal Pradesh
because the ratio of total population to the number of elective seats in Puducherry is greater as compared to तमाने जदि ratio अधिक अछि ताले एटा हबो नै तो एटा हबो नै गोटिए ही करेक्ट हबो तो आंसर हबो टी कोन ए आंसर हबो टी कोन ए मते कुह आंसर हबो टी कोन हबो ए गोटिए तो कांसेप्ट बुझी पाइलो एटा टिके ये वाला क्वेश्चन थिला कांसेप्ट बुझियला एबे कुह मैक्सिमम क्वेश्चन आम कांसेप्ट रु थिला ना नै मैक्सिमम क्वेश्चन आम कांसेप्ट रु थिला ना नै कोंदु कोंदु कोन कोन कांसेप्ट आमे जति के आज 3टा वर्षर क्वेश्चन कले केतेटा क्वेश्चन तुमको नुआ मिलला मते कहबे कोंदु केतेटा क्वेश्चन हाउ मेनी क्वेश्चन इज आउट ऑफ तमर ए पर्यंत पढ़ा ही हेनी कोंदु केतेटा क्वेश्चन तमर पढ़ा ही हेनी मते को कोंदु जदि किसी डाउट्स अछि भी पचारि परिबे एनी डाउट एनी डाउट किसी डाउट अछि नो डाउट चलो तो एग्जाम पे आपको ऑल द बेस्ट ऑल से रिवाइज करंतु जति पढ़ी छन ताऊ रिवाइज करंतु डेफिनेटली और ठीक है से ब्रिगेडियर कांसेप्ट गोटे चेक करिवे ओके से लिस्ट को मन रखिबे कंपैरिजन रे लिस्ट को मन रखिबे तो मे भी तमरो क्वेश्चन आसी पारे ओके तो चलो थैंक यू 2 मिनिट रे तमरो इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट क्लास स्टार्ट हबो जेमती चली छी मैडम 2 मिनिट रे नउछन ओके चलो थैंक यू गुड आफ्टरनून पिला माने गुड आफ्टरनून समस्त को मो वॉइस सुबुची वॉइस मोर सुबुची कि नहीं समस्त को मत टिके चैट रे कुहो कंफर्म करो कि मोर वॉइस तो मन को ऑडिबल अछि कि नहीं am I audible जो माने भी अच्छो जो माने भी लाइव रे अच्छो am I audible कंफर्म करो मते कंफर्म करले मु तुमन को क्लास स्टार्ट कर देबो गुड इवनिंग अच्छा ओके ठीक है ऑडिबल ओके ठीक है गुड आफ्टरनून प्रणति आइकनिक नाटा तुम बहुत बढ़िया आइकनिक तो कौन पूरा आज दिन मैंने क्लास करी हेक्टिक हो गल ना कौन पेशेंस अच्छी तो इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट क्लास करने पेशेंस अच्छी कि नहीं काली तुम सब एग्जाम देवाक जाओ कि नहीं 50% बैटरी लेवल बैटरी चार्ज करो बैटरी चार्ज करो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन को हाफ बैटरी रे हबनी मुंड मुंड कोन हे जीवो
बुझला कि नहीं आइकनिक कौन तुम स्टेटस काली तुम एग्जाम देवाक जाऊछ कि जी पिला भी ऑनलाइन अच्छो यूपीएससी प्रीलिम्स काली के दौच दौच कि नहीं अच्छा ठीक अच्छे चलो ठीक अच्छे जो जोश आउ जो एंथुर सहित से सकाल 10 रु आपण मैंने क्लास करुँच जोड़ी ही अच्छा तारी सहित ही आम आगे बढ़ा एंड क्विकली इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट को कवर करवा ओके नो डाउट इकोनॉमिक्स रो बहुत भल भल कॉन्सेप्ट तुम भी जानी इकोनॉमिक्स बहुत एटलिस्ट ओपीएससी तो क्वेश्चन रो स्टैंडर्ड गोटे अलग यूपीएससी रो क्वेश्चन स्टैंडर्ड गोटे अलग बहुत किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करदेबा बहुत किसी कॉन्सेप्ट तुम रिवाइज हो ओके ओके चलो स्टार्ट करवा यूपीएससी रो पीआईक्यू इकोनॉमिक्स रो स्टार्ट करवा 2025 रो क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आई होप समस्त को दिसुथिबो दिसुछि तो फर्स्ट क्वेश्चन 2025 रो क्वेश्चन की विथ रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट्स कंसीडर द followings like bonds, hedge funds, stocks, venture capital. How many of the above are treated as alternative investment funds? This question is from alternative investment fund. Alternative investment fund कौन? Alternative investment fund कौन? Apart from the normal funding, जो सब funding होची सेटा गोटे high class elite groups मानकर investors जो अछंती मे बी domestic मे बी foreign investor हैला से मानकर ठू जो इन्वेस्टमेंट आनी गोटे इन्वेस्टमेंट पूल क्रिएट करा जाए है ना ताको कहते अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ता भितर कोड़ा कोड़ा जाऊँगी तुम जान एआईएफ रो 3टा कैटेगरी अच्छी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 आ भितर कैटेगरी तो पचारि जस्ट पचार कि कोड़ा कोड़ा जाऊँगी ओनली 2 एंड ओनली 1 ओनली 3 जो गुड़ाक अच्छी एबीसीडी आंसर न देगी बेटर राइट इन द चार्ट कि कोटा ठीक कोटा भूल माने बॉन्ड जाऊँगी कि ना हेज फंड जाऊँगी कि ना क्या कौटा कौटा जाऊँगी मत सेमती लिख है ओनली 2 लिखिले पुणी आसोनी हाँ 2 and 4 बस से टाइप लिख येस यू आर करेक्ट इट इज हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स ये सब आम नेचुरल नॉर्मल जो मार्केट इन्वेस्टमेंट फंड मार्केट जिनस है सब एंटिटी तार अल्टरनेट एआईएफ सहित कौन रिलेशन ना बट हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल ये सब एआईएफ अंडर जाऊँगी सो ओनली 2 हेज फंड एंड venture capital yes very good second question which of the following are the sources of income of RBI देखो को क्वेश्चन इजी डिफिकल्ट कौन मु ता सहित कहि दे जेबी जेमति कि AIF this is not a easy question actual exam वाले क्वेश्चन करबा is quite difficult हला ए वाला कांसेप्ट बट ए क्वेश्चन को हमें जानि से डिस्कस करबा AIF जदी कांसेप्ट जानले AIF रो जदी क्वेश्चन पढ़ला हमें जानि परिबा है ना कर परिबा बट जो गुड़ाक ओपीएससी रे आसबार बहुत संभावना जमी कि क्वेश्चन आरबीआई रो बैलेंस शीट गोटे टॉपिक अच्छी है ना आरबीआई रो बैलेंस शीट माने तार आरबीआई रो एसेट को गुड़ाक एंड आरबीआई रो लायबिलिटी को गुड़ाक एसेट और लायबिलिटी लिस्ट कोड़ा कोड़ा जाउछ एक्जेक्टली तारी ऊपर ही क्वेश्चन है आम नोट रू क्वेश्चन तेणु एभलिया क्वेश्चन ए कॉन्सेप्ट गुड़ा करबा ता विषय जानिबा निहाती दरकार तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई रो कोड़ा कोड़ा इनकम है कुह पटापट कुह बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स आमे या भितर कला भितर बहुत किसी जिनस एक तो आमे आंसर जानिबा कांसेप्ट बुझिबा सबुठ यूपीएससी क्वेश्चन करिवार यूपीएससी ब्यूटी ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन कोन जानछो ब्यूटी हो जे या कि तमे अथरो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक भी सिखिबा है मुझे जोटा कि बहुत बार कही और क्लास रे भी शिखई तो आपको आज आम अप्लाई करवा जोटा कि तुम एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल है टेक्निक्स यूज करवा लॉजिकल गेसिंग जोटा मुझे सदाबले कहे एंड एलिमिनेशन टेक्निक जोटा मुझे कहे ताकू आम ये यूज करवा तो मुझे सिंपल जिन देख या भितर 5टा ऑप्शन भितर तुम आगे फाइंड आउट कर आरबीआई को काम करे और को काम करे ही ना है ना
buying and selling of government bonds RBI did it in open market operations रे RBI करे ये सब काम buying and selling of foreign currency forex जोटा forex reserve टा RBI रे रखा हुए RBI ही ताको डील करे तो एटा RBI रो काम पेंशन फंड मैनेजमेंट टा RBI रो काम नुह या पा इरिडा अछि IRDA इरिडा तार पेंशन मैनेजमेंट काम सी तार करे लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज RBI केबे भी डायरेक्ट प्राइवेट कंपनीज को लोन दिए नहीं RBI बैंक को लोन दिए हला प्राइवेट कंपनीज मान को RBI लोन ही दिए नहीं तो ये एटा बिल्कुल भी RBI एक्टिविटी नो प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स दो एटा RBI करे बट यार कोनोसी तार कोनोसी प्रॉफिट बा तार सेटा कोनोसी इनकम सोर्स RBI रो नुह काहे कि नुह बिकॉज़ दिस इज कॉल्ड सीनियरेज है ना सीनियरेज जोटा अछि RBI रो तो माने सुनिथिबो समझते कि प्रिंटिंग कॉस्ट धर 500 नोट गोटे प्रिंट हैला 500 नोट प्रिंट हवा पे धर 2 रुपीस खर्च होला 2 टका खर्च होला गोटे पेपर से जो 500 रुपीस रो पेपर को तयारी करिया पे 2 टका खर्च होला हैला एटा और नुह कि ए जो 500 टकाटा से तयारी कले और ताको डिस्ट्रीब्यूट कले सेटा RBI रो किछ बेनिफिट हैला बेनिफिट सेते बेला हबो 500 रुपीस नोट जतो प्रिंट हैला सेटा RBI पाखरे रहला RBI जतो 500 टका खर्च करबा सेटा को से तार बेनिफिट बोली कहबा 2 टका बदल में 500 टका खर्च कला एटा तो डिस्ट्रीब्यूट हे वाला मार्केट रे ना RBI रे इनकम थोड़ी ना हला ता पय तो दिस इज आल्सो नॉट एन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ RBI hence the answer is 1 and 2 buying and selling of government bonds and buying and selling of foreign currency buying and selling of foreign currency is very good income of RBI हाँ कि नहीं धर फॉरेन करेंसी को आनिले पाउंड को आनिले डॉलर बिक्री होला जहाँ धर कोडा लो पावर मनी को किनिले एंड ताको हम हाई पावर मनी रे बिकी दबा RBI से काम फॉरेक्स डील करे से सब करि परिबो एंड बॉन्ड बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स लो इंटरेस्ट रे गवर्नमेंट मार्केट रो उठाइबो RBI जते बडा हाई रेट ठीक ठाक आसे अधिक रेट रे बिकिबो तो तार प्रॉफिट होला RBI रो तो दिस टूज आर इनकम ऑफ RBI है ना समझते ठीक लिखी आई थिंक प्रिंटिंग ओनली कैन बी द प्रॉफिट ऑफ RBI बट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ RBI प्रॉफिट यस प्रिंटिंग मींस एया 2 टका खर्च हो 500 टका नोट पई किंतु प्रिंटिंग तार बेनिफिटेड केमते ला 500 टकाटा जते बेले मो पाखरे मु ताको खर्च करि पारे तार किछि मनी रो वैल्यू रहइबो से ताले जाई सेटा प्रॉफिट हैला ना खाली नोट से कागज रो तो किछि वैल्यू नै बुझ परछ नै तो सेटा इनकम नुह डिस्ट्रीब्यूशन भी RBI रे इनकम नुह एनीवे ठीक अच्छे चलो समस्त ठीक अच्छे आंसर इज 1 and 2 नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट ए बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ओके इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग ए BRSR जो बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर BRSR रिपोर्ट टा गोटे नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट आ को RBI करूची तो व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हिच इज नॉट करेक्ट दैट इज ओनली आस्क्ड को एबे कोन कोटा करेक्ट नुह ए क्वेश्चन टा लास्ट 2024 रे तमर करंट अफेयर्स रे थिला BRSR रिपोर्ट इवन तमर इकोनॉमिक सर्वे रे भी थिला इकोनॉमिक सर्वे जे पढ़ी थी से जानी परिबो यस वेरी गुड RBI डज नॉट पब्लिश दिस रिपोर्ट है ना BRSR रिपोर्ट पब्लिश करे सेबी बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आटे थोड़ा इजीली तमे गेस कर परिबो RBI के बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज करिवो कि RBI रे कोन काम RBI रे से सब किछ काम न हो ना तो RBI एवडा करिवो नाही तमे आराम से ऑप्शन टा को काटी परिबो एंड बिजनेस इन इंडिया रे कोन कंपनी जो कंपनी माने BRSR रिपोर्ट माने सबमिटिंग BRSR रिपोर्ट मेक्स डिस्क्लोजर दैट से रिपोर्ट रे कोन आसे थोड़ी ना फाइनेंस गोटे कंपनी तार फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी ना से रिपोर्ट रे दे देबो नॉन फाइनेंशियल माने केते तार बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ESR जोटा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कोन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोन से गुडा को दैट आर नॉट इन फाइनेंशियल नेचर ओके तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट हेंस ऑप्शन बी 2 ओनली yes it is by SEBI it is mandated by SEBI not by RBI है ना very good दुर्गा प्रसाद full answer चलो next question statement 1 statement 2 question हाँ in India income from allied agriculture activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax okay statement 2 coach in India rural agricultural land is not considered a capital asset under the provision of the Income Tax Act 1961
इंडिया रे इनकम एग्रीकल्चरल एलाइड एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज अच्छी ताधर जो इनकम होउची सेटा इनकम टैक्स एक्ट रे आसीबो नाही सेटा इनकम टैक्स एक्ट अंडर आसुनी सेतर कोनोसी भी टैक्स निया जीवो नाही दिस आर ऑल exempted from tax is it true and second statement कोची कोन ना रूरल एग्रीकल्चरल लैंड गुडा को कैपिटल एसेट हिसाब रे कंसीडर करा जीवो नाही अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 answer is D. Statement 1 is not correct, statement 2 is correct. Yes, because allied agricultural activities जो गुड़ा कौची ताधरो कौन पे टैक्स नहीं जीवनी only agricultural income is exempted from tax. Only agricultural income is exempted from tax. Tax यादरो निया जीवो नहीं. Not all the allied activities. For example, मु potato farming करूची पोटाटो फार्मिंग करूची पोटाटो फार्मिंग रे मु एग्रीकल्चर करछ मु आलू चाष करूची मु एबे अलाइड स्ट्रक्चर कोन करी सेम आलू को मु कोन ना चिप्स करी के बिकिबी तो सेटा तो दैट इज ए बिजनेस तो तापर तो टैक्स लागिवो ना तो इट कैन नॉट बी exempted from any tax है ना from allied agricultural activities like wool rearing farming poultry farming these are businesses small businesses so business माने सेतरे टैक्स लागिवो ही लागिवो any tax is be extreme word हां सो ये भले एक्सट्रीम वर्ड को भी हमको स्टेटमेंट रे फाइंड आउट करिवार अछि तो जते बेले स्टेटमेंट दीटा देई थाए ता भीतर सबटो इजी तुमको हबो आंसर पिक करिवारे खोजिबो कोटा जदी भूल थिबो जदी इनकरेक्ट अछि देन तमे दीटा स्टेटमेंट इमीडिएटली काटिबो 50-50 को आसीबो सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट जदी तमे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ता फाइंड आउट कर दलो देन डायरेक्ट तमे आंसर को जिवो ओके एंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जोडा को अछि दीस आर नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट इन इनकम टैक्स एक्ट रे है रूरल लैंड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैपिटल एसेट रे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जीव नाही ठीक है चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 critical minerals that it has identified. The parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. तो ये सब बेले क्वेश्चन नो डाउट आम सब बेले करंट अफेयर्स तो पढ़ुचे सब बेले मन थी बोली किसी माने ना किंतु एटा को तुम लॉजिक लगे करि परिबो है सेकंड स्टेटमेंट को डायरेक्टली कम टू द सेकंड स्टेटमेंट कि इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 critical minerals that has been identified जदि इंडिया सब क्रिटिकल मिनरल रिसोर्स रिच था बोध हम आज टॉप इकोनॉमी होता हाँ कि नहीं जदि हम क्रिटिकल मिनरल रिच मतलब रिसोर्स पूरा रिच होता ताले हम कोठी था भाबी पड़छ हमर एक्सपोर्ट को भले होता हमर प्रोडक्शन को भले होता अलग लेवल रो है तो this is all 30 critical minerals is a extreme statement so immediately eliminate option 2 को जदि हमें काटे देबा देन तीनटा स्टेटमेंट कटि गेला ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन सी रे इंडिया जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जोटा हेची एटा 2023 रे हेतिला सेतिरे इंडिया जॉइन करिछि ओके आज ए 14th मेंबर जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप रे 14th मेंबर हिसाब रे इंडिया जॉइन करिछि ओके तादर आउ के सब अछंती तमरो यूएस कनाडा फ्रांस ओके फिनलैंड ऑस्ट्रेलिया जर्मनी इटाली जापान नॉर्वे कोरिया साउथ कोरिया स्वीडन यूके एंड यूरोपियन यूनियन दीज आर अदर मेंबर्स इन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो माने कि अछंती ऑल 30 तो नुह एंड कौन आउ कौन रहा कि कोड मिनरल जेहेतु क्रिटिकल मिनरल इज इंपोर्टेंट थीम ठीक अच्छे यहाँ तो तुम आंसर बाहर कर दौच क्रिटिकल मिनरल गोटे इंपोर्टेंट थीम एग्जाम पे रिविजन करके जीव है येस चाइना इज से चाइना तुम हेविली इंपोर्ट करुच्छी हाँ कि नहीं इंडिया हेविली इंपोर्टिंग क्रिटिकल मिनरल्स एंड इंडिया इज डिपेंडेड ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स तो एति तो बेसिक नॉलेज आम नॉर्मल डे टू डे करंट अफेयर्स पढ़ी आम जाने तो आराम से इजिली क्वेश्चन अटेम्प्ट करहब और ठीक भी करहब
है चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन गोटे 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करो याको पढ़ो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहूँ as regards return from an investment in a company generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. Bondholders are lenders to a company whereas stockholders are its owners. For repayment purpose bondholders are prioritized over stockholders by a company. Which one of the statement is correct in respect of the following statement? कथा है तुमको एक तो करेक्ट स्टेटमेंट बाछिबार अछि एंड 2 आउ 3 को are correct and both they explain one सेटा करू स्टेटमेंट 1 को 2 and 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूची कि नहीं सेटा भी बाछिबार अछि एक तो प्रथमे बॉन्ड होल्डर और स्टॉक होल्डर भितर डिफरेंस टा जानो बॉन्ड होल्डर्स कोन स्टॉक होल्डर्स कोन बॉन्ड होल्डर्स माने जीए डायरेक्ट तुमको धरा मु गोटे कंपनी करिछि हैला मोर सोवांसो कंपनी गोटे अछि फॉर एग्जांपल अनन्या कंपनी ओके अनन्या कंपनी प्रणति हेला हमर जणे मते से बॉन्ड होल्डर माने मु तांको गोटे बॉन्ड प्रोवाइड कली एंड से बॉन्ड टा होची 10,000 crores रो मते से लेंडिंग माने पैसा धार देले ओके एट द सेम टाइम दुर्गा इज द स्टॉक होल्डर माने कोन मोर जो अनन्या कंपनी अछि तार 5% इक्विटी सी हला ओनर हला ए जो 5% मो कंपनी रो शेयर तार सी ओनर माने से 5% रे जहा भी प्रॉफिट हैला सेटा कंप्लीटली तांका पाखु जीवो ओके कौन मते के लिखु छ अच्छा मैं डिस्कस कर दे तापर तम क्वेश्चन को आसुची सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस प्रणति पाखु प्रणति कोन तांका कथा सी सीधा मो पाखु को पैसा मते पैसा देइचंती एंड मु तांको सुझेबी विथ सम इंटरेस्ट एंड माने प्रणति सहित मोर कंपनी रे कोनोसे लेना देना नहीं किंतु दुर्गा सहित मोर कनेक्टेड कोन कि मो कंपनी रो सम परसेंट शेयर से रखी छथि तांको नारे अछि सी हेले मोर स्टॉक होल्डर तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड होल्डर एंड स्टॉक होल्डर एबे तमे मते को जो कहि देली बॉन्ड होल्डर कोन स्टॉक होल्डर कोन एबे मते को स्टेटमेंट टा ठीक को स्टेटमेंट टा भूल रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट जते गोटे कंपनी रो इन्वेस्टमेंट रिटर्न होउची सेते बेले बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्टमेंट रे जते रिटर्न धरा मोर अनन्य कंपनी रो मोर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स रे मोर लॉस हेले स्टॉक होल्डर हिसाब रे 5% ओनर जी मोर जति की किणीची जति की पैसा देगी से ताठो कम पैसा पाइबो काना मो कंपनी रो लॉस होईची किंतु एट द सेम टाइम मु जति ता पाखरु प्रणति पाखरु 1000 crore आनीची मु आगे 1000 crore सुझीबी मोर लॉस हो लाभ हो जाबी हो ओके एनीवे तमने भी जे भी डिस्कस करू छ ना तमे प्लीज कम टू दिस क्वेश्चन ए क्वेश्चन कंप्लीट कर मु पुणी अगेन प्रीवियस क्वेश्चन को जीबी इफ एनी डाउट ठीक अछि सुरजीत एंड दुर्गा प्लीज कम टू दिस क्वेश्चन नाउ देन हमें से क्वेश्चन को आउथरे बैक जीबा डिस्कस करबा इफ एनी डाउट तो मते कुह प्रथमे कि बॉन्ड होल्डिंग टा रिलेटिवली लोअर रिस्क स्टॉक होल्डर को कि ना प्रथम स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट कि बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर जोड़ा मु तुमको कहली बुझे देली सेकंड स्टेटमेंट ता तो करेक्ट हे गेला बिकॉज़ मु सेटा ही तुमको कहली बॉन्ड होल्डर्स माने होची जे लेंडर्स जे पैसा देई थांदी हला एंड स्टॉक होल्डर होची ओनर जांगा पाखरे स्टेक रो ओनरशिप थाए कौन हो बेर आंसर दुर्गा ये सुरजित मत यार आंसर दियो तमे तापर मु कहिबी तमरो कोन डाउट अछि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हैला फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट बिकॉज बॉन्ड होल्डिंग ऑलवेज ए लो रिस्क बिकॉज इन टाइम ऑफ फॉर रिपेमेंट जतो रिपेमेंट पर्पस हुए सेते बेले बॉन्ड होल्डर मान को प्रायोरिटाइज रखा जाए आगो बॉन्ड होल्डर्स जो माने थांती से मान को A. Yes, correct answer is A. Bond holders bond माने कौन this is fixed. Stocks are always volatile. Bond माने मु 1000 कोटी टका देइछि माने मु 1000 कोटी टका तमठो नेबी
स्टॉक होल्डर माने तमे मोर हे पारे मो कंपनी रो सम शेयर ओनरशिप रखिछो जदी मोर प्रॉफिट हैला यू विल प्रॉफिट जदी मोर लॉस हैला यू हैव टू बियर द लॉस आल्सो है ना दिस इज वोलेटाइल इन नेचर एंड बॉन्ड रे गोटे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी थाए हां कि नहीं एतिके टंका से पाइबो ही पाइबो तमर लॉस हो कि प्रॉफिट हो दैट्स वे बॉन्ड होल्डर्स आर लेस riskier than stock holders and second statement also correct third statement also correct and second statement third statement are the correct explanation of statement 1 okay then option is A understood okay chalo next question consider the following statements first statement कहूँ India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally thus exhibiting a great boom India's stock market has grown rapidly in the recent past even overtaking Hong Kong's at some point of time there is no regulatory body either to warn the small investors about the risk of options trading or to act on unregistered financial advisors in this regard again जनरल कॉमन सेंस रे क्वेश्चन सॉल्व हबो को मते आंसर कोन हबो एते पिला लाइव रे अछो बाकी समस्त पार्टिसिपेट करो खाली चुपचाप बसी के देखिले किछ वैल्यू नहीं नो डाउट तमे कांसेप्ट बुझु जे रिवीजन होची फिर भी पार्टिसिपेट तो करो कोन असुविधा अछि जदि के चाहू ना मु तमरो ना कॉल करी तो ना कॉल करिबिनी किछ असुविधा नहीं बट आंसर करो एटलीस्ट डिस्कस तो करो ए समस्त करो 1 and 2 ओके सो थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी तो कौन कौन इंडिया का वेरी लार्ज पर्सन ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग ग्रेट बूम स्टॉक मार्केट ऊपर कथा इंडिया रो स्टॉक मार्केट इवन ऑब्वियसली रिसेंट पास्ट बहुत बढ़िया ग्रोन करिछि एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम हांगकांग भी करछि बट से स्टेटमेंट को देखि हम डायरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट को आसीबे सी कहछि कि देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न और एनी केस रे कोनोसी रेगुलेटरी बॉडी नाही तो हमें तो जानि छै ना हमर तो रेगुलेटरी बॉडी अछि स्टॉक मार्केट रो रेगुलेटरी बॉडी किए सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर स्टॉक मार्केट तो स्टेटमेंट तमर इनकरेक्ट एठी ही हे गेला एक्सट्रीम स्टेटमेंट पे काटी दबो थर्ड स्टेटमेंट कटि गेला ऑप्शन इज आंसर इज 1 and 2 ओके सो दिस इज a question which will be solved by elimination technique ओके हाँ तो तुमरो इंडिया केते तार शेयर ग्लोबली ग्लोबल इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग रे इंडिया रो एटलीस्ट इंडिया अकाउंट्स 81% एज ऑफ 2024 ओके आ की एटा को मैनेज करची एनएससी हमर अछि ना हमर बॉडी अछंती एनएससी बीएससी सब मिसै कि मु कहू छी 81% ग्लोबल माने ट्रेडिंग 153% हाइक हेची ट्रेडिंग रे स्टॉक मार्केट रो 153% है ना जनवरी 2024 रे हांगकांग को सरप्राइज करथिला इंडिया रो केते थिला इंडिया रो सेते बेले टोटल वैल्यू केते थिला 4.3 ट्रिलियन ओके हांगकांग रो केते थिला हांगकांग रो थिला तमरो 4.2 ट्रिलियन डॉलर हला तो हांगकांग को सरप्राइज करिथिला सो information apart from the information the answer करिवाटा बहुत इजी क्वेश्चन है yes very good all of you समस्त करेक्ट आंसर देला 1 and 2 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन तीनटा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन गोटे सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फर्स्ट तुमको सर्कुलर इकोनॉमी कौन कहि दूची सो दैट तुम आंसर इजीली करि परिबो सर्कुलर इकोनॉमी टा कोन सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली एम्स टू रिड्यूस रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हैला रिड्यूस रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है ना एनकरेज रिसाइक्लिंग एंड रीयूजिंग recycling and reuse recycling reuse को प्रमोट करे हैला सर्कुलर इकोनॉमी रा माने होची एया एंड डिजाइन आउट वेस्ट को केमते प्रॉपर्ली मैनेज करा जीवो ता काम होला या सर्कुलर इकोनॉमी रा काम हैला एबे मते को स्टेटमेंट एंड कोन होबो यार आंसर
मेन काम होला केमिति सर्कुलर इकोनॉमी काम होला कि एक्सेस रिसोर्स को आम एक्सट्रैक्ट करवानी रिसोर्स को माइंडफुल यूज हम माने रिसाइक्लिंग रीयूज ए सब को एनकरेज हम ए सब जिन बेसी यूज हम वेस्ट प्रॉपर्ली मैनेजमेंट हम डिजाइन आउट ऑफ वेस्ट दिस इज द सर्कुलर इकोनॉमी तो आपको नहीं कि कौन हम तो अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस जदि हम रिसाइक्लिंग करबा रीयूज करबा रिसोर्स कम यूज करबा वेस्ट मैनेजमेंट करबा ग्रीन हाउस गैस डेफिनेटली एमिशन टा रिड्यूस हो ना करेक्ट आंसर स्टेटमेंट को 2b सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स मु कहली रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ता माने कोन रॉ मटेरियल एज इनपुट्स रे कम यूज होबो सेटा सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिजाइन आउट वेस्ट माने कोन वेस्ट प्रोडक्शन वेस्ट रिड्यूस करिवो प्रोडक्शन प्रोसेस वेस्ट को रिड्यूस करिवो तो ये बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट एंड बोथ द स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट है ना आंसर इज ए आंसर इज ए ठीक है जी चलो ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैपिटल रिसीप्ट्स क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट borrowings and disinvestment are capital receipt interest received on loans creates a liability of the government पूरा क्लास रे पढ़ी छी कैपिटल रिसिप्ट डिसइन्वेस्टमेंट बोरोइंग्स कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंडिचर बजट कैप्चर हम सब पढ़ी छी आई होप तुमनकर कहारी क्वेश्चन भूल होबनी कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट भीतर बेसिकल डिफरेंस टा कोन कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट माने व्हिच इज क्रिएट लायबिलिटी क्रिएट लायबिलिटी रेवेन्यू रिसिप्ट माने कोन ना द इनकम अर्नड बाय गवर्नमेंट जो इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट माने जोटा जो इनकम डायरेक्ट गवर्नमेंट अर्न करची लाइक टैक्स कलेक्शन है ना कैपिटल रिसिप्ट कोन जोटा लायबिलिटी को क्रिएट करूची जेमति कि फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट मान कोन माने पीएसयू मानको उपरु गवर्नमेंट रो ओनरशिप लॉस हे जिवो हला पीएसयू उसको धर बिकी देले तो गवर्नमेंट रो ओनरशिप किछ रहिला नै धर मोर गोटे कैपिटल थिला मते बिकी देली तो मोर लायबिलिटी बढ़िला ना so capital receipt create a liability is correct or cause a reduction in the asset liability create करिवो either नहले तमर एसेट को रिडक्शन करिवो मु जदी पीएसयू गवर्नमेंट रो थिला गवर्नमेंट बिकी देला तो तार एसेट लॉस हैला हां की तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट प्रथम स्टेटमेंट करेक्ट अछि बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट में भी तो कहली डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट जीवो बोरो करूची हमें 10,000 कोटी ना फॉरेन बोरो करछ हमर लायबिलिटी सेटा लायबिलिटी क्रिएट कला देन एटा गोटे कैपिटल रिसिप्ट रे जीवो इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम लोन्स क्रिएट्स ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इंटरेस्ट जोटा रिसिप्ट करूची गोटे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट सेटा गोटे ना नॉट ए कैपिटल रिसिप्ट थोड़ी ना जीवो सो नो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन ए इंटरेस्ट रिसिप्ट गोटे रेवेन्यू रिसिप्ट नॉट ए कैपिटल रिसिप्ट इंटरेस्ट रिसीव होची थोड़ी ना किसी लायबिलिटी क्रिएट होची थोड़ी ना किसी हमर एसेट रे रिडक्शन होची इट्स इनकम क्लियर कट रेवेन्यू गवर्नमेंट रो तो इंटरेस्ट रिसिप्ट गोटे कोनोसी नॉट दिस नॉट क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ओके स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट समझतर 1 2 तो ओके चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन suppose the revenue expenditure is 80,000 crore and the revenue receipt of the government is 60,000 crore government budget hall shows borrowings hochi ketana 10,000 crores and interest payment hochi 6,000 crores which of the following statement is correct revenue deficit kete fiscal deficit kete primary deficit kete how beautiful mane bahut sundar question what a beautiful question सो कुओ क्लास रे मु पढ़ाई छी रेवेन्यू रिसिप्ट प्राइमरी डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट सब तुमको कांसेप्ट मु पढ़ाई छी डेफिनेशन सहित माने फार्मूला सहित मते कुओ फर्स्ट तो रेवेन्यू डेफिसिट टा कोन रेवेन्यू डेफिसिट इज सिंपल गवर्नमेंट रे रेवेन्यू
केते इनकम है केते एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम क्लियर कट कौन से ना केते एक्सपेंडिचर है 80,000 करोड़ है ना रेवेन्यू इनकम केते है ना 60,000 करोड़ केते डेफिसिट 20,000 करोड़ क्लियर आउ एदरे कौन से कंफ्यूजन भी नहीं देन कम्स टू द फिस्कल डेफिसिट माने कौन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स फिस्कल डेफिसिटली सिंपल लैंग्वेज रे कौन फिस्कल डेफिसिट माने होची गवर्नमेंट एतिकी टंका एक्सपेंडिचर करिछि एतिकी टंका इनकम करिछि जो डेफिसिट ता हला जो अमाउंट से अमाउंट केमिति फिल हबो बाय बोरोइंग्स जतिकी टंका धर 120 टंका खर्च होइछि 100 टंका इनकम होइछि जो 20 टंका कमी 20 टंका जो खर्च कर दी केमिति खर्च कर दी इनकम तो है सेतिकी ना निश्चित भाव 20 टंका से माने बोरो करछथि सो जो डिफरेंस टा से जो बोरो करिछन जतिकी टंका सेतिकी टंका होछि फिस्कल डेफिसिट सो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू डायरेक्ट बोरोइंग्स सो बोरोइंग्स एक्जेक्टली होछि केते 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ है ना देन कम्स टू द प्राइमरी डेफिसिट टा कोन फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट फिस्कल डेफिसिट केते तमरो 10,000 करोड़ माइनस 6,000 करोड़ केते हला 4,000 करोड़ सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट तो कथा होची ए नंबर ठीक किछ मतलब नहीं यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 फॉर्मूलास हाँ कि नहीं भलो बढ़िया क्वेश्चन चलो वेरी गुड समस्त ठीक आंसर देलो नेक्स्ट क्वेश्चन a country's fiscal deficit stands at 50,000 crore but a country ro fiscal deficit hoji 50,000 crore it is receiving 10,000 crores through non debt creating capital receipts the country's interest liabilities are 1,500 crores what is the gross primary deficit again pacharji the primary deficit kon na fiscal deficit minus interest payment ebe mo sanction koreli seta फिस्कल डेफिसिट केते कहूची से 50,000 करोड़ माइनस इंटरेस्ट पेमेंट केते ना 1500 कोटी केते हो 48,500 कोटी टका 48,500 कोटी होची ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट रिसीविंग 10,000 करोड़ ऑफ थ्रू नॉन डेबिट फाइनेंस रे किछि मूल्य नै खाली जस्ट गोटे कंफ्यूज करियो स्टेटमेंट देई छी हां कि नै आंसर इज 40,500 करोड़ वेरी इजी क्वेश्चन हला इकोनॉमिक्स रे एई भलिया क्वेश्चन आसुची तो भाव जब तुम यूपीएससी क्वेश्चन ये इजिली कर ओपीएससी क्वेश्चन आराम से कर मुझे सदा बेले चिल्ले कि क्लास रे कही सब वीडियो रे मोर कही सब माराथन रे कही जी इकोनॉमिक्स पढ़ी मो पाखे एटलिस्ट ग्यारंटी सह कहूँ जब 20टा क्वेश्चन पढ़ी कि 15टा क्वेश्चन पढ़ी तुम 15 ठीक है गोटे भी भूल हमार चांस ना बिकज इट इज ए वेरी कनसेप्चुअल टॉपिक कनसेप्चुअल सब्जेक्ट वंस कनसेप्ट तुम बुझीगल एव्री क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड एव्री क्वेश्चन नॉट ए सिंगल क्वेश्चन विल बी लेफ्ट आउट ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगुच तुमको देखा बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन किसी ना इधर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements with regard to recommendation of a 15th finance commission very important topic state pcs मानकर क्वेश्चन पचारची ऑलरेडी फाइनेंस कमिशन ने किए सब ताकर चेयरमैन अछंती एबे 16th फाइनेंस कमिशन ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हे जाई किंतु रिपोर्ट तार आसे नै आसे जीव 2027 बेलू ता रिपोर्ट आस जीव तो 15th फाइनेंस कमिशन रिपोर्ट ऑलरेडी ऑन फ्लोर अच्छी सो क्वेश्चन 15th फाइनेंस कमिशन आसीथिला इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 4,800 crores from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing states to enhance educational outcomes. 45% of the net produces of union taxes are to be shared with states. 45,000 crores are to be kept as performance-based incentive for all states who are carrying out agricultural reforms. It reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performances. देखो एक तो मुझे जो फाइनेंस कमिशन भी पढ़ाई गोटे पैराग्राफ फाइनेंस कमिशन गोटे पैराग्राफ मु उठे पढ़ी थी कि यही पैराग्राफ बाहर क्वेश्चन आसबनी एक्चुअली भी देखो यूपीएससी भी क्वेश्चन फ्रेम होता बाहर क्वेश्चन ना से गोटे पैराग्राफ रे सबुतक स्टेटमेंट अच्छी दो एग्जाम हॉल एत सारा डाटा मन रखा इज क्वाइट डिफिकल्ट बट
द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कौन एग्जामिनर तुम एक्सपेक्ट करनी कि तुम सबू अमाउंट सबू डाटा सबू ईयर मन रख है बारंबार आम जिते भी पढ़ीचे फाइनेंस कमिशन विषय स्टेट आउ सेंटर शेयर विषय में जाने कि यूनियन टैक्स केते परसेंटेज सेंटर शेयर कर स्टेट सहित बारंबार आम पढ़ीचे से सब न्यूज रे आसी सब रिपोर्ट रे आसी सब करंट अफेयर्स रे आसी तो सेटा नोबडी कैन फॉरगेट कि 41% शेयर टा रेकमेंड होता 15 फाइनेंस कमिशन स्टेट मान को दिया बोली है प्रथम आखि ये जीव सेकेंड स्टेटमेंट आमर ए भूल हो सेकेंड स्टेटमेंट को जब काटिदेवी आंसर इज 1 3 एंड 4 बाय एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट हाँ कि नहीं बाकी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तुम तुम इनफॉरमेशन पढ़ मन रख बट ये क्वेश्चन जो एग्जाम रे देई थाए से तुमको सही भाया हिंट्स भी देई थाए कि तुम आंसर बिना डाटा मन रखिकी करि पारिबो ठीक अछि हैला समस्त ठीक अछि समस्त हेला आंसर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक ग्रुप रो गोटे ऑर्गेनाइजेशन आईबीआरडी पढ़ीचो वर्ल्ड बैंक पढ़ीचो ऑर्गेनाइजेशन ने मु पढ़ीची वर्ल्ड बैंक आईएमएफ सब वर्ल्ड वार 2 पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गुडा को तयारी हितिला तारी ऊपर ने के क्वेश्चन First statement कहूँ it provides loans and guarantees to middle income countries. It works single-handedly to help developing countries to reduce poverty. It was established to help Europe rebuild after World War II. कौन ताले कौन हो बेरा आंसर? Again हमें जानी चाहिए World Bank groupings जो अच्छी ता अंडर सब आसुची तमरो आईबीआरडी आईडीए आसुची कि नहीं आईबीआरडी रो काम कोन आईबीआरडी रो काम होला टू गिव लोन्स बाय फाइनेंस टू मिडिल इनकम कंट्रीज एंड आईडीए रो कोन लो ना लो इनकम कंट्रीज ओके केबे हितला 1944 रे ऑर्गेनाइजेशन हितला आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 है ना डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो कि नहीं सो इट फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली नो दिस इज नॉट वर्क इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट कोऑर्डिनेट है ना माने काम करते विथ द कोऑर्डिनेशन ऑफ आईबीआरडी आईडीए है ना कोऑर्डिनेटेड मैनर रे काम करते टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी दिस इज the work is correct but not single-handedly so second statement is incorrect it was established to help Europe because first जो तो establish इतना प्रथम main reason थिला ये कि यूरोप को rebuild करिवार थिला वर्ल्ड वार 2 पर ना this statement is correct 1 and 3 ऑप्शन है काई सी है ना इनिशियल मिशन वाज कौन थिला इनिशियल मिशन तो यही थिला ना टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप नेशंस बाय वर्ल्ड वार 2 पर जो रिकंस्ट्रक्शन है ना हाँ बस सेटा को एलिमिनेट कर देले 2 को काट देला आसगला 1 and 3 ओके चलो यूपीएससी रे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक रे ही सॉल्व हुए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस चलो अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम आरटीजीएस एंड एनईएफटी वेरी इजी क्वेश्चन देखो थीम तो बहुत इजी ना डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी ना आसी यूपीएससी रे भी तमन कहे मैडम कौन जोक करजन मैडम यूपीएससी रे भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आसी बट सॉल्वेबल गोटे दिटा क्वेश्चन जोड़ा कि छाड़ी हबो फास्ट क्वेश्चन जोड़ा जना नहीं से क्वेश्चन करि हबनी छाड़िबो तापर बाकी क्वेश्चन सब करि परिबो आरटीजीएस एनईएफटी हम समस्त डे टू डे लाइफ रे यूज करूचे काम करूचे समस्त जानि छै आरटीजीएस और एनईएफटी विषय जदि से क्वेश्चन तुम भूल करिक आसु छै देन यू विल बी डेफिनेटली आउट ऑफ द रेस कैन तुम लो हैंगिंग फ्रूट को कैच करि पारलो नाही Anyway, the first statement कौन कहूँ in RTGS the settlement time is instantaneous while in case of NEFT it takes some time to settle payments. RTGS रे settlement instant हुए and immediate payment हुए आउ NEFT रे कहूँ टिके time लगे payment हवा पे RTGS रे second statement कहूँ the customer is charged for inward transaction पाई माने inward transaction माने कौन receive funding है ना जो पैसा टा हमें receive करूँ ता पाई हमको चार्ज देबो पड़ुची while that is not in case of NEFT रे सेमती किछ नाही Operating hours for RTGS are restricted on certain days while this is not true in NEFT माने RTGS टा सब दिन काम करेनी किछि दिन खोला हुए बाकी दिन बंद रहे बाकी NEFT सदा बेले खोले कौन आंसर इजी क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन
आरटीजीएस आम समस्त जाने इंस्टॉल पेमेंट आम सांगे पेमेंट करे तुम मुझे सांगे पेमेंट कल तुम पाक गला दिस इज आरटीजीएस टा इंस्टांट पेमेंट दिस इज करेक्ट एनईएफटी टा टिके टाइम निए मिनिमम 30 मिनिट सेटलमेंट टाइम एनईएफटी रुए तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट आरटीजीएस रे कस्टमर मानकर कोड देयर इज नो सच चार्ज इन एनी केस ना आरटीजीएस ना एनईएफटी आरबीआई रो गाइडलाइंस हिसाब रे कोनोसी चार्ज नाही कोनोसी चार्ज नाही आरटीजीएस और एनईएफटी पाई हैला दैट टू बी पुणी इनवाइट ट्रांजैक्शन पाई माने मु पैसा रिसीव करबी मु किंतु कहीं चार्ज देबी जे एटलीस्ट मु जदी पैसा पठौची हां मु चार्ज देबी आउटवाइट ट्रांजैक्शन इनवाइट ट्रांजैक्शन को चार्ज लागो हैना देयर इज नो चार्ज फॉर बोथ आरटीजीएस एंड एनईएफटी एंड ऑपरेटिंग आवर्स आर 24/7 कोनोसी रेस्ट्रिक्शंस नाही देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ डेज एंड टाइम्स हैना 24/7 आरटीजीएस एंड एनईएफटी आर एक्टिव ओके So this statement is correct, this statement is incorrect, hence 1 and 3 option है कहीं serious होंगे नहीं oh sorry एटा पर incorrect है one only A तो समझते हो A चलो ठीक है next question. Consider the following countries: United Arab Emirates, France, Germany, Singapore, Bangladesh. How many countries among the above are there other than India where international merchant payment (IMPS) are accepted under UPI? माने ए जति की country देछि या भीतर कोठी UPI accepted अछि. This is a very factual question. UPI कोठी को country रे accepted अछि. UAE रे अछि बोली हम समस्त बेसिकली जानि छै सिंगापुर रे अछि बोली हम जानि छै. बाकी फ्रांस एंड जर्मनी भीतर टिके कंफ्यूजन आसी पारे. बट देर आर मु कहि दूची इनफॉरमेशन देर आर टोटल 7 कंट्रीज जो माने यूपीआई को एक्सेप्ट करछनी को माने भूटान नेपाल श्रीलंका दुबई बा यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फ्रांस मॉरिशस एंड सिंगापुर hence only 3 United Arab Emirates, France and Singapore, not Germany, not Bangladesh. Okay, answer is only 3. ठीक है जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ओके 2025 रो क्वेश्चन सरीगला 2024 रो क्वेश्चन करबा 2024 रो क्वेश्चन करिया क्लियर ना सब क्वेश्चन क्लियर 15 रो 15 टांको क्वेश्चन बुझा पड़ला दीटा खडा क्वेश्चन जोड़ा कि छाड़ियो करियोबनी बिकॉज़ ए जो फैक्चुअल दिन सेटा मन रखे डिफिकल्ट ए जो लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन बाकी 15 टा क्वेश्चन 13 टा क्वेश्चन करी भी हबो ठीक भी हबो गोटे भी माने विथ एक्यूरेसी गोटे भी भूल होवार चांस नै बाकी ओपीएससी जो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रे से 15 टा क्वेश्चन आस्थिबो 15 टा क्वेश्चन स्टैंडर्ड एई भलिया ताठो तो कम स्टैंडर्ड डेफिनेटली रहबो एंड 15 क्वेश्चन करियो कोन से गोटे क्वेश्चन भूल हबो हो चलो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ 2024 रो कि इफ द यूएसए वेयर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स debt holders of US treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. The USA government debt is not backed by any hard asset but only by the faith of the government. कौन हम को এটা কমপ্লিটলি গোটে কারেন্ট अफेयर बेस्ड क्वेश्चन सेते बेले करेंटली थिला 2023 रे एटा हेतिला यूएसए एटा गोटे हेतिला सेठी डेट होल्डर मानकर डिफॉल्ट गोटे हेतिला सो कौन हम एटा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है एंड आंसर इज ए यूनाइटेड स्टेट्स जदि डिफॉल्ट है डेट ये ताले यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट जदि फेल है ताले से ट्रेजरी बिल रो किछि से माने क्लेम करि परिबे नाही आ सुनो सदा बेले गवर्नमेंट रो बॉन्ड डेट बॉन्ड एटा सब विश्वास रे ही चले तार कोनो से न थाए ये तो स्टेटमेंट टू बी करेक्ट मीन बोथ द एक्सप्लेनेशन बिकॉज यूएस गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट कोनो सी मॉर्गेज तो रखुनो ना तो तेणु कोडी आसीबो तार बैकअप तो इट ऑलवेज रन इन फेथ ऑफ द गवर्नमेंट ओके तो आंसर इज ए है ना बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 नेक्स्ट क्वेश्चन सिंडिकेटेड लैंडिंग वेरी गुड थीम गोटे भल थीम गोटे सिंडिकेट लैंडिंग पे सब थकी गल कि
के आंसर करनो ना टी प्रॉब्लम होची तो चलो मैं एटा एक्चुअली करंट अफेयर्स चेंज करियो भूल जाई चलो यूपीएससी पीआईक्यू जानि छ तो ओके फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहूँ ना सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स सेकंड स्टेटमेंट कहूँ द सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट और लम्स ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन प्रथम कथा है सिंडिकेटेड लेंडिंग कौन बुझे अच्छे सिंडिकेटेड लेंडिंग माने कौन कि जिते बड़े कौन गोटे बैंक फॉर एग्जांपल एसबीआई अदानी ग्रुप मागी एसबीआई को मत 5000 crores लोन दियो तो सेठी एका जदि एसबीआई लोन देला ताल तो देला एसबीआई एकुटिया लोन किंतु जते गोटे बड़ अमाउंट आरबीआई गाइडलाइंस हिसाब रे जदि आमे 50 crore रु अधिक लोन दउचे देन सेते बळे मिनिमम 2टा बैंक लेंड करबे मिनिमम 2टा लेंडर्स सेठी रहिबे हला सिंडिकेटेड बैंकिंग कोन 5000 crore को एसबीआई ता सतो मिसी गला तमरो पीएनबी ता सतो मिसी गला तमरो बैंक ऑफ इंडिया ता सतो मिसी गला तमरो आउ दि तीनटा बैंक 5टा मिसिकी बा 3टा मिसिकी 5000 कोटी लोन देले हला दिस इज कॉल्ड सिंडिकेट लेंडिंग जते बळे मल्टीपल मेंबर्स करिकी काहे ना रिस्क ता बंटा हे गला जदी एक एसबीआई दे थाला जदी बुडीला एक एसबीआई लॉस करिवो है ना एटा कोन तीन जण को ऊपर रिस्क ता डिवाइड हे गला बोरो जो माने लेंडर्स मान को ऊपर हे गला सो फर्स्ट स्टेटमेंट कोन सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स जदी डिफॉल्ट हैला 5000 crore ताले रिस्क ता स्प्रेड हे गला 5000 कोटी भाग हो गला 5 जगह हजार कोटी न जन को ऊपर एकाथर 5000 कोटी लॉस तो पूरा बंद हो जिवो से संस्था हां कि नहीं तो दिस इज सिंडिकेट लेंडिंग ओके एंड आरबीआई गाइडलाइंस हिसाब रे 50 crores जो अधिक के जदी लोन दउची देन मिनिमम 2 जण लेंडर सेठी रहबा दरकार एंड द सिंडिकेट सेकंड स्टेटमेंट कोची कोन ना द सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लम्स ऑफ अमाउंट बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन नहीं एटा गोटे क्रेडिट लाइन हे परिबो है ना फिक्स्ड अमाउंट भी परिबो क्रेडिट लाइन भी परिबो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट okay option C statement 1 is correct and statement 2 is incorrect okay this is the syndicate lending रा concept हो बुझेला तो syndicate lending माने कोन ना मल्टीपल लेंडर जो जगह थिबे सेटा ना syndicate lending ठीक है जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statement in respect of digital rupee डिजिटल करेंसी बहुत इंपोर्टेंट जेतु आरबीआई निजर सीबीडीसी डिजिटल रूप रिलीज कर देछि तो इट इज इंपोर्टेंट सब वर्ष क्वेश्चन है 2 वर्ष लास्ट 2024 2023 क्वेश्चन पचारछि प्लस ओपीएस रे भी क्वेश्चन पचारछि तो इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे इंपोर्टेंट थीम गोटे सो कोन डिजिटल रूपीटा कोन इट इज a sovereign currency issued by RBI alignment with its monetary policy yes very good माने करेक्ट स्टेटमेंट इट इज sovereign currency completely तार होल्ड आरबीआई माने आरबीआई रे तापर अछि निजर और इज ओन करेंसी सेटा हला कंप्लीट सोवरेन करेंसी आरबीआई हिरो मॉनेटरी पॉलिसी से अलाइनमेंट रो इट अपीयर्स एज ए लायबिलिटी ऑन द आरबीआई's बैलेंस शीट ऑफ कोर्स हमें आरबीआई रे जतले बैलेंस शीट पढिचे लायबिलिटी रे पढिचे कि करेंसी इन द फ्लो करेंसी इन फ्लो इज ए लायबिलिटी so a digital currency भी तो currency ना currency जोड़ा flow रे अछि so it is a liability so correct हाँ कि नहीं then it is insured against inflation by its very design inflation by the design in normal currency it is a monetary money it's a money है ना fiat money no it's a digital money it is not designed for inflation okay incorrect it is freely convertible against commercial bank money and cash yes it is freely convertible so third statement is incorrect then 1 2 4 1 2 and 4 हमने इजी क्वेश्चन डी ठीक है नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल ए कंट्री नीड्स टू बी ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल जो आईजीसी अच्छी तार इंडिया मेंबर अच्छे एंड
तमे ग्रेन जो व्हीट एंड राइस को जदि तमे एक्सपोर्ट करिवो कि इंपोर्ट करिवो ता पई तुमको ता मेंबर होबक पड़िवो इज इट ट्रू A. Yes, India is the member of International Grain Council. It is correct. Second statement is incorrect. There is no need to be a member of IGC to export or import rice and wheat. Okay. India केबे हला IGC रो member 1949 रे IGC सेटअप हेतिला तार हेडक्वार्टर कोठी लंडन है ना UK. It has 30 members total है ना like India तमरो USA यूरोपियन यूनियन चाइना रशिया है ना ये सब अच्छा तार मेंबर्स ओके तार मेन काम कौन टू एनहांस मार्केट ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरनेशनल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन मार्केट ट्रांसपेरेंसी एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन यार एक्सपोर्ट इंपोर्ट से तो इट हैज नथिंग टू डू विथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ राइस एंड व्हीट ओके वन ओनली वेरी गुड नेक्स्ट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 कहूँ इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंडिया रू अमेरिकन एप्पल गोटे देखी छोटे छोटे एप्पल गोटे ठीक पर्टिकुलरली से शीत दिन सेप्टेम्बर अक्टोबर दुर्गा पूजा टाइम रे आसे मार्केट को दैट इज अमेरिकन एप्पल वेरी फेमस इंडिया रे सो दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट कि इंडिया डजंट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड मतलब अमेरिका रू इंपोर्ट करे नहीं इंडिया डज इंपोर्ट है ना हेवीली इंपोर्ट करे अमेरिकन एप्पल बहुत फेमस इंडिया रे है ना इंपोर्ट ड्यूटी हाँ इंडिया पुणी इंपोर्ट ड्यूटी हटाई देछि ए एप्पल उपर अमेरिकन एप्पल उपर इंडिया रिमूव्स इंपोर्ट ड्यूटी से तार इंपोर्टा बढ़ी जाए है ना मार्केट रे एंड जदि इंडिया लॉ जोटा आमर अच्छी कोड़ा फूड सेफ्टी एक्ट 2006 कहूँ कि जदि आम जीएम क्रॉप्स को कुछ आणुचे इंपोर्ट करुचे देन यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट ओके स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट डी हाँ नहीं yes ठीक है very good consider the following airports Doni Polo Airport Kushinagar International Airport Vijayawada International Airport in recent past which of the above have been constructed as greenfield project brownfield project पढ़िଛ greenfield project कने जो प्रोजेक्ट पूरा नुआ प्रोजेक्ट तैयारी होची पूरा कंप्लीटली न्यू ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कौन जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हेतिला सेटा रिनोवेट हेकी नुआ तरीके रे पुणी आसुची ऑलरेडी थिला एक्जिस्टिंग थिला सेटा होची ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड हिसाब से या भर को एयरपोर्ट एवं पाखापाखि के 6टा एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हिसाब से आसी सो 6टा एयरपोर्ट भितर या भर कोटा कोटा अच्छी कोटा कोटा ना वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन सो मुझे कहीदे डोनी पोलो एयरपोर्ट को ईटानगर ये अच्छी तुम कुशीनगर भी अच्छी बट विजयवाड़ा इज नॉट इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ओके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट रे विजयवाड़ा नहीं ओके टोटल 6टा एयरपोर्ट अच्छी जमती कि तुम कौन कौन कालाबुर्गाई ओके ओरबाकल एयरपोर्ट सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट ओके ईटानगर एयरपोर्ट कुशीनगर एयरपोर्ट एंड तमर मोपा एयरपोर्ट ये 6टा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन होबो ओके देयर इज नो विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेंस ऑप्शन 1 and 2 ए चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज टीएफआर रा डेफिनेशन डायरेक्ट पचार वेरी इजी क्वेश्चन टीएफआर रा डेफिनेशन कोन
total fertility rate or definition, the average number of live birth of a woman would have by the end of her childbearing age. गोटे woman तार childbearing age रे average केते number of birth करी परला, that is total fertility rate. Answer D. एटा इजी क्वेश्चन है, आपरा बेसी किछि करियर नाही. हाँ, D. Next. Don't easy question तापर time waste करियर नहीं. Consider the following statement. In India, non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of the RBI. In India, foreign institutional investors can hold the government securities G-checks. In India, stock exchange can offer separate trading platforms for debt. In India, NBFC LF liquidity adjustment facility window facility RBI avail कर कि? No. No. Non-banking financial companies मानक पाही LF window टा available नुह RBI रो. Liquidity adjustment facility रो कौन से आवश्यकता नहीं. First statement correct. Our government security anybody can hold. You can hold, I can hold, any foreign company can hold, है ना? Any private company can hold. तो government securities in India कहीं भी hold करिबे तो foreign institutional investment माने भी hold करी पारिबे. This is correct. And third कोजी in India stock exchange can offer separate trading platforms for debt. हाँ, debt पे separate platform stock exchange दे परिबो. Correct. So 2 and 3 D. 2 and 3 yes. Good. Good Pranati, good. बाकी सब कोड सोई पहिले रे. ओके आंसर दोना से कोड पळले सब. हो चलो से पुणे पछरे देखिबे ताकर. Next question. In India, which of the following can trade in corporate bonds and government securities? Corporate या भितरु को माने government securities hold करि परियो. मैं बे कहली. India anybody can hold government securities. Insurance companies can hold, pension funds can hold, retail investors can hold government securities and corporate bonds. है ना? All of these answer. All समस्ते government securities और corporate bond hold करि परिबे. एटा ही बहुत इजी क्वेश्चन है, सब डायरेक्ट ऑब्वियसली क्वेश्चन इजी थिला. All of them can hold but can trade in corporate bonds and government securities. ठीक है जी, clear? Yes. Next question. Consider the following: exchange traded funds, motor vehicles, currency swap. Which of the above are considered financial instruments? या भीतर financial instrument को उड़ा को. ETF, exchange traded funds RBI use करे. हाँ कि नहीं? Trade in stock exchange रे sorry. Stock exchange it is a intangible asset. Exchange traded funds it is a financial instrument. Motor vehicle तो कोटे physical asset ना. It is a physical asset. Do not have any monetary value. तार किसी monetary value अच्छी की financial market रे. Financial market रे किसी नहीं, it is a physical दिन सा. And currency swap तो कोटे financial instrument 1 and 3 है ना. Motor vehicle टा नो. Very good Pranati. Next question. With reference to sectors. Sectors में पढ़ाई जी storage of agricultural producer. Storage of agricultural produce secondary or not? Dairy farm टा तो primary जानी चो. Dairy farm टा तो primary. Mineral टा mineral exploration कौन primary है ना. Weaving of cloth. Weaving होची कौन cloth. Storage of agricultural produce. Transport storage ये सब कौन tertiary गोटे service एटा ना. हाँ तो एटा तो भूल अछि, एटा ठीक अछि. Mineral exploration primary एटा भी भूल अछि. Weaving cloth रा कौन गोटे secondary एटा ठीक अछि. Okay 2 and 4 only 2 B yes correct. Next working capital and fixed capital. Working capital कौन and fixed capital कौन. Working capital होची कौन ना जोटा की short term value जार अछि. fixed capital होची जोटा long term value अछि. हाँ कि farmers flow working capital ना fixed capital. Obviously fixed capital होबो. fixed capital होबो काहे कि farmers flow को गोटे थरा यूज करी फोपड़ दबो. working capital माने once यूज है ना. farmers flow टा तारा हळ लंगळ
तो वर्ष वर्ष धरि यूज करिवो 5-10 वर्ष यूज करिवो तो दिस इज नॉट ए वर्किंग कैपिटल दिस इज ए फिक्स्ड कैपिटल कंप्यूटर अगेन कंप्यूटर गोटे लाइफ स्पैन अछि 7 वर्ष 8 वर्ष कंप्यूटर गोटे हम यूज करि परिबा देन इट इज ए फिक्स्ड कैपिटल करेक्ट एंड yarn used by the weaver yarn होची कोन जो रॉ मटेरियल yarn ता कोन गोटे रॉ मटेरियल वंस यूज हे गेला गोटे वेबर जो सूता सूता जो यान मो सूता तो सेटा तो गोटे थर यूज हे गेला ना तो एटा वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल नो एटा होची वर्किंग कैपिटल एंड द पेट्रोल पेट्रोल सेमती वंस यूज इट इज ए वर्किंग कैपिटल 2 and 4 केतेरा करेक्टली मैच अछि ओनली 2 बी 2 and 4 यस Next, with reference to the rule imposed by the RBI while treating foreign banks, consider the following statement. Na foreign banks manok pai kon rules regulation achi RBI ro. There is no minimum capital required for wholly owned banking subsidiaries in India. For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals. देखो एमती केबे हबो कि गोटे फॉरेन बैंक इंडिया रे सेटअप होबा ता पे गोटे मिनिमम कैपिटल नथिबो नो मिनिमम कैपिटल इम्पॉसिबल देयर आर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना 500 crores मिनिमम कैपिटल हबा दरकार एज पर आरबीआई गाइडलाइंस तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बट होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज इंडिया हो पाई 50% बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियंस है ना सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट ओनली 2 ठीक है जी ओनली 2 इज करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to CSR corporate social responsibility rule को नेकी question कौन कोची question CSR rules specify that expenditure that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities CSR rule को होची कि जो expenditure जो expenditure टा होची जोटा benefit होची company को direct आ company रे employee को सेटा CSR activity जीवनी CSR activities is कौन जो expenditure होची to the society पाई जो एक्सपेंडिचर होची दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है ना जो एक्सपेंडिचर जदी से मो धर कंपनी मोर जो बेनिफिट हैला बा प्रॉफिट हैला मो मोर एम्प्लॉय मानन पई खर्च करियो मु सेडो कभी मु कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी खर्च करछि हबनी सेटा है ना सो the CSR rules specify that expenditure that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities this is very true and CSR rules do not specify minimum spending on CSR activity this is incorrect 2% of the profit 2% of profit you have to spend on CSR so answer A one only yes very good next with reference to the Indian company collateral borrowing and lending obligations are the instruments of collateral borrowing and lending माने तमे किछि मॉर्गेज रखुछ किछि कोलैटरल रखी कि आइदर तमे बोरो करूछ नले लेंड करूछ तार से जो ऑब्लिगेशन को इंस्ट्रूमेंट जाउची बॉन्ड मार्केट ना फॉरेक्स मार्केट ना मनी मार्केट ना स्टॉक मार्केट एटा को मार्केट रे कामटा हुए बोरोइंग एंड लेंडिंग को मार्केट रे हुए ऑफ कोर्स मनी मार्केट रे ही तो लेंडिंग बोरोइंग सब ओके क्लियर एटा भी इजी क्वेश्चन बॉन्ड मार्केट फॉरेक्स मार्केट स्टॉक मार्केट थोड़ी ना से बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स हुए यस 2023 रो क्वेश्चन देखिबा 2023 रो क्वेश्चन देखिबा पानी पी दिया दो 2023 रो क्वेश्चन करबा इकोनॉमिक्स रो interest income from the deposits in infrastructure investment trust InvITs distributed to their investor is exempted from tax but the dividend is taxable गोटे इंटरेस्ट इनविट्स रो जो इनकम जो इंटरेस्ट आसीबो ता इंटरेस्ट ऊपर कोनोसी टैक्स नाही बोली से बुझी इज ट्रू गोटे इनकम रे केमती आसीबोनी टैक्स पड़िबोनी इनकरेक्ट इधर इट इज taxable second statement कहूची InvITs are recognized as borrowers under the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002 it is correct obviously InvITs are recognized करा है ना as borrowers under this act recognize है सो सेति पे हमर सेटा फंक्शनिंग रहछि बट
दार इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट बा इनकम इंटरेस्ट जोड़ाक आसुचे से गुड़ाक टैक्सेबल है ना. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. डी. स्टेटमेंट 1 is incorrect. Statement 2 is correct. D. Okay. चलो next. Consider the following statement. Statement 1 कहूची in the post pandemic recent past many central bank worldwide had carried out interest rate hikes. Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. पैंडेमिक परे पैंडेमिक जो है तापरे सेंट्रल बैंक माने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाई थिले. येस जेतेबेले तुम मैंने देखिछ कोविड सरला सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हेतिला इकोनॉमी पूरा रिसेशन पीरियड रे चलतिला सेतेबेले इन्फ्लेशन को कंट्रोल को आनिया पई इन्फ्लेशन को कंट्रोल आनिया को तुम जानिथिबो आरबीआई सेतेबेले रेपो रेट को राइज करतिला इंटरेस्ट रेट को हाई करतिला. इंटरेस्ट रेट को हाई कले कोन हबो ना मार्केट रे इन्फ्यूज हबो मनी. ओके तो सेटा इवन तुम आरबीआई भी करथिला फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका से भी करथिला है सब सेंट्रल बैंक माने पॉलिसी को एक्सेप्ट करथिले एंड सेंट्रल बैंक माने काना मॉनेटरी पॉलिसी टूल होची इटा. ओके रेपो रेट को बा इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल रे रखिबा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पय एटा सब माने यूज करंती है ना. बोथ करेक्ट. ए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ आरबीआई इज कंसीडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ स्टोरिलाइजेशन. स्टोरिलाइजेशन या भीतर को एक्टिविटी आरबीआई रा गोटे स्टोरिलाइजेशन पार्ट बोली कहा जाए. कंडक्टिंग ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम डेब्ट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. स्टोरिलाइजेशन कौन बाइंग एंड सेलिंग है ना. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स गवर्नमेंट कोड हुए ओपन मार्केट ऑपरेशंस रे कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट कॉल मनी मार्केट ट्रेजरी बिल मार्केट स्टॉक मार्केट. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट माने कोन जो जहार नेचर होची लॉन्ग टर्म इन नेचर. लॉन्ग टर्म इन नेचर होला. तो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट गोटे लॉन्ग टर्म कि शॉर्ट टर्म. गवर्नमेंट बॉन्ड टा गोटे लॉन्ग टर्म. गवर्नमेंट बॉन्ड तुम लॉन्ग टर्म पे प्रक्यूर कर परिबो. कॉल मनी टा होची कोडे शॉर्ट टर्म. कॉल मनी कोन शॉर्ट टर्म ना नहीं शॉर्ट टर्म नेचर बेसिकली 1 to 14 days तार वैल्यू तार लिमिट है कौन पाई सेटा हुए ना इंटर बैंकिंग लेंडिंग पे यूज करा जाए. इंटर बैंकिंग लेंडिंग एंड बोरोइंग्स. इंटर बैंकिंग लेंडिंग एंड बोरोइंग्स पे कॉल मनी यूज करा जाए जोटा कि शॉर्ट टर्म इन नेचर दिन रु 14 दिन भीतर. ट्रेजरी बिल मार्केट भी शॉर्ट टर्म. ट्रेजरी बिल तुम जानी ट्रेजरी बिल मार्केट रे गवर्नमेंट तार दिए 1 year पे इश्यू करा जाए. 1 year पे इश्यू करा जाए बेसिकली जान 91 days रो थाए तमर 182 days रो थाए एंड 364 days रो थाए ट्रेजरी बिल है ना. बट 1 year पे इट इज शॉर्ट टर्म एंड स्टॉक मार्केट इज लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट से. सो कैपिटल मार्केट रे तमर जीवो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट ओनली 2. यस. Next. Which one of the following best describes the concept of small farmer large field? Small farmer large field माने कौन जोठी small land holders माने थांती छोटो लैंड होल्डर्स माने थांती they come together and they make a group है से माने गोटे ग्रुप करिकि ना से माने कौन करती ना सिंक्रोनाइज गोटे ग्रुप्स रे कन्वर्ट करिकि ता से माने एग्रीकल्चरल ऑपरेशन को हार्मोनाइज करते. ओके सो आंसर इज many marginal farmers many small marginal farmers in an area organize themselves into groups. माने धर 5-6 जण स्मॉल फार्मर्स मिसिले गोटे ग्रुप कर देले गोटे एग्रीकल्चर सब एग्रीकल्चरल फील्ड को मिसी गोटे बड़ एग्रीकल्चरल फील्ड कर देले एंड सेठी से माने एग्रीकल्चर करे तार जो बेनिफिट है से माने ताका भीतर डिस्ट्रीब्यूट करनेले है ना. इट्स ए कोन सिंक्रोनाइज्ड एंड हार्मोनाइज्ड मैनर रे से माने एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करेले. ओके
Many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agricultural operations. Clear? Chalo. Next question. Consider the following statement. The government of India provides MSP, minimum support price for Niger seeds. Niger seeds by MSP रे अच्छी आम समस्ते जानी. Niger is cultivated as a kharif crop. Yes, kharif crop. Niger टा गोटे kharif crop. Some tribal people in India use Niger seed oil for cooking. जोटी some देइथिबो से सब आंसर ऑटोमेटिक करेक्ट. किछ तो ट्राइबल ग्रुप थिबे जो माने Niger seed को कुकिंग पई तार तेल को यूज करू ही थिबे है ना. All of all the three options are करेक्ट है. नाइजर टा एमएसपी रे अच्छी हम जब लिस्ट देखी एमएसपी रे को प्रोडक्ट्स अच्छे से नाइजर अच्छे. ओके नाइजर सीड गुड खरीफ क्रॉप को स्टेट रे नाइजर सीड टा हुए फार्मिंग हुए. ओडिशा तमर महाराष्ट्र तमर कोठी छत्तीसगढ़ एंड तमर मध्य प्रदेश. यही सब स्टेट मानक नाइजर सीड प्रोड्यूस हुए है. चलो कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स. ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंटरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. टेंजिबल माने कौन? टेंजिबल माने कौन? जहार फिजिकल फॉर्म अच्छे है ना. जो प्रोडक्ट रो गोटे फिजिकल फॉर्म अच्छे से होची तमरा टेंजिबल जहार फिजिकल फॉर्म नहीं है ना. जोड़ाक ई बेसिस रे कहते ना जोड़ाकर राइट्स अच्छी तुम शेयर होल्डर से सब हूँ इंटेंजिबल जहार फिजिकल फॉर्म नहीं सी है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. ब्रांड रिकॉग्निशन तुम ब्रांड तुम कोका कोला गोटे ब्रांड, नोकिया गोटे ब्रांड, एप्पल गोटे ब्रांड, आईफोन एप्पल टा गोटे ब्रांड तो तार गोटे रिकॉग्निशन तार गोटे वैल्यू अच्छी. एप्पल बोली गोटे किसी फिजिकल जिनस अच्छी कि मैं से नु एप्पल ब्रांड कथा मुझे कहूँ आईफोन तो ब्रांड गोटे इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. इन्वेंटरी तो गोटे फिजिकल फॉर्म. इन्वेंटरी माने कौन? लिस्ट ऑफ गुड्स, record of goods हाँ कि नहीं. तो इट्स ए इन्वेंटरी माने इट्स ए फिजिकल फॉर्म. तो दिस इज नॉट ए इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में धर गोटे प्रोडक्ट मुझे तैयारी कर तार राइट्सटा मो पाखे कि मुझे निजे तैयारी कर तो सेटा कौन गोटे फिजिकल फॉर्म ना जस्ट मो ना मो पाखे तार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो राइट जो ये जिनसा तो दिस इज इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स अगेन मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स जो ई कॉमर्स मैंने यूज करती तो सेटा भी सेमती तार कौन फिजिकल फॉर्म ना तुम इनफॉरमेशन गुड़ाक जस्ट तो इट इज ए इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. सो ओनली 3 है ना. इन्वेंटरी टाक छाड़ी बाकी सब गुड़ाक इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बेटा रेफर्स टू बेटा रो मीनिंग टा कौन पचार. बेटा गोटे न्यूमेरिक वैल्यू ऑप्शन भी आराम से तुम कर ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट है. इट हैज ए न्यूमेरिक वैल्यू. ऑप्शन डी. Next, the self-help groups SHG program was originally initiated by the SBI by providing microcredit to financial deprived. No, it is not initiated by SBI. It is initiated by NABARD. एटा भी हमें डे 1 नु SHG पढ़ी के आसुचे. NABARD रो SHG टा होची NABARD रो इनिशिएटिव है ना. In an SHG all members of a group take responsibility for a loan that individual member takes. एटा भी जमे सुन जानि छ SHG रे कोन इट्स ए ग्रुप 10 मेंबर्स मिनिमम ग्रुप जो जड़े मेंबर जी चेयरमैन बा प्रेसिडेंट थाए सी लोन आणंती एंड ग्रुप जो मैंने अच्छा समस्ते रेस्पॉन्सिबल से लोन को सुझावा समस्ते मिसिंग से लोन को सुझंती हाँ कि नहीं. दिस इज करेक्ट. RRBs and scheduled commercial banks support SHGs. Yes, it is correct. 2 and 3 only 2. It is not the initiative of SBI. It is the initiative of NABARD. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट. Consider following heavy industries: fertilizer plants, oil refineries, steel plants. Green hydrogen is expected to play a significant role in decarbonizing how many of the above industries? सब इंडस्ट्री रे हमें ग्रीन हाइड्रोजन यूज करि परिबा बाय द वे है ना. फर्टिलाइजर प्लांट रे हमें ग्रीन हाइड्रोजन यूज करि परिबा से फ्यूल. ऑयल रिफाइनरीज रे भी हमें फ्यूल हिसाब रे को यूज करि परिबा. स्टील प्लांट रे भी फ्यूल हिसाब रे हमें को यूज करि परिबा. तो इन ऑल द अबव इंडस्ट्रीज ऑल 3 रे हमें ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करि परिबा. ओके डिकार्बोनाइजिंग करिबा पय.
Next statement, next कौन कौन statement 1, India accounts for 3.2% of global export of goods. Statement 2 goes, many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production linked incentive scheme. 3.2% global export of goods. Exporting in India 3.29, एत्ते अधिक नो, it is now 1.8. 1.8% of global export. India maximum दिन से import करे, not exporting country. Many local companies and some foreign companies operating in India, जो मैंने local company हिला है, बाकी किसी foreign company जो India रे काम करछन, they take advantages of production linked incentive. Yes, it is correct. Production linked incentive was सेतेबेला दिया जायतिला to give a boost to domestic manufacturing. तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जे करूछन्ती इंडिया रे लोकल माने लोकल कंपनी हुंतु किंबा फॉरेन कंपनी हुंतु जो माने मैन्युफैक्चरिंग करूछन्ती से मानको पई पीएलआई स्कीम रो से माने बेनिफिट नहीं परिबे. यस इट इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडिया. अकॉर्डिंग टू MSME Development Act 2006, the medium enterprises are those with investment in plant and machinery between 15 crore to 25 crore. No. Investment medium by 5 to 10 crore. 5 to 10 crore. All banks loan to MSME enterprises qualify under the priority sector. Yes, सबु बैंक मानको तो एटा आरबीआई रे गाइडलाइंस भी थिला MSME सेक्टर मानको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रे रखियाको कि से मानको प्रायोरिटी बेसिस रे लेंडिंग दिया जो बोली आरबीआई रे गाइडलाइंस थिला. दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट. MSME रो जो एबे न्यू कैपिटल टर्नओवर अछि टिके तमे सेटा देखि दबो. तमरो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एटा भी इम्पोर्टेंट. एको भी पचारि परिबो तार कैपिटल केते हितबा दरकार, क्राइटेरिया कोन एंड तार टर्नओवर केते हितबा दरकार. टर्नओवर करते दिबा क्रोर्स रे, ये भी क्रोर्स रे. माइक्रो होबा पई तुमको दरकार 50 करोड़. माइक्रो होबा कहले तुमको तमरो सॉरी माइक्रो रे तुमको जिबा कहले तमरो कैपिटल हितबा दरकार 1 करोड़ एंड तमरो टर्नओवर हितबा दरकार 5 करोड़. स्मॉल कैटेगरी रे आसीबा तमरो कैपिटल हितबा दरकार 10 करोड़ एंड तमरो टर्नओवर हितबा दरकार 50 करोड़. मीडियम रे होबा कहले तमरो कैपिटल थिबा दरकार 50 करोड़ एंड तमरो टर्नओवर थिबा दरकार 250 करोड़. हेले तमे एमएसएमई रो ए कैटेगरी रे आस परिबो, माइक्रो की स्मॉल की मीडियम. हला तने ए इंफॉर्मेशन टा इंपोर्टेंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the central bank digital currency CBDC, consider the following statement. CBDC को लेके क्वेश्चन कि it is possible to make a payment in digital currency without using US dollar or SWIFT system. Yes, आमे तो digital currency सेति ପାଇଁ करछ ना, बिना डॉलर SWIFT system किछि नै, आमे डायरेक्ट ताको ट्रांजैक्शन कर परिबा. करेक्ट. A digital currency can be distributed with the condition programmed into such a time frame of spending it. Yes, both the options are CBDC correct. हला CBDC currency टा तमरा डिजिटल करेंसी टा विदाउट यूएस डॉलर एंड स्विफ्ट सिस्टम की यूज करके पेमेंट हे परिबो एंड डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ कंडीशनल प्रोग्राम है ना इनटू सच ए टाइम फ्रेम स्पेंडिंग बिकॉज़ इट इज ए डिजिटल करेंसी ताको हमें तम प्रोग्रामिंग कर परिबा. अब बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. सो विथ दिस द इकोनॉमिक्स क्वेश्चन ऑफ लास्ट 3 इयर्स ऑफ यूपीएससी हैज बीन कवर्ड. सो यूपीएससी रो क्वेश्चन बहुत देखो क्वेश्चन कोन करिवार कारण थिला एया कि नो डाउट थीम तो बहुत थीम रिपीट हम जो तुमको बजेट है तुम स्टॉक मार्केट हो गला आरबीआई हो गला सेबीआई हो सब रिपीट हम यूपीएससी रे. एक कथा. द्वितीय कथा है क्वेश्चंस केमिति करिवो, जो इनफॉरमेशन नथिले भी क्वेश्चन केमिति करि परिबो. जेति कि तमे पढिছো ता भीतर ही सब क्वेश्चन, बाहर किछि भी नै. सब क्वेश्चन किछि क्वेश्चन अछि टिके फैक्चुअल जोडा सब तमे छाडिया को पडिबो, से क्वेश्चन हाथ मारिया कथा नुह किंतु हेई परिबो. ओके चलो लेट्स स्टार्ट द इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट क्वेश्चन. इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देले, एनवायरनमेंट रे भी हम लास्ट 3 वर्ष रा क्वेश्चन करबा. Okay, let's start the environment PIQ from 2025. Active
activated carbon, first statement कहूँ activated carbon is a good and an attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from the various industries. तो activated carbon main कौन activated carbon मुहर भी देखिए यूज करते हैं activated carbon काम होला to remove the impurities है ना. So first statement is correct. Activated carbon is a good and attractive tool to remove the pollutants. Okay, various industry pollution को remove करने पे activated carbon का हम use करते. Second statement कहूँ activated carbon exhibit a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metals. Yes, it is also correct. Activated carbon टा गोटे large surface area था सेति पाई तार potential था heavy metals को absorb करिवारे. Okay. Activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with a high carbon content. Yes, it is also correct. So both those statements, three statements are correct and तमरो activated carbon main कथा ला activated carbon जानी जो समझते गोटे good adsorbent है ना. The answer is A कि both the statements are 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. Next, consider following statement. It is about COP28. Now COP 29 important, COP 30 भी important. COP 30 COP 29 8 ताको सब तारो टिके देखि देखि जिवो तारो आउटकम्स गुडा को आउ तारो को जगह रे हेइथिला होस्ट कंट्री. Statement 1 कौन कहूँ at the 28th United Nations Climate Change Conference COP 28 India refrained from signing the Declaration on Climate and Health. Declaration on Climate and Health को India sign कर नथिला. कारण कौन थिला statement 2 COP 28 Declaration on Climate and Health is a binding declaration. It is a binding declaration and if signed it becomes mandatory to decarbonize the health sector. प्रथम कथा ला कोनोसी COP रो declaration गुड़ा को binding नुह. Declarations are not binding. This is a voluntary organization. Voluntary thing. तो binding नुह. Statement 2 तो incorrect. Statement 2 तो incorrect आसे जीवन ना direct. कोड होची आंसर देखिबा. Statement 2 is incorrect. Okay, 3 तो देखिबा कौन. If India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. देखो हेल्थ सेक्टर टा को कोन पाई आमे साइन कले ना इंडिया कोन पाई साइन कला नाही. इंडिया माने से कहया कथा कि हमर हेल्थ सेक्टर रे बेसिकली कोनटा हेतिला हेल्थ सेक्टर रे आसुथला तमरो माने थिला हेतरे कोन कि दी रिड्यूसिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम कूलिंग सिस्टम्स जोटा कि क्रिटिकल फॉर हेल्थ सेक्टर माने हेल्थ सेक्टर रे कूलिंग सिस्टम निहाती दरकार. ग्रीन हाउस गैस हेल्थ सेक्टर कोड रिलीज होची जति कि हमें कूलिंग सिस्टम रेफ्रिजरेटर यूज करूचे सेतर तो जदि आमे से ट्रिटी को बाइंड करथांते साइन करथांते ताले कोन हेतंता हमकु से कूलिंग सिस्टम को हटेय को पड़थांता. तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर सेटा क्रिटिकल हेई पारि थांता है ना. काहे ना कोठी हमें कूलिंग सिस्टम सब यूज करछे वैक्सीन स्टोरेज पई करूछे हां कि नै बहुत किसी जगह रे हमर कूलिंग सिस्टम टा यूज करा जाउछे. तो सेति पई सेटा करा जाई नथिला. सो only one of the statement 2 and 3 is correct and that explains statement 1. First statement incorrect, third statement are correct. First statement are correct, third statement correct, second statement incorrect and third statement is correct explanation of first statement. एथि पाई हमें India refrained from signing the Declaration of Climate and Health. Next, Article 6 of Paris Agreement over question thila. Statement first कौन कहला कि Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement 2 कहूँ Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change sets out the principle of a carbon market. Carbon market over Article 6 कहूँ एटा भी हम जानी छे कि Carbon 6 जो Article 6 टा Paris Agreement रो is about the carbon market. Statement 3 कहूँ कौन Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Okay, कौन अब एथरो Article 6 टा में जानी छे सदा बेले कौन ना एटा कार्बन मार्केट प्रिंसिपल जोटा हमर पेरिस एग्रीमेंट रो अछि. तो एटा तो करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट कहूँ Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change is frequently discussed. Yes, it is global platform रे सदा बेले Article 6 टा कार्बन मार्केट ऊपर डिस्कस होउची. आखि बुझी कि क्वेश्चन एगुडा सब तुम ठीक मारिवो. Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate change. Yes, it is also correct. है ना. So answer 2 and 3 सब तो correct and both the explanation of 1. चलो
Next, with reference to the direct air capture DAC, which of the following statement is correct? DAC ta first kono? This is the negative emission technology. DAC is a negative emission technology that extracts carbon dioxide directly from atmosphere. है এটা गोटे नेगेटिव टेक्नोलोजी नेगेटिव एमिशन टेक्नोलोजी जोटा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करिवो. It can be used as a way of carbon sequestration. Yes, it can be. It can be a valuable approach for plastic production and food processing. जो कार्बन यूज कार्बन डाइऑक्साइड यूज सेठी हमें से यूज करि परिबा निश्चित. In aviation, it can be sourced as a carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. Yes, aviation sector भी fuel हिसाब रे हम यूज करि परिबा. All the options are correct. C. Okay. Next. Regarding peacock tarantula, consider the following statement. Peacock tarantula और देखिए जो blue color spider गोटे blue color spider टेटा. It is an omnivorous crustacean. Its natural habitat in India is only limited to some forest areas. In its natural habitat, it is an arboreal species. इटा गोटे arboreal species. Arboreal species कौन? जी most of the life stays in tree. जी गच्छरे मैक्सिमम तार लाइफ बिताई दिए मतलब गच्छरे ही रुए जमती कि मंकी है ना. ये भी सेमती स्पाइडर इज ए जो पिकॉक टारंटुला गोटे आर्बोरियल स्पीसीज. इट इज करेक्ट. तार नेचुरल हैबिटेट इंडिया रे किछि लिमिटेड सम फॉरेस्ट रे अछि जमती कि तमरो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इठी किछि अछि तार डेसिडियस फॉरेस्ट जोठी केवल एटा देखा जांती. एंड इट इज नॉट ओमनिवोरस, इट इज ए कार्निवोरस. इट इज ए कार्निवोरस है ना. Omnivorous no. 1 is incorrect. 2 and 3. 2 and 3 कहीं 2 and 3. D. Done. चलो next. Carbon dioxide emission in India are less than 0.5 ton carbon dioxide per capita. In terms of carbon dioxide emissions from fuel combustion, India ranks second in the Asia Pacific region. Electricity and heat producers are the largest sources of carbon dioxide emissions in India. Yes. Carbon dioxide emission in India is not less than 0.5. It is 2.0 ton carbon dioxide per capita. 2.0. It is wrong. है ना? And in terms of carbon dioxide emission, it is second after China. China first रही एशिया रे, second रही इंडिया. आ कोठी बेसी कार्बन डाइऑक्साइड हमरे एमिशन होची जोठी हमरो कोल पावर प्लांट गुडा कर बेसी कोल फील्ड पावर प्लांट रे बेसी यूज होची इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बेसी होची. तो दिस इज करेक्ट. तो 2 and 3 चलो. With reference to the planet Earth, consider the following statement. Rainforest produce more oxygen than the produced by oceans. No, it is not. Ocean highest oxygen produce करे है ना. Ocean अधिक करे rather rainforest. Marine phytoplankton and photosynthetic bacteria produce about 50% of the world's oxygen. Yes, marine कहीं की ocean रो अधिक oxygen produce हुए because of the phytoplankton. Phytoplankton माने वो 50% oxygen produce करते. This is correct. Well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than the atmospheric air. No, atmospheric air रे अधिक थाए oxygen as compared to surface water. This is not correct. So only 2. B. चलो next. Artificial way of causing rainfall. Artificial causing rainfall कोडा cloud seeding. एबे टेक्नोलॉजी हम बहुत सुनी छे क्लाउड सीडिंग करा होची. एतरे को मटेरियल यूज करा जाय को दिन से यूज करा जाय क्लाउड सीडिंग रे. क्लाउड सीडिंग रे हम जानि छथि सिल्वर आयोडाइड जोटा AgI यूज करा जाय एंड पोटेशियम आयोडाइड यूज करा जाय. पोटेशियम आयोडाइड यूज करा जाय एंड ड्राई आइस भी यूज करा जाय को ताकू तुमको सब इन्फ्यूज करा जाय टू क्लाउड फॉर्मेशन हुए एंड ताकू आर्टिफिशियल रेन में कन्वर्ट करा जाय.
silver added and potassium added. Okay, first option silver added and potassium added. Very important question. एक question पचारि पारे acid rain जंती बार बार पचारुछि सेमती एक question भी पचारि पारे हला artificial way of rainfall cloud seeding जोटा हमें कहूचे. Next, which organization has enacted the nature restoration law to tackle climate change and biodiversity loss? नेचर रिस्टोरेशन लॉ किए करिछि एबे जे क्लाइमेट चेंज बायोडायवर्सिटी लॉस को टैकल करबा को किए करिछि द यूरोपियन यूनियन हला यूरोपियन यूनियन एबे करिछि नेचर रिस्टोरेशन लॉ है ना क्लाइमेट चेंज एंड बायोडायवर्सिटी लॉस को टैकल करियो. नेक्स्ट, consider the following statement. Ethanol, nitroglycerin and urea coal gasification technology important एटा गोटे coal gasification technology रे को कौन यूज हुए थे कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी या कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करके आदर कौन प्रोडक्ट को जिनस प्रोड्यूस करा जाई पारिबो. इथेनॉल कोल गैसिफिकेशन माने कौन कोल टा कन्वर्टेड हे जिवो इनटू सिनगैस. सिनगैस कौन सिनगैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन है ना. कोल टा कन्वर्ट हो ये सब गैस को तो ये सब गैस कन्वर्ट होला आम कौन प्रोड्यूस कर परिबा इथेनॉल प्रोड्यूस कर परिबा यूरिया प्रोड्यूस कर परिबा. ओके बट नाइट्रोग्लिसरीन इट इज ए कौन एक्सप्लोसिव मटेरियल एक्सप्लोसिव मटेरियल पे एटा यूज हुए तादरे नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से सब जिनस मिसिक सेटा हुए तो तार सेटा नुह इथेनॉल एंड यूरिया only two. Okay, next, the organism cicada, frog hopper and pond scatter आर एगुड़ा को कौन cicada, frog hopper, pond scatter एमती एग्जाम रे यूपीएससी स्पीसीज पचारे. these are insects हला एगुड़ा सब न्यूज रे थाए तो सेगुड़ा को सेति में पचरा हुए. cicada, frog hopper तो जानि थिबो frog hopper जो पोखरे सब देखा जाते सब insects गुड़ा का. pond scatter एगुड़ा सब insect गुड़ा का. हां या ना जाना न थे देखी थे आम कि ना जाना न था से मन न था बट ये क्वेश्चन जब आसला ना छाड़ स्किप. चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेटमेंट कहूँ मेनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. हाँ च्यूइंग गम्स गुड़ाक प्लास्टिक थाए से गोटे सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये हो पार. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. 2 कहूँ कौन मेनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक मुझे कहली एज ए गम बेस. यस तार गम बेसटा प्लास्टिक यूज हुए तो it is a source of environmental pollution. Okay, both are correct and second statement is the correct explanation of first statement. easy question है क्वेश्चन सदा बेले एमती टिके लॉजिकल गेस करिवो. च्यूइंग गम जोड़ा को डॉक्टर मना करंती जोड़ा अनहेल्दी से गुड़ा को हे ही थिबो. चलो माइक मु भावुँ बंद हो जाए लो वॉइस शुभुव. चलो ठीक अच्छे बिना माइक करवा. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स को कंट्री रे को एनिमल देखा जाती नेचुरल हैबिटेट कहूँ. ब्राजिल इंद्री देखा जाती इंद्री नु इंद्री गुड़ाक गोटे मन रखता इट इज एंडेमिक टू मडगास्कर आइलैंड. मडगास्कर आइलैंड जो अच्छी ताकू एंडेमिक सो दिस इज इनकरेक्ट. इंडोनेशिया इल्क देखा जाती ना इल्क गुड़ाक इंडोनेशिया देखा जाती ना कौट देखा मान सब तुम नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल एशिया से जगह ये सब देखा जाती है. ये भी इनकरेक्ट. मडगास्कर बोनबो ये भी इनकरेक्ट. नॉन हम आंसर. बोनबो कौट देखा जाती बोनबो सिंपांजी टाइप इल्क हूँ इल्टा कौटा माने गोटे रेड कलर डियर है. बोनबो गोटे सिंपांजी टाइप जोटा कि तुम देखा जाए कौट डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो को से गुड़ाक से नेचुरल हैबिटेट है. ऑल आर इनकरेक्ट. मुझे पीडीएफ ग्रुप रे पकईदेवी व्यस्त ना जी नोट करुच ना पीडीएफ सब ग्रुप रे पकईदेवी तो तुम कलेक्ट कर नब रिविजन. Next, which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? कोटा गोटे insect which one of the following shows unique relationship माने ए जो ट्री चार्टा देछि फिग महुआ सैंडलवुड सिल्क कॉटन या भितर को गोटे ट्री
से ट्री रे गोटे इनसेक्ट ग्रो करे निजे ग्रो करे एंड से इनसेक्टा ही ताको पॉलिनेट करिवारे हेल्प करे इट इज फिग फिग है ना छोटे 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 सब मंजी सब थाए आ से इनसेक्टा से मंजी को माने माने कोन फूड हिसाब रे टेक करन नियंती आ से थ्रू ही पुनी पॉलिनेट हेकना आ गछ पुनी तयार हुए फिग नेक्स्ट consider the followings butterflies fish frogs how many of the above have poisonous species among them जतो एई बडा क्वेश्चन देइथो एटी कॉमन सेंस टिक यूज करिवो देखो केते ब्रीड रो केते स्पेसीज बटरफ्लाइज अछन हमें जानि भी नाही बहुत किछि अछि हमें ताको जानि भी नाही सेंति फिश केते वेराइटी रो स्पीशीज फिश अछन हमें जानि भी नाही केते वेराइटी रो फ्रॉग अछन हमें जानि नाही ता भितरु से कोछि हाउ मेनी हैव पॉइजनस स्पेसीज माने जदि ए स्टेटमेंट भूल हबा गेले कौनसी गोटे माने आमे सबु फिश रो स्पेसीज मान को जानि थिबा दरकार सबु फ्रॉग रो स्पेसीज जानि थिबा दरकार बटरफ्लाइज रो सबु फिश स्पेसीज को जानि दरकार ताहले जाय हम कहि परियो एटा नॉन पॉइजनस एटा पॉइजनस है ना तो एगुडा एई भलिया क्वेश्चन ऑल ऑफ 3 आर आंसर सबु गुडा को ठीक थिबो बुझिपाइलो चलो consider the following cashew papaya red sandra how many of the above trees are actually native to india माने पचार जे कोटा endemic to india केवल इंडिया रे अछि कोड बाहर होना हेनी तमे समस्त जानि छ काजू कोड होना है ब्राजील रो ओके पपाया सेमती अमेरिका रो बट रेड सैंडर इंडियन इट इज एंडेमिक टू इंडिया ओनली इंडिया रे ही देखा जाए ओनली वन ओनली वन नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर इट्स ए कौन तुम हाँ वाटर वेपर पोल्यूटेंट है ना which of the following statements are correct water vapor को लेके कोई statement correct बोले पचास it is a gas that the amount of which decreases with altitude its percentage is maximum at the poles देखो water vapor माने कौन जितने humidity अच्छी सेते अधिक water vapor रहेगा हाँ कि तो with altitude humidity कमी चले तेणु वाटर वेपर अमाउंट भी कमी चलो इट इज करेक्ट पोल रे ह्यूमिडिटी हवा को हॉट वेदर दरकार टेम्परेचर अधिक थिबा दरकार देन जाके ह्यूमिडिटी क्रिएट हो तो पोल रे टेम्परेचर इज वेरी लो सेठी ह्यूमिडिटी क्रिएट ही हबनी तो देयर इज नो माने हाई परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल इन पोल्स वाली कोच नो इट इज इनकरेक्ट हला ठंडा जगह रे केमती वाटर वेपर रहबो अधिक ओनली वन ओनली जो मैंने भी लाइक करना से पुणी रिपीटेड क्लास देखीदेव रेकर्डिंग क्लासटा देखियो नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द perfluoroalkali and perfluoroalkali substances PFS that are used in making many consumer products consider the following statements PFS are found to be widespread in drinking water food packaging materials yes food packaging materials so thibo hi thibo because it is a pollutant and this is harmful drinking water package में कोड दिन सता कोठी ना कोठी मिसु जिबे सब it is these are not easily degraded in environment yes it is सेति पय तेरा गोटे pollutant how on high risk pollutant because it degradable no जदि degradable एटा ना pollutant है ना था persistent exposure to PFS can lead to bioaccumulation in animal bodies yes जदि हमें ताको continuously consume करिबा हम बॉडी रे से परिमाणटा pollutant टा consume हे माने कोन accumulate हे चला तो it is a thing of bioaccumulation in human bodies correct all are correct next consider the followings carabid beetles centipedes flies termites wasps parasitoid species के भीतर कोडा से कहि छै parasitoids मान कोन parasitoid को माने जो गुडा को जो इंसेक्ट हैला से माने कोन ना गोटे टाइप ऑफ इंसेक्ट जो माने गोटे सिंगल बॉडी रे ग्रो करंती एंड सेम बॉडी को भी किल करते that are called parasitoids हैला तमरो carabid beetles जोटा that is a parasitoid centipedes it's a predator it's not a parasitoids flies गोटे parasitoid termites गोटे detrivorous को माने जोड़ा को dead and decay organic matter को खाती सी होचन detrivorous termites तो तार dead wood हैला से सब दिन सब कंज्यूम करे ना तो इट इज ए detrivorous and wasps गोटे predator सॉरी तमरो कोन parasitoid
ओके तो केते ओनली 2 कि नहीं ना थी अच्छा 3टा हला ना ये भी फ्लाइज भी गला तमर गोटे पैरासिटॉइड and carabitals भी गला पैरासिटॉइड ओनली 3 okay next statement 1 Indian flying fox is placed under the vermin category in the Wildlife Protection Act 1972 the Indian flying fox feeds on the blood of the other animals तो Indian flying fox कौन गोटे bat सी जदि ब्लड अदर एनिमल मानकर ब्लड पियता ताले आम बॉडी रे भी ब्लड नथता हला केबे बैट को देखिछ ब्लड कंज्यूम करिवार नो एटा कोन फ्रूट खाए बादुड़ देखिन सब जो कोन तमर गुआवा खाई दै थे सो पिजुली खणिया करी छाड़ दै थे पपया खणिया करी छाड़ दै थे से फ्रूट खाती ब्लड नुह स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट कोठी अछि एटा सी एथरे भी तुम जानि जबो इट इज कवर्ड अंडर वर्मिन कैटेगरी जो माने कि वर्मिन कैटेगरी को माने रहंती जो माने फसल नष्ट करंती से माने को वर्मिन कैटेगरी ऐड करा जाय एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रे इंडियन फॉक्स को ऐड करा जाय छी ठीक है दिस इज करेक्ट नेक्स्ट Consider the following materials: agricultural residues, corn grain, wastewater treatment sludge, wood mill waste. Which of the following above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel? ये गुड़ा जगह सब बड़े कौन करिबा ना all of these आंसर को मारिबो because aviation fuel जो तार feedstock हिसाब रे everything can be used. Everything can be used. तार gas में fuel convert करि परिबा. corn grains हे परिबो, agricultural residue हे परिबो, wastewater treatment sludge भी हे परिबो, wood mill रो wastage ये सब waste रो एविएशन फ्यूल पाई फीडस्टॉक हे पारिबो ओके ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट 23 रो क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व जते गोटे गवर्नमेंट करि दिए द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट नाइ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हुएंती नहीं एटा स्टेट तांकर होची कोन करे स्टेट अपॉइंट करे स्टेट अपॉइंट करे तमरो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश तमरो कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी सी एटा को लेकअप्टर करिवो ओके तेणु एटा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन करिवे नाही दिस इज इनकरेक्ट Hunting is not allowed in such area. Hunting is not strictly prohibited. It is correct. People of such area are allowed to collect non-timber forest produce. Yes, non-timber forest produce the people collect kari paribe. People of such area are allowed traditional agricultural produce. Traditional आमे जेमिति घरे चाष करूचे सेमिति थोड़ी ना गोटे कम्युनिटी रिजर्व हे गला पर सेठी चाष करी हबो हेटी हुएनी तो ओनली 2 Next, consider the following statement. In India, the biodiversity management committees are key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol. Nagoya Protocol को किए एठी करूची इंडिया रे ताको किए इंप्लीमेंट करूची biodiversity management committee है ना correct. The biodiversity management committee have important functions in determining assets and benefit sharing, including the power of levy collection fees on the assets of biological resources within its jurisdiction. Yes, biological management committee रो काम होची कोन कि benefit sharing करिवो जो तमरो levy collection करिवो fees collection करिवो and biological तार jurisdiction जति कि भी biological resource आसुची तार levy collection हे गला तार कहा को benefit दिया जिवो किए तार आसेस करि परिबो से सब काम किए करियो बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी ही करियो जोडा नगोया प्रोटोकॉल अंडर रे करा जायतला तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बोथ 1 and 2 ओके नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 को मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया मार्सुपियल कोडा मार्सुपियल हमें कहा को कहबा मार्सुपियल या को कहबा जो माने जो प्राणी निज छुआ को निज पॉकेट रे ग्रो कराय जेमते कि कंगारू सी कौन ना प्री मैच्योर्ड बेबी को बर्न कराए एंड तार जो निजर बॉडी रे जो पॉकेट थाए से बॉडी रे छुआ को रखी की ग्रो कराए तो से माने को मार्सुपियल्स कहती जनरली मार्सुपियल्स इंडिया रे देखा जांती नाही कोडी कंगारू तमे देखिचो इंडिया रे देखा जांती नाही तो दिस आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया दिस इज करेक्ट मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स नो देखिचो तमे कंगारू कोड देखा जाए एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज भी देखा जाए
ऑस्ट्रेलिया रे देखा जाए कि नहीं तो ओनली तो देखिए स्टेटमेंट को एक्सट्रीम कर दीजिए स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेसिव स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जोटा तुम आयुषन अच्छी गोटे नहीं कि देखिए जो इन्वेसिव स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेसिव स्पेसीज डाटाबेस बिलोंग्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इट इज आयुषन डायरेक्ट क्वेश्चन यार किसी कॉन्सेप्ट नहीं बुझा डायरेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कंसीडर फॉलोइंग fauna lion tail macaw malabar civet sambar deer how many of the above are generally nocturnal or most active after sunset या भीतर रात्रि चर पानी प्राणी कोटा लायन टेल मकाउ तुम देखी गोटे ब्लैक कलर जो मंकी टाइप रो है ना बड़ लंबा तार थाए टेलटा सी कहीं नक्टुरल हम दिन में भी तो सी चले नो दिस इज नॉट मालाबार किबेट इज ए नक्टुरल एनिमल है बिकज राति बाहर सांबर डियर डियर डियरटा के नक्टुरल हेनी दिन में भी डियर चल प्रचल करे तो ओनली वन हाँ कि नहीं यार आयुषन स्टेटस कौन लायन टेल मकाउर आयुषन स्टेटस कौन एंडेंजर्ड मालाबार किवेट्रो critically endangered आयुषन स्टेटस वेरी इंपोर्टेंट आयुषन स्टेटस मन रखिबो जोडा एटलीस्ट पीआईक्यू रे पढिछि सांबर डियर रो वल्नरेबल एगुड़ा को मन रखियो चलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ए वगल डांस फॉर अदर of their skin to indicate the direction and the distance to a source of their food ये भीतर किए बटरफ्लाई ड्रैगन फ्लाई हनी बीज वाप्स किए गोटे वागन जो तुम वागल डांस करे सी आगे डांस कर चले ता पछरे तार पूरा फोर्स से माने सब तार जाती ताको फॉलो करी फॉर सर्चिंग देयर फूड इट इज हनी बी गोटे देखिए आगर गोटे बी सेमती डांस कर चले आ ता पछरे तार पूरा फोर्स जाती है हनी बीज नेक्स्ट Consider following statements. Some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties. There are some they statements गुड़ा all correct. है ये स्टेटमेंट किसी भूल तुम भाभी भी पारिबनी कहीं आम मशरूम केते सारा स्पेसीज सब जान कहार तो सेमती क्वालिटीज थिबो ही थिबो एई भलिया क्वेश्चन देले तुम फैक्ट को केबे जीवनी लॉजिक सदाबेले यूज करिवो है ना ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नेक्स्ट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल को लेके नेक्स्ट माने कहूँ इंडियन स्क्विरल रो नेचर कौन कि दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बोरोज इन द ग्राउंड स्क्विरल माने ग्राउंड भीतर रुहंती केबे देखिछो स्क्विरल माने ट्री रे नेस्ट करंती ताकर हला केबे एटा नुह दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड यस दे स्टोर देयर फूड्स जस्ट जेने कि नट बेसिकली नट्स इज द स्टेपल फूड ऑफ स्क्विरल से माने जतबे विंटर हिबरनेशन करते से नट्स जो माने सब रखी देते स्टोर करके ग्राउंड रे ताको ही से माने यूज करते है ना इट इज करेक्ट दे आर ओमनिवोरस नो 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 ओमनिवोरस तो नो ना हाँ स्क्विरल तो इंसेक्ट भी कंज्यूम करे ना यस नट भी कंज्यूम करती सीड्स भी कंज्यूम करती एंड इंसेक्ट भी कंज्यूम करती तो दिट इज ओमनिवोरस देयर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बोथ बाकी स्टेटमेंट आर करेक्ट ओनली 2 स्पीड टे गड़ाई दूची सो दैट सारिबा बहुत समय तुम आज क्लास कलनी पेशेंस भी नथिबो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल विथ ए स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम ए होल इन ए ट्री और ए लॉग ऑफ वुड हैला देखो गोटे गछर लॉग रु गोटे काठी माध्यम रे इंसेक्ट को बाहर करके खाई परिबो सिंपांजी ही सेटा करि परिबो ओरेंगुटन ही करि परिबो सेही भलिया गोटे एनिमल ही करि परिबो जरा बुद्धि अछि हैला इट इज ओरेंगुटन consider the following aerosol foam agents fire retardants lubricants in the making of how many of the above are hydrofluorocarbons used है ना देखो पॉल्यूशन रो सब वर्ष क्वेश्चन पचार आम जी क्वेश्चन अभी देखिले पॉल्यूशन सदा बेले क्वेश्चन पचार तो पॉल्यूशन इज इंपोर्टेंट चैप्टर मुझे बारंबार माने इफेक्टिवली तुमको पॉल्यूशन टा पढ़ाई दिस ये भाया क्वेश्चन ऑल ऑफ आर पॉल्यूटेंट्स एरोजोल तुम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी एजेंट्स यूज हुए फोम एजेंट्स यूज हुए फायर रिटार्डेंट एजेंट पढ़ाई सोर्स पढ़ाई तेणु ये सब गुड़ाक यूज हुए तुम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज हुए है एरोजोल फोम एजेंट फायर रिटार्डेंट सब यूज हुए लुब्रिकेंट सब यूज हुए नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively increasing the alkalinity of ocean by adding lime capturing carbon dioxide released by various industries and pumping into
pumping it into abandoned subterranean mines in the form of carbonated waters. How many of the above activities are often considered and discussed from the carbon capture and carbon sequestration? माने या भितर कहा कोठी carbon capture हुए carbon sequestration हुए. Spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively सेतिरे carbon capture होई परिबो. Increasing alkalinity of oceans by adding lime. Alkalinity जदि increase होला ताने carbon sequestration से करि परिबो. Capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned substream mines in the form of carbonated waters. Again, ଯଦି ଆମେ ସେ abandoned mine ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ carbonated waters को pump କଲେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ carbon capture ହେଇକି ରହିଲା. carbon sequestration ଯେଉଁ ଜାଗାରେ carbon capture ହେଇକି ରହିଲା, store ହେଇକି ରହିଲା. ହେଲା, all are correct, all are 3. Next, consider the following statement. Carbon fibers are used in the manufacture of components used in automobile and aircrafts. Carbon fibers once used cannot be recycled. Carbon fibers ta can be recycled. hala eta gote pollutant no can be recycled, so it is wrong. Carbon fibers guda ko jo automobiles component re aircraft component re use हुए. Only one. Gold mining, consider the following statement regarding mercury pollution. Again, pollution no question. Gold mining activity is a source of mercury pollution in the world. Yes, it news रे भी थिला. Gold mining activity रे mercury pollution create हुए. Coal based thermal power plants cause mercury pollution. Yes, coal based thermal power mercury pollution release हुए ही हुए. There is no safe level of exposure to mercury. सेमती किछि अछि कि कहार safe level बिल्कुल नाही. एते भी पॉइजनस नो माने टिके भी हला में मर जिबा. सेफ लेवल माने तैया ना जहार नाही माने कोन टिके अछि जदी बाहला में मर जिबा. हम देखु जे कोल माइन बाहर छी, कोल माइन थर्मल प्लांट रो बाहर छी. सो देयर आर सेफ लेवल, देयर आर सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर मर्क्यूरी हमर स्टेट लेवल हिसाब रे 0.01 Mg per meter cube सेफ लेवल तार. तो दिस इज माने एक्सट्रीम स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, ओनली 2. ओके, विथ दिस 80 क्वेश्चन आम कले माने टोटल जो तुम मु कहबी एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स रो लास्ट 3 इयर्स, एनवायरनमेंट रो भी 3 इयर्स रो डिस्कस कले, इकोनॉमिक्स रो भी 3 इयर्स रो डिस्कस कले. सो आई होप तुम मैंने एथ्रो हेल्प पाइबो हला. जहाँ जी जो मैंने देखिछ बाकी जो मैंने न देखिल ताकू तुम जो रिविजन क्लास देखिबो राति शोला बेल हो जिते बेल तुमको सुविधा आसो ये क्लास टी देखीदेव. सो दैट क्वेश्चन डिस्कसन तुमको बहुत ही हेल्पफुल हम है, बहुत ही हेल्पफुल हम. ठीक अच्छे, थैंक यू. पुणी आम नेक्स्ट माराथन नेक्स्ट पुणी कौन टॉपिक आसो कंटेंट आसो तुमको आगुरी इनफॉरमेशन दिया. सो आई होप तुमको ये हेल्प हम. इवन काली यूपीएससी जो मैंने एग्जाम अटेम्प्ट करने जाऊँगी भी हेल्प हम. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानिछ केते हाईली बेनिफिटेड. तेणु एंड जो मैंने काली यूपीएससी एग्जाम देवाक जाऊँ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष मोर. ऑल द बेस्ट, माइंडफुली एग्जाम दब. सो ऑल द बेस्ट. यूपीएससी दबार तो मजा ही किसी अलग. ओके, सो आज एतिकी. एबे जाइए रेस्ट करो. काली जो मैंने एग्जाम दब आउ पढ़ापढ़ी ना, रेस्ट करो. काली फ्रेश माइंड रे भल माइंड रे जाइए एग्जाम दब. एंड जो मैंने ओपीएससी प्रिपेयर पर्टिकुलरली करूछ एग्जाम आसीगला आउ ढिला ना, सब रिवाइज कर. मुझे देखुची बहुत पिलांगर फ्लक्चुएसन, बट ये सब क्वेश्चन छाड़िया कथा नो. ये मोमेंट रे ये सब जिनस को रिविजन करवा कथा. चारिआडे जाइए एठी टिके सेठी टिके वीडियो देखिले किछि बेनिफिट मिलिबो नाही. गोटे जगह रे गोटे जिनस देखो तार निश्चित बेनिफिट आपण पाइबे.